Good morning, everyone. So, welcome to this new session, and I'm very sure most of you guys are waiting for this class as a part of third Ravi sir. But it's not only as a third Ravi sir. Okay, it's here you will found a Ravi sir as a integrated Ravi sir. Integrated Ravi sir means kind of a crash course that is designed here, and parallelly I'll cover their own current related issues. 9 days I'm connecting with all of you. And in these 9 days, I will complete entire science and tech is an integrated manner. Integrated manner means here the current affairs part I will also like to connect with you. So static with all the chapter based current updates, and I hope many of the students will listen these all the entire classes just for the revisions and a part of this addition of the updates. So exactly third Ravi sir is not here. Maybe if somebody is listening first time the Ravi sir here, so you guys may be confused like what is the meaning of third Ravi sir. That is spoken always, guys. Like what is required in the case of science and tech. So first Ravi sir, second Ravi sir, and third is again Ravi sir. Okay, and I think most of you guys know very well, as you people were waiting for my class, especially for third Ravi sir. So first Ravi sir was a class notes, that class discussion. Those I have taken entirely inside the institution. Class discussion, class discussion. The second one is the Ravi sir as a 7th edition book that you all people got here from the institution. Yeah, you are reading from the outside Science and Tech Agrahari book. And third Ravi sir is the all entire current updates. All entire current updates. So this is the reason I'm telling you third Ravi sir means this is a Ravi sir where the current update portion is also required. And science and technology is current related issues also always in your surroundings. Time to time you will get in the newspapers and all. So that is also equally important here. Even I spoken you earlier, guys, in the science and tech, generally, there are 80% of questions are static, 80 to 90%. 10 to 20% of question you will get as a current updates, current affairs. Okay, and many of the people are telling the science and tech as a current affairs, and they're huge in numbers. Okay, even the institution are also giving the maximum time to complete a history, polity, economy, and geography. Every coaching institution throughout the year, they are teaching you history, polity, economy, geography, and the science and tech, and another subject as environment. Just for a few days, the people are coming, okay, and just listening, and the teacher is still telling this is a current updates. So ultimately, the people whatever is teaching, it's still not any subjects. Okay, and the most of the aspirants of UPSC aspirant, I'm telling you, they are only reading the 100 page of current updates material of science and tech and environment just in the last moment of time. If any institution is going to publish, you're just going on, and here the number of questions is 15 and plus 15 means total 30 questions on the basis of 200 pages you are going to complete. It's not a proper strategy in the subject of preparation of 30 questions, but here I'm taking your classes for the science and tech. So I'll tell you it's the importance of around 15 question in your paper where you are going with the help of 100 page of notes of any coaching institution based. Last moment of time those current updates are coming in the market, you are following them, so it's not right. So I know for most of them I'm connecting with you first time. So first of all, at least 20-30 minutes I'll try to introduce the subject with the help of a PDF. That PDF I have given to everyone. So let us start from the PDF and then start a chapter. But yes, in this case, those session I will take it, guys. It's an integrated manner. Integrated manner means those people have listened my classes earlier and they are trying to revise it. You will get these discussions and these all the notes discussion. And a part of this, those people have a requirement of current updates, so that also be there. So it means it is an integrated. I think you understood very well. Everything will compile together. Okay, in these 9 days of session. So 9 days of session means around 36 hours, and I'll try to take your all entire 36 hours properly, guys. Okay, so let us start with the subject, and I think you understood how the subject will complete. Okay, and you all people understood how the subject will complete. Fine. So good morning all of you, and I'm very sure you all people will reply me here. Okay, you all people will reply me here. Okay, and try to connect with me. In that case, this class will look like that,
both sided. Okay, not it, I do not like to take a class like an information type one sided of the class. The classes should be mutually, means I'm asking, you are replying, you are asking, I will reply. In that case, we will enjoy a lot and will feel like the classes are look like as a mode of communication as a part of two-way system. It's not a part of information as a one sided like man ki baat type. Okay, it should be both two side wali baat hai na. So I would like to listen this. So start, and this is a PDF. This is a PDF. Same PDF I share to everyone in my first lecture. If you have listened my classes earlier, still you have this PDF. So 30 minutes I will try to cover. Generally in the entire foundation batch, I take 2 hours session of this entire PDF, but here I'll take just a 30 minutes. In this 30 minutes, PDF discussion is very, very important, guys. See. So I think you understood very well in this course. You will not get the only third revisor. Integrated revisor is a better option to tell. Okay, integrated is the best one. Some current related issues I'll share with you with the help of PDF. Okay, because more dictation is not possible in this session because you people are here right now for the crash courses. So it's an entire science and tech and all. It's a total general science, whereas in general studies. Directly you come into the subject discussion. So last 13 years question paper. It's a general science, and this is a syllabus of the prelims question paper also. Your syllabus is not defined as a 2 word of syllabus. General science is mentioned in your syllabus. It's a number of questions from 2011 to 2023, and next year you people are going for 2024. Let us see how many questions UPSC will ask in your paper from in this 2024. Okay, in this 2024. The total number of questions from 2011 to 2023, how much? It's last year 14 questions. Minimum 13 questions and maximum 14 questions, maximum 20 questions. And this is the reason I spoken you always around 15 questions plus minus 2 to 3 question is your weightage. Maybe somebody's are never prepare anything else from the science. Okay, for your 15 questions, okay, you are going to avoid, and maybe some of the institution of current affairs notes are available in the market and you are going to read that only. Okay, so how much you people are giving the importance of the subjects, you guys know very well. So it's a subject, it's a syllabus, it's a number of questions. In the first part, I would like to tell you, and I think you understood very well. So overall importance of the subject is 15 questions plus minus 2 to 3, matlab 13 to 17, 18. It is a range of these questions, subjects. Next part, if you go into analysis of the subject into various divisions, like what kind of studies are required in the case of science. So whenever you go, you will get the biology, physics, chemistry, and technology. It's a total general science. In the general grand total, how many questions are mentioned there? Okay, you already have seen in the previous slides. It's a total number of questions in the general science. In general science, I have divided into biology, physics, chemistry, and application. That is applied areas. That is called technology. In this case, I'll tell you guys, biology, physics, chemistry have a very least role in your paper. Okay, questions UPSC asks in your paper from the technology generally. So for UPSC preparation, that first part that you must be know, guys, around 90% questions, sometime even 100% of questions, sometime even 100% of questions, UPSC asks from what? Only and only technology. So this is the reason in your UPSC 90% of paper and 80-90 even 100% also UPSC asks the question from science and tech. So you must have to be more alert with the science and tech. It is most important for your examinations. Okay, but still you people are going for biology, physics and chemistry. Maybe somebody have invested their own maximum time with the biology, physics and chemistry. It's totally wastage of time. You should know it. Okay. So this is the overall picture. So in this case, I'll advise to everyone, agar you are going for state PCS, yeah, CDA, yeah, and CDS, NDA, in that case, the biology, physics, chemistry have even more role. Okay, but here in the case of UPSC, you don't have to go with them. Okay, for that only and only technology is required. And if anybody will suggest you, you go and read the NCERT of science. So again, it is totally misguiding. Okay, you people guys, why? Because NCERT science is written for only biology, physics and chemistry. The NCERT is not the technology. So NCERT is not fruitful in the case of science preparations. You should know it very well, guys. Okay, this is the overall the analysis in the beginning. I would like to tell you. Go to the next part. Okay, go to the next part. Mains I'm going to skip here right now because it's just a prelims oriented batch, especially as a crash course. It's a syllabus of the prelims, and this is very
incomplete syllabus, very funny syllabus. And one more thing guys, it is not in the case of science only. Only the 2 words of syllabus as mentioned there. In every subject syllabus in UPSC examinations not defined for the prelims paper, and this is the main difficulty in the UPSC preparations. Okay, the without syllabus UPSC have a question papers, okay, that you people are giving a examinations. Okay, and here I will tell you to everyone guys, you should be very alert. Neither maybe after having a lot of knowledge you will not qualify UPSC. The reason UPSC need a relevant knowledge, and for the relevant knowledge UPSC has not given you the syllabus. Agar UPSC has not given you a syllabus, so you should have to follow UPSC question papers. Only question paper will actually help you to understand the demand of UPSC examinations. And this is the reason what about the analysis and what about the teaching I am going to give you, it is entirely on the basis of last 13 years of prelims question paper analysis. Mains I am not telling you because it's a prelim session, especially for the prelim sessions. Main syllabus still I am going to avoid it right now. Mains question paper I am also going to avoid it right now. And directly I am coming into the question paper those UPSC asked in 2023, that was the last year, and here the number of question was 14 questions. In these 14 questions, the one part I'll tell you guys, each and every 100% of questions are science and tech based. 0 question from biology, 0 question from physics, 0 question from chemistry. 100% question came from the technology. And these technology, those UPSC asked the questions, and from these technology, those UPSC asked the questions. Here I'll suggest you total 11 chapters that is relevant for everyone. So first of all, you just note down about the name of chapters. Start. Okay, and then I will further come back here guys. So first you come into the name of chapter that is relevant for all of you guys. So write down chapters. So list of chapters. Start to write list of chapters. Okay, list of chapters. What is the list of chapter here in this case? See guys, chapter number 1 is the science and technology in India. Chapter number 1 is science and technology in India. Okay, here you will get some of the schemes and programs like Atal Innovation Mission, like Nidhi scheme. In that way this chapter is relevant. Okay, but if you see the 2011 to 2023 last 13 years question paper, so here from this chapter, rarest of the rare have a question UPSC has maybe shared 1 or 2 in the last 13 years. So the least important chapter for your examination. This is the first chapter. Second one is the energy. Second one is the energy. Okay, you should have to prepare. And energy is the most important chapter for examination. Even the last year of 2023 UPSC has 5 questions. That 1 year of question paper I'll show you, don't worry. Okay, second one. Third one is the space technology. Third one is the space technology. Third one is the space technology. Fourth is the information and communication technology. Fifth is the defense technology. Sixth is the artificial intelligence plus robotics and plus nanotechnology. Recently, very well guys, like one of the topic is got even very important, like a chemistry Nobel Prize that is based on the quantum dots. So quantum dots is a part of nanomaterial that I'll discuss with you in the case of nanotechnology. Most of the portion nanotechnology is the static, okay, like fullerene, CNT, graphene, but a part of some new external, some extra information like nanomaterial. Still I taught you always quantum dots, but the same quantum dot this year got the Nobel Prize. So quantum dot I will discuss more and more detail here in this class. Okay, with static and current updates all. Artificial intelligence, very well guys, very important. Chat GPT. Chat GPT is not important this year guys. Chat GPT got important from 2021. UPSC never asked till even 2021, 22 and 23. 24 mein agar Chat GPT will come, so you can tell this is the current affairs. Okay, but you don't know 3 years back Chat GPT got popular. Well, last year UPSC never asked. Last to last year UPSC did not ask. So I'm telling you guys, this is the static portion. Okay, don't tell the Chat GPT right now, it's the current updates. Okay, the next one after it you should go with the IPR, intellectual property rights. Generally this chapter is the concept based. Okay, generally this chapter is a concept based. Here you will get the rarely have some current updates. 3-4 questions, maybe 5 maximum. You will get the question from intellectual property rights. 8th one is a particle physics. Particle physics is a evergreen topics. Okay, evergreen topics. Few years back you got one of the question your mains paper also, like Bose-Einstein statistics, BS, and many of the people have left this question. Okay, Bose-Einstein statistics. Later on we'll go toward the discussion of biotech. Lesson 1 is the biotechnology. The 9th chapter is a biotechnology.
10th chapter is the health and disease. 10th chapter is the health and disease with various immunization program. Last year UPSC asked the question from various immunization program in your paper. Okay, various immunization program. That's the one of the question UPSC asked about the Anemia Mukt Bharat. Anemia Mukt Bharat campaign in 2018 under Poshan mission. Okay, but the problem is there, you never read the Poshan mission 2018. That is the reason after 5 years this question when came in 2023, everybody said that is a current affairs. But Poshan Abhiyan brought in 2018. Okay, so various immunization program, and the last chapter is, I'll tell you, as a miscellaneous chapter. And the last chapter is what? That is a miscellaneous chapter. 3D printer, 4D printer, these kind of concept is the hydroponics, aeroponics, these kind of concept is a part of miscellaneous. So it's a total entire 11 chapters, but 2 chapter I'll not cover. Okay, I'm telling you, some other faculty will come and take your classes for biotech, health disease and various immunization programs. 10 questions overall. If you see, this is coming from the 9 chapters. 9 chapter, those I'll deal here. 2 chapters have around 5 questions in your paper, so other teachers will manage. And me myself will take classes of these 9 chapters. The first 8 that you can see up to particle physics, and 9th is a miscellaneous chapters. So Nobel prizes and all, it is my part of discussion. I will teach you here. Okay, so you people will learn this Nobel prizes and all with me here in this case. So it's the entire syllabus of prelims examinations. Okay, now come. Few people were here in 2023 prelims question paper. Just go with them. And again, I repeat, all the question was static questions. So the first question that UPSC asked from the green hydrogen. Actually, green hydrogen is the concept of National Hydrogen Mission. Our National Hydrogen Mission was the news in 2020, 2021. But UPSC did not ask in 21, UPSC did not ask 2022, UPSC asked the question in 2023. After 2 years, 3 years, people are saying that is a current affairs. Okay, that line I always use in the class, and I think you people have listened many times. Like after 5 years, the UPSC asked the question in current affairs. After 70 years, this question UPSC asked in the current affairs. Okay, you people still never prepared the science and tech as a static. So for you, every science and tech is a current affairs. Okay, thank God you people not telling Babar is a current affairs, but you people are telling the science and tech everything is a current affairs. मतलब इंडिया में अगर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, अगर तारापुर में कहीं लगा, तो उसको भी आज आप करंट अफेयर्स बोलते हो, 50 साल पुरानी चीज है भी, क्योंकि आपने कभी तारापुर पढ़ा ही नहीं ना. तो दैट कंडीशन इज डिफरेंट. द फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज रनिंग इंडिया एज अ कलपक्कम, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. तो यू नेवर नो अबाउट द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दैट फर्स्ट वेयर इट इज रनिंग. तो आज भी आप वही बोलते हो, शायद आज से 20 साल के बाद भी यू विल टेल द सेम थिंग. इट्स अ करंट अफेयर्स. Okay, the main problem in this subject is what? Nobody's are taking the classes as static. Still, if you go on the toppers, still when are they going to qualify the UPSC, still they are telling the subject is a current affairs. Because toppers still qualify the UPSC because of history, polity, economy or geography. And thank God the merit of you people is 42, 43 questions. Okay, history, polity, economy, geography और एक दो question कुछ current से मिल गया in the science and tech. ऐसे करके आप qualify करते हो. अगर merit start to go with 60 and 65 ना, then you will have to prepare with the science and tech also as a subsets. Okay, but yes, here in this case, agar you will take a proper preparations in the science and tech, ultimately 10 questions extra you will exceed very easily. If you are going to lack in your prelims to qualify in history, polity, economy, geography, at least science and tech support will help you, and you will 100% be sure to qualify UPSC in this case. Okay, so science and tech, if you give a importance here, everybody's are not giving a importance, everybody's are doing the same thing, last moment of time 100 page of notes, and that is the reason you all people will ahead from that. All the aspirants, those are giving UPSC. Okay, and ultimately you people know very well that science and tech means it's not a current, it's also a subjects, and somebody's are taking the classes science and tech as a subject in India. That is me, and I'm always telling you the science and tech as a subject. Try to listen here. Okay, and you'll feel it. So this is the reason I'm telling you National Hydrogen Mission was a part of 2020, 2021. Okay, and here the question was the green hydrogen. And green hydrogen based question, not the first time UPSC, even the one question. In the same year in 2023, UPSC has 2 questions where green hydrogen is used as a source of energy, that I will show you after 3rd or 4th questions. Okay, so just wait. So don't try to solve it because National Hydrogen Mission already it is in the part of my discussion. Earlier, if people have listened my static classes anywhere, so you also know very well, yes, Ravi sir taught the National Hydrogen Mission, where I taught you about the green hydrogen, blue hydrogen, grey hydrogen, pink hydrogen, yellow hydrogen. All the hydrogen discussion I have done, and this National Hydrogen Mission initiatives by our finance minister, Shri Sita Ramanji, she brought this mission actually.
Okay, introduced it. Okay, introduced it. So I'll discuss with you what about the fuel internal combustion, hydrogen we can use there or not. Okay, so it's a first question, and that is a current classes. Those I covered last year on the same platform. Here, marathon classes. That topic I also discussed there. Question UPSC directly asked from the last year of marathon, this hydrogen, and class discussion was there in the classroom program, and same thing is mentioned in the 7th edition of book also. So everywhere this topic was covered and UPSC has directly from it. Current classes, classroom discussion, static wala, and the book. Everywhere this question was UPSC questions. Second question, those UPSC asked, it's a still static, like a first question. Consider the following statement like India, despite having a uranium deposit, depend on the coal for most of the electricity production. So I told you in the static classes, like definitely India has the maximum power production is with the help of coal. We have a uranium also, but uranium we are utilizing very, very less, not the coal. So the first statement is right. Even India have a uranium deposit, but still India is depending for the electricity generation mostly on the basis of coal. It's right. Second statement, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Those people have seen the current affairs of all the magazines last year. Not even any magazine have written, but in the static classes I taught you during the discussion of uranium fuel, if uranium 235 you are going to enrich to 4%, that will be utilized for electricity. Okay, and just if you want to use an atom bomb, the 20% plus enrichment are required, and the best atom bomb will be up to 90% of enrichment of uranium under nuclear energy. I taught it, and this is the same question UPSC made it as a static. So those people have listened my earlier classes in the static discussion, they know it very well. Definitely UPSC asked the question, it was directly came from the classroom discussions. Okay, even inside the book, it is also mentioned there how much the percentage of uranium 235 will be used for electricity and how much it will be used for atom bomb is again static, but everybody is telling that is a current affairs. It's again the second question, that is a general questions for your, definitely don't worry here, I'll discuss with you about the nuclear energy. Okay, it's a nuclear energy. Okay everyone, it's a nuclear energy. Next one will come here guys, like UPSC has a general question about the cobalts. Okay, so UPSC has a general question about the cobalt. Just a minute guys. Okay, so about 3/4 of words cobalt, that is the question, like very factual question UPSC has, where is the cobalt? Okay, available in the world, maximum reserve of cobalt, so that is here. Okay, so that answer was the Congo last year UPSC asked. Even I was expecting the question from lithium, because in January month of 2023 you got it. January, February, like India's the largest lithium reserves was detected. Even this year I will also tell you, like lithium is a very important topic, and lithium based battery, that is called lithium-ion battery, that I will also discuss with you here in this case. Okay everyone, fine. Another question, like lithium-ion batteries is still important. Some more batteries this year you got it, like sodium battery, like gravity battery. So that's some of the other miscellaneous topic I'll discuss with in the case of current updates. Don't worry. But still I will advise everyone, lithium-ion battery is always important from the last 7 to 8 years guys. Okay, from the last few years still the lithium-ion batteries people are using are more popular. In mobile phone it was popular. Nowadays it is popular in the electronic vehicles, EV vehicles, that is very, very popular. Fine. So it's a green hydrogen, and see it's again the second question of green hydrogen, those UPSC in the last year. Okay, so energy based question, many of them UPSC. Again further the UPSC has a question like coal based thermal power plants in India consider the following statement. None of them uses the seawater, none of them in the setup in the water state district, none of them in the privately owned. See actually guys, you know, none type of question means nothing, never, not possible. In this case of question mein kahin na kahin some exceptions are always there. So many people guess the answer because none to hota hi nahi hai, kuch na kuch to private sector bhi hote hain. None of them is not there a sea state, ऐसा कुछ ऐसे भी होता है जहाँ पे water state areas है. Okay, नहीं भी है ना, most of the none of them is uses a sea water areas, ऐसा भी नहीं है. Some of the coal based thermal power plant we have to also set up where the sea water is available. So it's a way guys, UPSC asks the question and you people have take the answers. So coal based thermal power plant is not the first time UPSC asks. Coal pe to there is a 4 to 5 times UPSC asks the questions, and today I'll start the lecture from the coal base of thermal power plants. Okay everyone, fine.
That's general questions those UPSC has in your paper. And see guys, again I'm telling you, last year is still UPSC has a maximum number of question in your paper from energy. In these 8 days of discussion, 2 days I will like to discuss with you about the energy because it is the most important chapter for examination. So just count the number of questions from energy that UPSC asked. And even in the beginning, okay, in the beginning I told you this chapter, this question is from which chapter? Energy. So this is the second question of energy, and this is a question like if you want to read the book, if you read the book guys, chapter number 4 where this answer is mentioned there. Second question of energy, third question of energy, 4 question of energy, and 5 question of energy. So these are the total 5 questions those UPSC has on the basis of energy chapter. Okay, on energy chapter. It's there. Now we'll come toward the discussion of space technology. Okay, so space means the one question like UPSC has in your paper from space. It's again a very static question UPSC has, like classroom discussion, books, everywhere it is mentioned there. Those people have listened my class in 2022 and 2023, they know very well. Whenever I discuss with you about the GPS system, I told you it's worldwide total 4 countries have a global GPS. US, Nowstar, Russia, GLONASS. I think somebody has recalled those listen my classes earlier. China has a Beidou and Compass, and the one is the Europe, that is called Galileo. And 2 countries have a own GPS system. The one is Japan, second is India. Japan is a QZSS, and the India have a Gagan and IRNSS. Okay, last year UPSC asked the question which country have a own regional GPS. So 2 countries have Japan and India. India is not there, so Japan is the correct answer. So that is a UPSC question, general questions from the last 8 to 10 years. This is the same statement I am teaching in the class, and UPSC asked in your paper. Static question guys. It does not mean the last year Japan has installed the own satellite navigation system, means regional GPS. Japan already have it from 2018 onwards. Okay, question asked in 2023. Okay, India have a Gagan and IRNSS. QZSS is the Japanese, it's a very stupid type factual questions like UPSC as in your paper, but people said that is a current affairs. Okay, people said that is a current affairs. So classroom discussion, I have done it. If anybody is listing my crash courses and listen my classes earlier in 2022, yeah, 2021, yeah, 2020, yeah, 2019, yeah, 2018, so they also know very well, yes sir, you taught it. Same thing in the class during the discussion of space technology in GPS part. Nanotechnology is carbon fibers. Carbon fibers are used in the manufacture of component used in the automobiles and aircrafts. Okay, and the next is a carbon fiber once used cannot be recycled. See, this is also not a current affairs because UPSC organized in 26 May. Okay, and in June 5% enter into the water bodies. 5% enter into the water bodies, and some casualty happened with the help of that. They were inside the deep in the ocean to see the debris of the Titan. I think you know very well Titanic. Okay, movies, and the debris, the 5 people were inside, but due to water pressure, it blast and all the passengers die inside. That was entirely made up by carbon fiber. Okay, so incidents happen in June, and UPSC asked the question 1 month before this incident. So it is not the current affairs. Okay, so it's a carbon fiber. Next one, you see general question like ballistic missile is jet propelled, subsonic speed. A ballistic missile, what is it in defense chapter? I described with you, parabolic. Subsonic, I told you less than 1 Mach. Okay, so ballistic missiles are jet propelled and a subsonic speed throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flights. Agni 5 is a median. So that I discussed. Agni 5 is a 5,000 km static question. It's a general question guys, and a static question UPSC. As UPSC did not ask any of the new recent missile name in your paper. Okay, so that is here in this case, you must be know. And second one is Agni 5, I told you. Agni 5 is a 5,000 km and 5,000 km touch what? Intercontinental. 5,000 km touch intercontinental. Okay, so 5,000 km will touch intercontinental. So you also remember. Okay, fine. Next you come into the some biotechnology. I like to skip here. Aerial metagenomics, that is also called as a environmental DNA. Okay, 3 years back I made one of the videos, but it's a biotech wala part. On the YouTube it is available also. Environmental DNA, aerial metagenomics. Like any of the feathers, any of the animal feces, if they are floating in the air guys, because they are light in weight. So scientists can collect that samples from the air and can do the study of the cells inside it. And within the cell, they will get the presence of DNA, and through the help of DNA, they can find out the genomes. And then they will be identify like which kind of organisms are diversified in the surrounding areas. In that way, they can identify biodiversity. And it's a sample of the environmental floating airs, aerial metagenomics, you can call them also. Okay, you can also call them. So that is overall here in this case, remember. One more question, UPSC microsatellite. If you read the book, in the case of
DNA barcode. So DNA barcode mein you will get the information about the microsatellite DNA. But biotechnology I'm not going to cover, so I'll escape it. Same thing in the case of a health mission. I told you Janni Suraksha Yojana immunization program always important. Last year UPSC did not ask any question from the disease. Okay, only and only see the another questions. Anemia Mukt Bharat UPSC Poshan Abhiyan 2018 UPSC as in 2023. So after 5 years later on this question came in current affairs. मतलब 5 साल पुराना question current affairs में पूछा गया. ओके तो ये भी लोगों ने करंट अफेयर्स बोला जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था एनीमिया मुक्त भारत. Later on, you go into the discussion of Wolbachia method, especially for the control of the mosquitoes. Those are going to carry the viral DNA, viral diseases from one to another organisms. So here, for to control of them, this Wolbachia method is used. Health and disease based questions. One of the question UPSC has in your paper from the accelerometer, like car collisions. This one I never taught in the class. Okay, but accelerometer I discuss with you in the case of a launch vehicle. When I discuss with you launch vehicle, 50% weight is the own weight and 50% is the propellant weight. In that case, I discuss with you accelerometer, gyroscope and syrup system is available. But accelerometer, I did not think so. It will become as a separate questions. But I only taught you the accelerometer in the case of launch vehicle. But accelerometer, we can use some instrument and devices. We use it in the case of when a car is going to collision with the accident happen, the airbag is going to happen. When this tablet is going to fall down, so some accelerometer is there. That's why the filaments of this very sophisticated small filaments are there. There's no disturbances in the instruments and all. If I'm playing a video games like in the portrait or landscape mode, okay, the pictures that's going to be moved very easily from this to this side, and then I'm playing a what is it, like a temple run type of game. That is also the part of what it's also working with the help of accelerometer. So the rotation of screen and all. So that is the question those UPSC has in your paper. But I'm very honest teacher, so I'll tell you I never discussed that as a question. But rest of all the 13 questions overall whatever. Okay, it was the question paper of discussions, everything that came from the classroom discussion, the books and the current updates, even in the from the marathon classes. Those I have taken the last year. Fine. So this year I'm not going to take here as a marathon classes, but at least in the marathon classes, those current affairs updations are required. I'll give you here properly. Last year I have taken around 11 to 12 hours of classes. Here the all entire marathon is I'm taking around 36 hours. So I think I have a more time. I can do more better here in this case. Last time the 11 hours I just tried to give you guess. This time is not a guess. This time some homework I can do. Some classroom work you people can do with me. Fine. So in this integrated approach, definitely it will be very fruitful, and those people even never listen my classes. Okay, so try to remember it's a crash course. So little bit I will be hurry in this all the entire session. Okay, and what about the queries you people have? Better to you message me continuously, and in between whenever I get free and just to see your chatting and all, I'll reply you as I'm watching your all the chats. Fine. And I hope so the session will be literally very fruitful to all of you, like a last year those lesson I have taken here on this platform. So let us start with the chapter. Now I'll come into the topics here, and this is the overall, guys. 2 chapters I'm going to cut. Okay, rest of all I'll discuss with you in the short period of time. Okay, only I'll touch the important topic that is necessary for the examination. And first, let us start with energy. Here in this session, Science and Technology in India, I will also cover with the same of some Atal Innovation Mission Nidhi scheme and something, IDEX scheme and something more. That will be the part. But this chapter I'll discuss in the last day on 8th. I think 8th April is my last class. So on 8th April, I'll cover with the Science and Technology in India with certain government schemes and programs. Fine. So let us start, guys, entire session here. You give a heading about energy. So you give a heading here, that is energy. Energy. Actually, if you people do the study of energy, so on the basis of resources, okay, on the basis of resources, if you do the study of energy, so there are 2 types of energy sources. School time you read it, guys. The one is called renewable and second is called as a non-renewable. So one is a renewable and second one is the non-renewable. Okay, so one is a renewable and second one is a non-renewable. Renewable energy sources, if you just check is, guys, so you know very well we can use them again and again. Okay, again and again. And this is the reason they are inexhaustible. They will never lose. That's why you people can use them again and
again. And see one thing more guys, renewable energy sources have no pollution, minimum pollution also. So they have a no pollution or minimum pollution in the case of renewable energy. Okay, but another side, if you go non-renewable guys, so we cannot use them again and again. The reason these are exhaustible, okay, reason they are exhaustible, and yeah, of course, they no pollution, minimum pollution, and they create the pollutions. They create the massive environmental pollutions. So in the beginning, I just wanted to tell you, like you people remember. So it's overall about this again and again, inexhaustible, no pollution, minimum pollution. Here you will get the exhaustible, and they create the massive environmental pollutions. Okay, the example of renewable, I don't think so anyone have a need of them. But I'm giving you the example like solar energy, wind energy, okay, wind energy, geothermal energy, like biomass energy, like ocean energy, okay, where you'll get the tidal energy and all is part of them. Okay, so these are even hydroelectric power plant, they will also be the part of them. Even hydroelectric power plant, they're also the part of them, hydroelectric power plant. That's overall the example of renewable, and I don't think so ki anybody have anyone have issues in the understanding, because you already have prepared everything. In the last moment of time, you are just going to revise all of them. So it's overall about the renewable. I think you remember. Even some target of renewable energy I'll also discuss with you whenever I'll reach on the renewable energy topics. Non-renewable, of course, you can understand very well. We cannot use them again and again. Reason these are exhaustible in nature, and they create a massive environmental pollutions. In this case, I'll give you the examples. In this case, I'll give you the example like the first example here in this case is the coal-based power production is the thermal power plant. Is the thermal power plant. It is what? It is the thermal power plant, coal-based power productions. Second side, you should know about the petroleum products. So second side is the petroleum products. So second side is the petroleum products. Another example I can tell you, that is the natural gas. So these three examples are the main example of non-renewable. Of course, if once you people use them, so it will be not available for your further uses. Okay, so it will be not available for your further uses. So coal-based, petroleum products, natural gases, these all are the example of non-renewable. Okay, these all are the example of non-renewable. Now another point. See, one more statement I'll tell you guys, like in this overall of all the energy sources, I think you people know very well. Coal-based the power production maximum in the world, even also maximum in India. Approx 60% I'm telling you, something plus minus you always remember, power production of the world, and even in India, it is because of thermal power plant. Yeah, it's okay. In the coming future, what about our renewable energy target? We are trying to increase by 2030 around 50% power productions. That I'll discuss with in the case of renewable energy vision of 2030 in the 2020-22 COP26 summit of Glasgow Convention. What about our honorable Prime Minister has spoken there? I'll discuss with you, but not here right now. Okay, but that kind of schemes and programs, still it is very, very important for your examination. You should remember it. Fine. So it's overall the picture of the entire topics that I'll discuss with you. One example that is very confusing, and that's called nuclear energy, because I could not mention about nuclear energy anyone. Okay, so one example that is nuclear energy. Nuclear energy, where you will consider. It's again a question like many students even confused with the nuclear energy, where we should have to put them as a part of renewable, yeah, as a part of non-renewable. Here I'll tell you guys, nuclear energy in some aspect is a renewable, in another aspect it is a non-renewable. The best example I can tell you guys, nuclear energy have two reactions. The one is nuclear fission, one is a nuclear fission. In the case of nuclear fission guys, like uranium, thorium and plutonium kind of reserves we are using for power production, or we are using for the atom bomb formation. If once you will use the uranium, thorium and plutonium, so next it will be not available for your uses. In this case, I can tell you this is what? This is exhaustible, means it is a non-renewable in nature. If uranium, thorium and plutonium you will utilize for the power production, yeah, nuclear based electricity generation, yeah, atom bomb, so ultimately they are going to lose as in the form of energy generations. So one side it is exhaustible. Second side, nuclear energy have another reaction, I think you people know very well, that is called nuclear fusion. The best example of nuclear fusion is the sunlight. Okay, and this is the this is the process that will never stop. So a never ending process of nuclear fusion is, I can tell you, it's a renewable, it will never exhaust. So I think you can understand very well guys about exhaustible and
inexhaustible. The exhaustible and inexhaustible you can understand very well. So this is the reason nuclear energy is a very miscellaneous case. Somewhere you will get as a renewable, somewhere you will get as a non-renewable. Okay, so agar somewhere you are getting the nuclear energy, the people are going to put as a renewable. So you should know which kind of nuclear energy is a renewable, and the side which kind of renewable energy is the, and which kind of nuclear energy is the non-renewable. Both examples are in front of you. So in the beginning, I think you understood about the chapters, and this is a total about the chapters in the beginning. Study of fuel on the basis of calorific values. Study of fuel on the basis of calorific values. So study of fuel on the basis of calorific values. Okay, so a study of fuel on the basis of calorific value. Okay, so a study of fuel on the basis of calorific values. What is the calorific value? So I'll try to tell you guys. When 1 gram of fuel burn inside a vehicle, it's a simple way to define it. When any unit of fuel burn inside a vehicle, in this case those heat generation happen. Okay, in this case those heat generation happen. Okay, 1 gram of fuel burn inside a vehicle, those heat generation happen. Okay, those heat generation happen. It is what? It is a kind of calorific value of fuel. It is a calorific value of fuel. You people remember. But I define it the same. Like, sir, please clarify regarding nuclear energy is a renewable and non-renewable. Same thing I have done, and same thing you are asking. Acha, do one thing, guys. If anybody is asking any question, so just below it mention your name also. Maybe some question I will take later on after some time. So you maybe forget like which answer I am telling here right now. So somebody is telling, sir, please clarify regarding the nuclear energy. Is it renewable and non-renewable? So you people tell me, guys. Everybody respond me. You tell me. Nuclear energy will consider as a renewable, yeah, you will consider as a non-renewable. I'm waiting everyone answer at right now. Okay, I will like if you people will connect with me. Neither the class will be monotonous, only one-sided. I'm delivering, I'm trying to help you to sleep, and you are literally trying to sleep. Okay, like, and next time you remember, guys, if you not mention your name below your questions, I will not take your questions. Okay, in that way, I look like that Ravi sir is giving the answer of this Vishwas. This is a man. Yeah, Rinki. This is the girl. Like, this is the question like this girl and boy when asked it, and at that I'm replying it. So just like I'll tell you, oh, Vishwas asked this question, and this Vishwas, it is your answer. In that way, you will connect it and you will feel it also. Okay, so class should not be monotonous. Little bit I will be fast here, and the reason you know very well because it's a crash course. Okay, so you just reply me, but next time you remember, agar you will not mention your name, so maybe guys I will skip your question also. Okay, neither I will definitely love to give an answer of your each and every questions. Okay, fine. I told you guys in the beginning even. Okay, so it is both, it is both, it is both, it is both. Everybody right? But next time again I am telling you, please mention your name. Vivek, non-renewable, Roshni, non-renewable. You people are 100% wrong because I just spoken you nuclear energy. Okay, have a two process. Nuclear energy I'm not discussing right now. Nuclear energy will already come in the discussion in tomorrow classes. But nuclear energy have a two process. Through the help of energy generation is possible. One is a nuclear fission, one is a nuclear fusion. Nuclear fission in that cases, those fuel we are using as a uranium, thorium, plutonium, if once you will use, it will finish. You cannot use further. So it is what? It is exhaustible, and exhaustible nature is a non-renewable nature. And another energy portion is a nuclear fusion. Nuclear fusion is what? Again and again we can use them. Okay, in that case of power production, it will never exhaust. Like the best example is the sunlight. Sunlight from million of the years is coming, guys, did not stop. So it's what? It's a nuclear fusion is going on. The nuclear fusion is never stopped, inexhaustible, never lost. So here it is a renewable, and this nuclear fusion is a non-renewable. So in that way, I can tell you fission and fusion both. Okay, here what? One is exhaustible, one is inexhaustible. So renewable, non-renewable, both are here. So both are the correct answer. Absolutely right. Okay, Shreya is given the properly, guys, has both nature. In case of nuclear fission, it is exhaustible. In case of nuclear fission, so nice. Piyush still have a current कितना पढ़े साइंस टेक में जितना पढ़ा रहे उतना पढ़े ठीक है वैसे generally 10 months is required for your paper. Okay, generally 10 months are required for your paper है ना इतना ही पढ़े got it तो okay fine. Those people have mentioned the name. Vivek ने भी सही बोला, रोशनी ने भी सही बोला. बाकी those people have told me here right answer या whatever. Okay, Piyush, I have given your answer like itna padhe, so 10 months is enough. Okay, your examination is going to be organized in June.
ओके तो आप 15 जून तक का पढ़ लो, जितना कर सकते हो, 10 जून तक का पढ़ लो या फर्स्ट 10 जून तक का पढ़ लो। ओके और उससे लेकर पीछे के 10 महीने तक का इट इज एनफ, फाइन। ओके सो नाउ वी आर डिस्कसिंग, आई लाइक इट, दोस पीपल हैव मेंशन द नेम, मैंने उसके लिए नाम के साथ आप पे आंसर के डिस्कशन करता हूँ, तो काइंडली टेल योर नेम, इट इज इंपॉर्टेंट। Come on the calorific value, guys. Calorific value is what? When the fuel burn inside the vehicle, in that case, those heat generation happen. That is called calorific value of fuel. है ना? Calorific value of fuel. Actually, I want to discuss with you about the fuel nature, study of fuel on the basis of calorific value. What are here, guys? See, study of fuel on the basis of calorific value. So ultimately, you will identify about the energy generation capacity in which case of fuel is maximum and even less. Here I start first with coal, then go to the petroleum products. So the one is the coal. So one is the coal. Later on you go toward the petroleum products. Later on is the petroleum product. Petroleum product. Third one is the LPG. Fourth one is the CNG. And next one is what? That is hydrogen. So these are the total 5 fuels you should remember. Okay, and in this order you people remember, and I think those people have listened my foundation classes, they know very well, they are just going to revise them. So the coal, then petroleum product, then LPG, then CNG, and then the hydrogen, these all are. And see one thing more, guys, the coal has a minimum calorific values, I tell you, you remember, and the hydrogen have a maximum calorific value. It means what? Those order I mentioned there, it is an increasing order of calorific value, everybody remember. It's what? It's an increasing order of calorific value, you people remember. And see one thing more, guys, those fuel we people are using, okay, those fuel we are using, these are 3 types of fuels. Okay, the one as the coal, you can find out it's a solid nature of fuel. Petroleum as a liquid nature of fuel. LPG, CNG and hydrogen are what? They are the gaseous nature of fuel. They are what? They are gaseous nature of fuel. Okay, they are a gaseous nature of fuel. And I can tell you guys, overall, if you just check, the gaseous nature of fuel have a downside, and they all have a increasing of a calorific value. It means gaseous nature of fuel have a highest calorific values. Okay, so gaseous nature of fuel have a highest calorific values, everybody remember. Okay, so gaseous nature of fuel have highest calorific values. Okay, everyone. One more statement I'll tell you. Okay, like all the fuel that you can see on the screen, like coal, petroleum, LPG, CNG and hydrogen, all chemical nature, if you see, they are made up by carbon and hydrogen compounds, and this is the reason these fuels are called as a hydrocarbons. So these all the fuels are what? They are made up by carbon and hydrogen compound. This is the reason these all are called as a hydrocarbons. Even I'll tell you guys, hydrogen have a hydrogens, CNG have a methane, it's a CH4, LPG have a propane and butane, LPG have a propane and butane. If you see formula of propane, guys, it's a C3H8, it's a C3H8, C3H6, C4, C3H8 something, it's a C4H8 है ना, I think देख लेना C3H6 है I think है ना, and C4H8, it's a propane and butane. Okay, everywhere you will get it C3H8 something है ना. C3H8. Okay, so what about this C3H8 and C4H8? You understood? Everywhere you will get it like carbon hydrogen number is going to increase, more increase, ऊपर जाओ और increase, ऊपर जाओ और increase. And when the carbon hydrogen number is going to increase, the fuel is going to be more and more dense. Okay, and this is the reason gas when become more dense, it become liquid become more dense, it will become solid. So density is going to rise here in this case. Okay, so density is going to rise here in this case, everybody remember. Okay, it's a calorific value, and I think you people remember this calorific value very easily. Fine. Here I'll discuss with you first about the coal and coal based question. There's 5 questions UPSC asked in your paper. देखो 2023 में भी 1 question UPSC asked from the coal कि वहाँ पे हम coal based power plants नहीं लगाते जहाँ पर C नहीं है. Okay, मतलब in that way that UPSC has none and none वाले में always not there. Okay, ये this is a always wrong statement क्योंकि somewhere have exceptions also there जहाँ पे उन areas में भी people introduce them. तो ये elimination का process होता है. Generally अगर anywhere the none type of statement is coming. So remember guys, 99% statement जो होता है वो गलत होता है. Okay, this is the process of eliminations. Okay, and the toppers they know very well. Okay, those people are going to qualify UPSC, they know very well. In this kind of questions, when none wala option generally galat hi hota hai.
always, none, ये हमेशा गलत होता है क्योंकि everywhere cases में somehow exceptions are there. And I spoken always in the class also. Ravi Agrahari sir is the best teacher of science and tech in India. Okay, ये चलो मान सकता हूँ, लेकिन कोई बोले Ravi Agrahari sir is the only best teacher of science and tech in India environment, तो वो गलत है, क्योंकि only is not possible. Somewhere definitely people can do better than the Ravi Agrahari sir. Okay, exceptions हर जगह होते हैं, इसलिए Ravi Agrahari sir हमेशा always best हो ही नहीं सकते. That you must make a concept in your brain and your answer will be right. It's a process of elimination. इसे elimination कहते हैं. इससे आप अगर you people learn the elimination ना with the help of original question paper, UPSC examination question paper में, तो आपको कम से कम दिख जाएगा कि 8 से 10 question you can increase with the help of elimination process. Okay, और वहां पे उन that statement में all the statement start from none 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 automatically. अगर आप उस statement फंस भी रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आपको सही मिल जाएगा. तो none वाले सारे statement it was wrong. So let us start first with the coal. I think you understood very well, guys. Solid and gaseous nature of fuel is actually UPSC questions. Liquid where UPSC generally not ask the questions. So solid and the gas always important. Okay, let us start with the solid nature of fuel, and first we'll go toward the discussion of coal. Okay, first we'll go toward the discussion of coal. So guys, so all the fuels are what? I think you understood very well. They all are the hydrocarbons because they are made up by carbon and hydrogen compounds. Okay, they all are hydrocarbons. They are made up by carbon and hydrogen compounds. Okay, everyone. Now come here. Let us start with the coal, and the coals maybe here we'll start with about the types of coals. Okay, in this case we'll start first about the types of coals. Types of coal. The first types of coals. Second one, we'll discuss about the carbon content, because all the coals are hydrocarbons, but amount of carbon content varies. Hydrocarbon, why we are telling? I'm telling you, I think you understood very well, because they're made up by carbon and hydrogen compounds. This is the reason I mentioned with you about the CNG ka formula CH4, propane ka formula C3H8, and butane ka formula C4H8. You people have seen it very well. So ध्यान रखना. The types of coal and carbon content. Later on about the burning efficiency, है ना? Burning efficiency will go there कि मतलब कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से जल रहा है. Burning efficiency, and the next one will go about the results. Result based question UPSC has 2 to 3 question in your paper from the coal, guys. If you go on the types of coal, the order of coal you people always remember. In geography you read it. The one is the anthracite. The one is the anthracite. The second one is the bituminous. Second one is the bituminous. Third one is the lignite, and the fourth one is the peat. Third one is the lignite, and the fourth one is the what? It is the peat. Okay, it's overall the types of coal that you can see here. Anthracite, in this case of carbon content, hydrocarbon, all of them, carbon content is very high, 85% plus. Peat is that coal where the carbon content is very less, 35%, less than 35%, more than 85%. And the bottom to top amount of carbon content is going to rise. Bottom to top amount of carbon content is going to rise. You people remember it. Okay, so bottom to top carbon content is going to rise. Okay, carbon content is going to rise. So I think you understood very well. Anthracite have a maximum amount of carbon content, and the peat is a minimum amount of carbon content. In the reference of coal, I'm telling you guys, where amount of carbon content is maximum, their burning efficiency is the maximum. And the carbon content is minimum, burning efficiency is a minimum. And bottom to top, what is going to happen? Burning efficiency is going to rise. Okay, burning efficiency is going to rise. So burning efficiency is increase, increase, and increase. Okay, and see one thing more, guys. If burning efficiency of coal or any fuel is more, in that case the heat generation is maximum. Heat generation is maximum. In this case, smoke formation is minimum, because maximum amount of fuel is going to burn. The smoke is very less. And in this case, about the ash content will also be very, very less. So राख वाख जो होते हैं, that is very, very less. क्योंकि maximum portion is going to burn, so of course ash content will be very less. And this is the reason this is the worst quality of coal. Sorry, this is the best quality of coal. यहाँ धुआं भी नहीं होता, बहुत कम होता है, और राख वाख भी कम बचती है. Ash content is very less. Okay, so in this case the ash content is very, very less. It's overall. And what about here in this case of a peat? I think you can understand very well, guys. In this case, the heat generation is minimum, and that is the reason smoke formation in this case is the maximum. And ash content here in this case is what? That is a more and a more. So राख भी ज़्यादा बचेगी, and this is the reason it is the worst quality of coal. Okay, so it is the worst quality of coal. So I think you understood very well in the case of coal, which is the best one and which is the worst. Okay, the best quality of coal you got it, that is anthracite, and the worst quality of coal you got it, that is what? That is a peat.
Okay, this is what? This is the peat. So peat is the worst quality of coal. Everybody remember. Now listen, another part here that is required. Listen guys. Okay, listen here. If you go in the reference of India, because UPSC asks the question in reference of Indian coal. Okay, so you should have to know about 3 times UPSC asked in last 13 years. Actually, you know why I'm telling you from 2011 to 2023? There is a new pattern of prelims examination started from 2011 onwards. Maybe somebody is listing my class first time. So for you people guys, that is very, very important. Reason is why I'm telling you, even some of the publication of books of UPSC Prelims question paper available, last 30 years question paper, last 28 years question paper, last 45 years question paper is available here. This is the reason you are also not going to select UPSC examination. Reason UPSC is not asking the question which satellite was the first one launched 19th April 1975, Aryabhatta. This kind of stupid question is not a demand of UPSC. Okay, so don't go 1979, what kind of question UPSC has. Better you start 2011 to 2023, what UPSC has done in the last 13 years. It's a new pattern when the CSAT introduced, it's a new pattern when the many other subject introduced. And the pattern of question even changed, and number of questions earlier before 2011 was 150. And from 2011 onwards, the number of questions in general studies are 100 only. So that portion was missing here. Maybe I could not discuss, so that is the reason I'm telling you. Please. Okay, and 90% of people, why they are not going to qualify UPSC? The reason is what? Okay, अच्छा ठीक है भाई, ब्यूटेन का C4H10 है ना, मुझे लग रहा था कोई दिक्कत नहीं है ना, सब गलत ठहराने के चक्कर में पड़ गए है ना, ठीक है मैं लिख देता है ना, मैं लिख देता हूँ है ना, इसमें ब्यूटेन का होता है C4H10, हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे भी है ना, C4H10 ही होता है, चलो भैया, और प्रोपेन का होता है C3H8, ठीक है, चलो, okay, fine. Now come here in this case. We were talking about the Indian coal. C4H10 ही है, ठीक है ना. अच्छा, Indian coal में बता रहे, हो गया है ना. अब you come there guys in the case of Indian coal. If you go in this case of Indian coal, so what kind of Indian coals are available? The maximum Indian coal is a bituminous and second one is a lignite. In the reference of India, the maximum is a bituminous and number 2 is the lignites. Okay, so amount of which kind of coals are highly available in India? The number 1 bituminous and number 2 lignites. In this conclusion, if you go guys, so which kind of which kind of coal is available in India? So I can tell you as a nature wise, India have an average and below average quality of coal. So India have an average and below average quality of coal. So India has an average and below average quality of coal. Okay, so India has an average and below average quality of coal, and that is the reason if I ask you what about the problem with the Indian coal, so that you can understand very well. ये सारी चीजें इंडिया के रेफरेंस में भी आपको मिलेंगी. Our coal is not producing the good amount of heat content, that is not good for the power generation. Smoke formation is maximum and the ash content is more here in this case. Okay, ash content is more here in this case, so kindly remember it. Okay, so kindly remember it, and I think you people understood very well. मुझे जो बोलना था मैंने आपको समझा दिया. Indian coal के साथ एक benefit है, like we have a less amount of sulfur content. We have a less amount of sulfur content. Why I am telling you this? Because UPSC has one of the question in 2011 prelims examinations. Okay, from thermal power plant, मतलब burning of coal से, which kind of polluting gases emit in the atmosphere? CO2, SO2 and NOxes. It was a UPSC question paper. Okay, from the thermal power plant, it was a part of environment. From thermal power plant, which type of polluting gases emit in the atmosphere? CO2, SO2, NOx, सारे सही थे. Okay, और इसमें बता दूं, अगर CO2, SO2 and NOx, you will check it. So which one is highly dangerous gas for all of you? The answer is sulfur dioxide. Sulfur dioxide is not dangerous for the animal या human. Even it is also dangerous for the plants. हर किसी के लिए खतरनाक है. CO2, NOxes and SO2 all are dangerous, but among all them which is more dangerous and highly sensitive, highly dangerous, the answer is the sulfur dioxides. But the sulfur dioxide आपको cardiac stroke करता है. Sulfur dioxide they creating the blood poisoning also inside your body. Okay, cardiac stroke, respiratory problem, circulatory problem, these all issues are there because of sulfur dioxide in the human beings. And sulfur dioxide also creating the problem to the plants. उनके जो chlorophylls होते हैं ना, the plants have a chlorophyll content, they are going to die. And the chlorophyll content is going to die, that case is called as a chlorosis. Okay, that case is called as a chlorosis. Chlorosis means death of chlorophyll, and that is the reason due to death of chlorophyll, the color of leaf is going to shift from the green to yellow. And you must be remember guys, if any of the leaf color is going to shift from green to yellow, in that means the plant is going to die, plant stop to do the
photosynthesis. So these all the problems are there because of sulfur dioxide. So worldwide every coals are generating the sulfur dioxide, but luckily Indian coal is that where amount of sulfur content is very low, and that is the reason our coal produces the less amount of sulfur content. This is only one of the benefit in the case of Indian coal. Fine. It's overall you paper, remember. Even earlier after independence, okay, just remember here in this case, after independence, all the coal blocks, before independence, all the coal blocks, those are available in India, it was a British's coal block. But when they left India, guys, they have given the coal blocks to their own followers, है ना, जो उनके चमचे थे, उनको देकर चले गए. Okay, and they were doing the exploration of the coal from the coal mines. मतलब in the beginning, after independence, all the coal blocks where government has not the regulations and control. During Indira Gandhi period of time, first of all, the first time coal came under the Nationalization Act, under the hand of government during Indira Gandhi period of time. And those coal blocks, like government is, now every coal blocks, those are available in India, have a government control. Okay, it's a government asset, it's a natural reserves. Okay, and government is giving this kind of coal blocks to the companies on the basis of open auctions. है ना, किसी particular coal blocks so government is giving on the basis of open auction कि this is the coal block is yours, or you people can utilize this coal blocks for the coal explorations, and then you can sell this coal, and what about the percentage are there you give to the government. And government can also provide this kind of coal blocks on the basis of some partialities also, and that is right also. Suppose Adani's have some steel plants, and steel productions के लिए company have a massive coal. So there is a possibility like even the Congress government or BJP government, they have done some partiality with certain companies, because this steel production not happen to how railway develop, how car and manufacturing industry will work. So that is the reason, guys, in somehow government is taking the favor of some of the companies because it is required for the development of nations. So I think you understood very well about it. Okay, so the coal that India's government is going to give to the private companies, it is on the basis of open auctions, not on the basis of lotteries. And open auction is there, and that is the reason it is not on the basis of lotteries. So which type of coal found more in India? तो बोला ना, पहला bituminous, दूसरा lignites. It means we have a average and below average quality of coal. This is overall about the coal. One more statement I'll tell you guys. Whenever you are going to use the coal, है ना, और उसको ले जाके आप burn करते हो power production के लिए, तो you should know it very well, guys. वो coal जो आप करते हो power production के लिए, you people are doing it coal washing also, coal washing also. And because of coal washing, है ना, because of coal washing, okay, अगर coal have a presence of heavy metals, okay, like arsenic, like a lead, like mercury, like cadmium, so they all are coming into the water bodies. They are coming into the water bodies and become as a cause of water pollutants, है ना, become as a part of water pollutions. This is the question of UPSC 2020 prelims paper. Okay, but you can connect it with the environment also. जब भी आप कोल को यूज करने जाते हो तो कोल की impurities होती है ना, तो क्लीन करना होता है पानी वानी से. You should have to use. देखा समुद्र के पास ही कोल वगैरह होता है washing. It's not like that. In that cases, those heavy metals are available in the coal. It is going to come into the water and it creates a contamination वगैरह, and that is the source of what? This is what they have a coal have a what? Richest heavy metals are there. So that is here you people should remember it. देखो एंथ्रासाइट बिटुमिनस सब में होता है, ठीक है, लेकिन इंडिया वाला जो बिटुमिनस और वो है ना, उसमें थोड़ा कम होता है. दुनिया के और कंट्री में जो बिटुमिनस है उनमें सल्फर है ना. दैट सॉरी आई विल नॉट टेल यू बिकॉज द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट. सॉरी मैं अपनी बातें बंद करता हूँ, वो नहीं बोलूंगा बिकॉज बच्चे ने नाम नहीं लिखा है, तो पता नहीं मैं किसका आंसर दे रहा हूँ, उसको भी नहीं पता, बाकियों को भी नहीं पता, है ना, इसलिए छोड़ो. सो अफरोज, योर आंसर आई हैव गिवन यू. विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड मोर इन इंडिया, तो मैंने बोल दिया था वो आपको बिटुमिनस और उसके बाद लिग्नाइट्स. इवन इंडिया में तो एक सेपरेट कंपनी भी सेटअप है, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, फाइन. याद रखना, मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो करना हो कर लो. अगर आपने नाम लिख के नहीं दिया, मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाता कि अंधेरे में आप पढ़ रहे हो, अंधेरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नाम के साथ बताऊंगा. नाम नहीं लिखोगे नहीं, हर बच्चे ने नाम लिखा है, आपको बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है जिनके लिए मैं ऐसा करूंगा, ठीक है. स्पेशल बनने के लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा. ओके, नाइदर बीइंग एज ए नॉर्मल पर्सन, फिर वो 4 किलो राइस और 5 किलो वाले रह जाएंगे अब जिंदगी भर सरकार के मुताज. आपको कभी यू पीपल आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, क्योंकि आपको 4 किलो का राशन नहीं लेना किसी सरकार से, जो 75 साल में द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू. ओके, आप अपना राइस खुद खरीदते हैं, ठीक है, गरीबों के लिए होता है वो. एंड व्हाई यू आर गोइंग टू क्रैक UPSC, ठीक है, याद रखिए. तो अपना नाम तभी होगा जब आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है. अभी अपना नाम बताइए.
तब मैं आपका नाम याद रखूंगा, हाँ वो बच्चा था, दैट आई मेड इट यूपीएससी, बड़ा डेडिकेटेड था, निकल गया, ठीक है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, लिखते रहो, मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ओके। अगर योर नेम विल नॉट कम, इस बच्चे ने नाम लिखा, मैंने बता दिया। करण का एक क्वेश्चन है कोल बेनिफिशियन वाला, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। पर अफरोज आलम का इट वाज अ क्वेश्चन लाइक कोल फाउंड मोर इन इंडिया, तो दैट आई ऑलरेडी टॉट यू हियर, ओके। So what about the necessary informations regarding the coal? I already explained you. And coal is what? It is a, you know very well, it's still 60% of power production in India because of coal. Thoda sa little bit I'll discuss it in the case of renewable energy, like what India is doing and what India's contribution will be in the coming future by 2030. I'll discuss with you, and we people are trying to reduce the amount of coal. Okay, so coal we are not going to totally phase out, but coal we are going to do phase down. And that is a statement in 2020-22 Glasgow Convention, जो UNFCCC की एक मीटिंग होती है, वहाँ पे our honorable prime minister already spoken there, guys, कि India is not going to phase out, India is going to phase down. I mean, step by step we will reduce the carbon coal burning of coal for power production, and will go toward the alternatives. Those are safe for the environment and human health. Okay, fine. So mineral is under the state object. Does the state government have the right to give coal mines or auctions? सी स्टेट गवर्नमेंट ही देती है कोल माइंस वगैरह का ऑप्शंस, जो नमन है, इट्स राइट। और इसके लिए आपको बताऊं तो इंडिया में वैसे भी कोल मिनिस्ट्री है। whatever the state is doing, everything is under the observation of state central government, and the state government can be biased for any of the companies. तो सिस्टम शुड बी मोर फेयर, तो कोल मिनिस्ट्री जो है वो सारा काम करती है। ओके, इंडिया में द मेन लीडिंग मिनिस्ट्रीज जो पूरा पावर रेगुलेशन इज डूइंग हियर गाइस। Okay, यहाँ पर जो power regulation is doing here, actually India have a power ministry as a main ministry. Okay, supreme ministry in India is a power ministry, and within the power ministry have a 3 subsection. एक तो power ministry itself, एक है that is a coal ministry, and third is a MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. ये पूरा सिस्टम है जो चलता है। तो कोल मिनिस्ट्री ही देखता है पूरी इंडिया का कोल के केस में क्या चल रहा है, ठीक है, फाइन। So who collect the royalty, state or center from? ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये आप इकोनॉमी वाले से पूछना, ठीक है। Who collect it and all? Okay. मैं मिनिस्ट्री का सिस्टम बता सकता हूँ, मैं रॉयल्टी नहीं बता सकता, वो इकोनॉमी में जाके देख लेना, ये इकोनॉमी से पूछना या फिर गूगल करके देख कर लेना। ओके, नमन, तो आई टोल्ड यू, फाइन। ओके, कोल इज डन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 2-3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर, मैं आपको पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। Liquid nature of fill में you should know about the some terms that is important. Liquid nature of fill like कुछ terms है like knocking, anti-knocking, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। According to demand of UPSC ये चीजें कभी आई नहीं है, but they are important. Knocking, anti-knocking agent, these all are important. Anti-knocking agent like ये octane number, cetane number, okay, octane number and cetane number you should remember. Next one like ULSD, ultra low sulfur diesel, that is ultra low sulfur diesel. Okay, ultra low sulfur diesel, ultra low sulfur diesel, this is also called as a CT diesel. And one more you should know about the gas oil, and one more you should know that is called as a gas oil. ये सब आज स्टैटिक पढ़ रहे हो, सब स्टैटिक पढ़ रहे हो। ओके, अब बताओ, अगर लेस अमाउंट ऑफ, कोमल इज आस्किंग सर एज यू टोल्ड देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेंट, सो कैन बी कंसीडर दैट कोल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों 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 क्यों? सिर्फ एक ही पैरामीटर्स के बेस पे हाउ यू कैन टेल दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। मैंने बोला सल्फर कम है, मैंने नहीं बोला कि बाकी सारे पॉल्यूटेंट कम है, ठीक है ना। सिर्फ सल्फर के केस में मैंने बोला एक फायदा है, CO2 नॉक्सेस और बाकी चीजें तो निकल ही रही है, हैवी मेटल इज स्टिल देयर, तो कैसे यू कैन टेल, कोमल? ओके, फाइन, मतलब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, फाइन, थोड़ा मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा तुम लगाओ। अब नाउ कम नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ULSD and gas oil. See guys, whenever any fuel burn, try to understand, whenever any fuel burn, petrol, diesel, CNG, whatever, any fuel burn, in that case is what happen guys, this fuel generate heats, and your vehicle is what, your vehicle has a heat engine. Any of the vehicle, bike, scooter, car, motor, whatever you are going to use, it has a heat engine. Okay, it has a heat engine, and what is the source of heat? So of course petrol and diesel. In this entire process, when the burning of fuel happen, the heat generation happen, in this entire case guys, some sound is also going to generate, and this sound is actually called as a knocking. Actually there is some relation between the sound and heat generations. Okay, so I can tell you guys, when a fuel burn inside a vehicle, it generates heat and also some sound.
Again I repeat, when a fuel burn inside a vehicle, it generates heat and also some sound, and this sound is called knocking. Knock knock awaj. You know, actually if knocking is more, try to understand, if knocking is more, in this case, what about the heat generation of fuel? Reduces. और heat generation of fuel reduces, so what about the smoke formation? Of course धुआं ज़्यादा निकलेगा, it means fuel is not burning effectively, and in that case the fuel nature will not good. Okay, it's a ratio, it's a relation, not ratio, it's a relation. You remember, if knocking is more when a fuel is going to burn, in that cases the heat is less, or heat is what मतलब fuel is not burning effectively, और अगर fuel heat is not burning effectively, fuel is not burning effectively, तो धुआं ज़्यादा निकलता है. Okay, so knocking is a kind of sound those generate during the burning of fuel. Okay, and knocking and heat have some relations. Knocking is less, heat generation more. So what you should do here, guys, you should have to do mixing of some anti-knocking agent. If you will do some mixing of anti-knocking agent, so ultimately what happens, guys, I just want to tell you, okay, agar some chemical mixing you do into the petroleum products and all, so ultimately they will reduce the knocking, and when they reduce the knocking, ultimately the heat generation is more and the smoke formation is less, and the nature of fuel definitely increased. So anti-knocking agent, they reduce the knocking, okay, and you should remember it. Anti-knocking agent, they reduce the knocking, and that's why the sound production is going to decrease, and ultimately heat generation is going to increase. And what about the environmental pollution? Decrease. So problem resolved. And what about the name of anti-knocking agent? The name of anti-knocking agent is like methanol, comma ethanol, comma tetraethyl lead, comma tetraethyl lead, that is called as a TEL, TEL. One that I am telling you as a benzene toluene xylene. One is a benzene toluene xylene, that is that you can call as a BTX. So these are the different of the, you know what, anti-knocking agent that mixing people are doing in the petrol. So these are the anti-knocking agent mixing we are doing with the petrol, and that's why the petrol quality is going to increase. Okay, few years back UPSC has one of the questions like lead mixing is actually in the case of petrol, so that is right, but the amount of the tetraethyl lead mixing we have stopped. The reason, lead whenever they will come in the atmosphere after burning of fuel as a smoke, so it will come in the human body, generally for the kids and everybody's, okay, they are very dangerous for the nervous system. Amit, you are absolutely right. Heat generation of fuel is inversely proportional to knocking. वही तो दिख रहा है बच्चा, knocking ज़्यादा है, heat generation कम है. और इसी को अगर you want to increase the heat, so you should have to reduce the knocking, and to reduce the knocking you should have to mix up some anti-knocking agent. These are certain name of anti-knocking agent mixing that we people are doing in the petrol, और फिर पेट्रोल की क्वालिटी बेटर हो जाती है. लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया था कि लेड को हम पेट्रोल में मिलाते हैं. दैट वाज अ राइट स्टेटमेंट. मिक्सिंग ऑफ लेड वी आर डूइंग इन द पेट्रोल, इट्स राइट, बट we have to stop it. The reason lead is very dangerous for the nervous system. Even WHO also recommended like lead is not good. And that when of the UPSC asked the question 19 के आसपास पूछा, उन्होंने lead के examples बोले. What is the source of lead? Pollution. उन्होंने बोला एक petroleum products. It was right. Second लिखा lipstick जो lips पे लगाते हैं. That was right. And in the case of paint, it was right. Okay, so that is the question of environment wala that UPSC asked here, and I have discussed with you. Again I repeat guys, energy chapter whenever I discuss, I always spoken in the class, energy means environment. Even environment the maximum reason, that is agar anthropogenic causes that is maximum going to destroy the environment, that is what, that is a energy chapter. Okay, even दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम जो हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है. और ये क्या है, इट्स अ थर्मल पावर प्लांट मींस पावर प्रोडक्शन. तो पावर सेक्टर आज भी इंडिया में छोड़ो पूरी दुनिया में, दैट्स मैक्सिमम सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड. And power who is going to generate? Human beings, and human being based power based pollution is called anthropogenic pollutions. And that is the reason every time pollution is already coming whenever I discuss with you energy chapter. So I think anti-knocking agent, everybody clear? Very well. What about the octane number and cetane number? Actually, those petrol and diesel you people are using in your vehicle as a source of fuel. You should remember guys, octane number is the quality of petrol products, and cetane number we are measuring the quality of diesel. So petrol quality we measure in the case octane number, and diesel quality we measure in the cetane number. So you remember this. Even on the basis of octane number, the petrol price is going to change also. Normal petrol, those we are putting in our vehicle, this octane number is 86, 87 around. That prices are at 100 rupees liter in Delhi.
Okay, and cetane number, definitely it's a quality to check about the diesel. Okay, and if octane number you will increase guys like 98, 99 and all, the price of the petrol is definitely going to increase also. So that octane number is a petrol quality and cetane number is a diesel quality. Octane number, as you are going to increase, the price and the quality of petrol is going to rise. But normal vehicles may we are using 86, 87 octane number. Yeah, maybe somewhere you are getting 83, 84 octane number petrols. Okay, everyone. Fine. So it's overall about octane number and cetane number. Now come about the ULSD. These all the topics are according to prelims examination. Remember it, guys. ULSD is what? Ultra low sulfur diesel. Actually, diesel is more dangerous than petrol. One more statement about the diesel, I'll tell you how it is more dangerous, because diesel have amount of sulfur content. And when the diesel burn, sulfur dioxide emit in the atmosphere. If the petrol have a carbon burn, CO2 come. If petrol have a sulfur generally petrol में is less in amount, कहीं करीब नहीं के बराबर होता है, but diesel में sulfur बहुत ज़्यादा होता है, and that is the reason when the diesel burning happen, amount of sulfur dioxide is more in your surroundings, and sulfur dioxide I told you is more toxic in comparison to CO2 and NOxes. That is the reason, guys, those diesel may be even sulfur is there, we should have to reduce the amount of sulfur content. Neither diesel is dangerous for the living organisms, either it's a plant, animal, or other plants, animal, or human beings. So this is the reason within the cities, those diesel we are going to use, the amount of sulfur content should be very low, and then it will be not toxic to the human beings. Because within the cities have a building and monuments. Okay, it's not a open highway type of areas कि अगर कोई pollution आ रहा है तो हवा में मिल जाएगा आसानी से. यहाँ पर within the cities when the pollution happen, the sulfur is going to suspend for more duration of time. और यहाँ पे population भी अच्छा खासा है. बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स है, हवा में जल्दी इजीली मिलता भी नहीं है और सस्पेंड करता है, तो इट विल कम इनटू द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट बिकम वेरी डेंजरस फॉर यू नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. नॉट यू, आई टोल्ड यू गाइस, फॉर अदर एनिमल एंड प्लांट्स एवरीवेयर इट इज व्हाट, इट इज problematic. So I think you understood about why ultra low sulfur diesel is required and why it is called as a city diesel. You can understand very well. What about the gasohol? You just come here, guys. In the case of gasohol, actually it's a topic of discussion in the case of biofuel policy. So here I do not like to discuss more in the case of gasohol. Okay, just listen a few lines about the gasohol here. Okay, see guys, gasohol, gasohol you can tell like gasoline is also called as a petrol. In India में we are calling petrol, but Europe में या US वगैरह में gasoline तब बोलते हैं. और इसमें जब आप ethanol मिला लेते हैं, mixing with ethanol, and they finally become as a what, gasohol. So gasoline, yeah, petrol and plus ethanol is what, that is a gasohol. And here I'll tell you guys, 90% petrol or gasoline and 10% ethanol mixing in India has been started from 2022 onwards. आज भारत में यही mixing है जो use किया गया 90% और 10%. Okay, 2022 onwards have a 10% ethanol mixing has been started with the petrol. And see, देखो यहाँ नाम में last में ethanol है, is a alcohol, और अगर किसी की chemistry subject पढ़ा होगा तो they know very well. Which suffix is used with the alcohol? तो answer is what? All. And that is the reason यहाँ पे last में gasohol लिखा गया. Okay, and what is the source of ethanol? The source of ethanol is the biomass, plants. And which plants even we use for the formation of ethanol? The answer is what? Answer is sugarcane. Answer is sugarcane. Answer is what? Not only sugarcane. The another answer here in this case you can see like maize crop. But again I repeat guys, this discussion I will do in the case of biofuel, and biofuel is still very very important. You should remember it. Okay, biofuel अकेला अगर देखो ना, around 6-7 question UPSC has in your paper from biofuel. Last year देखो ना 2023 में UPSC has the question, what is the use of microorganism in biofuel generation? देख रहे हो, और ये आप लोग current affairs पढ़ रहे हो. अगर you people have listened to my class about the biofuel generation, first generation, second generation, third generation, fourth generation, then different generation you will see somewhere I discuss about some fungi is used, glycolidium, rhizome, somewhere yeast is used, somewhere you will get the answer, biogas system, you will find out the answer like microorganism in the case of biofuel productions. Never asked UPSC, never asked this, है ना, इस तरह की चीजें. देखो आपके static question आपके mains में आए हैं 2023 में, और somebody is giving the interview also. Okay, agar you have a subject knowledge, so you can easily guess your prelims question paper and you can easily understand the mains question paper.
So that you remember. And what is the benefit of it? The one benefit of ethanol you already know very well guys कि ethanol है क्या? Ethanol is a kind of anti-knocking agent also. तो अगर ethanol is a kind of anti-knocking agent also तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की क्वालिटी भी बढ़ाता है. And another part अगर 10% of mixing of ethanol we are doing that is the plant derived तो कहीं ना कहीं 10% of natural जो पेट्रोल है उसको आप बचा भी रहे हो. You people are doing the conservation of fossil fuels. Okay, you people are doing the conservation of fossil fuels. Okay, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना. Okay, everyone. Next, you come into one more discussion. I would like to tell you about the asphalts. Okay, एक दो लाइन में थोड़ा asphalt याद रखना. That is important for examinations. Actually, when you are going to purchase the है ना crude oil है ना crude oil. गंदा वाले तेल को हम लोग कहते हैं crude oil. When you purchase the crude oil from the other country, where have a UPSC question 3 times, 4 times? I'm informing you guys at the time. Crude oil मतलब गंदा वाला तेल when you are going to take it. So sir, please, why don't we have to good quality coal is the reason why India is one of the most polluted country. Vehicular emissions निकिता बच्चा ऐसा नहीं है. मैं आपको बताऊं इंडिया में पोल्यूशन होने के पीछे नॉट ओनली द वन रीजन इज देयर आर सो मेनी रीजंस आर देयर. हमारे फ्यूल के इंजन्स अच्छे नहीं है जिनमें हम गाड़ियों में जलाते हैं. कोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है. हमारे के नॉर्म्स उतने अच्छे नहीं है. बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं. नॉट ओनली द सिंगल रीजन. यहाँ पे भी आई विल टेल यू देयर आर सो मेनी रीजन, इंटीग्रेटेड रीजंस. ओके, नॉट ओनली वन बेसिस में यू विल टेल कि ठीक है हमारे पास क्वालिटी कोल नहीं है. ऐसा भी नहीं है. हम लोग क्या करते हैं तो इंडिया इज अमंग टॉप 5 कोल इंपोर्टर नेशन इन द वर्ल्ड है ना. 5 कंट्रीज में जो कोल को बाहर से मंगाते हैं ना, जो रैंकिंग होती है उसमें हमारी भी टॉप 5 में कोई ना कोई कभी थर्ड होते हैं, कभी फोर्थ होते हैं, कभी फिफ्थ होते हैं. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, बाहर के कोल्स भी तो आगे हम यहाँ जलाते हैं. ठीक है, और बाहर के कोल्स भी अगर वी आर गोइंग टू परचेज देम एंड वी आर बर्निंग हियर तो स्टिल दे आर क्रिएटिंग द पोल्यूशन. भले वो एंथ्रासाइट ही क्यों ना, वो भी तो पोल्यूशन करता है. हाँ, थोड़ा कम होता है उसमें ऐसे कह लो, पर पोल्यूशन स्टिल दे आर डूइंग. और मैंने अभी बोला 60% पूरी दुनिया का जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कोल से ही हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स. Okay, so I think Nikita you understood very well. Not only the one reason is there are so many reasons. इंडिया में अगर पोल्यूशन हो रहा है तो ठीक है. और वैसे भी इंडिया में पोल्यूशन होने के पीछे बहुत सारे रीजन है. अगर you have read the environment you know very well. Poverty alleviations, okay, women empowerment, बहुत सारे reasons होते हैं. आप देखो ना sustainable development goal में all the informations are mentioned there. अगर आप गरीब हो गए तो आप कैसे चूल्हा जला पाओगे? चूल्हा इज 150 रुपीज, सॉरी 1150 रुपीज. 1000 से प्लस चूल्हा कौन खरीद सकता है एलपीजी? तो इसीलिए बोलते हैं ना पॉवर्टी एलिवेशन बहुत जरूरी है. अगर आप गरीब नहीं होंगे तो आप 1150 का चूल्हा खरीद सकते है कि नहीं? दैट इज अ सिंपल ना. तो पॉवर्टी एलिवेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. यू शुड हैव टू रीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. मैं आपका इन्वायरमेंट नहीं ले रहा, कोई टीचर आया होगा आपका इन्वायरमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़ाया होगा ना 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें पॉवर्टी एलिवेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. Okay, so I think you understood very well. It's not a one reason. There are so many reasons behind India. Okay, आप बोलोगे सर फिर एलपीजी यूज करो. कहाँ से यूज करोगे भाई? प्राइस भी तो ज्यादा है. और सब्सिडी कितना देते हो? 1400 रुपए 1200 रुपए जितने सरकार देती है ना पूरे साल भर में, ये थोड़ी ना हर सिलेंडर में मिलेगा आपको. और अगर सरकार हर सिलेंडर पे देने लगे तो आदमी क्या करे? गरीब वाला उसको मार्केट में बेच बेच के पैसा कमाने लगे. तो हर चीज एक बैलेंस में चाहिए ना. Okay, so that is the statement. I think Nikita you understood बच्चा है ना. Now come crude oil. हाँ, crude oil में just एक दो लाइन बतानी थोड़ी सी. When we purchase the crude oil from the other country ना, तो crude oil we never use directly as a source of energy. We are sending them to for its refining process. सुना होगा refineries. और एक process होता है, maybe I think you people know very well, जिसको हम कहते हैं fractional distillation. Okay, fractional distillations. And after this fractional distillation process के बाद ही यहाँ से you are getting the petrol, then you are getting the diesel. ये refine करने के बाद आता है. लेकिन यहीं पर एक चीज और आती है. हाँ, तो मेन रीजन तो चलेगा, मेन रीजन में चलेगा है ना, चलेगा. बट यहाँ पे इन दिस केस ऑफ क्रूड ऑयल्स में है ना, द पेट्रोल एंड डीजल के अलावा यू शुड नो इट वेरी वेल. लाइक यहाँ पे एक चीज और बनती है, सो हम कहते हैं एसफाल्ट्स. एसफाल्ट स्टिल इज यूज इन द केस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. क्या मैं बता दूं, इसको रोड कंस्ट्रक्शन में आज भी यूज किया जाता है. और ये एसफाल्ट स्टिल क्रिएट अ मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशंस. और इसी एसफाल्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये एसफाल्ट का सोर्स क्या होता है याद रखना, क्रूड ऑयल, यही मुझे बताना था. ओके, इसमें हम लोग स्टील स्लैग वगैरह मिला देते हैं. स्टील स्लैग वगैरह सुना होगा. आयरन स्टील प्लांट्स में वेयर हैव अ आयरन स्टील प्रोडक्शन हम कर रहे होते हैं, उसके जो ओर वगैरह से वी आर सेपरेटिंग द आयरन स्टील. तो वहां पर स्टील स्लैग वगैरह को इफ यू डू द मिक्सिंग विद द एसफाल्ट तो वो एसफाल्ट काफी रिजल्ट हो जाता है, काफी बेटर हो जाता है. तो दैट इज द केस हियर इन दिस केस, यू रिमेंबर. Okay, so kindly remember asphalt is still required for your examinations, so please remember it. Okay, it's asphalt.
So done about the crude oil and all. The asphalt, you remember, it is used in the case of road construction. And what is the source of asphalt? To petroleum products से वहाँ से मिल कर आता है. Okay, now come next about the gaseous nature of fill. Come here, guys. Gaseous nature of fill. In the case of gaseous nature of fuel, I'll directly come into the natural gases, those we are using as a fuel. So here I enter into the natural gas directly, those we are using as a source of energy, natural gases. So gaseous nature of fuel, your heading will be what is a natural gas. Solid में what about the necessity was there? I discussed with you. Liquid में थोड़ा सा कुछ terms बताने थे. I already explained you here. And now you come into the discussion of gaseous nature of fuel, and the one is the natural gas first. See guys, what about the natural gases here? Those we are using. The one is the CNG. The one is the CNG. Second one is the PNG, and third one is the LNG. CNG, PNG, LNG. CNG is what? Compressed natural gas. CNG is what? That is a compressed natural gas. PNG is what? That is a piped natural gas. And LNG is what? Liquefied natural gas. And LNG is what? Liquefied natural gas. And these natural gas are the part of discussion here right now. Okay, CNG, PNG and LNG. So compressed natural gas, piped natural gas and liquefied natural gas. Let me discuss first about PNG and LNG that you should know. PNG is what? It's a piped natural gas. Actually, those gases distribution we are doing with the help of pipeline. Okay, even I'm staying in Noida. It's a Delhi NCR area, and in my apartment, guys, have a PNG supply. Okay, cooking gas connection is through the help of pipeline is coming at my home, and have a 1 meter. On the basis of the uses of the gases, I'm giving a payment. Okay, I'm giving a payment. So it is overall what? It is overall about the PNG, pipeline distributed natural gas connections. Okay, and government is working for the PNG supply everywhere in Delhi, even everywhere areas where I'm taking your classes, the live classes right now at the old Rajendra Nagar. Here everywhere have a PNG, PNG and PNG. And government brought some of the big level of a scheme to the PNG supply that is important for examination. This is called as a Urja Ganga, the PM Urja Ganga. Okay, PM Urja Ganga scheme. PM Urja Ganga scheme. And this scheme is important for all of you. Kindly remember it. Those PM Urja Ganga scheme brought in India, actually the purpose was what? To boost up the PNG supply. Okay, it was a news in 2016 around. It was a news in 2016 around. Just about the PM Urja Ganga scheme. Under this scheme was inaugurated at Varanasi. That is a Modi ji, our Honorable Prime Minister constituency. Okay, Varanasi. Okay, Varanasi. Okay, so Varanasi in the Uttar Pradesh, that Modi ji brought this inauguration is here, guys. And from this, the PNG supply will start and will move toward the north wala area, northeast wala area, east side wala area like Jagdishpur. Like some of the location name is also mentioned there. Jagdishpur, Dhamma. Maybe somebody is listening the class from that areas. Haldia, Bokaro. Okay, these kind of areas are going to cover there, and then it's going to move toward the northeast state, 7 sisters. In that way, the whole entire PNG distribution will reach. And see, guys, definitely when the PNG supply will be there, so ultimately the gases will become cheap, and the no fraud, no black marketing, okay, will be there, and that is the benefit here in this case. Okay, agar cylinder based gas distribution you are doing, the transportation cost is high. Okay, some people are doing the black marketing also, shortage of the cylinder and something there, guys. या नीचे की तरफ 2 किलो पानी मिला दिया 2 लीटर 2 किलो के आसपास और ऊपर से गैस है और 2 उसने यूज कर लिया, and still the weight of the cylinder is same. Okay, so this kind of black marketing and fraud that people are doing, it will definitely decrease. This is a benefit here, and this all the responsibility to make the this scheme successful. Okay, many bodies are working together. The one is GAIL, Gas Authority of India Limited, Indian Oil Corporation Limited, like ONGC, I think you know very well in India, and one is a Nimuligarh Refinery Limited. ये थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा, Nimuligarh. It is what? It is a Nimuligarh Refineries Limited. Okay, it is a Nimuligarh Refineries Limited. That you remember. It's a Nimuligarh Refineries Limited. Okay, these are the various bodies, those are working in India especially to make this project successful. So Gas Authority of India Limited, Indian Oil Corporation Limited, ONGC you know very well, and Nimuligarh Refinery Limited. ये चारों agencies हैं, bodies हैं
those are working especially to make the PM Urja Ganga scheme successful. Okay, so PM Urja Ganga scheme successful. Come toward the next discussion, that is a LNG. LNG means liquefied natural gas. Come here, guys. Actually, whenever we are going to carry a gaseous nature of fuel from Iran or from Russia to India, so we are converting the gas first into the liquid form. Okay, so gaseous nature of fuel when we carry from one place to another place, है ना? So gaseous nature of fuel या natural gases, those we carry from Iran या Russia to India, so they are coming through the help of cargo ship. वो पानी वाला जहाज जो होता है जो सामान लेकर आता है, they carry with the help of, we carry them from the cargo ship. और cargo ship में actually the gaseous nature of fuel, first of all we are converting into the liquid form, that is called liquefied natural gas. The natural gas firstly is going to compressed, okay, and become dense, and when the compress and dense, the gaseous nature will convert into liquid form, and then we are calling them as a liquefied natural gas. और इसी liquefied natural gas को हम लोग लेकर आते हैं कहाँ 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 through the help of cargo ship. And now the question is, why we carrying the gaseous nature of fuel into the liquid form? There are some reasons, and the reason is very simple, guys. क्यों ये जरूरी है? क्योंकि gaseous nature of fuel have a lot of problems. Gaseous nature of fuel की density थोड़ी कम होती है, और स्कूल टाइम में you read it, guys. Whenever you read the state of matter, solid is more dense, liquid थोड़ा उससे कम और gas सबसे कम. तो gaseous nature of fuel when you carry from the one place to another place, maximum chance of frictions are there, and that is the reason they can catch a fire. This is the reason they can catch a fire. तो gaseous nature के साथ one of the problem is there, the maximum chance of friction is there, तो उनमें आग लग सकती है. ओके और दूसरा ये है उनमें कॉलिजन ज्यादा होते हैं एंड दे बर्न टू द नॉर्मल रूम टेम्परेचर आल्सो. थोड़ी सी भी आग अगर मिल जाए तो दे कैन बर्न इट. द डेंजरस कंडीशंस है. तो गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल को जब आप शिप से लाते हो पानी में, तो पानी इज अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो वहां तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं ऑफ कोर्स. तो द सेफली इट विल नॉट कम. तो फर्स्टली वी कन्वर्ट द गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल इनटू द एलएनजी फॉर्म, एंड देन सेफली एलएनजी कैरी थ्रू द हेल्प ऑफ कार्गो शिप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एंड देन वी आर गोइंग टू अपलोड इन इंडिया एट द एलएनजी टर्मिनल्स. आप एलएनजी टर्मिनल्स में उतारते हो, अपलोड करते हो, और फिर उसको प्रोसेस करके यू कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म, और फिर वो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो थ्रू आउट द इंडिया. Okay, and then the gas distribution happened throughout the India. I think entire process you people understood very well. It's a case in the case of LNG. And see one thing more here in this case, I'll advise to everyone. You remember, India में LNG terminals भी हैं, and of course you can guess very well. These all the LNG terminals will be toward the coastal areas. Okay, coastal areas like Dabhol, Hazira. पता है किसी जमाने में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते थे, हजीरा, पेट्रोनेट है ना, पेट्रोनेट. 2006-7 के आसपास जब मैं क्लास लेता था, है ना, उस समय ये क्वेश्चन पूछे जाते थे. दे आर द नेम ऑफ एलएनजी टर्मिनल्स ऑफ इंडिया. पता नहीं आप शायद 5-6 साल के रहे होगे उस जमाने में, है ना. So 2006-7 में यूपीएससी आज द क्वेश्चन, मतलब आज से लगभग 18 साल हो गए होंगे, है ना, 14 साल 15 साल पहले यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन योर पेपर 2006-7 में, भारत में एलएनजी टर्मिनल्स कहाँ हैं. पर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एंड यूपीएससी इज नॉट आस्किंग द फैक्चुअल डेटा. वो कभी दाभोल, हजीरा, पेट्रोनेट के नाम नहीं पूछने जाएगा. तो यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट्स. Okay, actually for your examination, थोड़ा PNG में वो ध्यान रखना. That is a PM Urja Ganga scheme is the one of the important question those UPSC can ask in your paper. So now let us start with the CNG. Okay, now come into discussion of CNG. And CNG have a question and only have a question on CNG, CNG and CNG. So this is the gas that discussion I will do here in this case. Let us start. But I just want to tell you in the case of CNG, what about the gas, main gas those burn here? So everyone know that is the methane. So your next subheading will be what? Methane sources. CNG may will go toward the discussion of methane sources. So what about the gas in the case of CNG जो हम generally use करते हैं वो होता है methane. So what about the methane sources as a fuel I am discussing, guys? Methane sources as a fuel. Neither there are so many methane सोर्सेज आर अवेलेबल, है ना, पर उन मीथेन सोर्सेज को हम कभी एज अ फ्यूल की तरह जो यूज नहीं कर रहे हैं. आप सबको पता है जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, रूमिनेट कैरेक्टर्स, वो भी निकालते हैं. कभी किसी ने देखा उसके मुंह से कोई पाइप लेकर गाड़ी में भर रहे हो? नहीं. वेटलैंड एरियाज दे आर आल्सो क्रिएटिंग द मीथेन. राइस फील्ड यू नो वेरी वेल, वो भी वेटलैंड एरियाज होता है, वहां पे भी होता है. बट दोज मीथेन एज अ फ्यूल वी आर यूजिंग, ओनली आई एम डिस्कसिंग देम. ओके, ओनली आई एम डिस्कसिंग देम, नॉट ऑल. ओके, ओनली आई एम डिस्कसिंग देम. फाइन.
So it's a methane sources as a fuel. Okay, प्यास ज्यादा लग रही है. Okay, methane sources as a fuel. समझो ये रैपिड फायर राउंड ही चल रहा है पेपर में. What is the question बच्चा? अमन क्या है बच्चा? सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ पीएनजी एलएनजी, व्हाट इज द मेड ऑफ? अरे बच्चा पीएनजी एलएनजी का जो सोर्स होता है ना वो यही गैसेस होती हैं, यही ले लो, यही ये जो अभी बताया था, इन सबको तुम पावर से पीएनजी से भेजो, क्या दिक्कत है? ओके क्यों नहीं भेज सकते हो? मीथेन है, उसमें कुछ प्रोपेन ब्यूटेन भी कर लो, घर के अंदर जो कुकिंग गैस में क्या यही सब तो है, ठीक है ना, फाइन. और जो कुकिंग गैस होता है वो कहां से आता है? आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल. जब पेट्रोलियम रिफाइनरीज में पेट्रोल को साफ कर रहे होते हैं ना, क्रूड ऑयल से जब रिफाइनरी से जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, इन दैट केसेस में वहां पे निकलता है प्रोपेन ब्यूटेन. तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से ही प्रोपेन ब्यूटेन निकलता है, जिसको यू आर पुटिंग अंडर द एलपीजी सिलेंडर. तो एलपीजी सिलेंडर जो घरों में उज्ज्वला स्कीम से जो सिलेंडर इज रीच देयर ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन? वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन बच्चा वहीं से आता है. मथुरा रिफाइनरी देखो, मैं दिल्ली, आई मीन दिल्ली क्लोज यहाँ पे है एक मथुरा रिफाइनरी. जब आगरा की तरफ जाते हैं ना, आई विल गेट इट द हरियाणा होते हुए वाले एरियाज में मुझे मिलता है वो फरीदाबाद से पेट्रोलियम रिफाइनरीज. और वहां पे पता है, वहां पे बाहर ना वो एलपीजी व सिलेंडर वाले होते हैं, वो उनके ट्रक भर भर के वो पेट्रोल की सफाई होती है. पेट्रोलियम रिफाइनरीज इज देयर, क्रूड ऑयल से साफ करके, और मैं जो प्रोपेन ब्यूटेन भरते हैं सिलेंडर में, वी आर पुटिंग देम एंड द सिलेंडर इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू द आउटस्कर्ट एरियाज कुकिंग पर्पस के लिए. यही सब तो चीजें, ठीक है, यही सारी तो चीजें यहाँ पे. और क्या यहाँ पे और कुछ थोड़ी ना जानना है. चलो अब नाउ कम हियर इन द केस ऑफ मीथेन सोर्सेस. व्हाट आर द मीथेन सोर्सेस जिनको हम फ्यूल की तरह बच्चा 7-8 क्वेश्चन अकेला इस पर है, हवाबाजी नहीं. तुम लोग तो करंट के अफेयर्स के चक्कर में हो, मत पढ़ो, ये सब फालतू काम कर रहे हो तुम लोग. ओके अब देखो 7-8 क्वेश्चन अकेला यहीं पे अभी दिखाता हूँ. सी हियर गाइस, एग्जांपल्स. पहला, that is the CNG compressed natural gas. You should remember it. So methane sources as a fuel you can find out. Example write down, like one is the biogas and biotoilet. You should know it. Biogas and biotoilet. The one is biogas and biotoilet. Second one, you should know about the coal bed methane. The second one is the coal bed methane. Third one is the clathrates. That is called as a gas hydrates. This is called as a gas hydrates, and this is also called as a methane hydrates. Gas hydrate, this is also called as a methane hydrates. Okay, methane hydrates. And next one is what? That is the shale gas. And next one is what? That is the shale gas. These 4 example you just remember. लिख लो भाई, ये 4 example आपको जानने हैं, लिख डालो फटाफट. So biogas and biotoilet, coal bed methane, clathrates are gas hydrates, methane hydrates. सुनो, ये सब क्वेश्चन पेपर में भरे हुए हैं. This all question UPSC has in your paper. (2015-16) prelims, 2020 prelims, 2014, 2016, 2 बार, ये 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 बार यहाँ. मतलब देख लो क्वेश्चन आपके सामने. मेंशन द ईयर्स गाइस, मेंशन ईयर, और ये जरूरी है. See what happened in the case of biogas and biotoilet. See guys, that you come into the picture. This is a container. Okay, this container is called as a digester. In digester have a presence of cow dung. ले लो cow dung ले लो, और equal amount में you take a water. Suppose 50 kg of cow dung. So 50 liter of water I have taken it, है ना? And proper mixed up it properly. So 50-50% ratio में cow dung and water you should have to mixed up. Cow dung have presence of organic waste. Or plus bacteria. You should remember this, है ना? Even human excreta, any animal excreta, monkey excreta, anyone you take, guys. So organic waste and bacteria both are there. Human excreta still have organic waste and bacteria, I'm telling you.
Later on, you just close them. Later on, you just close them. And to whom you are going to close them, this is called as a dome. And dome and digester combinedly called as a biogas system. So dome and digester are combinedly called as a biogas system. You should remember it. So dome and digester combinedly called as a biogas system. Okay, it's the entire picture. And see one thing more, guys. If this container is closed, then oxygen supply is stop inside. The condition is anaerobic. And the condition is what? Anaerobic conditions. And I'll tell you guys, bacteria become active in anaerobic conditions. You just remember, guys, when your mama is going to make a curd, so take a utensil, milk bhar diya, and few amount of curd your mama is going to put inside. Few amount of curd is going to put inside the milk means what? Bacteria is going to put it, और bacteria active है और उसको भी ढक देती है ऊपर से, और ढक देती है तो अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है. And when the bacteria become active in anaerobic condition ना, and the milk convert into curd. The same thing here. If you close it in the form of dome, through the help of dome, so ultimately inside oxygen supply is stopped. So the condition is anaerobic. If the condition is anaerobic, the bacteria become active. Bacteria start to decompose the organic waste. And when the bacteria start to decompose the organic waste, उसको खाता है, सड़ाता है, तो यहाँ पर have some formation of gases. Or because of the gases, what happened, guys? It's a nozzle. The pressure happen, and because of pressure, the dome is going to uplift. Okay, dome is going to uplift, and this pressure you are going to connect with the turbines. इसको एक turbine नहीं, sorry, ये जो gas आ रहा है, है ना, जो gas आ रहा है, see the gas, those gases are coming, see the gas. इसको you just go and connect with the stove से जोड़ दो, stove, and see it is a biogas. Those gases coming here because of pressure, it's a biogas. And when you give a fire, guys, so it will burn and have a generation of heat. When you give a fire, it will burn and generate a heat. Okay, it will generate heat. And if you just check the composition of biogas, okay, if you check about the composition of biogas, what are here, guys? See, this biogas, it means when you give a fire, it generate a heat. It means some of the gases are here which have a burning ability. Neither why it burn, and that generally people are using for cooking purposes. This one for cooking purposes. Biogas have a methane, have a CO2 as a main compositions, ammonia and some other gases. Okay, so what about the composition of biogas? So methane, CO2, ammonia and other gases. But the main composition, if anybody will ask in the case of biogas, so answer is a methane and CO2. Even, guys, 60% methane and 40% CO2 is the ideal biogas composition, but the ideal composition never come. Okay, and see, all these gases are coming there, but methane only burn, rest of the gases emit in the open atmosphere. And in that way, the people are using it for cooking purposes. One thing more, guys, the same methane that you can see here for cooking purposes, okay, we people are also using methane in the CNG. And here I'll tell you one of the statement as a note, for cooking purposes, 40 to 60% methane concentration if they are in the gas, so it will enough for burner, for cooking purposes. But the amount of methane should be up to 90%, as a what, as a CNG inside the vehicle. Okay, and that is called as a enriched methane. Yeah, enrichment kind of question UPSC asked in 2023. Those uranium wala question, 60% uranium enrichment is used for electricity. It was wrong. Same thing I'm telling you here, guys. Methane enrichment का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज का concentration बढ़ाना. तो यहाँ पर किसका concentration हम बढ़ा रहे हैं? Methane enrichment we are doing, and the methane concentration level varies. The heat generation varies. यहाँ पे heat कम है, यहाँ पे heat ज्यादा है. यहाँ पर हीट कम है, खाना बन जाएगा. यहाँ पे हीट ज्यादा है, गाड़ी इज व्हाट, द व्हीकल इज हैवी, उसको रन करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए. तो सी दैट इज रिटन देयर, गाइस. एनरिचमेंट यू रिमेंबर हियर. ये चीजें हैं जो आपको जाननी थी, मैंने आपको समझा दी है. So better you remember it. An enrichment kind of term is the demand of UPSC. Remember it. वही हमने पीछे बोला था ना. Sir, if gases nature of fuel can't be directly used, then how hydrogen can be used directly even if it also volatile?
कर रहे हैं क्या कहीं, बताओ जरा। ओके सेट सेफ वाइल ट्रांसपोर्टेशन, नमन कहाँ कर रहे हैं भाई, कल को जब सेफ होगा तो यूज करेंगे ना, अभी तो खतरा है, कहाँ यूज कर रहे हैं, जिस दिन वी विल डेवलप द टेक्नोलॉजी करेंगे, आप खुद आंसर दे रहे हो। सर विल यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस अगेन, क्या है इसमें, गोबर ले लो सड़ा दो, सड़ाने के लिए यू शुड हैव टू मेक अ व्हाट एनारोबिक कंडीशंस, उसके लिए इसको डोम को बंदी रखा है और बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव। अगर यू नो वेरी वेल अबाउट द मिल्क फॉर्मेशन, सॉरी कर्ड फॉर्मेशन, तो वही चीज यहाँ कर, लेकिन कर्ड नहीं है, यहाँ पे इज अ फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। यहाँ पे भी वी आर डूइंग ए डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करें, काउ डंग इज द बेस्ट एग्जांपल। आपने सुना होगा गोवर्धन स्कीम, आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं जो इंदौर के हो, जो मेरी क्लास सुन रहे हो, तो यू शुड नो इट, गोवर्धन स्कीम जो सरकार लाई है वहां के लिए, इंदौर के लिए, व्हेन आई गो टू टेक अ फिजिकल क्लासेस ऑफ इंदौर, तो आई आल्सो टोल्ड देम तुम्हारी जगह पे शहर में गोवर्धन स्कीम की शुरुआत ही हुई है, एंड मोदी जी इनॉग्रेटेड 3 years बैक, एक वीडियो भी मैंने बनाया था 3 years बैक गोवर्धन स्कीम पे, वहां पे व्हाट हाउ टू एनरिच मीथेन। आप एक काम करो, आईटी दिल्ली में जाओ, एक वीके विजय सर है, वो काम कर रहे हैं, उनके पास एक पूरा मशीन है, उससे वो होकर इसको गुजारते हैं, उसको गुजारते हैं, और फिर ये चीजें वहां से एब्जॉर्ब होती जाती, मीथेन बसता चला जाता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस उसको करते हैं, ठीक है, वहां जाके अफरोज यू गो एंड सी इट, है ना। अब वो भी पूछो सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, तेल कैसे बनाते हैं ना, कूड़े से कचड़े से कैसे निकालते हैं, वो भी पूछो, है ना। और फिर वो मथुरा रिफाइनरी के अंदर सल्ले के चलो, है ना, वहां हमें देखना है सर कैसे वो मतलब बनता है पूरा प्रोसेस, है ना, वो भी होगा, है ना। तो भाई यूपीएससी के स्टेटमेंट करेक्ट कैसे हुआ फिर नमन, है ना, बट ये यूपीएससी के स्टेटमेंट करेक्ट, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल कांट डायरेक्टली यूज, देन हाउ हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इवन इफ आल्सो वर्ल्ड। भैया जब टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो करेंगे ना सर, यूपी कैसे गलत हो, कहाँ कहाँ स्टेटमेंट गलत हो गया, हम कहाँ गलत कह रहे हैं, आज के हिसाब से बोल रहे हैं, कल के हिसाब से होगा तो करेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को वैसे भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में कहाँ यूज करें नमन, है ना, कहावत सुनियो अधजल गरी छलकर जाए, अभी तुमको पूरा नॉलेज नहीं है, हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन में भी, लेकिन हाइड्रोजन को फॉर्म में नहीं यूज करते, दोस पीपल हैव लिसन्ड माय स्टैटिक क्लासेस दे नो वेरी वेल, सर क्रायोजेनिक इंजन में भी हाइड्रोजन को यूज करते हैं, पर उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करके करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर गैस के फॉर्म में हो, गैस नेचर को ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी आगे आएंगी, रुको थोड़ा, अभी तो पहले दिन में ही तुम सोच रहे हो, मतलब छक्का चौका मान लो, क्रायोजेनिक भी समझ जाओ, लिक्विड के फॉर्म में, रुको अभी, रुको अभी, ठीक है, कीप पेशेंस। और अफरोज देखो वो सब नहीं जानना है, ठीक है, कैसे करते हैं, मैंने बता दिया, एक जगह है जहाँ पे एनरिचमेंट हो रहा है, वहां पे मैंने भी कुछ दिन काम किया, अब जाना, वीके विजय सर है आईटी दिल्ली में, है ना, रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, बाहर उनका लैब भी बना हुआ है वहां वो, और उनको वैगनार गाड़ी भी दी गई है ना, तो उसी में भर भर के वो उसको टेस्टिंग वेस्टिंग भी करते हैं, और पानी वानी इसको गुजारते हैं तो CO2 रिएक्ट हो जाता है, फिर ये सब खत्म होता है, मीथेन एडिस्ट हो जाता है, H2CO3 बन के अलग अलग हो रहा होता है, यही सब है उसमें, देखो थोड़ा, है ना, देखो, ओके चलो देखो, बाकी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कौन सा हमको एक काम करना, थियरी समझनी हो गया, ठीक है। अच्छा नाउ बायोगैस वगैरह इट्स ओवर, नाउ व्हाट इज द बायो टॉयलेट सिस्टम, कुछ नहीं है, बायो टॉयलेट प्रोविजन ब्रॉट इन 2015 एंड once UPSC asked the questions, railway ministry brought this project, railway ministry in Delhi brought this project, so who is the behind it, of course railway ministry, and the work is the IRCTC, and DRDO got the responsibility to introduce the bio toilet in train coaches. Okay, so DRDO and IRCTC got the responsibility to introduce the bio toilet in train coaches, ठीक है, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, भैया बायो टॉयलेट लगाना है ट्रेन के कोचेस में। इन द केस ऑफ दिस ट्रेन में क्या होने वाला, कुछ नहीं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटास आते हैं ना, ये देखो ह्यूमन एक्सक्रीटास, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा इज गोइंग टू एक नाउ इन द ट्रेन हैव अ कंटेनर, ऐसे ही कंटेनर एक लगा होगा, and this is the outlet of the human excreta, outlet of the human excreta, it will come there, earlier the excreta directly drop to the railway track, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ट्रेन के अंदर एक कंटेनर लगा होगा and the excreta will come inside the कंटेनर, एंड विद इन द कंटेनर एक स्वीपर जाएगा और थोड़े थोड़े बैक्टीरियल इनोकुलम उसमें डाल देगा, एक्टिव बैक्टीरिया, जैसे मम्मा नहीं डाल देती मिल्क के अंदर थोड़ा थोड़ा कर डाल देती है, फिर वो पूरा मिल्क बन जाता है, ऐसे थोड़े एक्टिव बैक्टीरिया को ले जाकर उसके अंदर डाल देगा, 2-3 ड्रॉप पूरे ट्रेन के कोचेस के अंदर, और जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा विल गो इनसाइड द ट्रेन कोचेस, तो द बैक्टीरिया इज ऑलरेडी एक्टिव, व्हेनेवर दे विल गेट द वेस्ट दे स्टार्ट टू डिकम्पोज देम, और जब तक ट्रेन पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन तक, ठीक है, तब तक अच्छा खासा वो डिकम्पोज हो चुका होगा, या नहीं भी होगा, व्हाटएवर इट इज, वैक्यूम क्लीनर्स आर अवेलेबल, स्वीपर विल रिमूव ऑल द वेस्ट आउटसाइड फ्रॉम द कंटेनर एंड दे कैन यूज इट एज अ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर व्हाट इज द बेनिफिट देयर गाइस, वो जो रेलवे का जो वेस्ट होता था, जो पटरियों पे गिरता था, अब दैट वेस्ट विल नॉट कम,
जैसे गंदगी नहीं रहेगी, सैनिटेशन वाला इशू खत्म, है ना, वो जो प्रॉब्लम जो चीजें करनी पड़ती थी। और द सेकंड वन इज गाइस द रस्टिंग हो जाती थी, द ट्रैक इज द आयरन मेड ट्रैक, और आयरन मेड ट्रैक में रस्टिंग हो जाती थी, हटाना पड़ता था, तो सरकार का खर्चा बहुत होता था। So this kind of problem is going to solve here in this case, है ना, this kind of problem is going to solve here in this case. This is the overall about it here in this case. तो इट्स अब आजकल देखो ना, जितने भी ट्रेन के नए नए कोचेज आ रहे हैं, सब में बायो टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। So new coaches have a bio toilet, ठीक है ना, it's good. और even the already informations are there कि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक वास्टिक के बॉटल don't keep it inside, it's not biodegradable. ओके तो इस तरह की चीजें ही ओनली यू पीपल आर अलाउड टू कीप देम इनसाइड, और बाहर ही लिखा होता पहले, है ना, कि दोज आर बायोडिग्रेडेबल हियर इन दिस केस, फाइन। coal bed methane is just a general information, you should remember it. मीथेन दोज आर नेचुरली अवेलेबल इनटू द कोल बेड, एंड कोयला जहां मिल रहा है वहीं पर नेचुरली जो मीथेन मिल रहा है उसको हम कहते हैं कोल बेड मीथेन। सो कोल बेड मीथेन, मीथेन दोज आर नेचुरली अवेलेबल इन द कोल, है ना, कोल बेड, that is called as a coal bed methane, you people remember it. And this is also one of the methane sources we people are utilizing, and we people are utilizing as a CNG in our vehicles. ये सरकार का काम होता है, वहां से निकालना, प्यूरिफाई करना, CNG पंप तक पहुंचाना, फिर गाड़ियों में आप भर लीजिए, वो सारा का सारा केसेस, but it is also one of the methane sources we people utilize as a fuel. Clathrates or methane hydrates, I'll tell you guys, in 2009 it was a report, और क्वेश्चन 11 साल बाद आया, है ना। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो मार्केट के लोग बोलते हैं, यू नो, कोचिंग इंडस्ट्रीज, टीचर्स, साइंस टेक करंट अफेयर्स, ये 11 से जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए करंट अफेयर्स था। 2009 में देयर वाज वन रिपोर्ट, इन 2009 देयर वाज सम रिपोर्ट गाइस, एंड इन दैट रिपोर्ट व्हाट वाज द न्यूज़ गाइस, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस हाइड्रेट रिजर्व है वो हमारे इंडिया में है, दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार। अब बताओ 2009 का ये न्यूज, 2009 का ये न्यूज आपने कभी पढ़ा नहीं, और 2020 में वो क्वेश्चन आ रहा है 11 साल बाद, मतलब वही मैं कहता हूँ 11 साल बाद ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, मतलब 11 साल पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, आपके पेपर में। व्हाट इज दिस क्लैथरेट्स और मीथेन हाइड्रेट? लिसन गाइस, क्लैथरेट इज द टेक्निकल नेम, केमिस्ट्री में इसको कहते हैं। गैस हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट इज द मोर पॉपुलर नेम। व्हेन यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन, यूपीएससी हैज गिवन द स्टेटमेंट एज अ मीथेन हाइड्रेट्स, यूपीएससी हैज गिवन द नेम एज अ मीथेन हाइड्रेट, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना। अब सुनो इसमें है क्या पूरी कहानी। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मीथेन, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मीथेन सोर्सेस या मीथेन रिजर्व्स। ओके, फर्स्टली रिपोर्टेड इन द पोलर एरियाज, फर्स्टली रिपोर्टेड इन पोलर एरियाज, सो फर्स्टली रिपोर्टेड इन पोलर एरियाज। अब पोलर में विच काइंड ऑफ पोल? साउथ पोल। It was firstly reported in polar areas, and the polar area is what? That is a south pole. So it was firstly reported in polar areas, and that polar area is actually south pole. Okay, south pole. And see one thing more guys, 2 to 5% of methane reserves are reported here in this area of south pole. और south pole में था क्या? वो एक आइस है, चारों तरफ उसे घिरा, मतलब ऐसे कह लो कि it is a methane gas and it is surrounded by heavier ice crystals, and it is surrounded by heavier आइस क्रिस्टल से चारों तरफ घुरा हुआ, और आइस क्रिस्टल जो होता है थोड़ा भारी होता है, और मीथेन एंड आइस क्रिस्टल हैव नो रिएक्टिविटी, तो ये उसमें फंसा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट। अगर CO2 होता तो पानी से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता, बट मीथेन हैव नॉट एबिलिटी टू रिएक्ट विद द वाटर। ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर। पीयूष, कोल बेड क्या होता है? कोल बेड ये होता है कि जो कोयले की खान होती है उसमें मौजूद जो मीथेन होता है उसको कोयले की खान में मौजूद मीथेन कहते हैं, तो कोल बेड मीथेन कह लो। ये नेचुरल मीथेन होता है, जैसे कोयला बनता है वैसे वहां पे मीथेन बनता है। कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, आग लगती है, दम घुटता है, लोग मर जाते हैं, ऐसा मीथेन उसलिए खतरनाक भी हो सकता है एक लेवल पे जाके, क्योंकि जब आग वाग लगती है एक्सीडेंट होता है। तो दिस इज द मीथेन। ओके, यहाँ पर दोस मीथेन आर सराउंडेड बाय आइस क्रिस्टल्स पोलर एरियाज में एंड हैव नो रिएक्टिविटी विद आइस क्रिस्टल, तो यहाँ पर फंसे हुए हैं या वहां पर बंधे हुए हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। Even methane reserves also reported. Methane और कहाँ मिलता है? Methane reserves are also reported, है ना, first reported here in the ocean bed, and ocean bed में ऐसा कहते हैं करीब 98%, 95% methane reserves ocean bed में मौजूद है। जैसे मान लो बच्चा ये ocean bed है और यहाँ पे methane gas is there, ये ऊपर का लेयर है, it is surrounded by water molecule, and water and methane still have a no reactivity, और ये वहां पर पड़ा हुआ है या वहां पर फंसा हुआ है। क्लियर? ये वहां पे पड़ा हुआ है या ये वहां पे फंसा हुआ है, ऐसे ध्यान रखना। ओके, ऐसे ध्यान रखना, पड़ा हुआ है या फंसा हुआ है। तो दैट इज द मीथेन, दोस इन द कमिंग फ्यूचर हम जाएंगे, उनको लेकर आएंगे। एंड सी वन थिंग मोर, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दे आर मोर देन 3 times देन प्रेजेंट नोन फॉसिल फ्यूल्स।
It's a very great statement about it. There are more than 3 times in present known fossil fuel means what? Present known fossil fuels are coal, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यही तो है ना. और नेचुरल गैसेस उनका भी 3 टाइम्स से ज्यादा ये मीथेन है. वाओ, वंडरफुल. मतलब दे आर, वी कैन कॉल देम एज अ फ्यूचर फ्यूल्स. इसको मैं एक टर्म भी यूज करता हूँ, फ्यूचर फ्यूल. फर्स्टली ये रिपोर्टेड कब था? 2009 के आसपास. एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स आर रिपोर्टेड इन गल्फ ऑफ मन्नार रीजन. दैट इज द स्टेटमेंट यू पीपल रिमेंबर. लिख लेना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स आर रिपोर्टेड इन गल्फ ऑफ मन्नार रीजन. So world's largest gas hydrate reserves are reported in Gulf of Mannar regions. Okay. अच्छा, एक चीज और बता दूं, जानते हो आपके पेपर में when UPSC asked the question ना, UPSC did not stop methane as a fuel only. Methane as a pollution also UPSC asked the question which is responsible for global warming. उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक मिनट रुको. Okay, when UPSC asked the question regarding the methane. You know about permafrost? Perma means very low temperature. परमाफ्रॉस्ट, आपको पता है पोलर एरियाज है, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर? ऑफ कोर्स परमाफ्रॉस्ट. ओके, अगर वहां पर का जो आइस होगा अगर वो मेल्ट होगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो दोस मीथेन्स आर हियर गाइस सराउंडेड बाय आइस क्रिस्टल्स, दैट ऑल द मीथेन विल कम इन द एटमॉस्फेयर. और वो काफी खतरनाक कंडीशन होगी, क्योंकि मीथेन अगर दे विल कम है ना, परमाफ्रॉस्ट मतलब जो चारों तरफ आइस से घिरा वाला एरिया, परमाफ्रॉस्ट उसी एरिया उस जगह को कहते हैं, उस कंडीशन को. अगर दिस मीथेन विल कम आउटसाइड, बड़ा खतरनाक है ये मीथेन. दैट मीथेन इज कमिंग ना, the methane are coming, they trap the solar radiations, and in comparison to CO2 ये ज्यादा global warming करते हैं. Okay, and the efficiency, the one part their efficiency is more for global warming, and second side those methane is coming in the atmosphere, उनका residence time भी बहुत हो सकता है. their residence time है ना, करीब 1 से 2 डिकेड्स हो सकता है. इन्वायरमेंट भी सुना होगा. तो सर आप ये कह रहे हो कि जो मीथेन होता है अगर दे विल कम इन द एटमॉस्फेयर, तो 10 से 20 साल के लिए एटमॉस्फेयर में रह सकता है? डेफिनेटली. तो सर फिर 10 से 20 साल तक ये ग्लोबल वार्मिंग करेगा? डेफिनेटली. तो सर इट इज वेरी डेंजरस? डेफिनेटली, वही तो मैं बता रहा हूँ. ओके, एंड दिस मीथेन बेस्ड क्वेश्चन 2 टाइम्स यूपीएससी हैज, नॉट द फर्स्ट टाइम. एक बार तो स्पेशली मीथेन वाज एज अ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एंड हियर द मीथेन एज अ क्लैथरेट. तो क्लैथरेट में वन ऑफ द स्टेटमेंट इज एनर्जी fuel and second statement was the environment. 2020 Prelims. मतलब दो सब्जेक्ट्स के बारे में अगर पता है तब आपको ये चीज समझ में आएगी किसमें है कि एक्चुअल में. Okay, now we'll go toward the discussion of a shale gas. Got it. The next is what? That is a shale gas. Actually, in the case of shale gas, in this concept, you should know about the rocks first. Okay, there are 3 different types of rock. Everyone know. The one is the igneous rock. Next is sedimentary rock, and one more is a metamorphic rock. So these are 3 different types of rocks that you all guys know very well: igneous, sedimentary, and metamorphic. And these rocks have their own subtypes. Like sedimentary rocks have a shale rocks. So shale rock is a kind of subtypes of sedimentary rocks. So it's a main type of rocks, it's a subtype. So I can tell you shale rock is a subtype of sedimentary rocks. Okay, so shale rock is a subtype of sedimentary rocks. And in the case of shale rock, I will tell you guys, okay, you should know, sedimentary rocks have a presence of fossils. So if sedimentary rocks have a presence of fossil, from the NCERT book, if you read, you will, it is mentioned there. Sedimentary rock have a fossil, so it means shale rock have a fossil. And these fossils, those are available either it is in the form of oil, yeah, it is in the form of gas. This fossil is available as a form of oil or gas, so it is called as a shale oil or shale gas. So what actually is shale oil and shale gas? I think you people know very well. It is the kind of fossil fuel. Those are naturally available inside the shale rock as a kind of fossil fuel. It's in the form of oil, yet it is in the form of gas. As oil is called as a shale oil, and as a gas it is called as a shale gas. Okay, so it's a shale oil and shale gas. Okay, it is a shale oil and shale gas. In these, all shale gas got more popularity. In the case of shale gas, methane is the main composition of shale gas. It does not mean methane is the only composition of shale gas. Because when UPSC asked the question, UPSC mentioned only methane is there, so it's wrong.
Not only methane, even propane, C3H8, butane, C4H10, you know, these kind of gases also there inside, and etc. Some more here, guys. But again, I tell you, the main composition is methane. Main composition is what? That is the methane. Okay, main composition is the methane. So kindly remember this. Okay, main composition is the methane. Okay, everyone. One more thing I'll tell you, the cell gas, I think you understood, it is also the kind of natural gas available in the nature, and main composition is the methane, but other gases like propane, butane, etc. also there. And that was a UPSC statement in 2014 around. Shale gas have methane only, so it was wrong. Only is the wrong because some exceptions always there. I told you guys. Okay, worldwide, if you see the distribution of shale gas reserves, so it's also very good question. Which country have a maximum reserves? So answer is China. Then next is the Argentina. Next is the Algeria. These all the countries name are important. And next one is the US. Whenever I asked this question in the class, so mostly people told me that is the US is the country have a maximum shale gas reserve. It is wrong. Okay, China is the country where have a maximum shale gas reserve. You should remember it. And what about India's position? So India stand the 11th position in the world. So what about India's position? The answer is the 11th position in the world. So India stand 11th position in the world. So India stand 11th position in the world. So you can't remember it. Okay, fine. There is some technology used in the case of shale gas exploration work. Okay, so certain technology is developed. Certain technology is developed like hydraulic fracturing, horizontal drilling, hydraulic fracturing, horizontal drilling. So hydraulic fracturing, horizontal drilling kind of technologies used. Okay. So hydraulic fracturing and horizontal drilling kind of technology used. So hydraulic fracturing and horizontal drilling kind of technology is used in the exploration of shale gas. Okay, so these technology people are using in the exploration of shale gas. But I'll tell you, India lack this technology. India lack this technology means we are not very advanced. Even first time shale gas was reported in 2010-11. A Reliance company identified the presence of shale gas reserves in India. Okay, Reliance company firstly identified the presence of shale gas reserves in India, and 2010-11 was the year when first time the shale gas was reported in India. India started exploration. Still we are doing the exploration of shale gas, but we are not technically good as like a hydraulic fracturing and horizontal drilling kind of technology. India did not have, but we are doing the shale gas exploration. You remember, and shale gas was reported in India in 2010-2011, means around 13-14 years back. Shale gas identified in India, and India stand the 11th position in the world. If you see the location was UPSC question paper. Location was UPSC question paper, and that question was like here I'll tell you about MOPNG. It is one of the ministry in India. I think you know, Ministry of Petroleum and Natural Gas. This is one of the ministry in India that is called Ministry of Petroleum and Natural Gas. Okay, so MOPNG is what? That is a Ministry of Petroleum and Natural Gas. So this is Ministry of Petroleum and Natural Gas. So Ministry of Petroleum and Natural Gas. Okay, according to Ministry of Petroleum and Natural Gas, 6 locations are detected in India. So total 6 locations are detected in India to have a shale gas reserves. Okay, the one is the Cambay Basin. Here UPSC asked the question in 2014 around, 16 around. Cambay Basin. It's all geographical location. Assam Arakan Basin. Gondwana region. Indo-Gangetic Plain.
This is Indo-Gangetic Plain, Krishna Godavari Basin, Krishna Godavari Basin, and one more is the Kaveri Basin. And one more is what? That is the Kaveri Basin. And one more is what? That is the Kaveri Basin. So these are the 6 locations in India which have a shale gas reserves. Okay, so these are 6 locations in India which have a shale gas reserves. Can't you remember this? Okay, so these are the 6 locations in India which have a shale gas reserves. So Cambay Basin, Assam, Arakan Basin, Gondwana region, Indo-Gangetic Plain, Krishna Godavari and Kaveri Basin. Okay, one of the plant name is connecting with the shale gas exploration work, and the name of the plant is the guar. Name of the plant is the guar. Okay, guar, its English name is a cluster bean. Guar is a local name actually. So guar, it's a local name. Okay, but technically English name is called cluster bean. Okay, cluster bean. And I'll tell you, cluster bean is a kind of legume crop. Cluster bean is a kind of legume crop. Legume means pulses group of the plant. I think you people know very well, it is a pulses group of the plant. Okay, so legume means what? It is a pulses group of the plants. And here I'll tell you guys, this is the best biofertilizer. So it is a good biofertilizer also, and I think you know very well the pulses root are enriched with the nitrogen fertilizer. So this is the reason the root portion is the best, okay, as a fertilizer. So better you leave the roots there, pulses roots, and no need to apply the chemical fertilizers for the next seasonal crop. So pulses plant is the best plant under crop rotation. So pulses plant are the best plant under crop rotation. Kindly remember it. Okay, so pulses plant are the best plant under crop rotations. Kindly remember it. Okay, and see one thing more guys, the cluster bean ya guar. This guar plant release the gummy materials. This one release some gummy material that is called as a guar gum. Gummy material that is called as a guar gum. Okay, so this plant release some gummy material that is called guar gum. And what is the use of guar gum? See guys, there is 2 uses. The one use of guar gum is actually what? Okay, generally if you see the guar production is highly in India, where? In the Rajasthan areas. Rajasthan means arid and semi-arid areas. Rajasthan means what? Arid and semi-arid region. Okay, Rajasthan means what? Arid and semi-arid regions. Arid semi-arid means where availability of water is very low. So arid and semi-arid means where water availability is very, very low. This area is arid and semi-arid areas. Okay, arid and semi-arid regions. In the case of guar gum, if you see guys, okay, even this plant is also used as a fodder. Even in Jaipur vagara, when I visit there guys, the people are telling me, sir, we also eat them, this plant as a food also. So food, fodder, many other uses of its plant. Entire Rajasthan to Pakistan wala belt, this plant is available. Okay, this guar gum was used in, was a lot of demand in shale gas exploration work. In shale gas exploration work, it was a lot of demand. So in shale gas exploration work, it was a lot of demand. So it was a lot of demand in shale gas exploration work. Which one? Guar gum. So guar gum was in high demand in shale gas exploration work, and that is what hydraulic fracturing. But nowadays it's now means long time back. Okay, it's chemical developed. Chemical means chemical guar gum developed. Chemical means chemical guar gum developed. So that chemical guar gum work as like a natural guar gum. So chemical guar gum work as a natural guar gum. You remember. Second side, guar gum material we also use in the food items to increase thickness of food items. To increase thickness of food items.
So it is used to increase the thickness of food items. Okay, it is used to increase the thickness of food items. Okay, to increase the thickening agent, and that is the reason that food become more tasty. In the case of milk, if you do the mixing of guargum, the milk become thick and tasty. Even the 10 rupee tomato soup, ketchups, this mixing will make them more and more tasty. Okay, so these mixing make them more and more tasty. So you remember it. Okay, you remember it. Increase thickness of food item. This is here in this case. Okay, increase the thickness of food items. So it's overall about the guargum. You please remember it. Now after it, we'll go to a discussion of renewable energy. And I just want to tell you guys, under renewable energy, where UPSC focus the questions, this is the sun energy, means solar energy. So I just want to discuss with about solar energy and some renewable energy target that India should achieve. Okay, sir, how the shale gas is different from the natural gases? No, it's not different from the natural gases. Okay, but it is also available in the nature itself, so it is natural gases. Different places, the different name of natural gases is used. Vinayak. Okay, that question you asked. As one of the question Vinayak even asked, how is the shale gas is different from the other natural gases? So I think you guys know very well, on the basis of nature, on the basis of presence, on the basis of composition, all the gases are different. Somewhere have a methane. But yes, in most of the cases the methane are common. At least everywhere methane is common. I think those questions Vinayak asked, that doubt no one have, and Vinayak is still you very clear what I'm telling you. If you go toward the discussion of solar energy, again I'm telling you guys, when you go into the example of renewable energy, there are so many renewable examples. Solar energy, wind energy, ocean energy, lot of example you already have seen, biomass energy, but which one is important for the UPSC 11 to 23, where UPSC only focus the question, the answer is solar energy. In the case of solar energy, just listen. In the case of solar energy, you just come, okay, see. In the case of solar energy, around 0.1% solar radiation, around 0.1% solar radiation received by our Earth surface. Around 0.1% solar radiation received by our Earth surface. So around 0.1% solar radiation received by our Earth surface. So 99.9% of solar radiation is not for our users. 99.9% solar radiation is not for our users. Okay, everyone. So approx 0.1% solar radiation received by our Earth surface. It can be utilized in different ways. Okay, it can be utilized in different ways. What about the different ways of utilization of solar energy? The one, solar energy into thermal energy. Okay, solar energy into thermal energy. Solar energy into thermal energy. Thermal energy means heat generation. Thermal energy means heat generation. And second one is the photovoltaics. Photovoltaics, in short, we can call them as a PV. Photovoltaic is what? It is a PV. So photovoltaic is what? It is a PV. So solar energy into thermal energy. And another example is of photovoltaics. So solar energy into thermal energy, and another example is what? It is a photovoltaics. Okay, solar energy into thermal energy and photovoltaics. Actually, we are discussing technology. And I always spoken here, guys, technology is totally developed by human being for the welfare of human being. Okay, there is no contribution of God in the case of technology. Technology entirely developed by human being, you all people remember. What about the example of solar energy into thermal energy? See here, guys. Solar water heater. Solar water heater. Solar air heater. Solar cooker. Solar pond. These are the very common examples. Most successful and most popular among all is what? Solar water heater. Sunlight is going to utilize for the to increase the temperature of water. So ultimately you don't have a need of any geyser. Ultimately in this case you don't have a need of any geyser. So solar water heater is working for that. Okay, so no need of any kind of heater in this case. This is a solar water heater.
Okay, this is what? This is a solar water heater. You should remember it. Solar pond, Asia's first and largest in the Asia. It is in Bhuj, Gujarat. It's a factual data, remember. It is in India, guys. The Asia's first and the largest solar pond is in Bhuj, Gujarat. Everybody remember. So Asia's first and the largest solar pond, it is situated in Bhuj, Gujarat. Okay, what is the use of photovoltaics? Photovoltaic system is used for the conversion of solar energy into electrical energy. Yeah, in the case of electricity generation. Roadside, you people have seen this system is working. Roadside, you go. Okay, for power, electricity production, street lights is the best example. It's a case of photovoltaics. Okay, it's a case of photovoltaics. You all people know it very well. So solar energy is going to use for the electricity generation in the case of photovoltaics, and these are the two technology where solar energy is utilized for various purposes. So here you are going to do the replacement of heater. Here going to do the replacement of the LPG, solar cooker, LPG. Solar air heater is a kind of blower. Solar pond is also actually we can use the ocean water to boil the water for the steam formation for power production. Okay, so but here ocean water is required because salt is required into the water, and salt available definitely in the ocean water. Definitely this kind of a place will be what towards the coastal areas. You can understand very well. So this type of thing will be towards the coastal areas. Remember it. Let us go into the discussion of a solar water heater as UPSC questions around 14-16, and further have a photovoltaic UPSC question 2-3 times. So how solar water heater is utilized, and ultimately your father can save a lot of electricity bill. In this case, if once you people install the solar water heater, guys, 15 years, 20 years have no electricity bill, free of cost. Only in the beginning have to invest something, 20,000, 30,000, but later on have no need of any kind of investment in this case. Okay, so later on have a no need of any kind of investment in this case. Now listen, what will be the next? See guys, before going to start the solar water heater, how they are working, some background discussion you just see, and how the first of all you see how coal is going to utilize for power production. See here guys, how thermal power plant system is working, and 60% of worldwide power generation is because of it. You see here guys, suppose this is the coal, when burning of coal happen, so ultimately what happen guys, heat generation happen. When the coal burning happen, heat generation happen. This is what, this is a pressure cooker. In this pressure cooker you take a water. When the water is going to receive a heat, water is start to heat and water is start to boil, and water is start to boil, so they will start to generate a steam. What will happen here guys, steam formation. And this is what, this is a steam pressure, steam formation. It is a steam pressure, and the steam pressure is going to connect with some of the turbine. This is turbine. And one thing more guys, when the steam pressure will come, turbine move, and turbine moves, so what kind of energy will come, mechanical energy will come. So what kind of energy will come, it's a mechanical energy. Okay, so if coal is available, mechanical energy is available, I can tell you directly. And this is one of the device called as a dynamo or generator. This is called as a dynamo or generator. What a dynamo or generator are doing, they convert mechanical energy into electricity. How interesting it is guys, coal is available, electricity is available, dynamo or generator is utilizing for the conversion of mechanical energy into electrical energy. So in that way coal is utilized for power production. And but you guys know very well, due to burning of coal, massive environmental pollution happen. So it's a problem. But 60% of power production worldwide because of this reason. 60%, and it is huge and huge guys. 60% is huge in amount. Okay, huge and huge. One more separate discussion I want to do about the inverter and battery concepts. Whenever your father bought the inverter, so you know very well with inverter your father also purchased one of the battery. And what about the work of it? Suppose this is the inverter. Suppose this is inverter and this is one of the battery. One of the inverter and this is one of the battery.
Okay, if I ask you guys how many types of currents, so I think you people read it from the school level. Two types of current. One is the alternative current and second is a direct current. So there are two types of current. The one is a alternative current and second is called as a direct current. Alternative currents are more powerful and direct current is less powerful. The best way as to understand, try to understand. Direct current you will get in the case of batteries. All the batteries like my mobile phone have a battery and have a direct current. This tablet have a battery and battery have a direct current. Okay, in torch have a battery have a direct current. You people understood very well. Okay, battery have a direct current. And there is an alternative current. Those electricity reach to your home guys through the help of high tension wire or cable wire. It's alternative current. So this electricity generated somewhere from the burning of coal and reach to your doorstep guys with the help of pole. It is an alternative current. And this is the electricity those are running inside this studio guys. It's what? It's an alternative current. And in my mobile phone those electricity is there, the electricity power is there, that is a DC current. I think AC and DC difference you know very well. This bulb is on here, that is running with the AC current, that is a AC bulb, and those torch is here in my mobile phone. This is what? This is the DC bulb. So I think AC bulb and DC bulb you people also understood very well. What about AC and DC? This is more powerful current, that is here, and this is more powerful, those are here in my mobile phone. Of course you will tell me, sir, your mobile phone power is less. More powerful is the alternative currents. This is the reason if you touch that current guys, you will understand. If you touch the battery, you will never feel you have some current also. Dynamo is one of the instrument like a Piyush is asking me. It means the problem of Piyush is never read the 9th and 10th standard of science book. 9th and 10th standard of science book में Dynamo लिखा हुआ है. State pieces में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. It is used to convert the mechanical energy into electrical energy. Okay, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, आगे से ध्यान रखना. And whenever your father purchase the inverter, तो इन्वर्टर के साथ आपके पापा एक बैटरी भी खरीद के लाते हैं. उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ. Whenever a AC current is coming, आपके घर में अगर AC करंट आ रहा है, ठीक है, AC का आ रहा है, उसको इन्वर्टर कन्वर्ट करके DC में कर देता है और बैटरी आपका फुल हो जाता है. तो इन्वर्टर हैव अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द AC इनटू DC. घर के अंदर जो पोल से करंट हो रहा है, दैट्स हाई टेंशन वायर से, इट इज अ AC करंट. And inverter is doing the conversion of AC into DC, or your battery become full. क्योंकि battery है DC current. But just the electricity gone. Slowly your battery got full. You know very well. But just the electricity gone. When just the electricity gone, this DC will further convert into AC. Where all the light and switches will on. Your all the light and switches will on here. Okay, your all light and switches will on here in this case. Okay, so what is the role of inverter? Convert AC into DC and convert DC into AC. एक को बोलते हैं converter, एक process को बोलते हैं rectifier. But don't go. You remember inverter convert AC DC and DC AC. This is enough. Now I'm going to discuss with you about the solar water heater, solar energy into thermal energy, how sunlight is utilizing for the heat generation. See here guys. This is the solar collector. See here. It is a kind of transparent glass. It is a type of transparent glass. Okay. A totally glass wind material is there. It's called as a solar collector. It is what? It is the solar collector. Transparent glass. And here have presence of some filaments. Here are presence of certain filaments. Here are presence of certain filaments. Some filaments are there. And lower portion is totally black polished. Total lower portion is totally black polished. So lower portion is what? Totally black polished. And this is one of the water tank. It is what? It is one of the water tank. And water tank have presence of water. You can understand very well. This is the outlet of water. Water is going outside. And this is the inlet of water. So outlet of water. And this is the inlet. So that is what? This is outlet of water. And this is what? This is inlet of water. It's a total circulation. So outlet of water and inlet of water. It's a water circulations. And here I just use one of the instrument that is called as a thermoregulator. This is thermoregulator. Thermo means temperature, regulator means to regulate. So it's a thermoregulator.
temperature regulations. We are doing temperature regulation here, thermoregulator. This is what? This is sunlight. This is sunlight. Okay, and the temperature in the sunlight, the solar collected temperature is the instrument, like it can reach around 200 300 degrees Celsius very easily. Okay, and see one thing more guys, it is totally covered by insulator, because in the night the temperature, there is no sunlight. So on your roof, those solar water heater you have to install there guys, the temperature will decrease in the early morning, loss of heat. Okay, so it's a total closed, and this is what? This is the insulators. A quality insulator is used there. So a quality insulator you use here. So it is an insulator. Okay, it is what? It is an insulator that you can see here guys. Okay, this is an insulator. What the next? See, when the water is going to circulate from the tube has a water, and this is a solar collector. When the solar collector heat up guys, this water, those are going to pass from the tube. It will receive a heat and temperature will increase. It will receive a heat and temperature increased. After certain circulation, you know what happened? Temperature inside this container will rise. And properly, what about the temperature? Suppose 45 degrees Celsius you want to maintain, it will be maintained. Very simple guys. It is heat. It's a heat up a lot. When the water is going to pass from some tubes, water is going to pass from the solar collector heat will transfer into the tube water, and tube water is going to receive the heat and temperature is going to rise. After certain circulation, what happened? Those water is available inside the tank, the temperature of the water will rise. Okay, temperature of water will rise, and this water temperature, this water will go downside at your home, and that is your home. Here you install, and that is the entire system. After circulation, when the temperature maintain 45 degrees Celsius, now the water circulation stop. In that way, the whole entire system installed. 2-3 days, the proper temperature of water is maintained, whatever you want guys. So no issue there. Okay, so 2-3 days the temperature is properly maintained here inside. It's a total about the thermoregulator, and you can understand. You can do one more thing guys here. What? You can increase the temperature here more than 45 degrees Celsius. Okay, if you maintain the temperature more than 40, you can set thermoregulator. Thermoregulator also available inside your geyser guys. When the temperature more, automatic geyser off. Same thing here, you use it. Okay, if you increase the temperature, set more than 45, beyond 60, beyond 70. When beyond 60, beyond 70 will go, temperature go. So ultimately what will come here guys? Ultimately steam will come here guys. Ultimately steam will come there. Steam have a pressure. Steam have what? Steam have pressure. And because of this pressure, what happened guys? Steam have a pressure. And because of the pressure, what happened? Turbine move. And rest you know very well. When the turbine move very fast, mechanical energy, dynamo and electricity. How interesting it is guys. A solar water heater we can also use for the power production. UPSC question, but current affairs guys never read these questions. And 99% people of UPSC preparations, those are doing actually. Okay, they never know what is it that UPSC asks the questions. So I'll tell you, like better you take a picture of it. Isn't you don't have a time to take a photo and all. Okay, मतलब draw the photo and all. और लेकिन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ. Okay, only 1 minute जो करना है कर डालो, पर हाँ इसको बना डालो. And then I'll go toward the discussion of photovoltaics. Okay, then I will go toward the discussion of photovoltaics. Photovoltaic means how solar energy utilized for electricity.
Into the discussion of photovoltaics, how solar energy is utilized for power generation. Come here, guys. Do generators work just like an inverter? नहीं बच्चा, जनरेटर डायनमो की तरह समझो, वो काम करता है. ओके कोमल, उसको बच्चा थोड़ा सही कर लो, आप गलत बोले हो. जनरेटर कुछ वैसे ही काम करता है जस्ट लाइक अ डायनमो इज डूइंग अ वर्क. तभी तो बोला डायनमो या जनरेटर. मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे कुछ. Now come, so ये एक one of the UPSC question and very, and see one thing more I could not tell you. This solar energy into thermal energy is also called as a concentrated solar energy. This is also called as a concentrated solar energy. This is also called as a concentrated solar energy. Don't be confused. So this is also called as a concentrated solar energy. Okay, this is also called as a concentrated solar energy. Kindly remember it. Concentrated solar energy. Okay, now come into the photovoltaic system. What are here? See guys. Okay, so concentrated, definitely the sun ki light ko we are doing the concentration and we are going to do somewhere. Okay, to generate the heat or temperature. This is the concentrated solar energy. Now come. What about a photovoltaic system? Photovoltaic system means sunlight is utilizing for the power generation. Okay, sunlight we are utilizing for the power generation. What is this concept? See guys, this is the photovoltaic system. This is called as a PV. This is PV, photovoltaic. Yeah, layman term you can call them as a solar cell या solar panel. So solar cell or solar panel, PV you can call them as a photovoltaics, solar cell or solar panel. They have a silicon made filaments. They have a filament, those have a silicon. So they have a silicon made filament. है ना, उनमें silicon होता है, silicon made filament. And this is the kind of iron rod. This is the kind of iron rod. ये पूरा iron rod है. You remember it. और ये I just use one of the battery. This is what? This is the battery. This is what? This is the battery. Okay, it is a battery. Okay, it's a battery. Now see how entire system works. And see one thing more guys. Here I just use the bulb and this bulb is a DC wala LED bulb. See, I can tell you guys two types of bulb. The one I told you that AC is here on top, AC bulb, and DC in my mobile phone. Those mobile touch is there. It is running with the battery. It's a DC bulb. You people know very well. So what is a AC bulb and what is a DC bulb? Everybody know very well. Okay, so what actually the DC bulb and what about the AC bulb? Everybody know it very well. Okay, so everybody know it very well. Okay, up do one thing guys. Okay, as just the sunlight will fall down here in the solar panel. See, as just the sunlight will fall down in the daytime, this silicon based filament start to generate the electrons. Okay, they will start to generate the electrons. These electrons will go and charge this battery, and slowly and gradually the battery power is going to full. Slowly and gradually the battery power is going to full. Slowly and gradually the battery power is going to full. Slowly, battery become full. You can understand very well. So slowly and gradually the battery is going to full. So ultimately what is here, you know very well, it's a solar energy here. And battery have chemical substance that store power as a form of DC. It's a chemical energy. It's what? It's a chemical energy. So it's a solar energy and it's a chemical energy. So one is the solar energy and second is what? It is the chemical energy. So solar energy and it's a chemical energy. Kindly remember it. Solar energy and chemical energy. Fine. And another one, if you want to use this electricity at your home, you have installed a solar panel at your home. So what you should do? Inverter. Use an inverter. Here you use an inverter. Here you just use one of the inverter. And what an inverter do? Inverter convert DC into AC.
and this is what? This is electrical energy. And because your household appliances, they all are working with the help of alternative current. Your household appliances, they are working with the help of alternative current. Okay, so ultimately you should have to use of inverter. Either how the DC you can use directly to run your bulb, because your bulb, your fan, your air condition, everything is running with the help of AC current. So you should have to install the inverter. Inverter convert DC to AC. How interesting. On your roof have a solar panel, battery is going to charge, inverter convert battery DC into AC, all electricity on. Okay, all electricity on at your home. This is the entire process. So I think you people understood very well what is the entire process here in this case. Okay, up now here you should have to go towards the schemes and programs of solar energy. And schemes and programs of solar energy always have a questions. Okay, always have a questions. Here you just come. Okay, schemes, yeah, government initiatives. The better you should have to start from government initiatives. Okay, in the case of government initiatives, I just want to tell you regarding the renewable energy targets. Okay, renewable energy targets, those India decided. Actually, in 2015, according to MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, those target India has decided. What target had been decided? By 2020-22, 175 gigawatt power generation India will do through the help of renewable energy. 175 gigawatt means 1,75,000 megawatt. 175 gigawatt is equal to 1,75,000 megawatt, because 1 gigawatt is equal to 1000 megawatt. If 1 gigawatt is equal to 1000 megawatt, so 175 is equal to what? 175,000 means 1,75,000 megawatt. So this much of power generation India will make, even India made a target to achieve. In this 175 gigawatt, 100 gigawatt India will achieve through the help of solar energy. 60 gigawatt India will achieve with the help of wind energy. 10 gigawatt India will achieve with the help of biomass energy. B means biomass energy. Okay. And 5 gigawatt India will achieve with the help of SHEP. SHEP means small hydroelectric power plant. And 5 gigawatt India will achieve with the help of small hydroelectric power plant. Okay, definitely you may ask me, sir, what is a SHEP? See, SHEP is the small hydroelectric power plant, or HEP is the hydroelectric power plant. Here is small not written, that is understood it is a big hydroelectric power plant. And small means of course it is a small, power generation capacity is very less. So small hydroelectric power plant and hydroelectric power plant. Small hydroelectric power plant, the capacity is what? Less than 25 megawatt power generation capacity, small hydroelectric. Hydroelectric power plant 25 megawatt onwards is a hydroelectric power plant. If any of the hydroelectric power plant generate power 25 megawatt onwards, they are the big type, yeah, hydroelectric. And less than 25 megawatt, so it is an example of a small hydroelectric power plant, SHEP. Okay, so kindly remember this 25 megawatt. And I can tell you guys, like if you guys have seen one of the movies Swades, शाहरुख खान वाली, उसमें गांव के लेवल पे छोटे से एरियाज में आप पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं. दैट वाज द एग्जांपल ऑफ SHEP. वो थोड़े फाउंटेन वंटेन होता है, कुछ झरने वरने होते हैं, उसका पानी रोका जाता है, उसको गिराया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है. उस मूवी में ऐसा कुछ दिखा है, छोटे छोटे. और भाखड़ा एंगल डैम, द बिग लेवल पावर जनरेशन, वो हो जाएगा आपका ये वाला HEP. तो इन दैट वे यू पीपल रिमेंबर इट. बट व्हाट अबाउट द चेंजेस 2022 ओवर. अब क्या करना है इन 2020-22. यहाँ देखो थोड़ा सा व्हाट अबाउट द अपडेट्स देयर. इन 2020-22 our honorable prime minister was in Glasgow summit. It was a COP26 meeting of UNFCCC. Those are working worldwide to stabilize the greenhouse gases emissions.
Okay, it was in Glasgow summits, and here our Honorable Prime Minister has done some announcement there कि by 2030, 500 gigawatt power generation India will achieve with the help of renewable energy. So the new target has been even set, and you people are here in this examinations. In your coming future, that is the question. If UPSC will ask, so be alert. So 2020-22 UNFCCC COP26 meeting at Glasgow, Scotland somewhere, guys. Even target made by 2030, 500 gigawatt electricity power generation India will do with the help of renewable energy. And in this 500 gigawatt, 280 gigawatt will be total solar energy, 140 gigawatt will be total what? Wind energy. Rest of the value not given. Okay, so 420 gigawatt, you already got it through the help of these two. And I think in these two factual data, you understood very well, guys. Okay, maximum potential in the overall of renewable energy India have, so it is a solar energy. See here, neither why out of 175, 100 gigawatt you are telling here. Why out of 500, 280 gigawatt you are telling through the help of solar energy. Okay, so it's the information I think you can understand very well. The solar energy is where here, and see one thing more I want to tell you guys. In this case, hydroelectric power plant was not included, but you guys know very well hydroelectric power plant is also one of the example of renewable energy. Here what happened? Hydroelectric power plant is also included. The HEP is also count here. Please add on. HEP is also here, guys. So hydroelectric power plant is also included here in this case. So hydroelectric power plant also included here in this case. I think you guys have not any problem in this case, and you can understand very well. In earlier cases, HEP was not counted, measured, hydroelectric power plant, but here HEP is also added on. So here HEP is also there. Remember, here HEP is not there. It's a difference. Okay, it's a difference. Okay, now come. Actually, in the case of solar energy, some factual data is still required. Even if you see the 2020-22 question paper, UPSC has given the list of the factual data. Various schemes and programs brought to boost up the solar energy in India, like many of the schemes like Solar Charkha Mission, PM Kusum Yojana, lot of things, PM Kusum Yojana. So Solar Charkha Mission, PM Kusum Yojana, solar tree, floating solar plants, solar rooftop, many schemes, many projects government launched to boost up the solar energy sector in India. So these all at national level. What about the work is going on, and so on, guys, and so on. In the case of Solar Charkha Mission, I think you can understand, like for industrial purposes, government is promoting solar energy sector should be used to run the industry. So industrial power will run with the help of solar energy. So those people are going to install an industry, so you should have tried to run the industry with the help of solar energy. PM Kusum Yojana, here government is providing the solar water pump. Even million of the solar water pump has been distributed. And this pump will utilize for two purposes. One for irrigations, and if irrigation season is not there, so this pump will utilize for household uses. Household uses means for to run your electricity at your home. Of course, irrigation season not throughout the year, for particular period of time when the season will come. Irrigation is season is not there for irrigation in that case, because extra electricity is going to generate, you should have to use for your household purposes. It's a PM Kusum Yojana, you should know. Other side, solar tree. World's Guinness Book of Records in Ludhiana, world's biggest solar tree is there, and it is set up with one of the CSIR based laboratory. Okay.
Even solar tree you can see very well, guys. It's a Ludhiana wala solar tree. No, it's not there. It's a Ludhiana. Actually, earlier was the different Durgapur or कौन सा area था? Ludhiana. It's a picture. So it's a news. So world largest solar tree is there in Ludhiana. It's set up with the help of institution. CSAR का institution है. That name is CMERI. तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना. सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, लुधियाना में जो है, जो CSAR के अंदर काम कर रहा है. ओके, इसी ने ये पूरा लगाया है. व्हाट इट, सो इट सेटअप इट, आप देख सकते हैं. ओके, इट सेटअप हियर एंड यू कैन सी दिस पिक्चर हियर गाइस. तो इट्स अ ट्री टाइप ऑफ लुक. दिस पिक्चर इटसेल्फ डिफाइन व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ इट. आप आसानी से समझ सकते हैं इस पिक्चर में क्या कह रहा है. तो मैसिव एरियाज हैव अ पावर प्रोडक्शन. लुधियाना में लगाएगा और ये दुनिया का है. इट्स अ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आल्सो. ओके, अब ये नहीं जानना कितने बड़े एरिया. इसके पहले ठीक था, दुर्गापुर और बाकी चीजें भी थी. ओके, तो काफी बड़े एरिया से सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया. बाकी कोई जरूरत नहीं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. लीव इट. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट अबाउट द सोलर ट्री. तो CSIR की लैब है एक तरह से, CMERI, तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. Floating solar plants, like on the water bodies, you can install the solar panels. So ultimately, you people are not going to create any problem in the case of vegetation. Like Uttar Pradesh, like Bihar, Odisha, Jharkhand, Karnataka, where have a MP, Madhya Pradesh, where have a massive productivity. Agar you will install the solar panel, so sunlight will not come on the ground, plant will not do photosynthesis and productivity arrest. So that is the reason in these all the areas. This is the reason in these all the areas. Okay, better those water bodies are there, guys. If you install the floating solar plants, so in the case of floating solar plant, what will be the benefit? In the case of floating solar plant, guys, those water losses happen from the canals. नहरों से जो पानी loss हो जाता है. At the time of Modi ji, when he was a chief minister in Gujarat, some of the canal areas have a what? Floating solar plants. And what about the benefit of the floating solar plant? जो पानी में तैरते हैं, float करते हैं, हल्के होते हैं. जो इंटेंस सोलर हीटिंग होती है ना, जैसे कैनाल का पानी जो इवेपोरेट होकर लॉस हो जाता है समर में, एंड पीपल आर गेटिंग द डिफिकल्टी इन द इरिगेशंस, तो अब वो लॉस नहीं होगा बिकॉज द सोलर पैनल वर्क एज अ बैरियर. तो यू कैन रिड्यूस द लॉसेस ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल, वन साइड. एंड सेकंड साइड, व्हाट इज द बेनिफिट? ओके, सेकंड साइड, द बेनिफिट ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्लांट, आई थिंक वन पॉइंट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, वन बेनिफिट. एंड सेकंड बेनिफिट ऑफ द फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज व्हाट गाइस? नो कंपटीशन विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स. Okay, so I think the concept of floating solar plant you understood. भारत का सबसे बड़ा floating solar plants, UPSC as it is in Goa. No, it is in actually एक जगह है तेलंगाना में. Okay, नाम थोड़ा वो हो रहा है. That is in तेलंगाना, है ना, तेलंगाना. Okay, so इंडिया का सबसे बड़ा floating solar plant, it is in तेलंगाना. तेलंगाना स्टेट में है एक जगह, नाम नहीं याद आ रहा. एंड कमिंग प्रपोज्ड ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश. ओके, सोलर रूफटॉप, कम नेक्स्ट. सोलर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप, स्टेट बाय स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स आर गिविंग यू द सब्सिडीज. मैक्सिमम आई हर्ड इट इज गुजरात 30%, 40% तक दे देती है. अगर यू आर सम केबी ऑफ द सोलर पैनल, दे आर गोइंग टू इंस्टॉल एंड गिविंग यू सम रिलीफ ऑफ सब्सिडीज. So it's also the kind of promotion of solar energy sector. Okay, for your household uses, this solar rooftop will be for household uses. Okay everyone, fine. So it's some schemes and program that you should know. One more discussion that is important about the solar tariff. So one more discussion is required, that is called solar tariff. Actually those Ramagundam, yeah exactly, Ramagundam, it's not going to recall Ramagundam, right? कभी कभी नहीं ध्यान आता भाई. रामागुंडम, इट्स रामागुंडम, तेलंगाना, यहाँ पर है. अब प्रपोज जो है वो ओमकारेश्वर में है, इट्स मध्य प्रदेश. ठीक है, इन द कमिंग फ्यूचर मे बी
इंडिया सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा 22 में तो उन्होंने बोला भाई गोवा में सबसे बड़ा। अब देखना जब पेपर टर्न करोगे, जब बुक के लास्ट में जाओगे तो सब मिलेगा। सर विच हैज द मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी जनरेशन अमंग ऑल सोलर अल्टरनेटिव्स? कैसा ऑल सोलर अल्टरनेटिव्स बताओ विनायक, आई एम नॉट श्योर योर क्वेश्चंस। सोलर अल्टरनेटिव्स में क्या, सोलर के अंदर कुछ अल्टरनेटिव आपको पता होगा तो वो बताओ, और या फिर सोलर विंड ओशन इसमें पूछ रहे हो, उसमें तो आपको बता ही दिया सोलर हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके सो फाइन, सोलर टैरिफ इज व्हाट एक्चुअली दोस पावर जनरेशन हैपन विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, है ना, दे हैव सम प्राइस, और उसी प्राइस को हम कहते हैं सोलर टैरिफ। जैसे कोयले की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसका एक प्राइस होता है, उसे कहते हैं कोल टैरिफ। वैसे सोलर एनर्जी का जो पावर होता है उसकी एक वैल्यू होती है, उसे कहते हैं सोलर टैरिफ। सोलर टैरिफ डिसाइड कौन करता है? सोलर एनर्जी डिसाइड कौन करता है व्हाट शुड बी द सोलर टैरिफ? एमएनआरई कुछ कंपनीज के साथ डिसाइड करता है मिलकर व्हाट शुड बी द कोलर टैरिफ, सोलर टैरिफ। इंटरनेट पे सोर्सेस में जाओगे तो मिल जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी। पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन जब दिया था 18 का, उन्होंने बोला इंडिया में सोलर टैरिफ एसईसीआई करता है, तो यूपीएससी ने उस स्टेटमेंट को गलत कर दिया था। तो इसके हिसाब से एमएनआरई और कुछ कंपनीज हैं इंडिया में, वो डिसाइड करती हैं सोलर टैरिफ की वैल्यू कितनी होगी, वो डिसाइड करती हैं सोलर टैरिफ की वैल्यू कितनी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सो दे डिसाइड व्हाट विल बी द सोलर टैरिफ वैल्यूज। ओके सो दे डिसाइड व्हाट विल बी द सोलर टैरिफ वैल्यूज इन इंडिया। इट्स अ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने दिया था, वो स्टेटमेंट गलत था। ओके सो इंडिया में हु डिसाइड अबाउट द सोलर टैरिफ? तो एमएनआरई कुछ कंपनीज के साथ में, एमएनआरई इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एसईसीआई नहीं है क्योंकि यूपीएससी ने स्टेटमेंट एसईसीआई वो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया उनके अकॉर्डिंग। तो इंटरनेट के सोर्सेज पे आपको एसईसीआई भी लिखा मिलेगा, पर हमें उससे क्या लेना रहा, यूपीएससी के हिसाब से गलत था तो गलत। ओके सोलर टैरिफ इज चीपर देन कोल टैरिफ, मतलब कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी अगर आप खरीदोगे सरकार से तो 8 रुपए की मिलती है, और सोलर वाली इलेक्ट्रिसिटी कहीं मिल जाए आपको, पर हर जगह मिलती नहीं है, तो 3 रुपए की मिल जाती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर भी बहुत सारे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी आपको बताता हूँ धीरे धीरे, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इस कंसेप्ट के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ओके लगता होगा जैसे सर कोई मेंस की बात कर रहे हैं ना, अरे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है ना वो कंसेप्ट्स हैं। आप यूपीएससी के कंसेप्ट कभी पढ़ते ही नहीं सब्जेक्ट को, क्योंकि आपने कभी सब्जेक्ट बनाया नहीं ना साइंस एट को, आपने हमेशा साइंस एट का मतलब करंट्स बोल के निकल गया, इसलिए आपको ये नहीं पता होगा क्या है। आई मीन सोलर ट्री या फ्लोटिंग सोलर प्लांट या सोलर रूफ में से सबसे ज्यादा क्या है? सोलर ट्री तो एक ही है, बहुत लिमिटेड है, दुर्गापुर है, वेस्ट बंगाल, ऐसे 2-3 जगह, तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट फिर भी थोड़ा है, और सोलर रूफटॉप तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत स्टेट में आपको सोलर रूफटॉप गैस कर लो ना यार अपने आईक्यू से, सोलर रूफटॉप एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए, फ्लोटिंग सोलर प्लांट उससे कम होगा, और सोलर ट्री तो एक ही 2 है, ये तो आप खुद ही गैस कर सकते हैं। ओके ये आईक्यू टाइप वाली चीजें ध्यान रखना। ओके ऐसे ही क्वेश्चन में देख रहा था, केबीसी में पूछा था, बच्चों वाला जो केबीसी हो रहा था, ठीक है, उनसे पूछा कि बताओ कि इनमें से किसने टाइम में, है ना, वो 1857 में लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ, उसमें राजा राम मोहन राय लिखा था, महात्मा गांधी लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था, और एक लिखा था रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 थी ना, वो झांसी की रानी जिन्होंने उसमें किया, तो ऐसे मतलब उसके उसके नियर बाई जो ईयर होते हैं, जो वो उस समय का कैरेक्टर होता है उसी को, तो ये ऐसे आप खुद सोचो ना, आपके नियर बाई कौन सा कैरेक्टर है जो आपको दिखता होगा या समझ में आता होगा, या आप सोच सकते हैं। ये आईक्यू है, ये कोई वो नहीं है कि आपको इसके लिए कोई किताबी नॉलेज लेना होगा, यही तो डिफरेंस होते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ। ओके अच्छा, तो दिस इज सोलर टैरिफ टू मेक देम इजी, मतलब cheaper here at national level is some work is going on, at national level some work is going on, and at international level some work is going on. National level what about the work is going on? Government is providing subsidies, so different level of subsidies government is providing. Okay government is providing the different level of subsidies, वो है ना, मैंने बोला state by state. MNRE you already know very well, इंडिया में मेन लीडिंग मिनिस्ट्री फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू बूस्ट अप के लिए, इसके अंदर एक एजेंसी है, दैट नेम इज इरिडा, इट्स फुल फॉर्म इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी
डेवलपमेंट एजेंसी, IDA सेटअप, एंड IDA इज द UPSC क्वेश्चन ऑल्सो. IDA एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग एजेंसी है, कंपनी नहीं. इट्स अ नॉन बैंकिंग एजेंसी, पर काम बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे बैंक करता है. ये क्या करता है? सॉफ्ट टर्म लोन देता है. सॉफ्ट टर्म लोन देता है, किसी को चाहिए ले लो भाई, रिन्यूएबल एनर्जी में सेटिस्फाई होने के बाद. और एनहांस्ड एफिशिएंसी पे भी काम करता है, एंड वर्क टू एनहांस एफिशिएंसी. एंड वर्क टू एनहांस एफिशिएंसी. तो भारत के अंदर जो सोलर एनर्जी वगैरह है या सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है, कैसे और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं. ओके, ये हो गया. और तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेट मीटरिंग. नेट मीटरिंग. सो गवर्नमेंट इज गिविंग यू वन मोर ऑप्शन ऑफ नेट मीटरिंग. ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2016 में, IRIDA भी पूछा गया. नेट मीटरिंग. What about the meaning of net metering? It's very simple, guys. In the case of net metering, listen. In the case of net metering, what will come? See. Net metering के केस में क्या होता है जरा समझो. सरकार आपको कहती है कि you people can earn money with the help of renewable energy. मतलब you install the solar panel और पैसे कमाओ. क्योंकि अल्टीमेटली सोलर एनर्जी जब आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो ना, तो सरकार से नहीं खरीद रहे हो, तो सरकार का प्रेशर खत्म हुआ ना. और सपोज कोल टैरिफ वैल्यू इज गोइंग ऑन, कोल टैरिफ वैल्यू इज गोइंग ऑन 10 रुपीज एंड सोलर टैरिफ इज 3 रुपीज. और अगर यू आर गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर टैरिफ, तो अब पर यूनिट्स में 7 रुपए सरकार का बच रहा है ना. तो सरकार कहती है पैसा आपका है, तो सरकार आपको क्रेडिट कर देती है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में. तो दिस काइंड ऑफ बेनिफिट इज अ पार्ट ऑफ नेट मीटरिंग. तो फाइनेंशियल टर्न अराउंड इस तरीके से उसको समझो. और ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होगा, ज्यादातर तो सोलर एनर्जी में ही हुआ है. नेट मीटरिंग ऑप्शंस. तो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यू पीपल कैन डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस. एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म. आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल इंटरनेशनल सोलर अलायंस. स्टिल इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म. ISA means International Solar Alliance Firm. So ISA is what? International Solar Alliance Firm. International Solar Alliance. International Solar Alliance. International Solar Alliance set up where? इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया में ही बना है. इट्स इन गुरुग्राम. एंड द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस व्हाट? 2016 के आसपास ये लाया जाता है. 15 में फर्स्ट टाइम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस डिस्कशन हैपन. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करने वाला जो पहला बंदा था वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, 2015. एंड UPSC asked the question from international solar alliance 2 times in your paper. Okay, 2 times in your paper. International Solar Alliance, what about the work? At international level, country will support for what? Boost up solar energy sector. In this case, International Solar Alliance, there's a provision. Developed country will help to the developing country. Solar energy sector में मदद करेंगे developing countries. क्योंकि developing countries are poor, financially they are weak, ऐसे कह लो. तो उनकी मदद करेंगे क्या? पहला they will provide the financial assistance. फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मनी होगी, जो बोला जा रहा है अराउंड 1000 बिलियन $US इकट्ठा होगा जो डेवलप कंट्री जनरेट करेंगे और वो पैसे होंगे डेवलपिंग कंट्री को दिए जाएंगे. ऑफ कोर्स अगर यू वांट, आई टोल्ड यू गाइस, अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो पैसा चाहिए. अभी मैंने बोला गरीब हो गए देश में, तो हाउ यू पीपल कैन बाई LPG? आपको अमीर होना पड़ेगा एनवायरमेंट को बचाने के लिए. आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल. LPG कहां से खरीदोगे? तो वन, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. एंड सेकंड वन गाइस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सेकंड वन इज व्हाट? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो होती है वो डेवलप कंट्री, और आपको पता ही होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस कंट्री में होता है? डेवलप कंट्री. डेवलपिंग कंट्री जस्ट दे आर गोइंग टू बाई देम. तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो उनको डेवलप करेंगे एंड दे विल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू देम. लो भाई, यू यूज देम. दे विल डेवलप देम एंड दे विल प्रोवाइड यू, ओके गो एंड यूज देम.
तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा. इन दैट केसेस सोलर एनर्जी सेक्टर विल ग्रो इन इंडिया. तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखना. इंटरनेशनल सोलर लाइंस इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन. इसकी ओरिजिन होती है 2015 में. ओके, पहली बार ये डिस्कशन होता है 16 के आसपास, फिर ये लाया जाता है. ओके, जो मीटिंग हो रही होती है यूएनएफसीसीसी की मीटिंग होती है. यूएनएफसीसीसी फंक्शन इज द, वही आपने इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ी रखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग को सही करना है, ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करना है ना, ठीक लेवल पे लाना है. दैट ऑल द एंटायर डिस्कशंस आर देयर. दैट्स अ पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी एंड ऑल. काइंडली रिमेंबर इट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. Okay, this is important and this is a question in UPSC mains also. ये पूछा गया UPSC prelims में. उन्होंने बोला कि UN के सारे मेंबर दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस. एकदम गलत है. International solar lines have around 121 member in that time signatory. हाँ, in the reference of India, I can tell you India is a member of international solar lines. Okay, India is a member of international solar alliance. It's overall about the discussion. Now comes some miscellaneous energy sources. थोड़ा सा पढ़ते हैं और यहाँ पे I'll go toward a discussion of fuel cell and microbial fuel cell. So miscellaneous energy sources, fuel cell and microbial fuel cells. It's called as a MFCs. So fuel cell and microbial fuel cell. है ना, just like a battery, fuel cells. These all the things are very, very important. If you are going to do the study of fuel cell, ना, तो you should know about battery. है ना, battery versus fuel cell. First of all, you should know, and then we'll go toward the discussion of all. देखो, battery is very common and everyone know, because battery we all people are using in our house, in all the appliances. देखो ना, tablet और mobile phone मेरे सामने जो है, they have a battery. तो battery have certain chemical substance. Everybody know it very well. Battery have some chemical material या chemical substance. And this chemical substance is going to charge and discharge up to certain period of time. ये charge हो रहा है फिर discharge हो रहा है ना. They are going to charge and discharge up to certain period of time. तो battery have certain chemical substance and they are going to charge and discharge up to certain period of time. But fuel cell have presence of hydrogen fuel as a source of energy. इनमें कुछ नहीं, इसमें hydrogen fuel को use करो as a source of energy, and this is the reason fuel cell also called as a hydrogen fuel cell. Okay, this is the reason it is also called as a hydrogen fuel cell. Battery में क्या होता है? Battery is good to use for small size electrical appliances. It is good to use for small size of electrical appliances. Okay, and fuel cell every level. मतलब छोटे से बड़ी हर चीजों पे यूज कर सकते हैं. छोटे से मोबाइल फोन में लेकर बड़े से रॉकेट तक यूज कर सकते हैं. रॉकेट तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई जो ऊपर आसमान में सैटेलाइट्स मिशन वगैरह लेकर जाता है. इनमें डीसी करंट होता है, इनमें भी डीसी करंट होता है. तो करंट तो दोनों में डीसी ही होता है. इट्स अ सिमिलैरिटी. सो बोथ टू हैव प्रेजेंस ऑफ डीसी करंट एंड डीसी करंट. यहाँ पे हो गया सिमिलैरिटी. सो बोथ टू हैव प्रेजेंस ऑफ डीसी करंट एंड डीसी करंट. Okay, so both two have presence of DC current and DC current. Now come working mechanism of fuel cell. कैसे काम करते हैं ध्यान देना. चाहे 15 हो चाहे 2012 हो, ये सब ईयर में क्वेश्चन भरे हुए हैं फ्यूल सेल और माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे. ओके, 12 15 सब में आए हुए क्वेश्चंस. रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, दे आर रिपीटेड क्वेश्चंस. ओके, सो व्हाट अबाउट द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फ्यूल सेल्स. देखो जरा सीधा पिक्चर से समझाता हूँ, जरा समझना. It's a working mechanism of fuel cell. This is the anaerobic chamber. Anaerobic chamber means anaerobic chamber मतलब ये बंद है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा. Okay, anaerobic chamber means ये बंद है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा. Okay, this is the aerobic chamber. Aerobic chamber मतलब ये खुला है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना. ऐसे मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है. Entry of oxygen is there.
ये एक एनोड है, you should know this is the anode, it's a anode and this is the cathode, ये कैथोड है, this is the cathode। और ये एनोड और कैथोड एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हमने, सर्किट बना दिया। ऊपर एक काम करो, एक बल्ब लगा दो, एक बल्ब लगा दो, ओके एक बल्ब लगा दो। कैथोड हो गया माइनस चार्ज और एनोड हो गया प्लस चार्ज, ये तो आप समझ ही रहे हो। अरे कैनोड हो गया ये, एक हो गया माइनस, एक हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे हमने रख लिया हाइड्रोजन फिल, यहाँ पे हमने रख लिया दैट इज अ हाइड्रोजन फिल, ओके। यहाँ पर हमने रख लिया एक केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स अ इलेक्ट्रोलाइट्स and the electrolytes name is called as a platinum, जो सबसे कॉमन है। We have used the platinum as an electrolytes। देखना फ्यूल सेल में क्या क्या होता है, पहले जगहों पे चीजें भर देने दो। बीच में होता है एक सैंडविच मेम्ब्रेन, इट्स अ सैंडविच मेम्ब्रेन, सैंडविच मेम्ब्रेन, सैंडविच मेम्ब्रेन, सैंडविच मेम्ब्रेन, सैंडविच। इसको कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। We are calling them as a proton exchange membrane। Proton means H plus, exchange membrane। This is what? This is proton exchange membrane। So proton H plus, proton exchange membrane, okay। So it's a proton exchange membrane। Proton exchange membrane तो definitely do the exchange of protons from one side to another side, नाम खुद ही कह रहा है। If it is a proton exchange membrane तो they are doing the what? Transfer of protons। proton किसको बोलते हैं? H plus को। अब जरा समझो, इसको बंद कर दो, एनारोबिक चैम्बर है, लो बंद कर दिया। अच्छा एक चीज सुनो, मान लो मैंने वाटर लिया, सी गाइस इट्स वाटर, और वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो स्पार्किंग होती है? हाँ होती है। पानी है मेरे ग्लास में, इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दो, तार डाल दो, ऑन करोगे स्विच, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग ही एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस टाइप की चीजें समझो, है ना, कैटलिस्ट तरह की चीजें समझो। जैसे ही वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस बदलता है, ओके। सो वाटर इज गोइंग टू ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस। उसी तरह एक काम करो आप, है ना, आप क्या करो, हाइड्रोजन फ्यूल ले लो और एक कैटलिस्ट ले लो जिसका नाम है प्लैटिनम, जो नीचे लिखा हुआ है, और प्लैटिनम फ्यूल को तोड़ेगा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बनाएगा। इस रिएक्शन को प्लीज रिमेंबर, इसी के बेसिस पर आपको फ्यूल सेल पूरा समझ में आने वाला है। तो प्लैटिनम इज अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट, और एक कैसा कैटलिस्ट है? इन द केस ऑफ फ्यूल सेल दोज वी आर यूजिंग, they do the breakdown of hydrogen fill into H plus and electron minus। So they do breakdown of hydrogen fill into H plus and electron minus। और ये H plus electron minus से guys, they do the breakdown of it, H plus आया और इलेक्ट्रॉन आया। कौन? This platinum will do the breakdown of hydrogen fill, और हाइड्रोजन फिल को तोड़ेगा तो क्या होगा? H plus इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। H plus is what? H plus is a proton, H plus is a proton। और see here guys, it's a proton exchange membrane, so they do the exchange of proton from here to here, they do the exchange of proton from here to here, and proton they react with O2, and when the proton react with O2 it remove in the form of water molecule। the water as a byproduct is going to remove, water as a byproduct is going to remove, और यहां से खत्म, प्रोटॉन खत्म, यहां से प्रोटॉन खत्म। So water here remove it as a byproduct, and see another side guys, and at the end of this what happened? Electron left। this process continue। further platinum will do the breakdown of hydrogen fill H plus electron minus, and this electron minus will again increased here, and the proton will further come here, with the help of proton exchange membrane, and this proton again react with the O2 as a water byproduct, remove outside। Ultimately here what happened? The number of electron is going to rise, this side number of electron is going to rise। और सुनो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम है, तो this electron start to flow from here to here, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा। और I think you people know it very well, against the movement of electron क्या चलता है? करंट चलता है, बल्ब ऑन हो जाएगा, और बल्ब ऑन हो जाएगा तो क्या बनेगा? हीट या इलेक्ट्रिसिटी। देखो है, तो हाइड्रोजन फ्यूल से क्या हो रहा है? हीट या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। Again I will give you 1 minute and take this picture, खींच लो इसकी फोटो, don't waste your time and my time। I'll do some changes, it will become as a
हाइड्रोजन फ्यूल सेल. ओनली 1 minute आई एम गिविंग यू, जो करना है वो कर लो. I'm now coming to discussion of microbial fuel cell, MFCs. Actually, there are two changes only required here. It will become as a microbial fuel cell. Name itself is saying, guys, microbial fuel cell means what? Microorganism is used. And what about the food of microorganism? Organic waste. अब एक काम करो, do one thing. अब organic waste ले लो. अब where is the organic waste? अरे very common, guys. Sewage water, any water treatment plant, any contaminations are there, organic waste are there. In this organic waste, you just keep microorganisms. You just keep a microorganisms. There are certain microorganism has been identified. There are hydrogenating bacteria. There are hydrogenating bacteria. Hydrogenating bacteria. What the bacteria are doing? These bacteria, if you keep it inside organic waste, they do the breakdown of organic waste and finally they form proton and then electron. हो गया कहानी खत्म. जो काम पीछे प्लैटिनम कर रहा था फ्यू हाइड्रोजन के साथ, वही काम यहाँ पे बैक्टीरिया कर रहा है किसी ऑर्गेनिक बेस के साथ. बस इतना ही डिफरेंस ध्यान रखना है. ओके, तो बेटर आई टेल यू, इस इक्वेशन को पहले लिख लो, माइक्रोबियल फ्यूल सेल को. बस अब नाउ यू शुड हैव टू कंक्लूड योर आंसर्स. इट मींस साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड सर्टेन बैक्टीरिया. लिसन माय लाइन. इट मींस साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड सर्टेन बैक्टीरिया. Okay, they do the breakdown of organic waste and do the formation of proton and electrons, and this is what hydrogenating bacteria. Okay everyone, अब this is the same thing that I'm going to add on in the fuel cell. यहाँ पे एक काम करो, अब एक काम करो, जहाँ पे you mention the hydrogen fuel ना, ये यहाँ हटाओ, यहाँ लिख दो organic waste. Here you just mention as organic waste. And here as you people have seen the platinum वगैरह ना, इसको हटाओ, यहाँ लिख दो that is a bacteria as a catalyst. Rest you people understood very well. Every process as it is going to happen, those you people have seen in the case of fuel cell. Bacteria become active in the anaerobic site. ऑक्सीजन नहीं है, इधर एक्टिव होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा. सेम थिंग, H plus electron minus generates. Bacteria do the breakdown of organic waste. H plus electron minus generate. H plus is the proton. Proton exchange may be transferred there. Proton react from water as a byproduct. Electron number increases. Electron here more, electron here less. Electrons start to flow against the electricity move. This is the entire process that you can see here, guys. और I think इनमें से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देख लो. So easily I define you here what is going on in this case. But I don't think so anyone have problem. Okay, it's a very simple concepts that I describe you here. अगला आपको बता देता हूँ biomass gasification. Okay, the next biomass gasification, then biofuel, और फिर आपको थोड़ा lithium-ion वगैरह भी पढ़ा देता हूँ. Lithium-ion बैटरी वगैरह.
Next one is biomass gasification. Another process, biomass gasification. Many questions UPSC asked biomass gasification, on the biomass gasification. So coming to the discussion of biomass gasification. What is here in the case of biomass gasification? See here guys, try to understand. इसमें होता क्या है? See. Okay, so what is going to happen in the case of biomass gasification? See, there's a lot of waste available. Okay, lot of the biomasses are available like coir, coconut coir, outside wala material, like okay, so coconut coir. The next one you can see like bagasse, sugar cane wala जो बच जाता है stem, juice निकालने के बाद, like stubble burning जो लोग करते हैं. Okay, rice husk है ना, अच्छी खासी राइस की जो भूसी भूसी बच जाती है, etc. There are so many of them, the biomasses, those generate from India हर साल, bulk and bulk. So lot of the biomass generate in India in the bulk, coir, bagasse, stubble, rice husk, etc. These all. अब एक काम करो, इन सबको ना गैसिफिकेशन प्रोसेस से ले जाओ. अगर you people do the open burning, इनको सीधा लो और जला दो. If you will do the open burning guys, they create the massive environmental pollutions. और यही दिक्कत है जो दिल्ली को सफर करना पड़ता है स्टबल बर्निंग से इन द आउटस्कर्ट एरियाज ऑफ दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना, पंजाब, दिस ऑल द स्टेट्स दे आर बर्निंग द स्टबल. स्टबल वही पौधों के जो बचे कुछ पार्ट होते हैं, उनको रात की अंधेरे में या दिवाली वाले फेस्टिवल के उसमें है ना, वो रात में पूरा केरोसिन डाल के आग लगा देते हैं एंड दे मेक फ्री दिस होल इंटायर फील्ड फॉर द नेक्स्ट growth of constitutive crop. And open burning happen, though they create the massive environmental pollutions. Are those method I am telling you biomass gasification. इनमें हम इन्हीं biomasses को open burning नहीं करते, पहली चीज. And they are not creating the pollution. That is the reason I can tell you biomass gasification is the sustainable method. It is a sustainable method for the utilization of biomass. It is a type of sustainable method for the utilization of biomass. It is a type of sustainable method for the utilization of biomass. It is a type of sustainable method for the utilization of biomass. Sustainable method means no problem for the present and even also not for future. Okay, so there's no problem in present and also no problem for the coming future. It's a sustainable. Okay, what we are doing in the case of biomass gasification process, we are going to keep the biomass in a closed container. Okay, we are going to put the biomass in a closed container. मतलब कंटेनर खुला नहीं है, बंद है, मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. Okay, at very high temperature, at very high temperature, at very high temperature. Okay, at very high temperature. ये थोड़ा देख लेना, एक मिनट.
Okay, so it's a closed container and at very high temperature, and the high temperature burning is called as a pyrolysis. The high temperature burning is called as a pyrolysis. And what about the process we are doing? अच्छा खासा 600 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो, pyrolysis में अच्छा खासा टेम्परेचर होता है. So in the case of biomass gasification process, what we are doing? We are putting a biomass in a closed container. We are putting a biomass in a closed container in the absence of oxygen at very high temperature. Okay, high temperature burning is called as a pyrolysis process. Pyro means high temperature, lysis means breakdown. Okay, and in this case, guys, as result, whatever we got it, and we got here in this case, okay, it's a kind of fuel. Okay, in this process, we people got a fuel, and this fuel को we people utilize for the electricity generation. मतलब इससे electricity भी बना सकते हैं. Okay, तो ultimately biomass gasification what you got? ये waste हुआ, ये waste हुआ, और ये सारा process हुआ. It's an entire process जो आपने देखा, and through the help of process हमने क्या बना लिया? As a fuel बना लिया. And this is also one of the method of disposal of solid waste. This is also a method of what? Solid waste disposal. ये भी आपको समझ में आता है. This is also a method of what? Solid waste disposal. I think everybody clear here in this case. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. So this is also a process of solid waste disposal that you can see here very well. अब the whole entire information as a theory I mentioned here, I want to show you with the help of pictures. And through the help of picture, everybody understand very well. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. See here. आप एक काम करो. You just see here, guys. Okay. It's a inlet. It's a inlet. It's a inlet. It's a inlet. From where you people are going to put the biomass. It's a inlet from where you are going to put a biomass. It's an inlet. It's a grinder machine. What is it? It's a grinder machine. It's a grinder machine. So it will keep it into small pieces. It's a grinder machine. Okay, grinder machine. और ये है एक container. See here, guys. It's a container. Okay, it's a container. It's a container. Okay, it's a container. See here. और this container is totally closed. मैंने बोला था in the absence of oxygen तो container closed है, तो कोई गैस अंदर आनी नहीं. It's a container closed. Okay, and here I am giving it the high temperature. है ना, ये आप दे दो LPG सिलेंडर, अच्छा खासा टेम्परेचर, इसको गर्म करो. And the process of pyrolysis, you guys know very well. The temperature is very high, 500-600 डिग्री सेल्सियस. आराम से it will burn. और ज़्यादा भी, no worry, more than that. And here I just put it the biomass. It's a biomass. So and many of the example of biomass you already have seen. So many of the example of biomass you already have seen. Here. Okay. So many of the example of biomass you have seen. It's a process. अच्छा, grinder machine, why it is important? Suppose biomass is big in size. So grinder machine will keep into small pieces. Okay, and when the biomass is going to burn there, guys, ultimately have a ash content. यानी राख निकलता है, राख बचता है, ash content. So ash content is going to come outside from the container. Biomass burning, ash content is removing. In this process, थोड़ा सा ध्यान देना. In this process, okay. Some of the particles are going to come outside. Some of them are a large size and some of them are a small in size. जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. Okay, and one thing more I'll tell you guys. यहाँ पर जो भी चीज निकले उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे निकलते हैं. कड़ा भी आपको बताऊंगा इन दिस पार्टिकल व्हाट आर देयर. कुछ गैसेस भी है. वेट, बहुत सारी चीजें निकलती हैं जल के. कुछ बड़े पार्टिकल समथिंग छोटे, वो आगे धीरे slowly gradually they will separate in various process. Okay, so now at very high temperature they are coming outside. Come outside. Come outside. Come outside. Now it will come to the next container. And next container have some process. Next container have some process. And यहाँ पर that is the one of the machine. And this machine is the ultra centrifugation machine. And this process called ultra centrifugation process.
Ultracentrifugation process is a kind of rotatory machine. They will move very, very fast, very, very fast, very, very fast. And whatever the air and everything's upside, they're forcibly going to come downside. And I want to tell you guys, it's a rotator fan, just like exhaust fan you people have seen inside your houses. The same example I use inside the class to simplify the concept. The exhaust fan direction, you're just going to keep it from top to bottom side. So those gases are, the particles are large in size, they are heavy, and they will settle down. They will settle down. And we are going to do collection here, guys. They are going to settle down. They are here settled down. And this is what? This is a solid particles. And these solid particles are called as a biochar. And this biochar is also UPSC question paper in 2020. Okay, I'll discuss with you. Okay, 2021 prelims, UPSC has the question of biochars. Some environment topics, teachers are coming, this is the environment. Some agriculture people are telling that is agriculture. Okay, so it's a biochar material that I got it here in this case of biomass gasification, the first part. Small size of particles, they are very, very hot also, because here the temperature is very high. So whatever the material is coming, it's very hot. And I'm now here, you do the next process. Okay, next process you do. In the next process, you just throw a water. You just throw a water. It's a water. That water is spray you are doing here, guys. Water is spray you are doing here, guys. It's a water spray. Okay, it's a what? It's a water spray. It's a water spray. When you do the water spray, guys, those gases are very, very hot here. Those gases are very, very hot here, guys. Acha, this process of throwing a water is called as technically quenching process. This is called as a quenching process. Here, this rotatory fan process called ultracentrifugation. When the water will come, those gases are very hot, they will become cool down. And when the gases will cool down, those are here, guys, they will become liquid. It's a water that you can see here. It's a water that you can see here. It's a water. And it's what? It's a what? It's a gases, those are going to cool down. It's here, guys. Those gases are cooled down, it's here. And this gas is called as a bio oil. This is called as a bio oil. Oil and water mixing never happened because of difference in density. And this is the reason the oil will float on the water. Okay, the water you just remove outside. Okay, and now the oil you just collect here, guys. And this is what? This is bio oil. And bio oil is what? It is in liquid form. Bio oil is what? It is in liquid form. Bio oil is in liquid form. Now here in this case, whatever the emission is going to happen, there are so many gases are there. The gases are like methane is there, carbon monoxide is there, hydrogen is there, and some more gases are there. But these all the gases not naturally present. They all generating because of this synthetic process. And this is the reason these all gases are called as a syngas. Syngas means synthetic gas. Actually, synthetic gas, methane also here. But the main gas which is considered worldwide as a synthetic gas is the carbon monoxide and hydrogen. But again, I'm telling you, methane is also synthetic gas. But which one is very common synthetic gas worldwide? Everywhere it is available. So carbon monoxide and hydrogen. And see one thing more here. How interesting it is, guys. A methane we got it, and this methane we got it, and methane is a fuel. Everybody know. Carbon monoxide is dangerous. I think you people know very well. So carbon monoxide you just stopped here. You absorb here. There is some material that is called as a scrubber. Scrubber we people use in the environmental pollutions. Just the absorber you can call them. They absorb the carbon monoxide. So carbon monoxide will not come up in the open atmosphere. If carbon monoxide will come in the open atmosphere, you know, through the help of inhale, it will come inside your body, and oxygen will lose to binding with the hemoglobin protein inside your body. Due to suffocation and less energy, you people can die. So carbon monoxide should not come in the open atmosphere. It is more dangerous in the carbon dioxides. Hydrogen you can use as a fuel. Everybody know it's good. And methane you can also use as a fuel. Everybody know. Okay, the methane those are going to emit, guys. It is not less in amount. It is more and more in amount. So some of the methane you just take. And burn this container from outside. Why? Because ultimately you people are not going to waste right now extra LPG. Some methane is coming and they are going to burn the biomass container from outside, and that is a closed burning inside, guys, and oxygen is not coming inside. So every reaction is going to happen in the closed container and very high temperature. Those statement you people have mentioned there.
In a closed container, absence of oxygen at very high temperature burning. So it's entire process here, guys. It's totally closed, oxygen is not coming. Then absence of oxygen, we are doing the burning of biomass very high temperature. You can see here, it's a pyrolysis process. So some of the methane you are doing it. Another methane, guys, directly this methane you can send to the combustion engine. Combustion engine means where the methane burn. Combustion engine means where the methane burn. And when you people pass to the combustion engine, then it will generate a heat, and this heat you can utilize for electricity generation. As coal we are going to utilize for power generation. Coal still generate the heat, and that heat we are utilizing to boil a water generate a steam. Here same thing, in the place of coal we are going to use methane. Coal when burned, they create the environmental pollution, but methane when burned, they never create the environmental pollution. Everything in the sustainable manner. And how interesting it is. The waste, biomass, etc. Okay, those farmers doing the burning, better you give me your stubble, I will give you electricity. How much it is interesting. Okay, how much it is interesting. So I think you are not sleeping, guys, because this time after the lunch is very, difficult wala timing. I can understand very well. The reason is biological clock and nap. Okay, it's a kind of circadian rhythms, biological clock, and for that purposes, 2018 mein 3-4 scientists got a Nobel Prize. Okay, so kindly remember it. Just check it, guys. Don't think so anyone have problem in this understanding, and you all the concepts very clear here. देख लो इसका फोटो ले लो, 1 minute I am giving you right now. और अगर you have any queries तो you can ask me, क्योंकि ये फिगर आगे निकल जाऊंगा मैं. So better you take this picture. Don't try to make it. और अगर साथ बना लिया तो it's good. And अगर you are getting this access of videos and all further, तो बाद में आराम से बना लेना. Some more discussions are required here, like biochar, coal ash, fly ash, है ना. ये सारी चीजें कुछ और हैं, that is required for the discussion here right now. One minute I am giving you only. जो करना है कर लो भाई 1 minute में. Now come into the another concepts like coal ash, fly ash, and biochar. Only according to the prelims you should know. See, coal ash and the fly ash, these both two sources are same, burning of coal. Okay, these two sources are what? Burning of coal. These two sources are burning of coal. But the difference are there, guys. When the burning of coal happen, okay, those ash content generates. If they are heavy in weight, so they will settle down. Coal ash. If they are light in weight, so they will suspend in the atmosphere. They will float in the atmosphere, called as a fly ash. This fly ash, if you collect inside the container, after suspension, they will also settle down. This fly ash have their own advantages and they have their own disadvantages. They have their own disadvantages and they have their own advantages. Even coal ash have a disadvantages also. This coal ash have also disadvantages. Okay, disadvantage depends. They may have presence of heavy metals. They may have presence of heavy metals.
So they may have presence of heavy metals like mercury, arsenic. I just told you guys in the beginning, lead, cadmiums, etc. And they all are naturally available inside the coal. They all are naturally available inside the coal. Okay, they all are naturally available inside the coal, and they come in the coal ash. And this is the reason sometimes the coal has become very toxic for the life, very dangerous for the life. Very much clear, sir. Not sleeping, sir. Okay, okay, good, good, good. Why scrubber is used? Please explain. Arey Vinay, agar scrubber you will not use now, bacha. So directly this, okay, carbon monoxide will come in the atmosphere, and you people can come under the exposure of carbon monoxide. It is dangerous. Sir, ultracentrifugation does not wash out gases with solid article. नहीं, नहीं विवेक. उस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है. Vanshika, done sir, all clear. Okay, come. So it's a disadvantages. It's in the case of, and that is a question in 2020 prelims also. ये भी पूछा गया है कि मतलब coal ash have presence of it. हाँ वो होता है. Even when you're doing the coal washing, I told you in the beginning, still the heavy metal will come and go and make a water as a contamination and a water contaminant. Okay, it's there. What about disadvantages and what about the advantages in the case of fly ash? देखो, fly ash is a kind of black carbon. Okay, fly ash is a kind of black carbon, and black carbon is a kind of aerosol particle. And aerosol particle and black carbon, they are responsible for greenhouse. They are the greenhouse effect, तो मतलब global warming, and still not good for the human health, and not good for the human health. Suffocation, cardiac stroke, these kind of problems are possible. They can block the alveoli that जहाँ पे lungs के अंदर the air is going to enter. वो सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. Okay, so these kind of problems are possible here in this case. What about advantages of fly ash? देखो fly ash को ना they have a lot of demands in the cement and the brick industry. And they have a lot of demand in cement and brick industry. तो cement and brick industry में अच्छा खासा demand है to make them fire resistance. तो ये कंपनियां बोलती है ना कि इनमें आग नहीं लगेगा ये कुछ, to make them fire resistance. To make them fire resistance. Okay, to make them fire resistance. This is the problem here in this case. Okay, so demands, so to make them fire resistance as the first part. Okay, second one, अगर किसी brick in the cement वगैरह में अगर you are doing the mixing of this fly ash ना, तो up to 20% water requirement, up to 20% water consumption, and up to 20% water consumption reduced या reduces. जब आप building construction करते हैं उसमें 20% तक water consumption reduce हो जाएगा. So up to 20% of water consumption reduced. So up to 20% water consumption will reduced. Advantages. तो अच्छा खासा you can do the conservation of water benefit. और तीसरा ये कि एक सीमेंट है जो बड़ा अच्छा है जिसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, बड़ा महंगा है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, डू द मिक्सिंग ऑफ फ्लाई ऐश, या उसको फ्यूचर में रिप्लेस भी कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन डू द रिप्लेसमेंट ऑफ इट. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन दिस केस ऑफ फ्लाई ऐश, दैट यू शुड नो. Okay, so we can do in the case of fly ash. So it's overall about the coal ash and the fly ash. You people very clear. यहाँ पे ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता बताने के लिए. Now come into the discussion of biochar. So next discussion is what, that is a biochar. Biochar, you people know very well. It's a byproduct. Actually, you just see here, guys. In this whole entire process, this is the byproduct. This is the byproduct. Okay, this is a byproduct, and this is what? This is the end product. End product, and that is in between. I can tell you, biochar is the byproduct in biomass gasification process. I don't think so anyone have problem in this understanding. Okay, so what is the biochar? Is a byproduct. It's a byproduct. It's a byproduct under biomass gasification process. Under biomass gasification process.
So it is a type of byproduct under biomass gasification process. Okay, so it is a type of byproduct under biomass gasification process. You people remember it. और पता है इस बायोचार का अपना एक पॉजिटिव है. Okay, they are richer source of nitrogen and phosphorus compound. One part, they are richer source of nitrogen and phosphorus compound. And you just tell me guys, अगर they are richer source of nitrogen and phosphorus compound, इसका सीधा मतलब है ये एक तरह का फर्टिलाइजर है. If they are richer source of nitrogen and phosphorus compound, they are richer fertilizer. और इसकी वजह से UPSC asked the question about the biochar 20-21 के आसपास, उन्होंने बोला they increases the microbial growth in the soil. भाई अगर नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर सॉइल में बढ़ेगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी के साथ सॉइल के माइक्रोऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी क्योंकि उनको भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना. Okay, and many people have ticked the answer. This is definitely right. Portland cement आज मार्केट का सबसे अच्छा सीमेंट मानते हैं. Okay, श्रेया. Okay, so nitrogen phosphorus compounds so that we can use as a fertilizer, and UPSC asks the question, they induces a microbial growth in the soil. Definitely right, they induces a microbial growth in the soil. इतना सोचना ही नहीं है क्योंकि they are fertilizers ना. और वैसे भी you people know very well nitrogen, phosphorus and potassium as a fertilizer people are using in the field. Nitrogen, phosphorus fertilizers, potassium, and NPK करके in the school time you read it guys, nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, another one, mixing of biochar in the soil reduces leaching process. अगर this biochar mixing you do with the soil है ना, इससे क्या होगा, the leaching process will slow down. Leaching process will slow down. और अगर leaching process is slow down तो you don't have rid of water as irrigation and more application of chemical as a pesticide in the field. आपको पानी कई बार खेतों में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि जो बायोचार होगा ना वो पानी को होल्ड करके रखेगा ऊपर की सॉइल में, नीचे नहीं जाने देगा काफी देर तक. एंड दोस केमिकल यू अप्लाई ना, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, उसको भी होल्ड कर देगा. दैट विल आल्सो नॉट गो डीप इन द ग्राउंड. तो फार्मर्स को एक बार में ही पानी खत्म हो जाएगा, एनफ हो जाएगा पौधे के ग्रोथ के लिए. और एक दो बार का फर्टिलाइजर ही एनफ होगा, आपको कई बार नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे वाटर लीज डाउन करके फर्टिलाइजर को भी नीचे ले जाता है वाटर टेबल में. एंड योर वाटर टेबल इज गोइंग टू टॉक्सी टाइम टू टाइम. तो अल्टीमेटली यू कैन सेव द वाटर टेबल क्वालिटी. It's there here in this case. अब ऐसे भी roots are actually growing toward the upper layer of the soil. जैसे ये देखो, see this picture. It's a suppose downside is a water table. Suppose it's a downside is a water table. This upside is the soil, and this is what? This is the plant root. This is the plant root. Plant root. Okay. When farmer apply the water, the water is here certain period of time. यहाँ तक कुछ समय के लिए होता है. या केमिकल फर्टिलाइजर्स तो वाटर इज अवेलेबल है तो यहां तक तब तक रुका होता. धीरे धीरे इट इज गोइंग टू लीज डाउन एंटर इनटू द वाटर टेबल. अगर यू डू द मिक्सिंग ऑफ बायोचार हियर तो पानी यहाँ रुक जाता है, केमिकल भी नहीं नीचे जाता, एक ही दो बार में पौधे के लिए एनफ होता है. तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द टॉक्सिसिटी, इंक्रीज इन द टॉक्सिसिटी इन द वाटर टेबल. ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है, एक दो बार एप्लीकेशन एनफ है प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए. प्रीवियस लेक्चर वी स्टॉप ऑन द फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल. ओके okay everyone, so start with the biofuel. Okay, biofuel. Good morning everyone, good morning. Okay, biofuel, here you will get two words. The one is bio and second is fuel. Bio means living organism. Okay, bio means living organism, and fuel itself describe fuel means fuel as a source of energy. So how you will introduce as a biofuel? It is a fuel derived from living organism. It's the simplest way to understand about the biofuel guys. What about living organisms? Plants, animals and microorganisms. So plant, animal and microorganisms. So those fuel are derived from living beings are called as a biofuel. Those fuel are derived from living beings are called as a biofuel. You please remember. Okay, so those fuel are derived from living beings are called as a biofuel. It means this fuel derived from plant, animal and microorganisms. Okay, plant, animal and microorganisms. Okay. Actually, this is a very important topic. Even in 2023, one of the question came in UPSC mains examination
right? What about the importance or uses of microorganism in biofuel production? Okay, it was UPSC mains question paper 2023. So those people have listened my entire foundation batch classes. They found this answer very easily. It was not a current affairs wala question like any of the magazine published and you read it and you got this question directly. No, it was a general question, static questions. So now come into generation of biofuel, and here many example of microorganism you will also get somewhere. Okay, so generation of biofuel, and you start first with the first generation biofuel. First generation biofuel. So you start from first generation biofuel. Now what you will get in the case of first generation biofuel? So biomass burning of biomass. Okay, like biogas system. These kind of example are the first generation biofuel. These type of examples are first generation biofuel. Okay, these type of examples are first generation biofuel. Okay, biomass burning means, of course, you know, very well in the rural areas, still what the people are doing, they burn the woods and all. It's a what? Biomass system. Okay, even they create the environmental pollution, okay, but maximum people in the rural areas, they're still using the wood, burning of wood, because LPG is costly. Okay, biogas system, you know very well, and here in the biogas system in the previous lecture you already have seen microorganism use. So this is one of the example where the microorganism is going to decompose the organic waste. Where microorganism is going to decompose the organic waste, biogas, you people got it here. First generation biofuel. Okay, in the first generation biofuel, actually mostly edible plants are here, guys. In this case, mostly edible plants are here in the case of first generation biofuel. So in the case of first generation biofuel, mostly edible plants are here. I can give you some example like sugarcane. From the sugarcane, guys, you will get the molasses. Okay, molasses. Okay, molasses is the richest source of carbohydrates. Molasses is the richest source of carbohydrates. Okay, molasses is the richest source of carbohydrates. Through the help of fermentation process. Fermentation is a use of microorganism like yeast, etc. Again, you know what you got. Okay, there is a ethanol formation. Still here you got what? Use of microorganism here, use of microorganism here. So still you got use of microorganism and use of microorganism. Okay, so I'm telling you this is the mains question paper, but indirectly you are getting here prelims question paper also. मतलब prelims कोई पढ़ो, mains का question नहीं बन रहा था. Okay, mains का question यहाँ पे बन रहा था. Okay everyone, sugarcane. Another example, one more I can give you guys, maize. Maize means makka. Maize. Another example is maize. Maize plant have seeds, and maize seed is the richest source of carbohydrate. Maize seed is also richest source of carbohydrate. So maize seed is also the richest source of carbohydrate. If surplus production of maize happen, so you take the seeds and do the fermentation process, is the richest source of carbohydrate. It will further convert into ethanol, and ethanol mixing we are using with the petrol. Ethanol mixing people are doing with the petrol. You should know it, guys. Here in this case, first generation. Now come next, that is the second generation biofuel. And I told you guys biofuel have a 7 to 8 question in your paper. 7 to 8 question UPSC has in your paper from biofuel. Okay, biofuel. In the case of second generation biofuel, okay, generally non-edible plants are the main source
for oil production. And here I will give you the example of Jatropha and Pongamia. Those are more popular. Jatropha is also called as a Ratan Jot. And one more plant is called as a Pongamia pinnata. Only you people remember Jatropha, Jatropha curcus, Pongamia. So Jatropha and Pongamia. Jatropha and Pongamia. And you know, these plants are very popular. In the old pattern of UPSC examination before 11, okay, you will get the question like which plants are the biodiesel plant. The answer is what? Jatropha and Pongamia. Jatropha and Pongamia. These Jatropha and Pongamia, okay, have their own seeds and leaves. These seeds and leaves have some juices when you make separate, and they have a lipid materials. Lipid is a kind of similar to fat. This lipid from the leaves and seeds you separate and then do some trans-esterification reaction and do trans-esterification process. Trans-esterification means TE. Then the lipid will convert into biodiesel. Then it will convert into biodiesel. And this biodiesel mixing people are using with diesel. Remember. So ethanol mixing we are doing with, you know very well. Okay, everyone. In the case of second generation of biofuel, some more information you should know. What about some more information? See, lignocellulose material. Lignocellulose material. Lignocellulose material. Okay. If you take a plant, guys, their cell wall is made up by cellulose. Generally, plant have a lignin and cellulose compound. Okay, lignocellulose material we can also use for biodiesel production through the help of some fungal activity, and the name of fungi is called Gliocladium roseum. This is a Gliocladium fungi. This is also one of the microorganism. It converts the lignocellulose material into biodiesel. It converts the lignocellulose material into biodiesel. Okay, lignocellulose material into biodiesel. That's a one more example of microorganism you can see here. So this is one more example of microorganism you can see here. And see one thing more, guys, here in this case. Listen. I just want to give you some more example like maize byproduct. See, maize plant seed used for ethanol production, and maize plant byproduct means their own leaves, their own branches. Okay, they have a lignocellulose material. Okay, they can be converted into biodiesel. How interesting. So each and every body parts of maize crop can be used for many purposes. Maize seed used for the ethanol production, and maize based byproduct have a lignocellulose material, they can be used for the production of biodiesel. In that way, guys. Okay, in this way we can use the maize. Some more example I'll tell you, like a neem seeds. Neem plants, neem seed have a presence of oil. Neem seed have a presence of oil, and this neem seed oil have many uses. I think you know very well, neem coated urea, UPSC question. And this kind of urea can be decomposed up to certain level. So one is a neem coated urea. Okay, so one is as a neem coated urea. Second one, it can be used as a biopesticides to kill the insects. You can use the neem oil as a mosquito repellent. Okay, and it can be also used for the production of biodiesel. Here I mentioned the neem plants as a separate topic.
So 1, 2, 3, 4 question option UPSC can make. So kindly remember. So 1, 2, 3, 4 option UPSC can make. Okay, kindly remember. So neem coated urea. Okay, it's a neem coated urea. So it's a second generation, but overall I think you people understood very well. Each and every plants are what? Non-edible. Neem seed, nobody's are eating them as a food. Okay, nobody's are eating them as a food. Okay, so second generation done. Now come third generation. Remember, 7-8 question, not less in numbers. It's a very, very important topic. Even last year mains question paper, use of microorganisms, UPSC asked. Now come third generation biofuel. Third generation biofuel is called as a algae oil. Algae oil means algae plus oil. Algae oil means what? Algae plus oil. Remember, algae oil means what? Algae plus oil. Okay, and one more statement I'll tell you guys. Algae are very specific group of plants. Maybe you guys know. Algae are very specific group of plants, and this is aquatic in nature. They are growing in water bodies. And in every kind of water UPSC, even UPSC asks the question, algae are in the ocean, not on the continent. Wrong. They are aquatic and every kind of water bodies they grow. They are aquatic and every kind of water body they grow. Fresh water and marine water. So every type of water algae grow. Fresh water and marine water all. Okay. Actually, certain algae are discovered where up to 80% of dry weight, 70 to 80% of dry weight have presence of lipid compound, or lipid content. They have lipid content. Some of the example I'll try to tell you: Botryococcus brownie, Cyochytrium, Chlorella, Dunaliella, many of them guys. These two are more popular. These are not. Botryococcus, Cyochytrium, these are more popular. Okay, algae. These algae you grow. Okay, and just separate these algae from the water bodies and take their own juices. The juices have what? Lipid material. Just like sugarcane juices have a carbohydrate. Here have a lipid materials, and this lipid through the help of transesterification process convert into biodiesel. You people always remember guys, ethanol mixing with petrol and biodiesel mixing we are doing with diesel. So ethanol mixing with petrol and biodiesel mixing is what? It is with diesel. Everybody remember. Okay, biodiesel mixing with diesel, everybody remember. Okay, biodiesel, you people remember. Okay, now question is, dry weight means I think you can understand very well guys. Algae are aquatic. When the algae are growing in the water bodies, water absorb on the surface. Water absorb on surface. Okay, even water absorb on surface. So just make algae outside, make in the sunlights. What happen? Moisture remove. Okay, and the plant become dry, algae become dry. And now those lipid is there. Okay, it's a dry weight. It's a dry weight. Now question is, how third generation is better than earlier generations? Now question is, how third generation is better than earlier generation? Here I'll tell you guys in the case of third generation how it is better than earlier generation. See, one, fastest growing in the nature. Fastest. A jatropha will take 2-3 years. They will take just 2-3 days. So every 2-3 days have a massive productivity of algae. So massive productivity of algae, the massive productivity of biodiesels. Even in 1 hectare of area,
10 to 100 times more biodiesel production happen. In 1 hectare area, 10 to 100 times more biodiesel production happen. So in 1 hectare area, 10 to 100 times more biodiesel production happen in the case of alga in comparison to other plants, jatropha, sugar cane, any other plants. This much of product is there, guys. So of course it is economically viable for the farmers. It is literally economically viable for the farmers. If anybody want to go in this kind of business, it's literally economically viable. Or I think you can understand very well why so. It is economically viable. Third one, guys. Wastes of algae, the waste of alga have a richest amount of protein, and protein is a good fodder. The wastage of alga, okay, the waste of alga is what? Okay, waste of alga has a protein rich diet, so we can give them to the cattle as a fodder. So we can give them to the cattle as a fodder. The cattle will eat them as a food, and protein rich diet will increase their own stamina also. Okay, and protein rich diet will increase their own stamina. Protein rich diet increase their own stamina. Okay, fourth point. Okay, fastest growing and all, no competition with food crops, because here you are not growing a plant on the land, guys. So no competition with food crops. So in this case have no competition with food crops, kindly remember. So in this case have no competition with food crops. Okay, no competition with food crops. So in that way you people should remember algas are the best viable options for the coming future. Only and only one problem is there I want to tell you. This transacidification process is a difficult process. Neither each and every things are better in the case of alga based biodiesel production. Transacidification is a difficult process. It is an entirely a chemical reactions. Okay, and lipid is a kind of fat that is already available into the alga. It is available into the jatropha. Okay, alga and jatropha. So remember it. Okay, Vivek, Afroj and Nikita. Everyone answer I have given you. The fungi can also become as a biofuel sources. Why not? They are microbial activities, na? You are doing it. Okay, India is not self-dependent on biofuel resources. It will take time. Wait. अगर biofuel resources are plenty of them, तो खाओगे क्या? अगर हर जगह तुम लोग यही सब चीजें लगा दोगे तो that is the reason. ऐसे बोलना कि self sufficient है is not a better statement. Nikita, those question is there. Microorganism not used in the transacidification. Transacidification is a chemical reaction जो अफरोज ने बोला, जो लैब में करते हैं. विवेक का कहना सही है, ट्रांसएसिडिफिकेशन हम लिपिड में करते हैं, इज राइट. आफ्टर थर्ड जनरेशन कम नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन बायोफिल. याद रखना यहाँ पे एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फोर्थ जनरेशन बायोफिल. So what will be the example of fourth generation biofuel? See here, guys. The one. So what will be the example of fourth generation biofuel? Pehla, microbial fuel cells. Those last lecture you people have seen. And second one is a genetically modified plants. So microbial fuel cells and genetically modified plants. शेयर सर लिपिड तो हम में भी है, तो क्या करें हम किसी ह्यूमन की डेड बॉडी से बायोडीजल बनाएं? शेयर आप बताओ, क्या पसंद करोगे?
बेस्ट सस्टेनेबल एफिशिएंट टेक्निक लिथियम बैटरी प्रोसेस इज इन इटसेल्फ क्रिएटिंग पोल्यूशन. हाँ थोड़ा बहुत वो भी है. आप बताओ कोई पसंद करेगा कि इंसान की जनसंख्या है मरने के बाद उसके लिपिड टुपिड को निकाला जाए, है ना? चलो अरे जहां पॉसिबल है वहां करो भाई. हो गया आपका क्वेश्चन हो गया. अब उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा. ठीक है, कुत्ते को पकड़ के उसका तेल निकाल रहे. हाँ भाई अब ऐसा नहीं है. ठीक है, अब नाउ कम बायोफिल पॉलिसी. Now come into discussion of biofuel policy. See, actually biofuel policy 2018 brought in 2018. So biofuel policy brought in 2018. Under biofuel policy 2018, what was news, guys? Under biofuel policy 2018, there was a news. By 2022, India will start E10 with petrol. And by 2020-25, India will start E20 with petrol. And by 2030, 5% mixing of biodiesel, India will start with diesel. It was a target. It was a target in biofuel policy. It was a target in biofuel policy. By 2020-22, 10% mixing of ethanol will start with petrol. By 2020-25, 20% mixing of ethanol will start with petrol. And 5% mixing of biodiesel, India will start with diesel. Question is, what about the purpose of this? Very simple, guys. Okay, very simple of this. Actually, in this case of petrol and diesel and all, you should remember it. Approx 70% of fossil fuels, even more than 70% fossil fuels, India import. India import from the foreign countries. And to purchase this fossil fuel, our money is going to expand. Our forest reserves, government monies and all. If we will save the money, guys, so that money will utilize in the development program of India. So here government made some target. What government made some target? Here government made some target. What about the target government made here, guys? Actually, up to 20% reduction in import of fossil fuels, by 2030, India try to achieve. So those fossil fuels India is taking from other country. Those fossil fuel India is taking from other country, we people have planning to reduce it up to 20% by 2030. And here in that way, we can conserve a lot of money. Okay, here we can conserve a lot of money. तो अच्छा है ना, पैसा बचेगा, उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च करेंगे. एंड वन मोर स्टेटमेंट आई विल टेल यू, सुनो जरा. If any of the plants you are going to check, remember its economical values. You remember its economical values. Okay, and then you think this plant can be used for the biofuel production or not. Okay, then you think this plant can be used for the biofuel production or not on the basis of economical values. Just say if I ask you a question, 2020 mein UPSC has a question. Groundnut we can use for the production of biodiesel. Groundnut will be used for the production of biofuel. तो ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ग्राउंडनट से जो सीड है उसका अगर ऑयल निकालोगे
200-300 रुपए लीटर जाता है, अभी तो नहीं, जिस दिन पेट्रोल का प्राइस 200 रुपए लीटर हो जाएगा, 300 से हो सकता है शायद मूंगफली का तेल खाने की जगह वो गाड़ियों में डाल लें. तो इन दैट वे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इकोनॉमिकल वैल्यू टू गेस योर आंसर्स. Okay everyone, so remember it, economical values. Okay, because this is a UPSC question and many people identify the question with the help of ground. अब जैसे मान लो wheat है, तो क्या wheat को you will use in the case of biodiesel production? wheat को you will use, नहीं भाई मत करो, खाने वाला. हाँ अगर सड़ा वाला है, rotted wheat है तब कर लो, rotted wheat है तो कर लो, rotted wheat है तो कर लो. So depends. Okay, अब potato है, सड़ा हुआ आलू है, has a starch, you can do fermentation, convert ethanol, you can use them in that cases. तो condition apply, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, depends. अब जैसे मेज है, अगर surplus production happen मेज का, तो बेकार हो रहा है, in that cases में you can use them. So try to understand guys. Okay, so I think biofuel policy and all you people understood very well. Can we accept the target based question in the prelims? I'm not getting you, Komal. Okay, I'm not getting you. ये target based question का what is the meaning of it? जरा मुझे समझाना. Can we accept target based question in the prelims, Komal? Okay, so it's overall the biofuel policy, kindly remember. Now we'll go to the next concept that is called as a nuclear energy. Come here. Next concept is the nuclear energy. So next concept is the nuclear energy. Okay, actually in the case of nuclear energy is again the another options for the power generations. Okay, nuclear energy में generally people are using nuclear fuel as a source of energy. So nuclear energy run with the help of nuclear fuels. And nuclear fuel is what? Like uranium, plutonium, thorium. These are the fuel, nuclear fuel. And those nuclear fuel as a source of energy we are using, they have a constructive and destructive work. They have constructive and destructive work. They have constructive and destructive work. Okay. Constructive work of nuclear energy will use for electricity, and destructive work will use for atom bomb. So nuclear energy have two purposes. You can go for constructive and also can go for the destructive purposes. So you can go with the constructive and destructive both. So you can go with the constructive and destructive both. Constructive and destructive. Okay. Actually, to go with the electricity generation and all, in the case of nuclear energy, two processes involved. These processes are nuclear fission and nuclear fusion. These processes are nuclear fission and nuclear fusion. So these processes are nuclear fission and nuclear fusion. Now question, what is nuclear fission, what is nuclear fusion? First you try to understand. See guys, nuclear fission is what? When a large size of atom break into a small size of atom, in this case those heat or energy generate. This heat or energy will be utilized for power generation. What you people have seen in the case of coal, when the coal burning happen,
heat generation, and the water is start to boil. Okay, and water is start to boil. You people know it very well. Okay, and water is start to boil, and that steam of the boil pressure is going to run a turbine. Mechanical energy, then dynamo electrical energy. Same thing you do here. This heat you use to boil a water. When the water is start to boil, what will come? Steam generation. And on the basis of steam, turbine move. Turbine move, electricity generation happen. Okay. Sir, if algae can be used. Sir, please list the important topics relating to science and tech. तो मैं क्या नॉन रिलेवेंट टॉपिक दे रहा हूँ क्या? मतलब मैं आपको लिस्ट दे दूं, बाकी आप पढ़ लेना. अच्छा, ओ मतलब सर वो कोई 10 टॉपिक दे दो जिससे 10 क्वेश्चन आ जाए, वही ना, है ना. कुछ लोग हैं यूपीएससी में जो ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई 10 पेज का नोट्स बन जाए जिससे यूपीएससी निकल जाए. जाओ जाओ जाओ, यूट्यूब पे बहुत लोग दे रहे हैं. ये है ब्रह्मास्त्र, है ना. वो दे रहा होगा, कोई दे रहा होगा. 4 घंटे में साइंस खत्म, 3 घंटे में पॉलिटी खत्म होगा. देखो देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल रहा होगा. उसका तो हुआ नहीं, लेकिन वो तुम्हारा जरूर करा देगा. ओके, एक से एक लोग बैठे हुए हैं. सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लिस्ट ऑफ बकवास टॉपिक चल रहा है क्या? ओके, सो लार्जर साइज ऑफ एटम ब्रेक इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड जनरेशन द हीट और एनर्जी. ठीक है. प्रॉब्लम एक्चुअल में जानते हो क्या है न्यू जनरेशन के साथ? ये ना कम पढ़ना चाहती है. 2-3 चीजें दे दो, कहानी खत्म. ठीक है. करंट बेस्ड दे दे. प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर क्या होता है बता दे, तुरंत आ जाए, एंटर कर दें जो करंट अफेयर्स में रहा है. अरे रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ. क्रैश कोर्स में बैठे हो, करंट अफेयर्स की क्लास में नहीं बैठे हो. ठीक है. क्रैश कोर्स का मतलब होता है पूरा इंटीग्रेटेड पढ़ाना. लास्ट डे आई टोल्ड यू. मैडम इसको हटाओ यहाँ से. ठीक है, इस बच्चे को. ठीक है, या इसका चैट मत शेयर करो. ठीक है भाई. ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रिलियंट, है ना. यूपीएससी तुमसे पूछ के क्वेश्चन बनाएगा, बट यहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर दोस आर वेटिंग फॉर. सब कुछ पढ़ाओ सर, बेसिक के साथ करंट को जोड़ के पढ़ाओ. ठीक है. ठीक है, फाइन. दोस पीपल आर हरी एंड दे आर वेटिंग कि सर 1 घंटे के अंदर कोई करंट अफेयर्स पढ़ा दो. तो सॉरी गाइस, मैं नहीं पढ़ा सकता. ओके. और फालतू में मेरे को यहाँ 35-36 घंटे मुझे पढ़ाने, है ना. फालतू 35-36 घंटे पढ़ाने, तो 1 घंटे आता और यूपीएससी का पेपर लेके आता जो अभी 24 में आएगा, और वो 10 क्वेश्चन बोल देता, 10 मिनट में कहानी खत्म हो जाती है कि नहीं. देखो देखो, पढ़ा रहे होंगे लोग यूट्यूब पे, देखो. सो लार्ज साइज ऑफ एटम ब्रेक इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड हीट एंड एनर्जी. ओके, फाइन. So now here you just see the equations. That is very very important. Uranium-92 break in the presence of neutron. Form barium atomic number 56. Form krypton atomic number 36. 3 neutron generate and plus heat or energy. Okay, plus heat or energy. Okay, so this is the nuclear fission equations. An example atom bomb, and one more is a nuclear energy development program of India. Nuclear energy development program of India, that is here guys. Atom bomb, a nuclear energy development program of India. It's a nuclear fission guys. Okay, second one is the nuclear fusion. Next one is the nuclear fusion. What is nuclear fusion? Those people are mature and they know very well कि UPSC is not a cup of tea. जो 2 पन्ने के पेज से नहीं होता. ये 5 दिन का ब्रह्मास्त्र है, 5 पन्ने का पढ़ लो. ठीक है, वो लोग ही क्लास में रहे. ठीक है, उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा ये क्लास. Those people are listening the class. ये 5 पन्ने का नोट है, इससे आएगा. तो याद रखना, सिर्फ तुम ही IAS नहीं बनोगे, पूरा 8 लाख बच्चा UPSC देता है, सब बन जाएगा. ठीक है. So the first part for the UPSC, if you want to clear, be mature and be ready to do the hard work. उन बच्चों की तरह मत जाओ जो सोच रहे हैं कि कोई ब्रह्मास्त्र आएगा, क्योंकि कई लोगों के 6 साल इसीलिए बर्बाद हो चुके हैं. ठीक है, आज तक UPSC दे रहा हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वो 40 पन्ने का नोट जाते हैं, मार्केट में जाकर वो PDF भी टोल लेते हैं किसी का, या यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख लेते हैं. हम लोग फालतू में 20 साल से यहाँ झक मार रहे हैं. ओके, कम हियर, है ना. न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना. व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन?
Small size of atom are nuclei. Small size of atom and are fused together. The small size of atom, if fused together, in this case, they form a large size of atom. They form large size of atom. In this case, those heat or energy generate. In this case, those heat or energy generate. Okay, this is the fusion energy. Well, like small size of atom fused together and form a large size of atom. This is what? This is called as a nuclear fusion. In this case, I have also heat or energy, and this heat or energy you can also use for power productions. Okay, here I will tell you equations. Okay, here I will tell you equations like 1s2 plus 1s2, 2He4 plus heat or energy. Okay, so small atoms, 1 fuse form the 2. Here what? 92 atomic number, big size. 56, 36, small size break. It's a fission, it's a fusion. Here you see the examples: solar energy, hydrogen bomb, and one more is called as a artificial sun experiment. One more is a artificial sun experiment. And even I will discuss with you guys 3 times UPSC asks the question artificial sun experiment. 2007 prelims, 2008 mains, 2017 prelims. Okay, so 7 prelims, 8 mains, and further the question repeat after 10 years. Okay, so it's a questions. Artificial sun experiment. Okay, it's a general discussion about the nuclear energy. Okay, now one thing more guys, if you do the comparison of nuclear fission and nuclear fusion, okay, in this fission, if you do comparison, so I just want to tell you guys, fusion generate more heat or energy. 9-10 standard of books mentioned there, more heat or energy produced. It means they generate more electricity. No nuclear waste produced. Okay, no nuclear waste produced. So ultimately no recycling of the nuclear waste here. In this case guys, less heat or energy and they produce the nuclear waste also. Okay, so in these two cases you got it, like fusion is better than fission. But fusion have one limitation, and that is the main limitation and main problem in the case of fission. Those make it very dangerous. It is an uncontrolled reaction. It is what? It is an uncontrolled reaction. Okay, it is an uncontrolled reaction. If once this reaction start, it will never stop guys. As sun, the light is coming from the million of the years guys. Sun is still shine, and after every next reaction the power of the light is going to increase, but you are not going to feel the more sunlight is coming. The reason, every moment of time sun mass is going to decrease also. If sun mass not decrease and every time the heat is going to increase, the next time have a more heat, and one day you burn and one day earth burn. Okay, but this reaction never stop. It is an uncontrolled reaction, and this is one of the limitation in this case. Now question is, why worldwide every countries are working toward a nuclear fusion experiment, ITER experiment, where the UPSC asks the question, if we will become successful, so worldwide the electricity crisis problem will resolve within a second. And why in Dubai? COP28 in this year of 2023, UNFCCC COP28 meeting. In the recent update, what about the opinion is there guys? Nuclear energy is the best viable option to solve the greenhouse gas emission problems. It's a recent updates, okay, where the nuclear energy is got as a what? As a important issues, and that is the reason nuclear energy this year I'm expecting even 2-3 question in your paper. Even at least every year you will get some question UPSC has from the nuclear energy. Either it's a 2023, it's a 2022, many years guys, and every question will solve, and every question is the static. Okay, but the problem is there, nobody show you the question paper. Last day I told you. Okay, this is the reason you never see this and never know this. Bacha, Kirtika asked me, nuclear fission is an exothermic. Definitely exothermic, and there is some problem. It's due to the exothermic reason also, and that discussion I will do in the case of nuclear energy development program. Just wait, bacha, and I'll discuss with you. Now come next, nuclear energy development program of India. Nuclear energy development program of India. Around 5-6 of prelims question paper you will get it. Okay, nuclear energy development program of India. So nuclear energy development program of India.
So nuclear energy development program of India. India's nuclear energy program was made up by Dr. Homi Jahangir Bhabha. I think everyone know. Homi Jahangir Bhabha. So nuclear energy development program by Dr. Homi Jahangir Bhabha. Okay, by Homi Jahangir Bhabha. And this nuclear energy program you people have seen here, guys. Our nuclear energy program is based on what? Our nuclear energy program is based on nuclear fission. Okay, nuclear fission. And one thing more I'm telling you again, guys, nuclear fuel you can use for constructive purposes, also you can use for destructive purposes. Remember it. Okay, kindly remember it. What are going to happen in the case of nuclear energy development program of India? See, it's a 3-stage nuclear energy development program. Okay, come first stage. First stage. Okay, in the case of first stage, you just should know about fuel, moderator, coolant, and reactor. So fuel, moderator, coolant, and reactor. Similarly, in the case of second stage, fuel, moderator, coolant, and reactor. Okay, what about the fuel here, guys? Uranium. Moderator and coolant is a heavy water. And heavy water is what? That's a deuterium oxide. Reactor is what? That is a PHWR. And PHWR is a pressurized heavy water reactor. This is pressurized heavy water reactor. Pressurized heavy water reactor. Okay, first stage. ठीक है Shreya, you are right. In the beginning, if you want to start a fusion reaction, you should have to need a more heat or energy. But it was not required, so I could not discuss it. कि अगर फ्यूजन भी स्टार्ट करना है तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू फ्यूज तो उनको भी एक एनर्जी चाहिए होता है. ओके मतलब फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए फ्यूजन टाइप की हीट या एनर्जी जरूरी होती है. आई एग्री विथ यू, पर वो जरूरी नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया. सो प्लीज एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल सन. ठीक है, जब न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगा और मैं बोलूंगा मैंने आर्टिफिशियल सन नहीं पढ़ाया, उस समय बोलना कि सर भाई आर्टिफिशियल सन नहीं पढ़ा है. पहले मेरे को थोड़ा बेसिक पढ़ा लें दो. ठीक है. ओके कोमल रुको बेटा, थोड़ा होल्ड करो. मैंने बोल दिया न्यूक्लियर एनर्जी, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी और आप तो एंड वाला टॉपिक पूछ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट. रुको अभी, पहले मुझे न्यूक्लियर फ्यूजन तो पढ़ाने दो. इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन. पहले आई वांट टू कंप्लीट द न्यूक्लियर फ्यूजन, देन आई विल गो टू द न्यूक्लियर फ्यूजन. उसमें थोड़ा कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ नए अपडेट्स वगैरह वो भी आपको बताऊंगा लंच के बाद वाले पार्ट में. उसमें जैसे आपको सोडियम वो क्या होता है, लाइक हाइड्रोजन में जो नया आया एसिटीआई आया वो क्या है. ठीक है, लाइक एविएशन वाले फ्यूल में जो भी सिंथेटिक एविएशन फ्यूल आ रहे हैं वो सब क्या है. ठीक है, पहले स्टैटिक तो यू जस्ट प्रिपेयर ना, उसके बाद तो उसका बताऊंगा उसका करंट क्या है. बायोफ्यूल पता नहीं है, बायोफ्यूल में नया वाला सिंथेटिक एविएशन फ्यूल पढ़ रहे हैं. ओके, द प्रॉब्लम इज दैट ना, तो दोस्त समबडीज आर हरी, उनके लिए क्लास थोड़ी ना है. ठीक है, यूपीएससी इज व्हाट प्रॉपर ठीक से पढ़ना वाला था ना, वो हड़बड़ी वाला थोड़ी ना है. ठीक है, और मैं चाहूं तो 4 घंटे में आपको पढ़ा के खत्म कर दूं. वैसे भी आपको तो सब करंट अफेयर्स ही बताते हैं. कौन बताता है जस्ट स्टैटिक? देखो क्वेश्चन दिखता है अभी, रुको 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 रुको. ओके सो रुको बच्चा, अभी कोमल है ना, घबराओ नहीं. ठीक है, करके मन करता है ना ये चैट को बंद ही कर दो, है ना. और लास्ट में का क्वेश्चन देखो ज्यादा अच्छा है, जो काम का होगा देखो नहीं फालतू बात है ना. यूरेनियम ये हो गया ना. सेकंड स्टेज में फ्यूल इज व्हाट? फ्यूल इज व्हाट? प्लूटोनियम. Fuel is plutonium. Fuel is plutonium. Plutonium. Moderator rarely used in the second stage. Rarely used. Coolant generally we people are using the liquid sodium. Liquid sodium. Sodium symbol is Na. And reactor is a breeder reactor. Reactor is what? That is a breeder reactor. It's a second stage, guys. Okay, it's a second stage. Now come third stage. So now come into the third stage. In third stage, fuel is what? Moderator, coolant, and reactor. Okay, here the fuel is what? That is the thorium. Thorium. Moderator is what? That is the light water. Moderator is what? That is the light water. Light water means demineralized water.
demineralized water. Coolant is the heavy water. A reactor here is still the breeder, and one more reactor you should write it, that is the AHWR. AHWR is the advanced heavy water reactor. Advanced heavy water reactor. Okay, so AHWR is advanced heavy water reactor. Okay, advanced heavy water reactor, AHWR. So it's overall about all three stages. Okay, first we will go toward the fuel, then go moderator, coolant, reactors. ऐसे चलते हैं ना. Start with the first. Okay, study of fuel. Study of fuel. And here you start with the first stage. Here you start with the first stage. First stage. Uranium was discovered in 1780s. One of the German chemistry scientists was Martin Klaproth. He discovered uranium. And uranium was discovered in the uranium ore. Its name was a pitch blende. Pitch blende was the uranium ore. Pitch blende was a uranium ore. And they have 6 isotopes of uranium. So those natural uranium available, they have 6 isotopes of uranium available, guys. So they have how many types of isotopes? 6 isotopes of uranium available in the nature. Okay, and these 6 isotopes are what? Uranium 92, 238, uranium 92, 235, uranium 92, 234, plus dash dash dash. So these are total 6 isotopes of uranium. These are total 6 isotopes of uranium. Okay, these are total 6 isotopes of uranium. Okay, so these are total 6 isotopes of uranium. And one thing more, guys. Why only 3 isotopes I mentioned there? See, 99.2742% is the uranium-238 in all uranium that is available in the nature under pitch blende. 235.7204% is 0.0054% have what? Uranium-234. Okay, 0.0054% is what? Uranium-234. And now listen, guys. Okay, now listen. 0.0054% here. Actually, this uranium we are going to enrich. We are doing its enrichment, enriched this uranium. And this concentration of uranium-35 we are going to increase 3%, and then it will be utilized for electricity. And when we enriched it more than 20%, okay, and 90% if you reach, it will be the best for atom bomb. Atom bomb formation is start when you start 20% plus enrichment, or 90% में the best quality of atom bomb. Okay, so actually in the case of uranium, we are doing the enrichment of uranium, and this is the uranium. Okay, those uranium isotope we should have to enrich. Last day I told you guys during the discussion of biogas, 40 to 60% methane enough for cooking purposes. But as a CNG, if you want to use the methane, so that concentration and enrichment should be high up to 90%. Same thing here. Those uranium-235 are available in the nature, 0.7204%. Its enrichment level if you increased, electricity, more enrichment increase, atom bomb. And this is the UPSC question paper 2020-23 for PU's kind of students. Okay, they will never solve these questions, because they are searching 100 topics of UPSC examinations, and this is the static UPSC has in 2023. मतलब PU's nature of students. हो सकता है उस बच्चे को समझ में आ गया हो. कभी कभी घर में ना पेरेंट्स को भी बच्चों को डांटना पड़ता है टू मेक अ डिसिप्लिन, और वही पेरेंट्स कभी प्यार भी करते हैं. तो मैं पीयूष को कभी डांटूंगा, और तब तक डांटूंगा जब तक उस बच्चे को समझ ना आ जाए, और जब वो समझ जाएगा तो फिर प्यार भी मिलेगा. तो ये देखो, ये पीयूष टाइप वाले बच्चे जो ये कहते हैं कि सर करंट बता दो, ये आपके बस का नहीं था. इंडिया की किसी मैगजीन में 100 पन्ने के नोट्स में नहीं लिखा था, जाके ढूंढ लेना पिछले सर. ये क्वेश्चन 2023 पढ़ा था, सिर्फ मेरे बच्चों ने क्वेश्चन बनाया है. यूपीएससी को तुम लोग ना हवाबाजी समझ रखे हो.
50 पन्ने का नोट्स, और 50 पन्ने का नोट्स पढ़ने वाले लोग याद रखो, साल भर मस्ती करो, रात के लास्ट के 1-2 महीने में करंट अफेयर्स के नोट्स आएंगे मार्केट में, पढ़ लेना। तुम फालतू में 1 साल पढ़ रहे हो। ओके फाइन, ये देखो ये यूपीएससी का लेवल है, इसलिए मैं थोड़ी दिन चुप था कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऐसी चीजें पढ़ो तुम्हारे बस की होंगी। ओके सो दिस इज द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023। अब आपको समझ में आना चाहिए मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, और आपको इसका करंट भी पढ़ाऊंगा कि अभी नया वाला रिएक्टर जो भारत में पहली बार इंडिजिनस हुआ है, जो काकरापार का तीसरा वाला रिएक्टर है 700 मेगावाट, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां जैसे आएगा वहां पढ़ाऊंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, अपने हिसाब से चलूंगा। आपको तो टॉपिक में नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, वो तो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आया तब जाके देखोगे। अभी देखो दोस्त पीडीएफ आई शेयर्ड यू, देखना उसमें ये क्वेश्चन था कि नहीं था। और करंट अफेयर्स बोलने वाले लोगों के लिए ये सब ध्यान रखना। बाकी रेस्ट ऑफ द अदर पीपल ओके 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप देखते चलो, जिंदगी दे दी, जितनी तुम्हारी उम्र उतने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क डोंट मेक इट, कैसे पढ़ाना आई नो वेरी वेल, क्योंकि मुझे भी पता अगर योर सिलेक्शन हैपन देन इट विल बी प्रूव आई एम अ गुड टीचर, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊं जिस हिसाब से सिलेक्शन हो जाए। ओके आई ऑल्सो नो वेरी वेल योर सिलेक्शन प्रूव आई एम अ गुड टीचर, तो मैं आपको हड़बड़ी में जाके 10 टॉपिक पढ़ा के वाई आई टेल यू द लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, खत्म कहानी नहीं, ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चा पीयूष समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो आई लव यू टू, ये यही है मेरा नेचर, बता रहा हूँ, जल्दी गुस्सा करता हूँ, जल्दी प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट गाइज यू पीपल सेलेक्ट इट बट डोंट बी हरी। अभी 9 दिन सुनो तो मुझे, 9 डेज लाया है मैंने प्रिपेयर करके करंट अफेयर्स, तुम लोग क्या समझते हो, ठीक है। सब बैठा हूँ, सब लेके बैठा हूँ, ठीक है, और तुम लोग से ज्यादा मैं पढ़ता भी मैं बता दूं, ठीक है। देखो सब प्रिपेयर करके लाया है, सब कि आगे करंट अफेयर्स रहेगा, सब दिखाऊंगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, रुको अभी, हड़बड़ाओ नहीं। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में हम कर क्या रहे हैं, ओके 1% SAF यूज करने जा रहे हैं। क्या है SAF का, किसमें मिलाओगे, बायोफ्यूल में, तो बायोफ्यूल तो तुमको पता ही नहीं है। अब अभी यहाँ पे देखो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, प्रोटोटाइप आ रहा है, फास्ट बीटा रिएक्टर पता नहीं है, प्रोटोटाइप का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, तुम 100 पन्ने का नोट समझ के आए, हम नहीं पढ़ाएंगे भाई, हम नहीं पढ़ाएंगे, और ना हम वो पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो सेलेक्ट होते हैं और मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है ना। रुको अभी समय आने पे आएगा भाई, ठीक है ना। चलिए बोल रहा हूं आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क, आप चुपचाप सुनते रहो, एंजॉय करो, आपके लिए तो अच्छा है ना। रुको, ठीक है, जमीन पता ही नहीं हो, ऊपर 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 रूट पेड़ का गया ही नहीं नीचे, ऊपर पेड़ सोच रहे बहुत ऊंचा ऊंचा लग जाएगा, अरे आंधी आएगा गिर पड़ेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन आंधी है, रूट स्ट्रॉन्ग है नहीं, बेस आता नहीं है साइंस एंड टेक का, सब खत्म, सब होता है। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी से तुम लोग निकाल लेते हो, और मेरिट 40-42 आ रही, जिस दिन 60-70 जाने लगा ना हालत बुरी हो जाएगी। साइंस टेक उस समय से पढ़ने लोगे अपने आप, कोई नहीं पढ़ाता साइंस टेक एज अ सब्जेक्ट, सब आज भी टीचरों के भी मैं वीडियोस देखता हूं, करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो। ओके नहीं मैं अफरोज, मैं ये नहीं कर रहा, आई एम द बेस्ट टीचर, है ना। मेहनत किया है यार, मेहनत किया है, ठीक है, हार्ड वर्क किया है, जिंदगी दी है इसको। 20 साल जितनी तुम्हारी उम्र उतने साल पढ़ा रहा हूं, थोड़ा इज्जत करो, कम कम। अब डिस्टर्ब नहीं, अब लिसन इट। अब क्वेश्चन पेपर सी 2023, अभी और दिखाता हूँ, 22 साइज दिखा रहा हूं, रुको अभी रुको, आ जाओ, हो गया, चलो क्यूट क्यूट बच्चों, चलो एकदम पेरेंट समझो, डांट भी पड़ेगी यहाँ पे, प्यार भी मिलेगा, जैसे माँ बाप होते हैं ऐसे डांटते प्यार। अच्छा हो गया, बहुत, फर्स्ट इज डन, फर्स्ट इज डन। ओके मैडम, अब पीयूष का, ठीक है। विनायक, फर्स्ट इज व्हाट इज द बच्चा, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल में जनरली व्हाट वी आर डूइंग, दीस आर द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ फ्यूल। यूरेनियम अवेलेबल इन द नेचुरल यूरेनियम, ये अवेलेबल है, दे आर, आपको सिर्फ यूरेनियम 235 को एनरिच करना होता है। हाँ एक क्वेश्चन ये पूछ सकते थे तुम विनायक कि सर व्हाई वी आर यूजिंग यूरेनियम 235, यहाँ पे आई विल टेल यू यूरेनियम 235 is the best isotope of uranium. This is the best isotope of uranium. Okay everyone, this is the best isotope of uranium. अच्छा तो sir you are telling rest of all isotope they are not going to involve easily in the nuclear fission reaction? No, this is the best. Okay, okay, best. Okay, and another one, this technology is developed. Oh तो sir these kind of technology also not developed, and how it will be developed if they are not the better quality of radioactive elements? They are the isotopes. Okay, so that is the reason 35 we are using everywhere guys. वो अलग बात है कि the percentage of 35 is more and uranium 238 is the second one. इसीलिए कभी कभी फर्स्ट स्टेज ऑफ फील्ड में आपको मिलेगा यूरेनियम 238 and यूरेनियम 235, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। पर एक क्वेश्चन यूपीएससी का था, ओके करेक्ट नहीं, जनरल क्वेश्चन। नाउ कम सेकंड स्टेज, नाउ कम सेकंड स्टेज। In the case of second stage, I'll advise you, kindly remember the nuclear fission reaction. Uranium-92 break in the presence of neutron. They form barium, atomic number 56.
they form krypton atomic number 36. 3 neutrons generate and plus heat or energy. And plus heat or energy. And plus heat or energy. It's what? It's a nuclear fission reaction you already have seen. Okay. फयाज यूरेनियम आइसोटोप तुम्हारे सामने है और एनरिचमेंट मैंने पीछे के लेक्चर में बताया था, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने को एनरिच कहते हैं. इसीलिए मैंने बोला कल मैंने बायोगैस पढ़ाया था, अगर कल सुने होगे तो समझ में आ जाएगा. वही चीज यहाँ पे यूरेनियम के लिए कर रहा हूँ, वही चीज कल वहां हमने मीथेन के लिए किया था. और भारत को एनरिचमेंट करना आता है. भारत के पास प्रॉब्लम इज देयर, हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो अच्छी किस्म का नहीं है. एंड दैट इज द रीजन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज. वी हैव अ यूरेनियम बट स्टिल इंडिया इज गोइंग टू यूज द कोल, क्योंकि यूरेनियम जो है हमारे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है और अभी इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की और ज्यादा जरूरत है. एंड दैट इज द रीजन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री. ओके, यही क्वेश्चन तो पहला स्टेटमेंट था 2023 में. इंडिया हैव अ डिस्पाइट यूरेनियम बट स्टिल इंडिया इज जनरेटिंग द मैक्सिमम पावर विद द कोल. आंसर वाज राइट बिकॉज वी हैव नॉट द क्वालिटी यूरेनियम. और सेकंड पॉइंट था यूरेनियम शुड बी 60% फॉर पावर जनरेशन. ओके, गलत है. 3% में पावर होता है, 60 पे तो एटम बम बनने लगेगा. ओके, सो दैट इज द स्टेटमेंट. ऐसे यूपीएससी पूछता, कोई करंट अफेयर्स नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन पूछता, डू यू नो द यूरेनियम एंड द कोल? ओके, डू यू नो द एनरिचमेंट एंड ऑल? डू यू नो द आइसोटोप्स एंड ऑल इन दैट वे? यस. फयाज हो गया बेटा. अब सेकंड स्टेज, सी सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में व्हाट अबाउट द फ्यूल यू हैव सीन? प्लूटोनियम. नाउ लिसन गाइस, एक्चुअली व्हेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरेनियम ब्रेक, it produces the nuclear waste. It produces the nuclear waste. Okay, it produces the nuclear waste. This nuclear waste have presence of plutonium 239. Oh, so plutonium 239 not available in the nature. No, uranium available in the nature, thorium available in the nature, but plutonium not available in the nature. Plutonium will come after breakdown of uranium in their own waste, and this is the plutonium 239. And plutonium 239 is highly unstable. It is highly unstable. It is highly unstable, and this highly unstable nature of plutonium used for atom bomb. This is used for atom bomb. This is used for atom bomb. And do one thing, guys. Okay, your purpose is not atom bomb. Your purpose is electricity also. Do one thing. Do the addition of neutron in the chemistry lab. Scientists are there. What they will do? They will add on the neutron. You know, the upper value is called atomic mass. And atomic mass have a presence of proton and neutron. If you do addition of neutron, so plutonium 239 will become as a here what? Plutonium 240. And plutonium 240 is comparatively what? Plutonium 240 is comparatively less unstable. And the less unstable nature of plutonium will be utilized for what? Electricity generation. So two different isotopes of plutonium have two different uses. One for electricity and second for atom bomb. So one for electricity and second for atom bomb. And both two parallelly I am discussing, you guys don't be confused. Okay, so plutonium 239, plutonium 240 not available in the nature. When the uranium break in their own waste, nuclear waste have a presence of plutonium, and this plutonium 239. It's very strong, very unstable. Unstable मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक. तो खतरनाक वाले से ज्यादा एनर्जी होगा, उससे एटम बम बना लो. और कम खतरनाक, कम अनस्टेबल होगा तो उससे एनर्जी कम होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी. तो दैट इज द डिफरेंस. आफ्टर द सेकंड स्टेज, सी यूपीएससी यहां तक पहुंच चुका है लास्ट ईयर, आप 24 में जा रहे हो. थोड़ा ये सब ध्यान रखना भाई. और ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी पिछले साल से पढ़ाना शुरू किया हूं. अभी ना कोई बच्चा अगर 4 साल पुराना भी क्लास देख रहा होगा ना करंट अफेयर्स का, उस ये अभी पूरा इंटीग्रेटेड वाला, ओके, उसको भी दिख रहा होगा, अरे सर ये तो आपने हमारे टाइम में पढ़ाया था. ओके, सुनो, करंट अफेयर्स वालों के लिए नहीं है क्लास, जो सिर्फ करंट अफेयर्स सोच के आ रहे हैं. करंट अफेयर्स जहां जरूरत होगा वहां ऐड करूंगा. रुको, अभी मैंने कल ही बोला था शुरुआत में, दिस इज द इंटीग्रेटेड क्लास. यहां पर बेसिक भी है, ओके, और उसके साथ करंट अपडेट्स मर्ज करके दोनों चीजें होंगी. और फिर भी बोल रहा हूं करंट पे क्वेश्चन ना के बराबर आते, तो मैं क्यों तुमको करंट के चक्कर में से फंसा दूं. और करंट चक्कर पढ़ाना कितना आसान है. 40-50 टॉपिक हैं, पढ़ा के 2 घंटे में निकल जाओ. ओके, आपको समझने में भले 10 घंटे लगते हो, जब आप खुद से पढ़ते, हम 2 घंटे पढ़ा खत्म कर देंगे, कुछ नहीं आएगा. 2 क्वेश्चन ज्यादा छू नहीं पाओगे. फिर भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी भरोसे रहना पड़ेगा. थर्ड स्टेज में व्हाट अबाउट द फ्यूल? यू नो वेरी वेल, थोरियम. अब नाउ आई वांट टू टेल यू, थोरियम नेवर अवेलेबल इन द नेचर एज अ फॉर्म ऑफ थोरियम. Thorium is available in the monazite soil. Thorium is available in monazite soil.
Okay, and monazite soil is a rare earth material. Is a rare earth material. मतलब इतने सारी मिट्टी में एक दो पार्टिकल तुमको मोनाजाइट के मिल जाएंगे. And this monazite soil is actually available toward the coastal areas. Eastern coast, western coast, both sides has available of them. Eastern coast and western coast, both two sides is the what? This is the available monazite soil available. Okay, but mostly toward the eastern coast. अरे सुनो सुनो, अरे 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 रुको रुको, करंट अफेयर्स वालों 2022 के पीटी में ये भी आ गया. लो, और एक मिनट, मोनाजाइट सोइल अभी नहीं मिला है. ये जब पृथ्वी बनी थी तब से पृथ्वी पर है और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है. तो इसका क्वेश्चन तो ओरिजिन ऑफ अर्थ है. मतलब सर अरबों साल पुराना करंट अफेयर्स 2022 में आ गया. और क्या लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए अरबों साल पुराना करंट अफेयर्स था ये. जब पृथ्वी बनी थी अराउंड 3.6 या पता नहीं कितना, नहीं 4.2 या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उस समय मोनाजाइट पृथ्वी पर था. हमारे इंडिया में है सबसे ज्यादा. ये भी कोई करंट अफेयर. देखो 22 का क्वेश्चन है, देख रहे हो. मतलब यूपीएससी क्या कर रहा है. 22 23 ये कर क्या रहा है स्टैटिक में, मतलब कर क्या रहा है. अभी रुको, क्या कर रहा है, रुको, तुम लोग को क्या पता क्या कर रहा है. रुको इधर चुपचाप सुनते चलो, हम पढ़ा रहे हैं. ठीक है, थैंक गॉड मुझे क्वेश्चन पेपर भी याद है, और थैंक गॉड इंटरनेट पे क्वेश्चन आर अवेलेबल है ना. तुमको ये सब कोई दिखाएगा भी नहीं, ना ये दिखाएगा ना ये दिखाएगा. ये भी प्रॉब्लम है. ठीक है, क्योंकि पढ़ी भी नहीं करेगा और ना तुम लोग पढ़ोगे. अब इधर आओ, मोनाजाइट सोइल बहुत हो गया भाई, अब डांट दे तुम लोग है ना. एक बार तुम लोग थोड़ा सा वो कर दे तो डिस्टर्ब. तो कैन यू प्लीज हाँ ठीक है निकिता है ना. अदर टू यूरेनियम आइसोटोप्स आर नॉट गुड, उसकी वैल्यू कम ही रहती है, ऐसे ही समझ लो. ओके फाइन. सो मोनाजाइट सोइल. तो when UPSC asks the question ना, देखो बारीकी से समझो क्वेश्चन को, how the UPSC turn the questions. UPSC said monazite soil is available in the entire coastal area. No, wrong. Each and every entire area. No. Many places in between. Okay, monazite soil is not available. Okay. Oh, so sir, you are telling eastern coast, western coast have a monazite, but does not mean each and every line have a in between. Many places have no, but yes, coastal areas have available, but not each and every area. And where mostly monazite available, eastern coast side have a more. And in this monazite soil have presence of what? Thorium. In this monazite soil have presence of thorium. यहाँ पे है thorium. Okay, in this monazite soil have a presence of thorium. Okay everyone, and see again I repeat, this thorium we never use directly as a source of energy. What we are doing, this thorium we just make separate from the monazite soil. अब पता है दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम मोनाजाइट हमारे भारत में ही होता है. दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है. और ये आया तो ठीक ही आया ना. कौन सा अच्छा ही क्वेश्चन था ये. ओके, दिस थोरियम वी नेवर यूज डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वी डू सम केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ बीटा पार्टिकल. When you do addition of neutron and removal of beta particle, thorium will convert into uranium-233, and this is the actual field in the third stage. और यहाँ पे भी there is a big game UPSC will do with you. So it is not actually thorium, it is the thorium derived uranium-233. It is not as it is thorium, it is thorium derived uranium-233. Everybody remember. So now question is, what actual the fuel is the third stage? Third stage fuel is a thorium derived uranium-233. And what is the first stage of fuel? More uranium enriched 235. What is the second stage of fuel for power generation? Plutonium 240. I think everything clear. See, one more question UPSC asks. Comparison between this thorium and comparison between this uranium. Come. Next UPSC question. Static, right? Comparison between uranium and thorium. Come. Comparison between uranium and thorium. Come. Comparison between uranium. Uranium is what? Uranium-235. And thorium. Thorium is what? Uranium-233. So comparison between uranium means uranium-235 and thorium. Thorium means uranium-233. Don't be confused, guys. One thing. Okay. That is another UPSC Prelims question paper. ये सब 13 साल के questions हैं. Static. Okay. देखो. If anybody asks you, यूरेनियम थोरियम में से कौन सा रिजर्व ज्यादा है दुनिया में, नेचर में? More abundantly present. They are more abundantly present in the nature. They are more in amount. Oh, तो सर थोरियम रिजर्व is more? Yes, definitely. थोरियम रिजर्व is more. तो थोरियम दुनिया में यूरेनियम से ज्यादा अवेलेबल है नेचर में? Exactly, more abundantly.
thorium burn, electricity generation. Uranium burn, electricity generation. Which one have a more efficiency for power production? Thorium is more efficient for power production. It is a more efficient for power production. It is more efficient for power production. So it is good. And which country have a maximum thorium? India. Wow. है ना? Fine. Another one, guys. When uranium burn, thorium burn. Burn means break. Reaction happen. So thorium produce nuclear waste. Uranium also produce nuclear waste. But in the case of this thorium, okay, nuclear waste are less in amount. Here nuclear waste are less in amount. Oh, so they generate more nuclear waste. Definitely. They are less efficient power generation. Yes. They are less in nature in comparison to thorium. Yes. So on these basis, thorium is better than uranium. Okay. On these basis, you can call thorium is better than uranium. So on these basis, you can call thorium is better than uranium. Now question is, okay, on the basis of thorium, some current affairs news was also there for this year. Prototype fast breeder reactor. That discussion I'll do. And prototype fast breeder reactor I also discussed from the earlier classes, guys. Okay. Some discussion I will do and some dictation I will do in the last around 40-50 points. Okay, regarding some updates. Okay. So more abundantly, more efficient, nuclear waste, less in amount. So that is the information about thorium. So what about the problem with the use of thorium? That discussion I will do later on. And this is the good question for your mains paper also. But for the understanding of why thorium is not in use, okay, more in amount in India and more, that discussion I'll do later on. Wait. So ultimately you people understood very well about the all three stages of fuels. UPSC question, and UPSC question about it. Okay. Currently we are at what stage? Vinayak, we are using all three stages. सब चल रहा है, कहीं वो चल रहा है, कहीं ये चल रहा है, कहीं ये चल रहा है, तीनों स्टेज चल रहा है. और पता है ऑल थ्री स्टेजेस आर कनेक्टिंग टुगेदर. जिन बच्चों के पास बुक है मेरी वो देखो, उनमें देखो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड स्टेज है, सारे स्टेज भारत में तीनों चल रहे हैं. अभी धीरे धीरे और कंफर्म हो जाएगा. वेट, है ना, तीनों चल रहा है. अच्छा, फ्यूल पोर्शन डन. नाउ कम टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ मॉडरेटर. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ मॉडरेटर. कम हियर गाइस. मॉडरेटर. Moderator. You just see this chemical reaction first. See, uranium. ये इक्वेशन भूलना नहीं, इसके बिना सब बवाल सब खत्म गड़बड़ हो जाएगा. न्यूट्रॉन, बेरियम 56, देखो बार बार आ रहा है. क्रिप्टॉन 36, 3 न्यूट्रॉन जनरेट एंड प्लस हीट आर एनर्जी. ओके, प्लस हीट आर एनर्जी. Okay, plus heat or energy. So uranium, ये सारी चीज है ना. ये इक्वेशन भाई, इस पे तुमको ये इक्वेशन भी बार बार आएगा. अभी देखना 3-4 बार अभी इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा और इस पे 3-4 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और धीरे धीरे आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके एवरीवन, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. सर, आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट मोनाजाइट. अग्रीड, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट केरला इज द हाईएस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यू टू रिच क्वालिटी ऑफ सैंड. ये कह सकते हो, चलेगा. अगर कोई पूछे, सही बात है, इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट. निकिता ने बोला है, अग्रीड. निकिता ने बोला सर आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट मोनाजाइट सैंड कंटेनिंग. एकदम सही है. बट केरला इज द हाईएस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग. एकदम सही है ना. सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मोनाजाइट है तो वो आंध्र प्रदेश. एब्सोल्युटली राइट. केरला इज द हाईएस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यू टू रिच क्वालिटी ऑफ सैंड. ये भी ठीक है. ओके, तो अगर पूछे मोनाजाइट सबसे ज्यादा कहाँ है तो आंसर इज आंध्र प्रदेश. ओके, एंड केरला इज द हाईएस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यू टू रिच क्वालिटी ऑफ सैंड. एकदम सही, इसमें कोई गलती नहीं है. मैं 2 बार बोल दिया. और सुनो, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट जो निकिता ने बोला, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. अगर स्टेट वाइज कभी पूछे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, बोला आंध्र प्रदेश. और कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा जहां से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना, तो वो आपका हो जाएगा केरला से. और रिजर्व वाइज पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, दोनों में. ओके, बट केरला इज द हाईएस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यू टू रिच क्वालिटी ऑफ सैंड. एकदम सही है भाई, गड़बड़ नहीं. अच्छा, अब जरा समझो व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडरेटर. मतलब देखो, बारीक लेवल पे जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसे ही पूछता है जो इस बच्चे ने लिखा है, निकिता ने. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया. सही लिखी हो तुम, सही लिखी हो. तो क्योंकि वो बच्चा पूछ रही है मुझसे, है ना. ठीक है, तो इतना क्रिस्टल क्लियर तो मैंने भी नहीं बोला था जब उसने लिखा कभी कि तुम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते. ऐसी बात भी नहीं है ना.
कि तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, मैंने कब बोला, लेकिन डांटना भी पड़ता है डिसिप्लिन के लिए, अब वो भी जरूरी है। अब सुनो सुनो बच्चों, मॉडरेटर्स actually those neutron break uranium, right? Neutron is going to break the uranium now, and ultimately this heat or energy generation happen. This heat or energy generally you people are using for the water is going to boil, steam generation. थैंक यू सर, मैं पहले नहीं पढ़ी थी पर आप जैसा पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी बच्चा रुको, अभी करंट से भी जोड़ूंगा, अभी रुको, टेंशन, अरे पढ़ रहे हैं जी तुम लोग के लिए तो क्यों टेंशन ले रहे हो। सुनो और सुनो एक बात, बीच बीच में क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक एक चीज बता रहा हूँ। ओके सो हाँ, अब यहाँ पे देखो, हीट एनर्जी फॉर पावर प्रोडक्शन, ओके पावर प्रोडक्शन। अब नाउ कम, सो यूरेनियम ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ओके फाइन, सी वन थिंग मोर गाइस, actually those neutron break the uranium na, those neutron break the uranium, the speed of neutron should be slow, it's a nature of uranium, speed of neutron should be slow for the breakdown of uranium, but those neutron emit here na, this speed is very fast, but those neutron is going to emit here, this speed is very fast. Okay, this neutron speed is very fast, and there is a nature of uranium guys, uranium never break with the fastest speed of neutron. See, this neutron is finished, when the neutron break the uranium, and next time those neutron generate, it will go for the breakdown of uranium, next uranium, but next uranium not break, because there is a nature uranium break with the slow speed of neutron. This is a nature uranium break with the slow speed of neutron, and this neutron not break. Okay, and this is the reason moderator is required. Moderator further slow down the speed of neutron, then the next uranium break. Neither what happen guys, heat generation will stop, electricity generation will stop. So this is the reason moderator is required to slow down the speed of neutron for further reaction. Again neutron generate, again the speed fast, again moderator slow down the speed of neutron for the breakdown of uranium. This heat generation is going to happen in a proper manner, in a controlled manner. Okay, UPSC Prelims question paper, heavy water and graphites. See, there is also one of the UPSC Prelims question paper in last 13 years of question papers. एक और question बना, okay, लिखो, uranium break with slow speed of neutron, लिखो, uranium break with slow speed of neutron, uranium break with slow speed of neutron, but speed of emitted neutron, EMI-TTED, but speed of emitted neutron is so fast, but speed of emitted neutron is so fast, but speed of emitted neutron is so fast. Okay, moderator is used to slow down its speed for further reaction. So moderator is used to slow down its speeds for further reaction. Okay, so moderator is used to slow down its speed for further reaction, and you mention it, heavy water and graphites are the best moderator. Okay, heavy water and graphites are best moderator. Okay, now after moderator come, so this is the heavy water UPSC question guys. Now come to the next about the control rod, that is I am expecting for your examination coming year. Every year I am telling this is the most important question. So right, control rod. Control rod is also called as an absorbent rod. So control rod is also called as an absorbent rod. Here uranium break with the speed of neutron, it's okay. Okay, further this reaction will come. And here in the case of control rod, you should have to write the boron, cadmium and indium. These three names you just write, boron, cadmium and indium. Okay, so boron, cadmium and indium. Actually, you know, one of the incidents you people heard it, that was a Chernobyl disaster. Every year, this is always in the news.
Even your disaster management teacher also discussed with you about a nuclear disaster, Chernobyl. Chernobyl disaster happened in Ukraine. Maybe somebody knows very well. So the Chernobyl disaster happened in Ukraine. Okay, it was in Ukraine. Actually, what was there in this case of in this such disaster? I'll tell you. First, you listen about the function of the control rods or absorbent rods. See here, guys. Then I will connect the story of Chernobyl disaster with control rods. So control rods are made up by boron, cadmium, and indium. Some more rods are also there, but these three are required. But UPSC will ask you only cadmium because those issue happened in the Chernobyl. It was a cadmium rod issue, even not the boron and indium. So that is the reason UPSC will ask you what is the use of cadmium rod in nuclear reactor. Something like a question UPSC will ask in your paper. As earlier UPSC asked what is the use of heavy water in nuclear reactor. Similarly, what is the use of cadmium in the nuclear reactor? But the both two purposes are different. Okay, actually suppose this is a reactor. Reactor is a भट्टी, furnace. एक भट्टी या फर्नेस बोलो जिसके अंदर आप न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल तरीके से जलाते हो पावर जनरेशन करने के लिए. Okay, I just want to tell you guys, nuclear reaction should be controlled for power generation. A nuclear reaction should be uncontrolled as an atom bomb for destructive purposes. Your purpose is electricity here or atom bomb? Electricity. तो reaction तो control तरीके से करो, नहीं तो जान माल का नुकसान हो सकता है जैसे Chernobyl में हुआ था. Those people were working 20 plus around. Okay, on spot they die in the case of Chernobyl disaster. वो तो ठीक है, उस एरियाज में कोई लोग नहीं रहते थे, वो एक तरह का समझो एटम बम था जो Chernobyl में हादसा हुआ था. Okay everyone, so I just want to tell you guys, control rod or absorbent rod, what about the feature? See here. Okay, see, actually suppose this is a reactor, okay. One neutron break, one particle, one atom of uranium. When one atom of uranium break by the one neutron, okay, one neutron finished because they break it, finish it, and खर्च हो गया ना यूरेनियम को तोड़कर, यूरेनियम न्यूट्रॉन खत्म, okay, और यूरेनियम खत्म, और यहाँ पर one time heat or energy निकली. Next time 3 neutron come and they break 3 uranium. Next time 9 neutron come and now 3 neutron break 3 uranium, so 3 times heat or energy generate. So this time only 1 uranium particle break atom one time. Next time 3 uranium break, 3 times heat or energy. Next time 9 neutron will come and do the breakdown of 9 uranium. In this case 27 neutron came and 9 times of heat or energy generated. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times heat or energy generated. Next time what happened? 27 neutron will come. They do the breakdown of 27 atom, uranium atom. Then what happened guys? 81 neutron come and 27 times of heat or energy generated. Ultimately 27 times heat or energy. See, this reactor cannot carry this much of heat and pressure and they will blast and people will die. Okay, and you should not have to do it because it's become here as a chain reaction. What is here? First time 1 uranium break, 1 time heat, 3 uranium break, 3 times heat, 9 uranium break, 9 times heat, 27 times uranium break, 27 times, 81 times. See, this much of time if uranium break, so this will blast. It is going to happen as a kind of chain reaction and it's used for destructive purposes. But your purpose is the what? Constructive purposes and power generation. So what you should do here guys? See what should do. Do one thing guys. In this out of 3 neutron, 2 neutron will absorb. So ultimately only 1 neutron will go. Only break 1 uranium, 3 neutron generate and 1 times heat or energy generate. Again out of 3, 2 neutron will absorb. Only 1 neutron will go break, 1 uranium break, 3 neutron generate, only 1 times heat or energy. Again 2 neutron absorb, again 1 will go, again 1 uranium break, again 3 type of neutron generate, again 1 type heat or energy. So ultimately nuclear fission reaction is under control. So answer is, what about the use of control rod? Okay, they control the reaction. And how they control the reaction? They absorb extra neutron inside the reactor. So reaction is under control for power production. I think you understood why they are calling control and why they are calling as absorbent rod. Purpose same. Even if you want, okay, you can write they absorb extra neutron inside a reactor. They absorb extra neutron inside a reactor. They absorb extra neutron inside a reactor and control nuclear fission reaction. And control nuclear fission reaction. Okay, so they absorb extra neutron inside a reactor and control nuclear fission reaction. Kindly remember it. Okay,
And this is the most important question for the coming year paper, guys. I'm expecting this question is the new question. It never came in UPSC examination, so it's most important for everyone. So it is the most important for everyone. Control rod or absorbent rod. Okay, so it is the most important for everyone. Now go next about the discussion of coolants. Okay, now come into the discussion of coolants. This question UPSC has in this way, guys. What is the use of a cadmium rods in nuclear reactor? Something like it. Okay, now come discussion of coolant. Actually, I want to tell you this nuclear fission reaction. Somebody asked me earlier. Exothermic mentioned that. I said you just wait. I'll discuss this statement later on. Actually, those nuclear fission reaction you can see here, guys. It is an exothermic reaction. So this is the reason wherever the heat generation happen for power electricity generation, at the same place some heat generation happen, and that is the reason the reaction can stop. ऐसे कह लो जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल जलती है तो गाड़ी का इंजन भी गर्म होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है. When the nuclear energy is going to generate, in that cases the heat is going to increase, जो पूरे सिस्टम को भी गर्म कर देता है. सिस्टम को गर्म नहीं करना, हीट को निकालने दो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, पर विद इन द मशीन एंड टूल्स शुड नॉट हीट अप. ओके, एंड दैट इज अ रीजन जस्ट लाइक इनसाइड आवर व्हीकल्स है ना, हम कूलेंट यूज करते हैं जिससे गाड़ी का इंजन गर्म ना होने पाए. सेम हम इस रिएक्शन के अंदर भी वी आर यूजिंग सर्टेन कूलेंट्स so the chamber is not going to burn. Okay, heat increases and the efficiency of the engine is maintained, efficiency of reactor is maintained for power generation. एक लाइन में लिखो, nuclear fission reaction is an exothermic reaction. Nuclear fission reaction is an exothermic reaction. So heat generates. So nuclear fission reaction is an exothermic reaction. So heat generates. Okay, coolant absorb heat and maintain proper temperature. Yeah, coolant maintain proper temperature inside the reactor. So coolant maintain proper temperature inside a reactor. So coolant maintain proper temperature inside a reactor. It's over, guys. Coolant maintain proper temperature inside a reactor. See, actually you people have seen one statement like heavy water. Heavy water you people have seen as a good moderator, and we can also use them as a coolant. Now I want to tell you heavy water have many other uses. Heavy water have many other uses. Okay, few statement regarding the heavy water you should know right now, because I'm expecting the heavy water as a most important topic for your paper. Once UPSC has a heavy water in your paper in 2011 to reduce the speed of neutron, but still heavy water have many other uses UPSC can ask you. Heavy water is what its chemical name is deuterium oxide. Its chemical name is deuterium oxide. Its formula is what? D2O. Okay, heavy water is what? It's a deuterium oxide, D2O. It is one of the hydrogen isotopes, protium, deuterium and tritium. Even I want to tell you those water I have right now. In this 1000 of molecule of water, 1 molecule deuterium oxide available, as scientists said. So scientists said like in out of 1000 of molecule of water, 1 molecule deuterium oxide is here. 1 molecule deuterium oxide is here. You should know it. Okay, so 1 molecule deuterium oxide is here. Okay, everyone. And see one thing more, guys. A man who firstly developed the deuterium oxide, his name was SCURE. And for this contribution, this person got the Nobel Prize. Okay, for this purpose, this person got Nobel Prize. Okay, for this purpose, this person got Nobel Prize, SCURE. So SCURE got Nobel Prize for this purpose. Okay. Kirtika asked me, sir, it generates less heat in the fission. बच्चा fission में heat कम होता है, in comparison to fusion कम होता है. थोड़ा सा confuse कर रही हो कीर्तिका. But sir, generate less heat in the fission. Fission में बच्चा उसमें भी heat बहुत होता है. But in comparison to fusion, it is less. What do you think so? Atom bomb have a less heat. क्या बात करते हो बच्चा? Atom bomb में इतना heat होता है कि हम भस्म हो जाते हैं. We not burn. We finished suddenly. Okay, I think you can understand Kirtika. Okay, reply me. Okay,
आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टूड ना। सर इसमें हीट कम होता है, नहीं, इन कंपेरिजन टू फ्यूजन, फिजन में हीट कम होता है, बट फ्यूजन में स्टिल हैव दैट मच ऑफ हीट कि एटम बम टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके फाइन। सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड दिस इज द SCU ray, Nobel Prize, got the Nobel Prize for this work. Actually the heavy waters as a moderator and coolant you already have seen, they have many other uses. Okay, many other uses. Okay, what about the many other uses? See, in the case of many other, actually one more thing I'll tell you. The first heavy water plant set up in India in Nangal, Punjab. Okay, the first heavy water plant set up in India at Nangal, Punjab. और आपको बताऊं, दुनिया में India is the largest producer of generator या producer बोलो of heavy water, and side by side main exporter of the heavy water also in the world. तो सर India is the biggest producer and biggest exporter exactly of heavy water definitely. और कभी कभी अर्जेंटीना नंबर 1 आ जाता है और ज्यादातर इंडिया होता है। तो वैसे भी इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा है ना हैवी वाटर बनता है, और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा हैवी वाटर बेचता है। कभी कभी अर्जेंटीना, कभी कभी यूएस, इवन अर्जेंटीना, यूएस also generate the heavy water. I'm telling you heavy water have many other uses. Like what? Actually it's a chemical name is the deuterium oxide. If you do a deuteration process, so deuteration of heavy water मतलब अगर किसी चीज को heavy water के साथ react कर लो, okay, अगर किसी चीज को ड्यूटेरियम ऑक्साइड के संपर्क में ले जाते हो, इन द इफेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ड्यूटरेशन। ओके, इसको कहते हैं ड्यूटरेशन। इन दिस प्रोसेस है ना, द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, अगर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इज गोइंग टू पास फ्रॉम द ड्यूटरेशन प्रोसेस, सो द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीजेस, इट बिकम मोर इफेक्टिव एंड द साइड इफेक्ट डिक्रीज्ड, and side effect of medicine decrease, just like in the case of cancer. तो सर अब ये कह रहे हो कैंसर जैसी मेडिसिन को अगर हम ड्यूटरेशन करा दें तो उसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है। ओके, उसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है, एग्जैक्टली उसका साइड इफेक्ट काफी कम हो जाता है। even you people can preserve cell tissues and organs, we can save tissues and organs inside the heavy water, है ना, हम टिश्यूज वगैरह ऑर्गन्स वगैरह को भी हैवी वाटर के अंदर सेव रख सकते हैं। तो वी कैन सेव द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आल्सो इनसाइड द हैवी वाटर, यू काइंडली रिमेंबर। तो वी कैन सेव द टिश्यूज एंड ऑर्गन आल्सो इनसाइड द हैवी वाटर। ओके, सो वी कैन आल्सो सेव हियर इन हैवी वाटर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। ओके, मान लो आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, ओके, दिल्ली टू बैंगलोर, सो घबराने की जरूरत नहीं है ना, आप ऑर्गन को इसके अंदर प्रिजर्व करके ले जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये चीज सुना होगा, जब फाइजर हम लेने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम यूएसए, वो कोविड वाला वैक्सीन, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम देयर, दैट वैक्सीन वाज नॉट इजी टू कीप इन द वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि इंडिया हैव नॉट दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कि दैट वी पीपल कैन प्रिजर्व द वैक्सीन एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर। सो हियर आई एम टेलिंग यू गाइस, वैक्सीन्स वगैरह को दे प्रोवाइड द कोल्ड रेजिस्टेंस, मतलब temperature tolerance kind of conditions they also maintain, temperature tolerance kind of condition they also maintain, so temperature tolerance kind of condition also maintain. What is the temperature tolerance here? अरे बच्चा, you just see, जब आप कोविड की वैक्सीन पाए थे, कहाँ से पाए थे, वो रेफ्रिजरेटर से निकाल के वो लोग देते हैं टॉक्सिस। सेम थिंग इन द केस ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, वो जब महिलाएं घरों में आती थी, फीमेल्स, and enter through the help of some वो thermocol box, तो thermocol box में they carry the oral polio vaccine, OPV vaccine, polio vaccine, and that is kept inside the ice. आज भी देखो when you people are going hepatitis B वगैरह vaccines, okay, आज भी whenever you people are going for hepatitis B वगैरह vaccine, तो वो आपको कहाँ से देता है, रेफ्रिजरेटर से। निकिता, SCU ray, मिलर यूरे, यूरे मेरे ख्याल से वही है, ओके, यूरे यू आर राइट, वो वही है जो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट अमीनो एसिड वाला था, राइट, पर उसको यहाँ लेने की क्या जरूरत है। ओके, सो इट्स अ हैवी वाटर, यू रिमेंबर टुडे इंडिया में हैव अ सेवन हैवी वाटर प्लांट, है ना, जहाँ पे वी पीपल आर डेवलपिंग द हैवी वाटर। ओके, तो टुडे इंडिया हैव अ 7 प्लेसेस हैवी वाटर प्लांट्स, जैसे एक मानुगुरु है तेलंगाना, जैसे कोटा राजस्थान, सिलचर उड़ीसा, ऐसे टोटल 7 places are there, but that name or locations are not required. Okay, but that name or locations are not required.
That's overall about it. Now come toward the discussion of reactors. Now come toward the discussion of reactors. So now come towards the discussion of reactors. Okay, so now you come towards the discussion of reactors. Reactors, I think you people know very well. ये एक भट्टी है. It's a kind of nuclear furnace. It is a kind of nuclear furnace. It is a type of nuclear furnace. Okay, it is a type of nuclear furnace where we involve nuclear reaction. Okay, here we perform nuclear reaction. So here we perform nuclear reaction, and this nuclear reaction may be of nuclear fission, may be of nuclear fission or nuclear fusion. It may be of nuclear fission or nuclear fusion. Those reactor you people have seen earlier, like PSWR in the first stage, breeder reactor, advanced heavy water reactor, they all were the fission reactor. They all were fission reactor. Okay, they all were fission reactor. Okay, everyone, they all were fission reactor. Now listen, now listen. Okay, first of all, I want to tell you regarding Apsara. Apsara in the Indian history is the first experimental reactor. Experimental reactor means we wanted to do this experiment first. The first experimental reactor of India. This is first experimental reactor of India. So Apsara is the first experimental reactor of India. Year I'm not sure, but शायद 1956. It's set up with the help of United Kingdom. But ये इंडिया का हिस्ट्री है. भारत का पहला जो शुरू हुआ था, it was Apsara, तो you should know it. With the help of United Kingdom. Okay, now start with the PSWR, pressurized heavy water reactor. You already have seen in the case of first stage, pressurized heavy water reactor is there. Pressurized heavy water reactor is there. Okay, pressurized heavy water reactor is there. Actually, name itself define what about the meaning of pressurized heavy water reactor. A reactor where heavy water is used. Okay, these reactors name you already have seen in the case of all three stages of energy generation. Okay, कीर्ति का 1956. ठीक है बच्चा. अच्छा डेट भी बोल रही हो 4 अगस्त. चलो 4 अगस्त भी लिख देता हूँ. पर बच्चा ये नहीं आता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ओके, और एक करंट अपडेट्स में वो है. अच्छा एक चीज मैंने कल भी बोला था, आज ही बोलता हूँ कि सारे रिएक्टर्स में हमने दूसरे कंट्री की हेल्प ली है. फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें एक काकरा पार वाला गुजरात वाला जो हमने खुद इंडिजिनस बनाया 700 मेगावाट, वो भी बात करेंगे. ओके, पहले एक बार सारा खत्म हो जाए तो मेरे को है ना, ताकि दिक्कत ना हो. अभी ग्रीन हाइड्रोजन में जो नए वो चीजें हैं, सेती वेती जो आया है, आपके टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन होगा, वो भी थोड़ा देखेंगे ना. ग्रीन हाइड्रोजन में क्या नए अपडेट्स हैं, ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है. सेती वेती है, उसमें बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है विद अदर कंट्रीज वगैरह. वही थोड़े क्या क्या PIB का जो रिपोर्ट था तुम्हारा अगस्त या दिसंबर 23 वाला है ना, वही थोड़ा एक दो चीजें देखनी है बस. ओके, PSWR. व्हाट इज PSWR? अ रिएक्टर where heavy water is used and high pressure is maintained. It is called as a pressurized heavy water reactor. Okay, and see the first commercial reactor है ना, pressurized heavy water as a commercial reactor. Okay, it's set up at Tarapur, Maharashtra. Tarapur, Maharashtra. And here India has taken the help from United States, USA. Here India has taken a help of America, USA. Okay, so here India has taken a help of America, USA. Okay, so here India has taken a help of USA, America. Another side guys, another side. Now go next, that is called breeder reactor. Breeder reactor. And breeder reactor में भी directly will go toward the discussion of fast breeder reactor where have a UPSC को. इसको थोड़ा ध्यान रखना, most important. Most important. It's a fast breeder reactor. Okay, it is the fast breeder reactor and it is the most important. नहीं, all reactors in India is not PSWR only. अब देखो ना, हम दूसरा आ गए, fast breeder reactor.
ओके रुको बेटा, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, आ रहा है ना। अभी आप खुद देखो, जब यू पीपल हैव मेंशन अबाउट द, यू हैव रिटन अबाउट द ऑल 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें भी तो अलग अलग रिएक्टर्स लिखा था, उसी से गेस कर लो। प्रेसाइज हैवी वाटर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर में भी तरह से डिफरेंट टाइप्स, फिर ASWR एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, तो 3 तो आप लोगों ने वहीं देखा था, तो ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते दैट यू मेंशन हियर। ओके दोस यू मेंशन हियर। तो हियर यू कम इनटू द फास्ट फीडर रिएक्टर। देखो पहले यहाँ पे 2 टर्म्स हैं एंड द टर्म यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स आल्सो। मेंस में भी बच्चा पिछले 15 साल में 3 बार आया ये, और पीटी के लिए भी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। सर आल्सो टुक हेल्प फ्रॉम द कैन डू टेक्नोलॉजी आल्सो। हाँ अग्रीड अग्रीड। जो शुरुआत में भारत ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, मतलब हमने यूज किया था, द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप फ्रॉम कनाडा, है ना। वो टेक्नोलॉजी कनाडा में डेवलप हुई थी, और उसी टेक्नोलॉजी को सेम ईयर में इंडिया और अर्जेंटीना दोनों ने अडॉप्ट किया था। अमेरिका ने उसी टेक्नोलॉजी को लगाया था। यू आर राइट कीर्तिका, यू आर राइट। इसीलिए उसको कैंडू के नाम से जानते हैं। कैंडू का मतलब होता है कनाडा बेस्ड टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड इन इंडिया। बाकी उससे ज्यादा उसमें है नहीं कोई वजह, ठीक है। Now come what is a fast breeder reactor? Here you just go with the two terms, two different terms. The one is a breeder reactor and second is a fast. Breeder reactors are those reactor where efficiency of fuel enhance for power generation. This is the reactor where efficiency of fuel enhance. It is a fuel. It is a reactor where efficiency of fuel enhance for power generation. So fast breeder reactor where efficiency of fuel enhance for power generation. So fast breeder reactor where efficiency of fuel enhance for power generation. So breeder reactor where efficiency of fuel enhance for power generation. And what about the meaning of fast? This is a reactor where speed of neutron is fast. Speed of neutron is fast. Okay, and this is the reactor where people use the plutonium and where people use the thorium derived uranium-233. तभी देखो हम लोगों ने जब मॉडिटर लिखा था तो फर्स्ट स्टेज में लिखा था PSWR गैस है, मॉडिटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यूरेनियम-235 ब्रेक विद द स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन यूरेनियम-233 प्लूटोनियम इन सबको तोड़ने के लिए स्पीड का न्यूट्रॉन फास्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर देखो हम मॉडिटर वगैरह जल्दी यूज नहीं करते। ओके आपने लिखा भी था सेकंड स्टेज है, मॉडिटर जल्दी नॉट यूज, और इसीलिए इस रिएक्टर को वी आर कॉलिंग देम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सो इन दिस रिएक्टर एफिशिएंसी ऑफ fuel enhanced for power generation, or side by side here the speed of neutron is fast for the breakdown of uranium-233. Okay, actually the problem with the fast breeder reactor is what? सुनना, क्यों हम प्लूटोनियम वोटेनियम या यूरेनियम-233 वगैरह को बहुत बड़े लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे? द रीजन इज दिस रिएक्टर्स आर कॉस्टली, ये मैंने पहले भी बताया क्लास में, और इनकी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी टेक्नोलॉजी अच्छे लेवल पे भी डेवलप हम नहीं कर पाए। ओके टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, ओके ये दो टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वन इज इट इज कॉस्टली एंड सेकंड इज द टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। इट मींस वी कुड नॉट हैव अचीव दिस टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली गाइस, it means we could not achieve this technology properly. Okay, the one this technology is costly and second one we could not achieve them successfully. This is the meaning of technology demonstrator. ये short में इसको हम TDD कहते हैं। तो ये छोटे लेवल पे ही अभी हम अचीव कर पाए, बड़े लेवल पे भी हम इसको डेवलप नहीं कर पाए। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आर दोज रिएक्टर्स जहां पर फ्यूल की एफिशिएंसी लगभग 30% बढ़ जाती है। 30% एफिशिएंसी एनहांस्ड, 30% एफिशिएंसी जो होती है फ्यूल की बढ़ जाती है फॉर व्हाट? एनर्जी जनरेशन और पावर जनरेशन। ये क्वेश्चन पूछेगा, मार देना। ओके 30% एफिशिएंट इन द फ्यूल इन द ब्रीडर रिएक्टर एनहांस्ड। ओके बाकी इससे ज्यादा कोई रिएक्टर्स पढ़ना नहीं है, इट विल बी एनफ टू यू। अब नाउ लिसन हियर वन मोर स्टेटमेंट गाइस। ओके लिसन वन मोर स्टेटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। Nuclear vision of India. So what about India's target? Nuclear vision of India. Okay, in the case of nuclear vision of India, first of all I want to tell you guys, in the present scenario 2% power generation India because of nuclear energy, around 55 to 60% because of coal, but around 2% with the help of nuclear energy.
Around 2% power generation India with the help of what? Nuclear energy. अब न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया में एक टारगेट, एक विजन में पीछा भी पढ़ाता हूँ जो काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ था. न्यूक्लियर विजन 2020, 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन इंडिया विल डू विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर विजन 2032, 63,000 megawatt power generation India will achieve. And nuclear vision 2050, 25% of whole electricity India will achieve. Those 2% today, guys, it varies around 25%. So those 2% today, guys, it varies around 25%. Okay, now here, see in this case, what are there? So 25% of whole electricity. Actually, I want to tell you guys, in this 25% of whole electricity, in this case, you will get the thorium vision of India also. 70% will achieve by uranium and plutonium, first and second stage, and 30% will achieve by thorium alone. Suppose the 1 lakh megawatt power generation India by in 2050. तो 1 lakh megawatt का लगभग 70,000 megawatt by uranium plutonium will do, and 30,000 will do by thorium alone. And 30,000 will be by thorium alone. Okay, 30,000 will be by thorium alone. Okay, 30,000 by thorium alone. So kindly remember it. So it's overall about the nuclear vision of India. Kindly remember. Okay, अभी इसमें एक टॉपिक और करना है, that is a nuclear fusion experiment. Okay, give heading nuclear fusion experiment. Nuclear fusion experiment. देखो, here UPSC has 3-4 questions in your paper. Nuclear fusion experiment. Nuclear fusion experiment. What are here in the case of nuclear fusion experiment? Actually, in 1985, 35 nations have shown interest. They had shown interest for the future of ITER reactor, in the development of ITER reactor. ITER, its full form is a International Thermonuclear Experimental Reactor. 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. International Thermonuclear Experimental Reactor. Nuclear Experimental Reactor. So International Thermonuclear Experimental Reactor. So International Thermonuclear Experimental Reactor. Okay, so ITER is an International Thermonuclear Experimental Reactor. Okay, International Thermonuclear Experimental Reactor. I just want to tell you guys, it is a type of fusion reactor. Okay, it is a type of fusion reactor. Earlier, all the reactor you people have seen. Okay, PSWR, FBR, TBR. Okay, so it's a kind of fusion reactor. Okay, so all the reactor that you people have seen earlier, like PSWR, FBR, everything, it was a fusion reactor. And this is about the fusion reactor. Actually, now why this reactor is very important. If worldwide the country will become successful, so throughout the world, those power crises happen, na, it will resolve within a second. एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया से आप पावर की क्राइसिस को खत्म कर सकते हो. Because nuclear fusion has a unlimited energy. Okay, nuclear fusion is a unlimited energy sources. यहाँ पे इतना एनर्जी जनरेट कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता. So did you achieve the 2020 target? हाँ चलेगा, करीब करीब we have to achieve. So plutonium and thorium both can disintegrate with the high moving neutrons, or only plutonium will break. दोनों विन है दोनों. Okay. Without the moderator, how chain reaction would be controlled? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है.
ओके, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड था, नॉट मॉडरेटर, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, एक बच्चे ने लिखा है सर हाउ मॉडरेटर, सर विदाउट मॉडरेटर हाउ चेन रिएक्शन वुड बी कंट्रोल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इज अ फ्यूजन रिएक्टर। ओके एवरीवन, फाइन। Okay, one more thing, this research was in the news, like it will start. Okay, in 1985 it was a news, but still not in that time. In 2006 there was a news, like 7 nations came together, to start this work, and they were a European Union, like Russia, US, Japan, China, South Korea, and India. So these all 7 nations, they are working together especially to make this research successful, and the venue of experimental research is called as a CADREC, and this CADREC is the location at South France. So every countries are doing the research in their own lab, and all the work of this research, okay, it will installed in the coming future at CADREC, South France, and this research will start by 2035. Well, post 2030 it will take, still it will take so much time. So post 2030 2035 के आसपास ऐसा कह रहे हैं कि रिसर्च वगैरह स्टार्ट होगा, अभी काफी काम इस पे चल रहा है। ओके, एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया ईटर इन द न्यूज, व्हाट इज द ईटर, तो आंसर लिखा था भैया ये एक तरह का फ्यूजन रिएक्टर है। ये 2017 वगैरह के आसपास का पीटी क्वेश्चन देख रहे हो, न्यूज कब का क्वेश्चन कब आ रहा है। ओके, ये देखो फिर एक बार क्वेश्चन 2017 ने पूछा भैया कहाँ इसको लगा रहे हैं, साउथ फ्रांस, और एक बार तो बोला व्हाट इज द आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल ये आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट ही तो है। न्यूक्लियर इनसाइड द सनलाइट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन हैपन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, वो नेचुरल होता है सन की लाइट में, हियर यू आर परफॉर्मिंग द आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट। और क्यों कर रहे हो, अब जब हम लोग ये सब सफल हो जाएंगे ना, पूरी दुनिया से पावर क्राइसिस खत्म हो जाएगी। एंड अनदर वन गाइस, कोल इज क्रिएटिंग द मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज व्हाट, इट्स अ क्लीन एनर्जी। तभी तो अभी दुबई में कोप 28 की मीटिंग में क्या बोला जा रहा है, दुनिया को सिर्फ एक ही चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन को दे कैन रिजॉल्व, एंड द आंसर इज द न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज अ काइंड ऑफ क्लीन एनर्जी, यू पेपर रिमेंबर, तो दैट इज द चांसेस दिस ईयर न्यूक्लियर एनर्जी हैव अ मोर चांसेस टू हैव अ क्वेश्चन इन योर पेपर, जो कि एनवायरमेंट में भी बोला जा रहा है। यूएनएफसीसी की कोप 28 मीटिंग जो दुबई में हुई है, वहां ये बोला गया भाई देखो यहाँ जो पूरा का पूरा दुनिया को सही करना है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी हैव अ मैसिव पोटेंशियल फॉर पावर जनरेशन। सोलर बोलर से इज नॉट अ सोल्यूशन। देखो किसी जमाने में 2015 2016 इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बूम, और आपके जमाने में कह रहा भैया न्यूक्लियर एनर्जी को करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को बस एक ही चीज ध्यान रखना, यू शुड हैव टू मेक देम सेफ एंड सिक्योर। यही दुनिया को है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। मतलब क्या समय के साथ बदल रहा है, यू शुड लर्न देम, ओके, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ओके, अब आई डोंट थिंक सो यू पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन द अंडरस्टैंडिंग। इसी बीच में एक न्यूज आता है, क्या आता है कि चाइना हैज मेड एन आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है ईस्ट। नाउ कम इनटू डिस्कशन ऑफ ईस्ट। ईस्ट हैव सम फुल फॉर्म, ओके, and the best part is I just want to give you a heading like China made an artificial sun. It was a news in 2020 2021. Still UPSC did not ask a single questions. Okay, so what is it? China made an artificial sun. So the news is like China made an artificial sun. So China made an artificial sun. So China made an artificial sun. It was a news in 2020 2021, but UPSC did not ask any single question from this topic. Okay, no question in UPSC paper from this topic. Now listen. Actually, this is one of the name of reactor called as a yeast. Okay, yeast. Its full form is a experimentally. Its full form is a experimentally advanced. Experimentally advanced superconducting tokamak. Experimentally advanced superconducting tokamak. You just write it.
write it. Okay. Its full form is experimentally advanced superconducting tokamak. First of all, I want to tell you guys, tokamak is a Japanese word. Okay, and in Japan, the meaning of tokamak is a fusion reactor. It's a fusion reactor. So remember this. Tokamak is a Japanese word, and its meaning is what? That is a fusion reactor. Okay, its meaning is the fusion reactor. Okay, its meaning is the fusion reactor. If anywhere in the newspaper article tokamak name published, okay, so remember it's a discussion regarding the fusion. It's a discussion regarding fusion. So it's a fusion reactor. Okay, it's a fusion. So experimentally advanced superconducting tokamak. It's a yeast. Okay, it is a yeast. Actually, what China has done, I just want to tell you, it is a reactor where China performed the nuclear fusion reaction in a controlled manner. Your people know very well what about the limitation with the nuclear fusion. It is an uncontrolled reaction. But here we control entire reaction. Okay. Actually, this is the third reactors in China. Okay, but big level of reactor where the big huge level of power generation happened, even the heat generation happened in the controlled manner. It was set up at the Hefei province. It's a Hefei province in China. Set up in Hefei is one of the area, Hefei province of China. So this reactor set up at Hefei province of China. Okay, so it's set up at Hefei province of China. Okay, so it's set up at Hefei province of China. You should know it. So Hefei province of China. So artificial sun. And see one thing more here I'll tell you. Like what China has done here. Actually, if you go into sun core temperature, if you just check the sun core temperature. So sun core temperature is actually what? It is around 15 million degrees Celsius. It is around 15 million degrees Celsius. So sun core temperature is around 15 million degrees Celsius. It is actually the sun core temperature. And core is always at that place. Either it's a sun core, yeah, it's a earth core. It's a center, yeah, it's a place where the reaction involved. When the reaction happen. And at the reaction side, guys, have a maximum heat or maximum energy there. So this is the reason it is a place of maximum heat or maximum energy. So sun core temperature is around 15 million degrees Celsius. Okay, maximum part of the temperature within a sun, actually it is located in the sun core. In this experiment, what China has done, 8 times of sun core temperature has been maintained. That's around 120 million degrees Celsius. So this much of temperature was maintained for 101 seconds. This much of temperature was maintained for 101 seconds. So this much of temperature was maintained for 101 seconds. And how this reaction got controlled? With the help of strong magnetic field. With the help of certain strong magnetic field. So with the help of certain strong magnetic field. Okay, so with the help of certain strong magnetic field, this temperature was maintained. So with the help of certain strong magnetic field, this temperature was maintained. Strong magnetic field, kindly remember it. Okay, so strong magnetic field was maintained. Okay, so those reactor was there inner side of the reactor's wall. Strong magnetic field generated. How maintained, that is the part of experiment. You just remember some of the statement only. And with the help of this all the experiment, okay, even it got very popular, lot of popularity. And the reason you people know very well, because fusion is not easy to control, but here the fusion make controlled reaction. So it's overall the achievement here, guys. Okay. And see one thing more, guys, those all the 7 nations you people have seen now, guys. Okay, these all 7 nations are working together in their own country. They are developing certain tools and parts of this experiment that will run by 2030, yeah, 2035. And here those China has done, it was also the part of those experiment in the coming future will installed inside. Okay, will installed inside. So it's overall about the discussion of action and all.
Now you come into the some remaining parts here regarding this energy, and go towards the discussion of some recent update that was in the news. Here we start first with the sustainable aviation fuel. Okay, here we'll go toward the discussion of sustainable aviation fuel. Okay, go with the some recent updates from the energy chapters. So go toward the discussion of some recent updates. So go toward the discussion of some recent updates. And the first discussion will go toward the sustainable aviation fuel. Sustainable aviation fuel. Okay, sustainable aviation fuel, you can call them as a SAF. Sustainable aviation fuel is called as a SAF. And one more discussion is there, but that discussion I will not do here right now. That discussion I will do after the discussion of coal gasification. That is still the very important topic. Coal gasification and coal liquefaction and coal liquefaction. So coal gasification and coal liquefaction, that will be the next portion for the discussion. So coal gasification and coal liquefaction. And the same place I'll discuss with you about the synthetic petrol. Synthetic petrol somehow is connecting with the gas liquefaction concepts. So this sustainable aviation fuel and synthetic petrol are in news. Okay, so first of all I'll discuss with you what about the sustainable aviation fuel and coal gasification and coal. I think coal gasification liquefaction I discussed in the static portion also, but still it is the important question for your current affairs. And one thing more, this question still not came in UPSC examinations. Green hydrogen and many concepts I will discuss here in this part. Sustainable aviation fuel. Actually, India have a national biofuel coordination committee. Okay, in the case of sustainable aviation fuel, you come here guys. India have a national biofuel coordination committee. This is one of the committee that is in India guys. National Biofuel Coordination Committee, NBCC. Okay, and they have made a targets. They have made a targets of SAF. Okay, they have made a target of SAF, sustainable aviation fuel, mixing with aviation turbine fuel. So those aeroplane turbine fuels we people are using, in that cases we people do the mixing of sustainable aviation fuel. Okay, actually at international level, you know, this one will start by 2027 onwards. It's a initiative of ICAO. It is an initiative of ICAO. What is the ICAO guys? ICAO is the International Civil Aviation Organization. It is what? International Civil Aviation Organization. Okay, so International Civil Aviation Organization has set up a target. Okay, actually I want to tell you, it is one of the UN agency guys. It is one of the UN agency. It's set up in the same year when India got independent, 1947. Okay, and its headquarters is in Canada. Okay, actually the purpose of this is what? Those aeroplane is going to move in the sky, okay, at some height. They are making some rule and regulations on the aviation sector. So rule and regulation on aviation sector, it's a purpose of them. Rule and regulation in aviation sector. So the purpose is what? Rule and regulation in aviation sector. Okay, so actually they are trying to make a air transport system much more safe for the environment, and for that purposes this organization had make a target like okay, we will start to use this kind of mixing of fuel effective from
2027 onwards. Okay, and this is the international UN agency parameters that India follow, and here India brought the SAF. India brought the SAF. And why these kind of things are very, very important, guys? Because I just want to tell you guys, when the aeroplane is going to move in the sky, guys, they are also creating a lot of environmental pollutions. So in that cases, the carbon footprints and this kind of problems there. So that is reason to save this. Okay, the environmental conditional to make them safe. Okay, this is the ICAO body. Okay, they are working, and India also adopted a National Biofuel Coordination Committee. Okay, they have set up it. Actually, this committee was established. This committee was established in 1960. This committee was established in 1960. Under what? Under MOEF and CC. This is the main leading ministry. MOEF and CC is the main leading ministry of India. MOEF and CC. Okay, and what about the decision has been taken? I want to tell you guys. See, so what about the decision has been taken? And this decision, you just remember, guys, at international level, this kind of fuel should be a sustainable fuel. We should have to start in the aviation sector from 2027 onwards. Okay, this is according to ICAO. This is according to ICAO. But what about the India is saying under their own National Biofuel Coordination Committee? Okay, so what about the decision here? Some factual data, and see, current space, some factual data are there, and wherever a concept is required, the previous discussion I will connect from there. See. The one is there, guys, like 1% mixing, 1% SAF blending, 1% SAF blending, those India will start. Okay, as a target, okay, 1% SAF blending, target 2027. Okay, but firstly it will start from initially at international flight. Actually, at international flights. Okay, international flights. And second one, 2% sustainable aviation fuel will start. Okay, mixing from 2028 onwards, and initially into the international flights. Okay, into the international flights. Now the question is actually, what is the sustainable aviation fuel? Those mixing that India has also made a target according to own decision, like 1% mixing of sustainable aviation fuel by 2027 onward India will start, and 2% sustainable aviation fuel blending target 2028 India will start. Sustainable aviation fuel are actually those fuel produced from biomass sources. The best part, do you remember? Okay, they are generating from the biomass sources. Okay, sustainable aviation fuel generate from biomass sources. They generate from biomass sources. A biomass source like cooking oil, waste, manure, sewage, that kind of maize, food grains, that kind of things are there. Okay, and these biomass based fuel that is going there, guys, they will be the substitutes. They will be the substitute of jet fuels. Okay, so there will be a substitute of jet fuels. Those will generate here from the food grains, rice, food grains, rice. I think you know very well. I'm telling you biofuel here, biomass. Now you people know very well those biomasses fuel you people have seen. Okay, now I am planning to do the mixing into the aviation sector. Okay, in the case of aviation sector. Definitely you will ask me, what about the benefit of it? Okay, what about the benefit of it? The benefit of it, biofuel, there are environmental benefits, but sustainable in the nature. So emission reduction will be there. Pollution will be not there. So the one is the emission reduction will be there. Okay, the one is what? Emission reduction will be there. Second one, carbon footprint reduced. Of course, carbon footprint means the emission of carbon content will reduced. Second part. Third one, waste recycling also become very easy. Okay, those biomasses are going to generate. In the case of biomass gasification, you've seen, guys, people are doing the open burning of biomass. They create the massive environmental pollutions. So these kind of benefits are here in this case. Okay, what is a synthetic petrol? I'll discuss. Just wait. But what is actually
SAF, Sustainable Aviation Fuel. This is the entire informations, or I think you will not miss it. And you mentioned this is the first topic of current issues. Okay, so synthetic aviation fuel, kindly remember, it's a fuel mixing of biomass that you will do. I think you people very clear. It's a international organization, you people remember. Okay, those are working, and India is following the same. And this is the reason India said like we will start to do the mixing at least 1% from 2027 onwards. And they have given the suggestion also 27 onwards the people start. So India is going to start from 2027 also. Okay, India is going to start from 2027 also. So now come toward the discussion of coal gasification and coal liquefaction. Okay, now come here guys. So done guys. For coal gasification liquefaction, okay, I just discussed some of the PDF, and this PDF after institution, after discussion, institution will share you. Don't worry. Okay, so institution will open this, share with all of you. Okay, don't worry guys. This time you just focus this. Okay, those I'm going to describe with you on the board, and save your time. Okay, no need to dictate here guys. Okay, dictations somewhere where the PDF and all not available, that dictation only I'll do. Rest of all you just listen, and if you want you just go to note down all. Okay, so coal gasification and liquefaction. It's not liquidification, it's a liquefaction. Don't be confused there guys. Okay, come here. Actually, I just want to tell you something. If you remember biomass gasification, if you guys remember about biomass gasification, so easily you can understand what is a coal gasification. As whatever the process we have adopted in the case of coal gasification process, similar process we also adopt in the case of coal gasification process. In the case of biomass gasification process, raw material was biogas, biomasses. Okay, and here, okay, here in this case the material is what? That is a coal. So here in the case of coal gasification process, raw material is a coal guys. Okay, fine. What are going to happen in the case of coal gasification process? So here the carbon based raw material, that is coal, already you know very well, carbon based hydrocarbon is there. Okay, we are going to use it into the coal into the fuel formation, and the fuel formation is in the form of gas. Okay, and those gas form here, it's a synthetic because it's synthesized artificially. So this gas will call as a syngas. And how this entire process happen? In this process again you take a container, high temperature you maintain as you have seen in the case of biomass gasification process, and a good condition of pressure you also maintain inside the chamber. And this entire process what will come? Syngas will come. And now you recall your biomass gasification process, you can understand very easily. Okay, you can understand very easily. Okay everyone. And see one more statement I'll tell you. What about the composition of syngas? You people know very well. Carbon dioxide, hydrogen, methane, nitrogen and carbon monoxides. Okay, whatever you want you can control them. Okay, rest of all like hydrogen and methane you can use them as a fuel. As in the case of biomass gasification, previous lecture I told you about the scrubbers, they absorb the carbon monoxides. Okay, even if you want nitrogen you can also stop, because nitrogen also create the pollution, nitrogen pollution, and carbon monoxide still have a, carbon dioxide still have a problems. So most of the gases you will absorb through the scrubbers. Okay, those are coming, but rest of the other you can use them as a source of energy. And see, this is one of the picture where you can see like coal gasification process, how it is going to happen there guys. It's a container, okay. Similarly you are burning at very high temperature, see 725 1225 degrees Celsius, pyrolysis, I think you remember. Okay, oxygen is coming there inside, coal is coming, and even the water is still coming guys. These three is going to come inside, and that inside the container have a what? The high pressure is there. Okay, pressure is very high, more than 30 kilogram per square centimeter, and temperature 725 to 1225 degree Celsius. Okay, the whole not required, third point is not required. That's two processes going to be happen. And here in this case guys, some gas formation happen. That gas is called as a syngas because it's a synthetic gas, it's synthesized.
So synthetic gas means it is going to synthesize. And in this gas have a presence of many gases like methane, hydrogen. Cleaning of syngas you do. I see mentioned there. Cleaning of syngas means those you want. Okay, those you want, you only take a separate. Rest of other you just clean them. You just absorb them. It's a theoretical. It's a pictorial ways. Through the help of it, I try to simplify the concept of coal gasification process. Now listen guys, in this case of coal gasification process have some issues also there, because when you people are going to use the coal inside this coal gasification plant, okay, generally what you people are doing, do you know? In this case what you people are doing, okay, generally in this entire process, those entire mechanism people are doing this, that lot of the material is going to generate. Okay, and these all the material that is going to generate, it is mentioned in the next slide. See, before it I want to tell you the coal is going to clean also. Coal washing we are doing, and I told you because of coal washing what happened guys, heavy metal that is naturally available inside the coal, it will come into the water bodies and make the water bodies as a contaminants. Okay, contamination there. So coal gasification is one of the more water intensive forms of energy production. Also concern about water contamination, land subsidence and disposing of wastewater safely is the issue guys. Because if this kind of water that is going to clean from the coal guys, if you are going to put somewhere guys, so heavy metal may be there. So that is the issue here. What is the liquefaction? Actually, what about the product formed from the coal gasification process? What about this CO2, methane, everything is there guys. You just compress them in the presence of certain catalyst. You just compress them in the presence of certain catalyst. So all the gases nature will compress and become as a liquid form, that is called as a liquefaction. And after the liquefaction guys, those all the material will come. It's a kerosene, it's a gasoline, it's a petrol, and this is called as a synthetic petrol. Those synthetic petrol I told you guys in the case of SAR, okay, synthetic aviation fuel SAF. Okay, here you people have seen about the synthetic petroleum products. The synthetic petrol is that those after gasification process, the gases nature of fuel generate, gases nature of material generate as an end product. You just keep them into presence of some catalyst at some pressure. These gases will compress and become as a liquid, and that is a synthetic petrol. Okay, so now liquefaction process, you can see the coal to liquid technology is what? Very simple. Alternative routes to produce the diesel and gasoline and makes economic sense. You can understand very well. Actually, those gasification process of coal, the synthetic gas even generated, that you are going to convert into liquid form at equal to the fuel equivalent. But in this condition, you must have to use of certain catalyst like cobalt iron catalyst. Okay, so I don't think so you people have problem in this case, and you can understand very well how interesting it is guys. Our coal is not the better coal. I've tried to understand some logic behind it. Why coal gasification liquefactions are important for us. In the previous lecture, you all people will listen, India have a coal, but India have an average and below average quality of coal. Do you remember? If India have an average and below average quality of coal, it means our coal is not producing more amount of heat content. So better do one thing guys. First of all, through the coal gasification process to convert the coal into methane. You all guys know very well hydrogen and methane have a more calorific value in comparison to coal. So agar coal, a worst quality of coal, average quality of coal is going to convert into methane and hydrogen as a best quality of gaseous nature of fuel, so ultimately it is good for everyone now. Whenever India will become successful in this project guys, in this case of coal gasification liquefaction, so India will start to generate a massive methane. Why India will depend on any other country to get the natural gases. And another side, India will also start to make their own petrol and diesels, so it's a benefit here, gasification and liquefaction. And this is the reason guys many companies are working. Okay, this is the reason many companies are working in India. Okay, so this is the reason many companies are trying to do the many experiment here and try to be successful in this case. Benefits of liquefaction, I'm not going there guys, leave it. Up see, directly come on this. Okay, statement. Union Ministry of Coal and Mines. See, current updates for everyone, it is important. Okay, and not it is a current update guys, it is always important from the last 3 years. Just like green hydrogen was important from last 3 years, but UPSC has in 2023. But I was taking your classes about green hydrogen. It's still in the last year. Okay, one of the current affairs classes I have scheduled. Okay, in that classes I also discussed the green hydrogen. Okay, but not last year, last to last and last to last. For the 3 years continuously, and same thing here from the last 3 years. Coming year, that question will come in your paper. Union Minister of Coal and Mines, okay, recently addressed the webinar. Recently means in 2021-22. Coal gasification liquefaction. Okay, and what is there guys? 100 million ton coal gasification by 2030 India will achieve, and for that purposes 4 lakh crore investment government is going to do there guys. And government is telling guys, if anybody have an interest in the coal gasification liquefaction plant, so
government is ready to help you. Okay, government is ready to help you in this case. So try to understand in this cases. Okay, matlab, I think you can find out like subsidies and rebates. Government will help you. So ultimately, people will have an interest. Why not? I should go with this kind of business. And if a company will develop and successful in this kind of business, so they will earn more and more money. Because the coal is very cheap, and when you convert it to methane, it becomes very, beneficial for everyone. So definitely it will boost up the production of synthetic natural gas as energy fuel. And in this case, guys, urea, fertilizer, some chemical formation also happen. Okay, liquefaction and so this is the overall here, guys. Coal gasification and liquefaction. So finally, I think you people understood very well. Coal gasification, liquefaction, and synthetic fuel. Synthetic petrol, I think you understood very well. What about the liquefaction process there? It's a compressed nature of gases. What about is going to form in the case of coal gasification, in the case of the cobalt and some of the catalyst, and finally it become as a synthetic petrol. Okay, and finally it become here as a synthetic petrol. Now India's largest battery energy storage system. Come the next topic. So that was the second topic. So two topics already cover here, guys. Now come next topic, that is India's largest battery energy storage system. So India's largest battery storage system. Battery energy storage system. Okay. Battery energy storage system. So BESS. In the short, I can tell you as it is what? BESS. So battery energy storage system, BESS. Actually, it's a very simple concept, and Solar Energy Corporation of India Limited as a company, you know very well, working under the Ministry of Environment, Forest, Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. I think you people know very well. And finally, they have commissioned India's largest battery energy storage system. And here we will store the energy. Okay, here we will store energy that is being generating with the help of solar energy. Okay, so I just want to tell you in the case of BESS, guys, through the help of renewable energy sector, those power generation is going to happen. This power generation is going to store in a very powerful battery. Okay, and now here you people can store the electricity for more duration of time, and that is the case of India's largest battery energy storage system. If you want, you can write one statement. Battery storage or battery energy storage system. Write down. Battery storage or battery energy storage system. Battery storage or battery energy storage system are devices that enable energy that enable energy from renewables, from renewables means renewable energy sources, from renewables like solar and wind, that enables energy from renewables like solar and wind, to be stored, S-T-O-R-E-D, to be stored, and then released when the power is needed. Okay, so it's very good system, guys, like a portable system where first time this was started in the Rajnandagaon. It is in Chhattisgarh area. Maybe somebody is listing my classes from the Rajnandagaon. Okay, Rajnandagaon. It's Rajnandagaon. It's a area in Chhattisgarh. Okay, it is the firstly adopted in this area actually. Okay, right. Solar Energy Corporation of India, the SECI, Solar Energy Corporation of India. Last day you will have listened about the SECI, right? Solar Energy Corporation of India
Solar Energy Corporation of India, under the aegis of MNRE, under the aegis AEGIS, under the aegis of MNRE, Solar Energy Corporation of India Limited, लिख लेना लिमिटेड, कंपनी लगेगा लिमिटेड, अंडर द एजिस AEGIS aegis of MNRE has successfully commissioned India's largest battery energy storage system, which stores energy using renewable energy, which stores energy using renewable energy. Renewable energy means solar energy, wind energy, through that. Okay, and see one thing more, guys. Those energy will generate in this area, Rajnandagaon. Okay, it is going to store in the battery, and the government is going to purchase them. So it's an entire process. The energy would be purchased by the state of Chhattisgarh, right? The energy would be purchased by the state of Chhattisgarh. To fulfill peak energy demand of state, states. So this is the overall about it, and India's largest battery storage system, SECI, those are working under the aegis of MNRE. This is the entire work. Those are going to happen. After this discussion, we'll go toward the next topics. Okay, next topic. Okay, and next topic is evergreen topics. Okay, and this is called as the lithium reserves, and then we'll go towards the lithium-ion battery, and then we'll go towards the versus sodium-ion battery. Okay, but to come on the sodium-ion battery, first of all, you should have to go from the lithium-ion battery. Okay, so that will be the next fourth, lithium-ion, and the fifth is the current related topic is the sodium. But lithium-ion is not a current related. I'll tell you guys, it is a evergreen topics. Okay, from the last many years, many of the cars are coming in the market. There is lithium-ion. Even mobile phones, they are giving you the power with the help of lithium-ion battery. So lithium-ion is not the current affairs, it's a evergreen topics. Okay, and what about the difference between the lithium-ion battery and sodium-ion battery? I'll also discuss later on. Now again you go towards the PDF. Okay, in this PDF, what about the lithium? First you come into the lithium. I just want to give you some factual data of the lithium. Okay, so first of all, I just want to go with the lithium reserves in India that is required, and that is the important factual data, a reason you people should know. In January, I think February 2023, okay, India's largest lithium reserve was identified in the Jammu and Kashmir, Riyasai district, okay, Jammu and Kashmir. So that is the reason this news got so much viral, and I thought in UPSC 2023 UPSC should ask the questions, but UPSC is not asked any question, but still I want to give you the same information, as now it is important for your static also. Why you are telling about Vanshika about non-confidential energy? Okay, why you are telling about non-confidential energy? Even those energy generation we are doing, we should have to share to everyone. Okay, why not we should have to use this kind of battery, those they have to develop. In that cases, the energy storage will be more in that battery. And I just want to tell you guys, still those battery we are using, the battery storage capacity is not that much.
Okay, this time the problem is what there. Agar we are going to boom the solar energy, wind energy, so side by side we should have to be a very quality based battery that can accumulate and store the energy. Okay, that can store the energy. Okay, so Vanshika sir could Vanshika question is that I want to everybody listen. Sir could not understand why a separate kind of battery storage would be required to store the energy generated from the renewable sources. I think rest of the guys you people understood very well. Your condition is not same as like a Vanshika hai. The reason those powerful batteries we are going to utilize here, this is the case. Okay, earlier those batteries we people used it was not so much powerful. Okay, and that is the reason this can, and see, this is the system that has been adopted in Chhattisgarh. Okay, many places where the solar panel is there, they have a surplus of electricities are there, and that power we are going to utilize here. Okay, it's a non-conventional. Okay, non-conventional energy. Is there any difference in the conventional and non-conventional? बच्चा conventional means जो हम behavior में use कर रहे हैं, non-conventional means जो हम behavior में नहीं use कर रहे हैं. तो कन्वेंशनल में तो आपका कोल आएगा ना, आपका पेट्रोलियम, आपका कोल आएगा, सबसे कॉमन तो कोल ही आने वाला है, पेट्रोलियम आने वाला है, ठीक है. नॉन कन्वेंशनल में दोज वी आर नॉट यूजिंग, तो रिन्यूएबल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल हो गया ना. ओके, बट आई जस्ट वांट टू, अच्छा चलो एक बात मैं बताता हूँ, जैसे वंशिका का एक क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको एक चीज लिए चलता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड में. एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम. ओके, ऑफ ग्रिड सिस्टम में वी आर गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम प्लेस एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एट द सेम प्लेस. मतलब द एनर्जी जनरेशन इज गोइंग टू हैपन ऑन योर रूफ एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एट द सेम प्लेस, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. ओके, बट यहाँ पे एक दिक्कत ये, अगर सोलर वोलर से अगर यू पीपल आर गोइंग टू जनरेट मोर एंड मोर पावर, तो दोज नॉर्मल बैटरीज यू पीपल हैव दिस मच हैव नॉट द कैपेसिटी टू स्टोर मोर एंड मोर पावर. दैट इज द रीजन यू शुड हैव टू गो टुवर्ड द अल्टरनेटिव्स, एंड एज अल्टरनेटिव्स and as alternative this is the best about the battery energy storage system. ओके, तो ये एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो सरकार ने बनाया है कि हर किसी के घर से इस तरह की बैटरी होगी जो चार्ज हो रही होगी और जिसको सरकार लेगी और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी उसकी पूरा करेगी. तो तरह से एक तरह का पोर्टेबल सिस्टम है ये. अब व्हाट काइंड ऑफ बैटरी विल बी देयर, तो डेफिनेटली बैटरी तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, बट द सिस्टम इज पोर्टेबल सिस्टम. ओके, ये नहीं कह रहा कि बैटरी हम यूज कर रहे हैं, ये कह रहा है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम है जो एक डेवलप किया जा रहा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. आई थिंक यू कुड नॉट रीड द प्रॉपर लाइन आई डिक्टेट देयर. बैटरी स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आर डिवाइसेस that enable energy from renewable like solar and wind to be stored and then released when the power is needed most. ओके, आप स्टोर करके रख लो और इसको सरकार ले भी लेगी, है ना, आपका एक पैसा भी बन जाएगा और साथ में जहां जरूरत होगी वहां फुलफिल भी कर जाएंगे. और अनदर पार्ट इज द एंटायर सिस्टम इज व्हाट, दैट इज द सस्टेनेबल टाइप. Okay, I think I simplify the concept because I just repeated my statement further and I think you can understand very well. तो अच्छा है ना, छत्तीसगढ़ सरकार has taken this initiatives. तो coming future में initiative तो और अच्छा है ना, जितना अच्छा आएगा it is good for everyone. Okay, it is good for everyone. ओके, नाउ कम. ओके वंशिका भाई, ये अच्छा लगता है, आप समझने के बाद रिप्लाई करते हो तो मन करता है समझाने का, नहीं रिप्लाई करते हो तो मन करता है छोड़ो. In the next class you today I think you have some test also करना, पेपर you will get from the discussions जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, पेपर you will get from the discussions. Okay, yeah, I was talking to you about the lithium reserves. So थोड़ा lithium reserves से बात करते हैं. That PPT is open there. Lithium reserves in India, fine. It's a picture and this picture you just see here guys. February 2023, like there is a report like India is being as the 7th largest resource of lithium globally. यानी पूरी दुनिया में that country have a lithium, तो हमसे आगे 6 कंट्रीज इनके पास लिथियम रिजर्व्स है और नाउ इंडिया स्टैंड द 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड. एंड हाउ सडनली इट हैपेंड दैट India was so much back in the ranking? The reason is because the
the recent detection of the lithium reserve, that is the overall the biggest reserves in India of lithium. It is being detected in the Riasi district of Jammu and Kashmir, and that is the geological survey of India. And now total India have a 5.9 million ton of lithium resources. Okay, total states which have a lithium reserves in India, I think it's a mention here, total 7 state name you can find out. And during the see, Ministry of Mines Lok Sabha reply, it's a report of 8th February 2023. That report is there, and this is the last report that is mentioned there. Jammu, Kashmir, Rajasthan, Chhattisgarh, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Jharkhand. The 5 states here you can get, and 2 here you can get. Total 7 states have in India have a lithium reserves. So kindly try to focus here, guys. Later on, lithium. See, one thing more I want to tell you. Like UPSC is very smart. UPSC can ask you the question: lithium reserve is only used. Lithium is only used as a battery. The answer is no. Lithium is not only used as a battery. Lithium have many other alternative uses, and that alternative uses are mentioned there, guys. Lithium made tablets, something we are using in the case of anti-depression medicines, and side by side in the case of bipolar disorder. Yeah, have you people have some depression? मतलब depression operation के case में भी you can use them as a tablets. And a part of the another example I'll tell you, in the case of space vehicles and military equipments maybe people are using what? Lithium. So it's here, guys. This is the I'm not going there here, just to come here in this factual data. There is something mentioned here, the downside. Like 2020, the EV market was around 163 billion US dollar, and there is a hope by 2030 the EV market will reach around 823 billion US dollar. And that is the reason, guys, in this case you must have to need a proper lithium ion battery. So somehow here it is the importance indirectly is giving here. Like what about the uses in the coming future lithium have? This is the global lithium resources in India, around 5.5% with the 98 million tons as per report according to Council on Energy, Environment and Water. It's a total 6 countries before India. They are on the ranking. Number 1 is Bolivia, you can see, and number 2 is Argentina, number 3 US, number 4 Chile, number 5 Australia, number 6 China, number 7 India. I just want to tell you guys, who is the main supplier of lithium to India? The answer is China. Still China, guys. Sometimes you people are doing some drama like if I'll do some disturbance to China, so China will disturb. If China will do some disturbance with India, you people will disturb. You should also remember here, because the cheapest lithium and the batteries kind of things that China is providing you. That's why this time the lithium maximum we are going to import from China. So that is the overall. I don't think so here in this case anything required. Okay, and total reserves 5.9 million, etc. This is over. Now come next, that is called lithium-ion battery, how they are working. Okay, next discussion, how lithium-ion battery is working. See, guys. Okay, now come here, how lithium-ion battery is working. Okay, lithium-ion battery. And after the discussion of lithium battery, I'll discuss with you about the sodium-ion battery. Okay, so you just wait. Actually, there is a report, those I have, like 50% growth in 2023 compared to 2022. Okay, this is the recent data, those I have, I want to tell you guys. So in 2020 में जितना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिका था उसका करीब 50% ग्रोथ इस साल हुआ है. मतलब मान लो अगर पिछले साल 1 लाख बिका है तो इस लाख 1,50,000 बिका है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. आई एम टेलिंग यू जस्ट इन अ ईयर, गाइस, in the recently in the reference of India. It's a great news. Like people are getting more and more attract going towards the electronic vehicles. Okay, and I just wanted to tell you guys कि लिथियम विथियम के पहले हम लोग जो जनरली जो बैटरी वगैरह यूज करते हैं, थोड़ा वहीं से लिए चलते हैं आपको. ओके, जरा देख, जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ना, वंशिका ने, ऐसे यू पीपल आस्क मी क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं. ओके, फाइन. और सेम थिंग आई विल अप्लाई इन द केस ऑफ स्पेस ऑल्सो. पहले मैं पूरा बढ़ा दूंगा, सारा एक बार कंसेप्ट बढ़ा दूंगा, देन इन दैट केस आई विल स्टार्ट राइट ऑन द करंट अफेयर्स. तो जिन बच्चों ने कभी मेरे से स्टैटिक नहीं भी पढ़ा है, या अ लॉन्ग बैक दे हैव लिसन माय स्टैटिक, मे बी साल भर पहले या few years back, and they join these courses, so ultimately they will recall everything. Okay, इसीलिए जो वो उस बच्चे ने, वो पीयूष ने, किसने बोला था, मैं थोड़ा जानकर गुस्सा कर रहा था कि जिन लोगों ने मेरे से पहले भी सुना है, स्टिल दे ट्राई टू लिसन इट. ओके, काफी चीजें हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत और चीजें हो जो एड ऑन करनी हो, तो मैं स्टार्टिंग में भी एड ऑन कर दूंगा.
Okay, and it will be beneficial, and that is the reason last day I told you it is an integrated program. It does not mean I'm here to take the current affairs classes. I'm just here because I know very well like UPSC nature is 80% static, 20% the current updates. तो मैंने बोला था जहाँ currents required होगा मैं यूज करूंगा, तो जहाँ करंट इज रिक्वायर्ड आई एम डूइंग हियर। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें स्टैटिक के साथ करंट के साथ, अब जैसे सोडियम बैटरी है तो साथ साथ लिथियम के साथ पढ़ो ना। ओके, और यू पीपल नो वेरी वेल कि लिथियम में आपको स्टैटिक में भी पढ़ाता हूँ, बट अभी मैंने पीछे नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ा, बिकॉज दिस कोर्स इज डिजाइन विद सम अदर फेसेस। ये सिर्फ करंट्स का मैराथन नहीं है जो 10 साल घंटे का लेने वाला हूँ, वहां पे तो करंट 10-11 घंटे में खत्म करा, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक के साथ करंट्स को जोड़ जोड़ के करा रहा हूँ। ओके, मैंने बोला ना, देखो यूरेनियम इज यूपीएससी क्वेश्चन है ना, ये आता है, और वैसे भी यू पीपल नो वेरी वेल आपको ये चीजें ऊपर ऊपर से लोग पढ़ा देंगे, लेकिन स्टैटिक के साथ चीजें नहीं समझाएंगे, एंड दैट इज अमेजिंग। स्टैटिक देखो हम कितने दिन से पढ़ रहे हैं। ओके, कल से आई हैव स्टार्टेड अ स्टैटिक, और 1.5 घंटे के अंदर आपका करंट हो जाएगा, तो 2 घंटे के अंदर, तो करंट तो फिर भी बहुत कम है ना। ओके, so now come here, and I told you guys the lithium ion battery you will understand very easily, है ना। अगर आपको फ्यूल सेल याद है तो लिथियम आयन बैटरी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। फाइन, यहाँ इसमें चलते हैं। देखो इन द केस ऑफ लिथियम आयन बैटरी व्हाट विल हैपन, गो 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 गो। हाँ, देखो लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी हैज डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ओवर द ओल्डर रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी, जो हम निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड्स की बैटरी यूज करते थे। ठीक है, जैसे लेड वेड वाले भी बैटरी हम लोग यूज करते थे, अब उसको हटा दिया गया है। तो सेम थिंग इन द केस ऑफ निकल कैडमियम, वो निप्पो उप्पो वाले नहीं, छोटे छोटे बैटरीज आते थे, है ना। अब तो ड्यूरासेल और क्या क्या द पावरफुल बैटरी यू पीपल आर यूजिंग, बड़े कम चलते थे, आई थिंक यू नो, गर्मी और में पिघल भी जाते थे, लीक वीक हो जाता था, दैट मेनी ऑफ द मशीन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर गाइस। Okay, so this is the old one. Now here the next one is the lithium ion battery we'll use there. And 1970s में this battery was developed by one of the person I'm waiting them, but it is not required. क्या बनाया? Lithium ion batteries still have a components like cathode, anode and electrolytes, and same thing here in the case of what? In the case of sodium ion batteries. तो किसी भी बैटरीज में जाओ या फ्यूल सेल में भी आपने देखा था बच्चा, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, आई थिंक यू पीपल रिमेंबर। ओके, आपको याद होगा। ओके, एक बात और बता दूं, यहाँ पर सारा का सारा काम जो होता है, आइदर यू आर यूजिंग द बैटरी, यानी बैटरी को यूज कर रहे हो, मतलब बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज, और बैटरी को फिर आप चार्ज कर रहे हो। ओके, इन दोनों प्रोसेस में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ लिथियम आयन, एंड दिस इज द रीजन दिस बैटरी इज कॉल्ड एज अ लिथियम आयन बैटरी। आइदर यू आर गोइंग टू कंज्यूम द बैटरी, उसमें भी लिथियम निकल रहा होता है, एंड हियर यू आर गोइंग टू एब्सॉर्ब द लिथियम। अभी वो दिखाता हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरकैलेशन एंड डी इंटरकैलेशन। जैसे मान लो मेरी बैटरी है दिस टाइम, मैं घर से रिचार्ज करके घर से फुल चार्ज करके चलाऊं, अब नाउ थ्रू आउट द डे व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग ऑन इन माय फोन, इंटरकैलेशन प्रोसेस गोइंग टू हैपन थ्रू आउट द डे, धीरे धीरे मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे आई विल प्लग दैट फॉर द चार्जिंग केसेस गाइस, सो उसको बोलेंगे डी इंटरकैलेशन। डी इंटरकैलेशन मींस मेरा बैटरी इज गोइंग टू चार्ज, द बैटरी इज गोइंग टू चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज अ डी इंटरकैलेशन, एंड बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरकैलेशन। So this intercalation and deintercalation kind of term, don't forget that you can see here guys, see is written here, no not written here, but in this all the intercalation and deintercalation process there is a movement of the lithium, this is the reason this battery is called as a lithium ion battery। okay, now come, अब देखो यहाँ पे you will get the name, that term I told you guys, see कहीं लिखा जरूर होगा intercalation और deintercalation, नहीं लिखा है, अब तो कोई बात नहीं, आगे लिखा होगा, यहाँ नहीं, आगे वाले में है ना, छोड़ इससे कोई बात नहीं। ओके, कम हियर, कम ए, यहाँ देखो, यहाँ लिखो, हाँ मिल गया, ये देखो इंटरकैलेशंस है ना, एंड द वन मोर टर्म इज कॉल्ड एज अ डी इंटरकैलेशन, इसी कहीं लिखा होगा, ओह दिस इज द डी इंटरकैलेशन एंड दिस इज द इंटरकैलेशंस, द एंटायर प्रोसेस कॉल्ड एज अ इंटरकैलेशन एंड डी इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन प्रोसेस व्हाट you should know it guys, intercalation process means when the battery is going to discharge, जैसे इस समय मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अगर आपने उसको चार्जिंग पे नहीं लगाया तो, और दूसरा होता है डी इंटरकैलेशन प्रोसेस ऑफ बैटरी, है ना, जहां पर हम बैटरी को चार्ज करते हैं अगेन, है ना, चार्ज अगेन। और इन सारे प्रोसेस में व्हाट इज गोइंग टू मूव हियर, लिथियम कभी इधर से उधर जा रहा होता है, कभी उधर से इधर आ रहा होता है, एंड इन दिस बेसिस द पावर इज गोइंग टू जनरेट। ओके, पावर इज गोइंग टू जनरेट हियर इन दिस केस ऑफ लिथियम आयन बैटरी, जरा समझना है ना, एक इसमें मिस्टेक है वो जरा सही कर लेना, ठीक है, वो मैंने आगे चल के सही कर दिया है, गॉट इट, ये कैथोड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट्स नॉट अ कैथोड, इट्स नॉट अ कैथोड, है ना, इसको सही कर लेना आप, है ना, और ये एनोड नहीं है, ओके, ये है एनोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड,
So remember, this is anode and that is cathode. So anode is a positive charge and cathode is the negative charge. Okay, so anode is a positive charge and cathode is the negative charge. Okay everyone, so anode is the positive charge and cathode is a negative. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. Okay, and I think you people know very well, अगर you people have a normal battery तो उसमें भी देखा होगा एक तरफ प्लस लिखा होता है एक तरफ माइनस लिखा होता है, यानी one side is the anode and second side is the cathode. Okay, ये ध्यान रखना. Okay, one side is the plus and second side is the minus. तो वन साइड इज द एनोड एंड सेकंड साइड इज द कैथोड. अब जरा सुनो, यहाँ पे मैं चीजों को समझाता हूँ. इट्स अ पिक्चर ऑफ लिथियम एंड बैटरी. बहुत ही आसान है, आप जस्ट इस पिक्चर को समझ लो. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. एक्चुअली बैटरी में कहाँ कहाँ पर क्या होता है, एंड दोस पीपल हैव अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड वेरी वेल. और सबका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे दोगे. अगर यू विल अंडरस्टैंड द लिथियम एंड बैटरी, तो सोडियम आयन बैटरी इजिली यू विल अंडरस्टैंड. आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. इट विल बी वेरी वेरी इजी. ओके, इट विल बी वेरी वेरी इजी हियर. कल से थोड़ा मैं टाइम ज्यादा लेके थोड़ी क्लास करूंगा, यू पीपल रिमेंबर. ओके, क्योंकि यू विल हैव योर टेस्ट पेपर आल्सो, और आफ्टर हैविंग अ टेस्ट पेपर सम मोर डिस्कशन रिगार्डिंग द टेस्ट पेपर इज आल्सो रिक्वायर्ड, और आई थिंक यू पीपल विल एंजॉय मोर. और टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू टेक योर क्लास थोड़ा सा ज्यादा, 4:30 तक मैं जाऊंगा. आई थिंक यू विल नॉट माइंड. कोई नहीं बोल रहा हाँ सर, है ना. एक मिनट देना, एक मिनट, है ना. कोई नहीं बोल रहा हाँ सर, आई विल नॉट माइंड, इवन आई विल एंजॉय मोर. आप मुझे 9 डेज में पढ़ाने वाले हो और ज्यादा मिल जाए तो क्या बुरा है ना. कोई नहीं कह रहा हाँ सर इट्स वेरी गुड. यही चीज है जो थोड़ा मुझे बुरा लगता है ना. सो कल से आई विल टेक योर आंसर्स, क्वेश्चन वगैरह, और उस पर भी हम लोग, एक मिनट देना बच्चों, एक मिनट, है ना, उससे डिस्कशन करेंगे. कम लिथियम आयन बैटरी. See guys, what is here in the case of lithium ion battery? Try to understand. See. नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द क्लासेस. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके जो क्वेश्चन पेपर वगैरह होंगे अब उनकी डिस्कशंस भी करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि मैं ना भी आपको करा रहा हूँ, एंड दैट क्वेश्चंस में दैट इज कमिंग देयर. तो नेक्स्ट डे आई विल कम एंड डिस्कस विथ यू. अरे नहीं, पूरे दिन नहीं पढ़ना, इट्स अ क्रैश कोर्स. तो फाउंडेशन और क्रैश कोर्स में व्हाट विल बी द डिफरेंस, डोंट वरी. नाउ क्लियर. करण, कृष्णा, वंशिका, पीयूष. पीयूष देख लेना भाई. अच्छा सुनो, तुम लोग एक बात और मैं बताऊं, हम लोग का जो जब डांटते हैं ना तो वो सब ब्लेसिंग होता है, ये ध्यान रखना. ये मैं बच्चों को भी कहता हूँ, कई बार बोला भी ऑनलाइन में, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं. इनको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि पीयूष का मैसेज आया तो मुझे अच्छा लगा. यस सर, वेरी गुड सर, कूल सर, है ना. तो जैसे वी टीचर्स एंड द पेरेंट्स जब आपको डांटते हैं ना तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग. इसको हमेशा ध्यान रखना. बड़ों का डांट हमेशा एक आशीर्वाद होता है. माई टीचर्स इवन ऑल्सो यू नो समटाइम बड़ा पीटता भी था. अब तो मैं नहीं बता सकता आपको, हम लोग तो पिटते भी थे. आपके ज़माने में तो फिर भी थोड़ा डर लगता है बच्चों को डांटते हुए ही, तो आशीर्वाद बहुत मिलता था. ओके, तो वही चीज़ें हैं जब यो समटाइम योर पेरेंट्स ऑल्सो टेल यू समथिंग और आपको बुरा लगता है. ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं इसलिए आपको डांटते हैं. ये तो ज़माने में किसी को फ़र्क पड़ता है क्या, आप चाहे मरो चाहे बढ़ो, तो जो आपको डांटता है वो आपके बारे में सोचता है, इसलिए ही जस्ट केयर ऑफ यू, है ना, केयर यू. और इसीलिए आपकी जो केयर करता है ना उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके टीचर्स हों. आपको डांटते हैं तो आपके भले के लिए होता है. जिस दिन ये लोग नहीं होंगे ना, हम लोग जो दुनिया में, तो एक प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो उस दिन समझ में आएगा कि आज कोई पूछने वाला नहीं है. समटाइम यू नो यू पीपल, आपके मम्मा पापा आपको डांटते होंगे रात में देर में क्यों आते हो, और आपको बुरा लगता होगा. जिस दिन हम लोग की जिंदगी में लोग नहीं होंगे ना, उस दिन समझ में आएगा यार आज कोई पूछने वाला भी नहीं है. देन दैट डे यू विल रियलाइज इट कि आप कितनी चीज मिस कर रहे हैं और कितनी चीजें नहीं समझ रहे हैं. इसमें कोई आप ही गलती नहीं है, इट्स अ एज ही ऐसा है, क्योंकि हमें हर चीज गलत लगती है. ठीक है, कोई हमारे अगेंस्ट में कुछ कहता तो गलत लगती है, बट विद टाइम वी रियलाइज इट कि हम उस समय कितने गलत थे. ओके, तो इन सब चीजों को कभी गलत मत लिया करो, और यू जस्ट टेक देम एज अ ब्लेसिंग. तो जैसे मैं पीयूष को ही बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, यार तुम लोग मेरे खिलौने ही हो, छोटे मोटे से. तुम ही लोगों के साथ तो मेरे 20 साल गुजर गए, और उम्मीद करता हूँ आगे के भी 20, 25 साल, 30 साल, कितनी जिंदगी लिखी किसी को पता नहीं. ओके, वो भी गुजर जाएगा. ओके, वो भी गुजर जाएगा, अच्छा ही जाएगा, डोंट वरी. इतने प्यारे प्यारे बच्चे, आई विल गेट सम मोर स्टूडेंट्स, दे विल गिव मी अ सिलेक्शंस. इन सब पे घर आऊंगा मैं, कभी बूढ़ा उड़ा हो जाऊंगा, है ना. ये मेरा बच्चा IAS है, ये मेरा बच्चा IPS है ना. ये मेरी बच्ची है ना, छोटी छोटी बहनियां भी तो हैं, छोटी छोटी सी, है ना.
सो तुम ही लोगों के साथ थोड़ा सा है ना, चलो हो गया इमोशनल, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मेरा. अब you just start here. Okay, see, so continue. Actually, just try to understand what are going to happen in the case of lithium and battery, all entire concepts. You just remember, see, this is the some of the information at figure number 3.16 in your book. The same picture is mentioned there. अगर आपके पास जो यहाँ से book जो दी गई है McGraw-Hill वाली जो 7th edition अगर आपके पास है. Okay, so working principle of lithium and battery is there. Actually, there is two condition in the battery. You just remember. One side the battery is fully charged. Second side the battery is fully discharged. In that condition, what happened? Actually, in fully charged batteries, lithium is actually located towards the anode. So, in fully charged batteries, lithium is actually fully loaded towards the anode. नहीं, ये गड़बड़ हुआ है, रुको. In the fully charged battery, lithium is towards, देखो थोड़ा मैं सही कर रहा है ना, आप सही कर, lithium is towards the cathode. अब रुकी जाओ, मुझे थोड़ा सोच ही लेने दो. गड़बड़ क्यों हो रहा है? एक मिनट रुकना है ना. एक मुझे देना है ना, एक चीज जरा चेक कर लेता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है. एक मिनट रुकना. एक छोटा सा डाउट था, जरा मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए. सही है, सब कुछ सही है. ओके, सो लिथियम इज टुवर्ड्स कैथोड. एक छोटा सा करेक्शन है, इसको इस पिक्चर में देख लेना, आप कर भी लेना. एंड फुली डिस्चार्ज बैटरी लिथियम इज टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, लिथियम इज टुवर्ड्स द एनोड, है ना, यही है. Okay, so all these cells are electrochemical cells. So in the lithium-ion battery, when the external load is connected, एक मिनट रुको. In full charging state, electrons, एक मिनट रुको, है ना, एक स्टेटमेंट है, ऐसा कैसे हो गया यार? As these cells are electrochemical in the lithium battery, when the external load is connected in the full charging state, external load is connecting in the full charging state, electrons start to move from anode towards the cathode, and electronic density start decreasing on anode. ऐसा करते हैं, इसका पिक्चर आपको कल बना के दिखाता हूँ. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम. ओके, एक बार इसको मैं देखता हूँ, एक डाउट मुझे हो रहा है. ओके, दिस पिक्चर इज ओके, दिस इज ओके. आई एम लिटिल बिट डाउट दैट ग्रेफाइट इज हियर या लाइक ग्रेफाइट इज हियर एक्चुअली. ओके, दिस इज ओनली वन डाउट, तो यू जस्ट वेट, रोक देते हैं इसको. ओके, आगे कर लेते हैं, एक मिनट ना. तो सोडियम एंड बैटरी एंड लिथियम एंड बैटरी आई डिस्कस टुमारो. इसको छोड़ देते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा छोड़ते हैं. हाँ, नाउ कम मिनी सोलर ग्रिड्स. इसको थोड़ा मैं छोड़ रहा हूँ, एक दिन रुक जाओ, मैं थोड़ा एक बार देखता हूँ सब क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड योर टाइम ऑल्सो. तो टुमारो व्हेन आई विल कम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक फर्स्ट एंड देन आई विल गो लेटर ऑन. बट हाँ, एक क्वेश्चन आपके पेपर में सोडियम एंड बैटरीज है, तो गुस्सा मत करना अगर नहीं बनेगा, ठीक है.
डोंट वरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि इस पिक्चर में गलती से एनोड इधर बन गया, इसलिए थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट फुली चार्ज बैटरी में इधर होता था, तो अगर फुली चार्ज बैटरी में ग्रेफाइट जो था इधर होता था, तो मुझे जो लग रहा है इस पिक्चर में जो गलती हुई है उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इसमें करेक्शन और करना पड़ेगा। ओके मुझे जो लिथियम है, अगर इधर एनोड है, इधर एनोड है और इधर कैथोड है, तो ग्रेफाइट शुड बी हियर एक्चुअली मुझे करना चाहिए। ओके यही मुझे बताना था। तो ग्रेफाइट इधर होता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होता, तो करंट ऐसे चलता, लोड यहाँ पे बल्ब ऑन। आप हो सकता है somebody is not understand because many of the people are humanity backgrounds। तो रुक जाओ, इस पिक्चर को मैं थोड़ा चेंज करके कल दिखाऊंगा। इस पिक्चर में there are some errors, that's why I have a difficulty to। अरे कोई नहीं बोला सर, कोई बात है, एक बच्चे ने बोला, देख रहे हो, अच्छा है ना, बाकी कोई नहीं बोला है ना। इसको मैं कल कराता हूँ, रुक जाओ। लिथियम आयन, या पिक्चर थोड़ा गड़बड़ हो गया, और बिना पिक्चर अगर सही नहीं होगा तो यू विल हैव अ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। वेट इट, ना दिखाओ भाई, इंटरनेट वाला है ना। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कल बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। एक दिन दे दो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एक दिन दे दो। मेरे इसमें 2-3 डाउट्स और हैं, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनी सोलर ग्रिड, है ना। फिगर भेजने की जरूरत नहीं है, फिगर मैंने ही बुक में बनाया है। एक मिनट रुक जाओ, इधर आओ, ठीक है। मुझे उस फिगर में ही थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। जो आपके पास है बुक में, मुझे एक बार चेक करने दो। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट मिनी सोलर ग्रिड। मिनी सोलर grid. So next I think is the 7th topic, 8th topic, I don't know. It's a mini solar grids. That's a 6th topic. Mini solar grids. Actually, you know what is a mini solar grids? It's a small scale decentralized electricity network system. Okay, और इसमें क्या करते हैं कि we are trying to make solar energy economically viable for everyone, ठीक है। How we will make them, even some of the states like Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand में 700 solar mini grid system has been set up, and this system has been set up with the help of private sectors. Okay, हाँ आराम से कर लेंगे करण, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। फालतू में आज मैं एरर करूँ, कल मैं चेक करूँ, बेटर एक बार मैं 99% तो आई एम श्योर मैं जो बताऊंगा, लेकिन फिर भी 1% की वजह से आई कैन नॉट टेक अ रिस्क। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा दोस्त, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ योर कैरियर, है ना। रुक जाओ, ठीक है। मैं वो गलती नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भी कैरियर मेरे से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा 1% भी डाउट है तो आई डू नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क हियर। ओके सो मिनी सोलर ग्रिड्स आर द टॉपिक्स हियर। ओके better you write 1-2 line about the mini solar grids. Solar energy mini grids are a small scale, right? एक दो लाइन लिखो, फिर थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा मैं चाय भी तब तक ले लूंगा। देखो solar energy mini grids are small scale decentralized electricity network. Small scale decentralized, so a small scale decentralized electricity network decentralized electricity networks powered by solar energy. Okay, next the first point is this. Second point, write down. Second point, they have a capacity to produce energy. They have capacity to produce energy. Energy means power, I'm telling you. They have capacity to produce energy ranging from few kilowatts to megawatts. Ranging from few kilowatts to megawatt. Okay, beneficial, है ना, next point, beneficial
beneficial to rural communities. Beneficial to rural communities. So it will be beneficial to the rural communities. Okay, this is the system. In many countries, the mini solar grid system installed, like Nigeria and Cambodia. Okay, in my knowledge, that list I got it in the recent current updates. So Nigeria and Cambodia, they have it. And a part of this, guys, India still have what? Mini solar grid system. Okay, India still have a mini solar grid system. Okay, and total in the reference of India, I'll go to around 700 solar mini grids are set up in India. Around 700 solar mini grids are set up in India. Okay, and it is operating by the private sector companies. Okay, it is operating by the private sector companies. Okay, and these companies, those even set up it, they are in Uttar Pradesh, some state where it is dominating, Bihar and Jharkhand. So Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. Suppose UPSC has in the entire country have this mini solar grid system installed. The answer is no, only in few states. Okay. बताता हूँ, बहुत ही आसान चीज है, छोटी सी चीज है. ओके, एक मिनट दो. असल में मेरा दिमाग ना अभी भी लिथियम पर ही चल रहा है. प्रॉब्लम ये है कि मैं कहाँ 1% मिस कर रहा हूँ. पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इवन सैकड़ों बैच में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक कंफ्यूजन मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गया. 100 से ज्यादा बैचेस में, 100 क्यों, 1000 होंगे, लिथियम पढ़ा चुका, लिथियम एंड बैटरीज. एक मिनट देना बच्चों. Mostly avoid to take a tea. It's not good for your health. Okay, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए कैफीन वगैरह पे. इससे एडीएच लेवल कम होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन. ओके, लेकिन सम टाइम यू नो ये बायोलॉजिकल क्लॉक वाली कंडीशंस है, थोड़ा मैं लेजी फील करता हूँ तो थोड़ा मैं चाय ले लेता हूँ. तो भी वेरी लिटिल. And UPSC asked the question in your paper from caffeine. उन्होंने पूछा, 2 बार पूछा है, but it's a old pattern of UPSC paper. तो चाय भी पी रहा हूँ, आपको वो UPSC वाले क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ. 2 times repeated क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वाला, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, तो टेक का नहीं है. And by the way, in your UPSC paper, the role of biology is very less. चाय भी खत्म कर लेता हूँ, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, दैट इज रिपीटेड क्वेश्चंस 2 times. एक्चुअली इनसाइड योर बॉडी देयर इज वन हार्मोन. नहीं, पहले वो कैफीन वाली बात करता हूँ. यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन लाइक अमाउंट ऑफ कैफीन, है ना, वेयर इज द मैक्सिमम कैफीन. नंबर 1 इज द कोको, नंबर 2 कॉफी एंड नंबर 3 टी. दिस इज द ऑर्डर. सो नंबर 1 इज व्हाट, कोको, नंबर 2 इज द कॉफी एंड नंबर 3 इज द टी. यू रिमेंबर ये ऑर्डर. एक्चुअल में सबसे ज्यादा कैफीन किस में होता है, कोको में होता है, उसके बाद कॉफी में, सबसे कम टी में. ओके, सेकंड स्टेटमेंट. ओके, सेकंड स्टेटमेंट, ये 2 बार के क्वेश्चन हैं, जो दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है. इफ यू पीपल कंज्यूम द कैफीन, यू नो कैफीन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. अगर आप लेते हैं चाय में तो ज्यादा अच्छा भी नहीं है, काफी तो और ज्यादा खतरनाक होता है. पर समटाइम इट्स गुड ऑल्सो, जस्ट लाइक इफ आई एम फीलिंग लेजी, तो वहां के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है.
Okay, constipations, acidity, lot of the problems are there. है ना, with the chai. Calcium level also going to decrease if you are consuming the more amount of caffeine. शरीर का कैल्शियम भी कम होता है इससे. चाय कॉफी इतना खतरनाक है. Consumption of caffeine reduces. Black tea is good, green tea is good, black tea is good, green tea is good. Okay. अब ठीक है भाई, अब कोमल कह रही है सर अब ब्लैक टी पी लो. अब सुन लो पहले क्वेश्चन, है ना, but it's a very decent questions or still it is a evergreen questions, so I'm expecting for your examinations. पता आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, उसके दो पार्ट होते हैं. वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. Posterior pituitary is releasing one of the hormone that is called as the ADH hormone. Its full form is the antidiuretic hormone. पता इसी हार्मोन को ना we are calling them as a vasopressin. Vasopressin. VSOPRESSIN. So antidiuretic hormone या vasopressin hormone released from the posterior pituitary. और ये हार्मोन ऐसा होता है, इसका एक नॉर्मल लेवल होता है जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा होता है. बट व्हेन यू डू द कंजम्पशन ऑफ कैफीन, अगर ज्यादा लेते हो तो दे डिक्रीज द लेवल ऑफ एडीएच इनसाइड योर ब्लड. ये हार्मोन सीधे निकल के हमारी ब्लड में आते हैं. तो यही हार्मोन का लेवल कॉफी पीने से, चाय पीने से, कैफीन कंजम्पशन से दे आर गोइंग टू डिक्रीज इनसाइड योर ब्लड. जो यहां से निकलता है वो कम हो जाता है, तो ब्लड में इसकी मात्रा कम हो जाती है. और अगर एडीएच लेवल इज गोइंग टू रिड्यूस इनसाइड योर बॉडी तो आपको यूरिनेशन बहुत होता है. और इसीलिए जो लोग कैफीन का कंजम्पशन करते हैं they have a more and more urinations and they have a more and more thirst also. प्यास भी बहुत लगती है. Even if you people are doing the consumption of ये क्या नाम है, cold drinks. So cold drinks still have a lot of caffeine guys. इसीलिए cold drink से प्यास बुझती नहीं है, cold drink से प्यास और बढ़ती है और आपकी बॉडी में पानी की और कमी होती है, इसलिए आप और प्यास लग जाता है. ध्यान रखना cold drink से. और चाय से भी सेम कंडीशंस आते हैं. This is the UPSC question. पता है एक बीमारी होती है, अगर नॉर्मल ही बिना कॉफी, ये तो एक छोटे समय के लिए होने वाला एक केस है जो आपकी बॉडी में हर किसी को होता है. इट्स वेरी कॉमन. सम टाइम यू नो व्हाट हैपन गाइस, बिना कंजम्पशन ऑफ कैफीन के आपकी बॉडी में एडीएच का लेवल कम हो जाता है, तो वो एक बीमारी हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज अ डायबिटीज इंसिपिडस. इट्स नॉट मेलाइटिस. मेलाइटिस द इशू ऑफ इंसुलिन. इट्स अ केस ऑफ इंसिपिडस. इट्स अ इशू ऑफ एडीएच हार्मोन. तो ऐसे केसेस में यू पीपल हैव अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. तो दीस काइंड ऑफ पीपल नेवर गो विद द बस, दे गो थ्रू द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में टॉयलेट इनबिल्ट होता है. बस में कितनी बार बस रोकेगा. हो गया बच्चा, हो गया. मेरा चाय भी खत्म हो गया. अब सुनो, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग. एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड दे आर जनरेटिंग सोलर पैनल बेस्ड पावर. Okay, they are generating solar based power and they are providing the electricity, and for that purposes they are charging. अच्छा है ना, अच्छा है. I think you people understood very well. और इसके लिए private companies are doing the installation of solar panel वगैरह छोटे छोटे लेवल पर, and the capacity of this छोटा लेवल of power generation is kilowatt to megawatt. वो भी छोटे छोटे किलोवाट से छोटा मेगावाट. In that way, they are trying to fulfill the demand of peak supply of power. So that is the overall guys. And see one thing more guys. एनर्जी को अगर हम छोटे छोटे लेवल पर we try to generate ना, still India have a massive potential. आप बताओ हर किसी के छत पे छोटे छोटे सोलर पैनल लगाकर और उससे पावर जनरेट करें, तो it's a centralized, it's a decentralized. Sir, many of the roof have a different places have a solar panel, so it's a decentralized. एक ही जगह बड़े लेवल पे you are going to produce the solar energy power and then you are going to distribute, तो वो centralized होता है. लेकिन यहाँ पे छतों many of the roofs, so it is what it is, a decentralized way, and this is the system mentioned decentralized electricity network. And here the power generation is not at a big level. We are going to do the installation of solar panel. It's a small scale. I think these 2 points you people understood. Energy you also understood. Beneficial to rural communities. I think you can understand very well, because rural communities still not have a more consumption also. Okay, not requirement more also. So the basic requirement would fulfill with the help of mini solar grid system. Not micro, it's a mini solar grid system. Okay, so in that case, what about the benefit? Economic and environmental benefits. Actually, in the rural areas, the government is trying to fulfill your basic demands. Okay, power supply and all, and that power supply sources us what? Burning of coal. They are creating environmental pollution. But this kind of solar energy sector, the mini solar grid system will what? They will be very beneficial to you.
ओके यहीं पर एक टर्म और मैं बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड. थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना. ओनली लिमिटेशन इज व्हाट? फंडिंग, क्योंकि दे आर लिटिल बिट कॉस्टली. अगर यू विल गो टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर गाइस, तो हाई इनिशियल कॉस्ट इज देयर. इन द बिगिनिंग यू मस्ट हैव टू इन्वेस्ट मोर, बट लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी की वजह से ओवरऑल दे विल बिकम चीप. On the basis of durability, overall it will become cheap. So that is the point you people remember. Okay. And yes, this is the 700 solar mini grid system that private company installed. वो पैसा भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अच्छा एक चीज और मुझे बताना चाहिए था, what is the off grid system and what is the in grid system, and on grid system and what is the off grid system. See guys, so one is the on grid system, one is the on grid system, and one is called as the off grid system. Because mini grid came na, so mini grid mein I should discuss about what is the on grid and what is off grid. On grid system means guys where the power generation in the massive. In the case of on grid system, the power generation is massive. Here the power generation is massive. Okay, just like I'm telling you guys, through the help of through the help of burning of coal. Through the help of burning of coal, wherever the burning of coal based power generation happen, thermal power plant, here the power generation as a big level happen. Okay. And this big level of power generation, when we distribute from one place to another place, in between have a massive level of transmission losses. In such area have a massive level of transmission losses happen, and then electricity reach to your doorstep. Okay, so on grid means through the help of grid system the power is coming, and here have a massive transmission losses, but because massive power generation happens, after getting certain losses, still have a lot and lot electricity that the people can use. So those electricity I am using in Delhi right now in this campus here in this place in this studio guys. This electricity somewhere has generated with the help of coal, maybe 300-400 kilometer away, and then through the help of pole high tension where it is coming through the help of grid system, that is the on grid system. Maximum electricity generate, few losses happen, still have a maximum electricity left, and that we are going to utilize. And this is the massive transmission losses happen, around 20 to 30% transmission losses happen with the help of cable wire. वो देखा होगा पोल से होगा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ग्रिड कनेक्शंस के थ्रू ही घरों में आ रही है, और यहाँ पे बच्चा have a massive transmission losses happen, and this transmission losses we can reduce with the help of Fluorine या CNT के तारे बना लेंगे. In the case of nanotechnology I'll tell you, तो ये statement I will discuss with you कि we can reduce the transmission losses of electricity. Okay, second side guys, second side what is the off grid system? Off grid system अपने छत पे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और अपने घर के अंदर यूज करो, यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस नॉट हैपन. दिस इज कॉल्ड एज ऑफ ग्रिड. तो अगर सोलर रूफटॉप सिस्टम यू आर गोइंग टू इंस्टॉल एंड यू आर यूटिलाइजिंग द सोलर रूफटॉप बेस्ड पावर जनरेशन एट योर होम, दिस इज द केस ऑफ ऑफ ग्रिड सिस्टम. This is the case of what? This is the case of off grid system. You people remember. So I think what is the on grid and the what is the off grid, you people understood. I just want to tell you guys, solar energy may also be become as a on grid. अगर भादला टाइप वाला एरिया है, मैसिव एरियाज ऑफ द एनर्जी वेयर द 2000 मेगावाट पावर जनरेशन इज गोइंग टू हैपन इन द भादला, तो दैट में भी दैट सप्लाई यू पीपल कैन सेंड टू द मोर डिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ ऑन ग्रिड सिस्टम. That supply you can distribute as a part of the on grid system. It is possible. So I think you understood very well how solar energy can be a part of on grid and even in the case of a off grid system. Okay, so ये थोड़ा सा solar mini grid system was there, and please remember it is a good question for your paper. This is the 6th number of topic. Okay, now come the next topic. Now come the next topic in the current related. Okay, and I think you people are getting very clear what about the current updates here. One is the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. That is the very important question. You remember Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. 7 topics. Pradhan Mantri Suryodaya. The Pradhan Mantri Suryodaya Yojana scheme or Yojana. Okay, actually this Pradhan Mantri Suryodaya Yojana is launched especially to take a benefit, to provide a benefit of 1 crore people, 1 crore household guys. So 1 crore household will get the benefit of PM-Surya Yojana. In the case of PM-Surya Yojana guys, government of India introduced the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, and the purpose is to providing the solar rooftop on your system to 1 crore households. सोलर पंप इज ऑफ ग्रिड. पीयूष अग्रीड. सोलर पंप बच्चा ऑफ ग्रिड, बिल्कुल ऑफ ग्रिड चलेगा. सोलर पंप ऑफ ग्रिड है ना. एक लाइन में लिखना, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पीएम सूर्योदय योजना. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पीएम सूर्योदय योजना. सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पीएम सूर्योदय योजना टू प्रोपेल सोलर एनर्जी, टू प्रोपेल PROPEL, टू प्रोपेल सोलर एनर्जी
to propel solar energy adoption, to propel solar energy adoption by providing solar rooftop, by providing a rooftop solar power system. Propel solar energy adoption by providing rooftop solar power system to 1 crore households. Solar power system to 1 crore households. Okay, one part. Second point in this case, guys. Okay, in this case, the 1 crore household will get the benefits. Household will get the benefits. Okay, and it is connecting with the solar rooftop scheme. So to make successful the solar rooftop scheme, which kind of schemes are Yojana brought? So PM-Surya Yojana, and 1 crore household will get this benefit. Actually, in this case, what about the target, guys? 40 gigawatt of solar rooftop capacity will generate here. So 40 gigawatt is a huge amount, guys. अगर 1 करोड़ लोगों के लिए 40 गीगावाट अगर पावर जनरेशन आप कर दोगे, इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर ओवरऑल 40 गीगावाट पावर जनरेशन इज देयर, एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट, तो मतलब 40,000 है ना, 40,000 मतलब 40,000 megawatt power generation is India's target here in this case. So second point, write down. The initiative aligns ALIGNS, the initiative aligns with India's ambitious targets of achieving 40 gigawatt of rooftop, 40 gigawatt of rooftop solar capacity. Okay, next point. Now the question is, what about the benefit of it? Two benefit of the scheme is there, guys. The one, reduce the electricity bill, and second, fulfill the demand of electricity. Right? Aims. The project. What about the aim of this project? Yeah, program. Right? Aims. One, right? Reduce electricity bill, and second, energy self-reliance. Energy self-reliance. Some factual data I think I discussed with you. I just brought in my list. I just want to check you guys. If anybody have not remember it, so just to check it, and that was the question in 2022 prelims question paper. World's biggest world's biggest solar plants, it is in China. Solar park, it is in China. And the second largest or biggest on the basis of power generation, it is in India. It's a Bhadla district, Rajasthan. I think you remember. So second largest solar park is where? Okay, it's a Bhadla district, Rajasthan. Solar park, I told you guys, massive areas of solar panel installed. Okay, and here we are doing the power generations. So world's second largest in India, that is a Bhadla, Rajasthan. But I just want to tell you, in 2022 when UPSC asked the question, that time Bhadla was the world's biggest. And 2023, 6th edition of book mein Bhadla was written as the world's biggest, and 7th edition of book mein I have changed some of the factual data. Now it is the second largest in the world, but largest in India definitely. Second one, you people know very well, India's biggest floating solar plant, Ramagundam, Telangana, and the proposed biggest floating solar plant, I think you remember, Omkareshwar, Ujjain, Madhya Pradesh, in that area. And world's largest solar tree, it is in Ludhiana, Punjab, and it is a contribution, I think, solar tree, I think last day I told you, and here you people know very well. It's set up with the help of CSIR associated lab, that is called CMERI, Central Mechanical Engineering Research Institute. And one more statement I would like to tell you guys, world's first international airport that is 100% solar powered. It's a Kochi International Airport at Kerala. When UPSC asked the question in 2022, that was also the part of the questions. Okay, so which of the places where have a 100% solar energy powered electricities are there? The world's first international airport, that is a Kochi International Airport. Okay. So it's one more point. Yeah, next. India's first largest indigenously developed nuclear power plant unit in Gujarat. The next topic is the 8th topic. Okay,
eighth topic of current updates. Okay, India's first largest indigenously developed nuclear power plant unit in Gujarat. So this is the heading, and there was some factual data I'll tell you here. Actually, inside Gujarat, guys, those nuclear reactor is there. It's a Kakrapar nuclear power plant. Okay, Gujarat. Okay, actually here third unit of Kakrapar atomic power project. This reactor is already working, but it's a unit number 3. Unit 1, unit 2, that was already working, and even with the help of other country. Unit 3 is totally independent. Okay, here. Okay, the third unit of indigenously developed 700 megawatt electric capacity. Total how much? 700 megawatt electric capacity is here, guys. Okay, so write down. It's India's significant milestone, right? It is India's significant milestone. Okay, it is India's significant milestone in India's domestic civilian nuclear program. Okay, in India's domestic civilian nuclear program. Okay, here you write down, guys, KAPP. In the short, you can call them as a KAPP. Okay, right. Short may you can mention it KAPP3, right? KAPP3 is the first, right. KAPP third is the first. KAPP3 is the first 700 MWE unit. First 700 MWE unit, 700 megawatt units, and the largest indigenously developed variant, and the largest indigenously developed variant of the pressurized heavy water reactor. So which kind of reactor is here, guys? Pressurized. You people know very well pressurized heavy water. See, this is the benefit of the static part. Okay, and I just want to tell you guys, it's the largest. Before it, the previous largest size of pressurized heavy water reactor was a Tarapur. Okay, and now it is ahead from the Tarapur wala. Tarapur capacity was 540. 540 megawatt. Okay, अब now a pressurized heavy water reactor जो सबसे बड़ा भारत में काम कर रहा था, अब उससे बड़ा हो गया. But difference is there, Tarapur not set up with the help of you, and the Kakrapar atomic power plant का third unit it is set up indigenously. You have not taken the help of any other country. So it is good, guys. And here I want to tell you guys, India have some targets that we should have to achieve. एक factual data है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना. ओके और एक और न्यूज में आ रहा है लाइक इसके बाद इंडिया इज गोइंग टू सेट अप द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. सुनो है ना, क्या इसके बाद और करंट अपडेट्स में आ रहा है कि नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस सक्सेस, दिस सक्सेस और याद रखना दिस इज द फर्स्ट रिएक्टर. ओके, इट्स टोटली इंडिजिनस. आई टोल्ड यू गाइस, इसके पहले जितने भी रिएक्टर्स हैं, ओके, टोटल 7 लोकेशंस जहां पे रिएक्टर्स आर रनिंग टुडे. पता है आपको कहां भारत में रिएक्टर्स है जहां पे पावर जनरेशन हो रहा है? जैसे तारापुर महाराष्ट्र. ओके, तारापुर पहले पता है 2010 तक ये लोकेशन आपके पेपर के पीटी में आया करते थे. तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश,
कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, ये देखो ना, काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटका, कैगा कर्नाटका, एक कोई छूट रहा है इसमें है ना, कैगा कर्नाटका। तो कुल टोटल 7 प्लेसेस आर देयर गाइस। तारापुर हो गया, तारापुर टोटल 7 है, एक कुछ याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं, शायद कोई बता दे मुझे। राजस्थान हो गया, नहीं राजस्थान का एक छूट रहा है ना कोई, देखो अभी याद आ जाएगा, राजस्थान का एक छूट रहा है, तो राजस्थान का एक छूट रहा है, क्योंकि राजस्थान का एक भी नहीं है, एक राजस्थान का छूट रहा है, टोटल 7 है ना, ये 7 है। अब नाउ द पॉइंट इज देयर, दिस इज द 700 मेगावाट इंडिजिनियस, है ना। अब प्रेशराइज हैवी वाटर, अब एक नया टारगेट दैट इंडिया इज गोइंग टू अचीव, 900 megawatt power generation India will achieve with the help of pressurized water reactor. With the help of pressurized water reactor. Okay, and that will be the civilian nuclear sector reactors. Okay, it will be there. What about today's India's generation? Okay, today's India's generation, India aims to ramp up its existing nuclear power capacity from. Okay, write a note. Okay, write a note. India aims, AIMS aims to ramp up, मतलब we are going to ramp up its existing nuclear power. रावत भाटा, you are right, रावत भाटा राजस्थान, right, एक लिख लो, एक बच्चे ने भी बोला, मुझे मैसेज किया है ना, इट्स अ रावत भाटा, राइट, वो कभी कभी ध्यान से नहीं आता, रावत भाटा राजस्थान। तो बच्चा ये these are the 7 places. You know that India have a 2% of the nuclear power generation right now, ये यहीं पर हो रहा है इन्हीं की मदद से। Okay, and future reactors 10 से ज्यादा हैं जो सेटअप हो रहे हैं, जैतापुर महाराष्ट्र, हरिपुर वेस्ट बंगाल, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, बारगी छुटका मध्य प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा, इट्स अ ब्लॉक नॉट अ सिटी, गोरखपुर सिटी है ना, इट्स अ ब्लॉक हरियाणा, तो मद्रास, चेन्नई, ऐसे मिला के 10 से ज्यादा रिएक्टर्स है जो कमिंग फ्यूचर में दैट इंडिया इज गोइंग टू सेटअप। ओके, मैंने एक लिस्ट ही दी है आपकी बुक में, है ना, बट यूपीएससी इज नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन 2010 तक ये लोकेशंस एज द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, अगर यू सी द क्वेश्चन पेपर गाइस। ओके, हाँ, तो मैं यही कह रहा था, लाइक रैंप अप लिख लो थोड़ा सा, रैंप अप। India aims to ramp up its existing nuclear power capacity. Existing nuclear power capacity is how much? From 6780 megawatt, 6780 megawatt to, इसको कितना करने जा रहे हैं? 22,480 megawatt. Wow, है ना, 22,480 megawatt by 2031. ओके, बाई 2031। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2031 में भी हम कुछ करने जा रहे हैं। ओके, तो 22,480 मेगावाट बाय 2031, दैट इज द टारगेट्स, ओके, जो हमें अचीव करना है। ओके, मैं देख ले रहा हूं उसमें क्या क्या बचा हुआ है, दैट आई डिस्कस विथ यू। Now finally you come into the discussion of a national hydrogen mission. Okay, so now you come into the discussion of a national hydrogen mission, and then we'll go toward the discussion of SIGHT, SIGST. Okay, a national hydrogen mission is a static and the current solve. Okay, but to come on the green hydrogen and all, you should have to start from national hydrogen mission. Green hydrogen अगर समझना है तो you should have to start from national hydrogen mission. वो भी है यहाँ पे, उसको एक PPT के थ्रू करा देता हूँ। Okay, so depends. So this is the 8th, and the next topic here I'll tell you like national hydrogen mission. So national hydrogen mission, that is a NHM, and the next one will be the here in the concept of green hydrogen. Green hydrogen is the actually supplement of the national hydrogen mission. और एक चीज और आपको यहाँ पे करनी है, that because it is also connecting with the national hydrogen mission, और ये अभी current में रहा है, ठीक है, and that is a SIGHT program. SIGHT program आपने सुना भी होगा। Okay, SIGST, that is a SIGHT program. Okay, this is what, this is the SIGHT program.
And the full form of SITE program is the strategic interventions. It's a strategic interventions. कुछ फंडिंग्स आई है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके काम करने के लिए. Interventions for green hydrogen transition program. So green hydrogen transition program. So it's overall about it. National Hydrogen Mission, Green Hydrogen and SITE program. And the full form of SITE is a strategic intervention for the green hydrogen transition program. Okay, इसी को शुरू करते हैं और थोड़ा सा पहले I'll tell you about what is a National Hydrogen Mission and green hydrogen. It's very easy guys, बहुत ही आसान है. It's not a tough, but I just want to tell you what actually the government wanted in the case of. Okay. So National Hydrogen Mission, okay, and don't try to write it, better to save your time here. In the case of National Hydrogen Mission, it's initiatives of Government of India, and 2021 budget. Directly I'm coming into some factual data first, and then I'll tell you what is the concept here. So 2021 formally announced the National Hydrogen Mission. Okay, the purpose is we will generate the hydrogen and the generation of hydrogen fuel actually through the help of green power resources. Okay, green power resources. Ministry of New and Renewable Energy, you know very well, MNRE is the main leading ministry, and hydrogen is what? That is a kind of green fuel and renewable in nature also. If anybody asks you what is the main source of hydrogen fuel, so you tell that is a water. पता है ये भी क्वेश्चन 2010 के प्रीलिम्स से पूछा गया कि हाइड्रोजन फ्यूल का मेन सोर्स क्या होता है. द आंसर इज वाटर. बट आई वांट टू टेल यू हाइड्रोजन फ्यूल वी कैन जनरेट फ्रॉम द कार्बन वाला फ्यूल से भी, मतलब मीथेन से भी आप हाइड्रोजन बना सकते हो, नॉट ओनली फ्रॉम द वाटर. ओके, तो वी पीपल कैन जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द मीथेन ऑल्सो. कितना इंटरेस्टिंग है ना, कोयले से मीथेन बनाया, मीथेन से हाइड्रोजन बनाया, तो ये तो सर कमाल हो गया. एग्जैक्टली कमाल ही हो गया. Okay, and why you people are going to generate from methane to hydrogen? सीधा coal gasification से भी तो methane और hydrogen दोनों बन जाता है. But from the methane you can also generate hydrogen. Methane have a less calorific value and hydrogen has a more calorific value. But hydrogen have one problem there guys. वैसे ठीक है, environmental friendly. अगर हाइड्रोजन जलता है तो हीट निकलता है और वाटर वेपर होता है. वाटर वेपर के साथ कोई दिक्कत नहीं है with your life guys, with your health issues या environment health issues. Okay, लेकिन हाँ, okay, hydrogen is the dangerous to carry from one place from the place. Safety system is more required in the case of hydrogen fuel. अरे भाई तुम लोग समझ रहे हो? Those people are listening my classes online. थोड़ा रिप्लाई करो. तो that is the information here, and the draft regulation of National Hydrogen Mission were to be finalized by the end of February 2021. Okay, February 2021, and that is approval of the Union Cabinet there guys. It is not required. I'm going to skip here. What is a green hydrogen? Actually, I just want to tell you, whenever the hydrogen we are going to produce from the water molecule, you should remember. Okay, actually water is the main source for the production of hydrogen, I told you guys. So from water to hydrogen fuel if you are going to generate, in this case electrolysis process is required. In this case electrolysis process is required. और पता है electrolysis process को लिए है ना, हमें क्या चाहिए? Power यानी electricity. Power, yeah, we should have to need of electricity. तो मतलब अगर I want to generate a hydrogen from the water, so I should have a need of power to go with the electricity process, and then in that cases the water will generate a hydrogen fuel. यही मैं बताना चाह रहा हूँ. Okay, यही बताना चाह रहा हूँ. लेकिन now the question is there, this power sources matter. अगर ये power sources renewable energy से आ रहा है और तब जाके water की electricity से hydrogen बन रहा है, तब इसको कहते हैं green hydrogen. सुनना, अगर ये पावर सोर्सेस न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है तब हम इसको कहते हैं दैट इज अ पिंक हाइड्रोजन. समझना भाई, समझना. अगर यही पावर जनरेशन है ना, मतलब जहां अलग अलग सोर्सेस के पावर जनरेशन से अगर वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म ऑफ द हाइड्रोजन इज गोइंग टू यूज. तो ग्रीन हाइड्रोजन टर्म इज एक्चुअली यूज्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी पावर सोर्सेस यूटिलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू द हाइड्रोजन. तब इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन. ओके, okay, तब हम इसको बोलते हैं that is called green hydrogen. Fine. अब now come here guys. Green hydrogen it is produced by splitting of water by electrolysis. Okay, electrolysis. और फिर hydrogen that is going to produce hydrogen को ले जाके hydrogen storage में ले जाके रख लो. And now this hydrogen storage wherever you want you can use it for the as a energy sources. Okay, तो power by renewable energy sources here guys. यहाँ पर in that cases में कोई environmental pollution नहीं होता. ऐसा बिल्कुल नहीं है.
ये कि आप कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करो फिर हाइड्रोजन बनाओ, तो कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी में भी तो आपने कोयला को जनरेट कर, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यू हैव टू जनरेट अ पोल्यूशन ना, और रिन्यूएबल में कोई पोल्यूशन थोड़ी ना है। ओके, नाउ कम हियर। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, यू जस्ट लीव देम। Come here. Only green hydrogen is not the term, guys. Green hydrogen, blue hydrogen, pink hydrogen, gray hydrogen, yellow. But UPSC only focus what? Green hydrogen. UPSC only focus the green hydrogen. But अगर यहाँ question आ रहा है, तो you should be ready for the coming future. Okay, कि other alternative form of energy, green hydrogen energy sources may also be UPSC question paper. ओके, सो व्हाट इज अ पिंक हाइड्रोजन? अगर वही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए हम एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी से बात, आई टोल्ड यू गाइस न्यूक्लियर एनर्जी इज अ व्हाट? क्लीन एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन दुबई वाला कहानी आई टोल्ड यू, कोप 28 मीटिंग ऑफ यूएनएफसीसीसी में सबने बोला कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी इज द बेस्ट वायबल ऑप्शन टू सॉल्व द ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड। ओके, वो करंट अपडेट्स में एनर्जी में तुम लोग उसमें पढ़ोगे, एनवायरमेंट में भी। अब ब्लू हाइड्रोजन व्हाट इज देयर गाइस? आई जस्ट टोल्ड यू गाइस, मीथेन से भी वी कैन जनरेट व्हाट? Actually, natural gases, those are available in the nature. Of course, methane is the main natural gases you people know very well. उस मीथेन से भी through the methane reforming process या autothermal reforming process, you can also generate what? You can also generate hydrogen. और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर CO2 भी निकलता है। लेकिन अब CO2 को अगर you are going to capture them and you are going to dump inside the rock, that is called as a geosequestration. आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से कार्बन को लो और ले जाके डंप कर दो। ओके, जमीन के अंदर डंप करोगे, उस केस को कहते हैं जियोसिक्वेस्ट्रेशन। ओके, दैट केस इज कॉल्ड एज अ जियोसिक्वेस्ट्रेशन। ओके, और चाहो तो यू पीपल कैन एमिट द CO2 डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर CO2 इज गोइंग टू एमिट इन द एटमॉस्फेयर और यू आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट देम एंड यू आर नॉट गोइंग टू डंप, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी करता है। तो मीथेन से वन साइड यू आर गोइंग टू जनरेट द हाइड्रोजन, सेकंड साइड यू आर क्रिएटिंग द पोल्यूशन, तब इसको बोलेंगे हम ग्रे हाइड्रोजन। ओके, और अगर इसको आप कलेक्ट करके जमीन में ले जाके डंप कर देते हो, एमिट नहीं करते हो, तब इसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में कुछ नहीं है, बस इतना ही है, एक में CO2 को हम कलेक्ट करके जमीन में ले जाके डंप कर देते हैं और दूसरे में हम नहीं करते, उसको बाहर निकलने देते हैं, और दोनों केसेस में नाम बदल जाता है, वन इज ब्लू एंड सेकंड इज ग्रे। यू कैन सी हियर वेरी वेल गाइस। ओके, अब नाउ कम हियर गाइस, सीधा आपको ये फाइनल पिक्चर पे ले चलता हूं और यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल एवरीथिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सी, ग्रीन हाइड्रोजन इज देयर, यहाँ पे आपको फोटोवोल्टाइक्स मिलेगा, सोलर पैनल या विंड एनर्जी, ये दोनों के दोनों सोर्स ऑफ रिन्यूएबल है। इनसे आपने बैटरी को फुल कर लिया और बैटरी के पावर के बेसिस पर वाटर इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फिल्म। आपने इसको वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले जाके आपने हाइड्रोजन स्टोरेज में कलेक्ट कर लिया, और नाउ इट इज व्हाट? इट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन। दिस इज अ ग्रीन कलर ग्रीन हाइड्रोजन। मीथेन इज देयर। Okay, methane steam reforming process that you people have seen. एक process होता है, टेक्निकल नेम होता है, you just remember it. And through the help of methane steam reforming, वो नाम कभी नहीं आएगा, okay? But you remember, अच्छा कुछ प्रोसेस होता है, उससे हम मीथेन से कन्वर्ट कर देते हैं क्या? हाइड्रोजन और CO2। अगर CO2 को हम कलेक्ट करके जमीन के अंदर दबा देते हैं, और ये हाइड्रोजन तब कहलाता है ब्लू हाइड्रोजन। और अगर वी आर नॉट गोइंग टू डंप इनसाइड, ये भी बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन को तो वी आर स्टोरिंग देम एंड CO2 इज गोइंग टू एमिट इन द एटमॉस्फेयर, तब इसको हम ग्रे कहते हैं। ग्रे में CO2 रिलीज इनटू द एयर। पिंक हाइड्रोजन यू ऑलरेडी नो वेरी वेल, अगर एनर्जी सोर्सेज न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज कॉल्ड पिंक एनर्जी। और अगर रिन्यूएबल में सिर्फ सोलर का यूज कर रहे हैं, सिर्फ सोलर का यूज कर रहे हैं, तब आप इस हाइड्रोजन को सिर्फ येलो हाइड्रोजन बोल सकते हो, इतना ही है। ओके, अब नाउ हियर व्हाट अबाउट द स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही है ना, नॉर्वे के साथ हो रही है, यूएस के साथ हो रही है, और इतना ही नहीं, रिलायंस वाला भी सुन लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर रेडी टू इन्वेस्ट 75,000 करोड़ रुपीस, है ना, इसके लिए अच्छा है ना। और हाइड्रोजन टाइप के फ्यूल्स अगर बनाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि हम इन चीजों को बेच भी सकते हैं। इवन द PNG सप्लाईज में दोस मीथेन इज गोइंग ना। लास्ट डे समबडी इज आस्क्ड मी, सर वो PNG में होता है कि, मैंने कहा मीथेन ज्यादा होता है, मैंने कहा उसके साथ हाइड्रोजन भी मिक्सअप करके भेज सकते हो, है ना, घर में कुकिंग के लिए। एंड कंपनी बिल्ड अप द 4 गीगा फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं, दैट इज हियर गाइस इन दिस केस, यू रिमेंबर। ओके, सो काइंडली यू पीपल रिमेंबर। तो मैंने आपको ये नेशनल हाइड्रोजन वगैरह भी करा दिया। तो ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये पेपर नो वेरी वेल। साइड प्रोग्राम्स क्या है? देखो साइड प्रोग्राम कुछ नहीं है, एक लाइन में बोलूं तो इस पे PIB में एक आर्टिकल भी छपा था, इट वाज अ डेट शायद हट गया, दिसंबर 2023 में एक आर्टिकल था साइड्स को लेके। ओके, एंड साइड इज द कंसेप्ट दैट इज कनेक्टिंग विद द हाइड्रोजन। तो एक लाइन में लिख लो, साइड प्रोग्राम इज अ मेजर फाइनेंशियल मेजर्स, पैसा वैसा है इसमें, है ना, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, लिख लो। साइड प्रोग्राम इज अ मेजर फाइनेंशियल मेजर है ना, इज अ मेजर
financial measure with an outlay of rupees 17,490 crore. Strategic intervention for green hydrogen transition program is a major financial measure with an outlay of 17,490 crore. Okay, next point. The program consists of right. The program consists of two distinct financial incentive mechanisms, right? The program consists of two financial incentive mechanisms to support domestic manufacturing of electrolysis करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, electrolyzers and production of green hydrogen और ग्रीन हाइड्रोजन को पता है ना, हम लोग बहुत सारे सेक्टर में यूज करते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन्स को हम लोग बहुत सारे सेक्टर में यूज कर सकते हैं. स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, हर जगह. इवन केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में भी पीपल कैन यूज देम. ओके, इनमें कुछ इन्होंने आउटकम्स वगैरह भी बनाए, पर उस पर नहीं जाएंगे कितना करोड़ रुपया कहाँ खर्च करने वाले हैं. बस ओनली यू रिमेंबर दिस नेम, दैट मे बी अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर. So now come, what are the remaining topics? The one was a lithium-ion battery. Second one is a sodium-ion battery. Actually, last day what was the information that mentioned on the PDF? Everything was right, but few doubts I had, so it's clear right now. So there's nothing. Okay, and directly you come into the PDF of lithium-ion battery. This is here. If you people have prepared, remember like fuel cells. So what you got in the fuel cell? Within the fuel cell, you got three main components. But I'll tell you there are only four main components. Okay, the one is cathode, second is anode. Okay, one is a cathode, second is the anode. Okay, third one is the electrolytes, and fourth one is the separator. The separator is also required in the case of batteries and even batteries. Okay, batteries. Yeah, it's a fuel cell. But in the fuel cell, you have not seen separators. Don't worry. Here I'll discuss it in the case of lithium-ion battery. Actually, in the case of lithium-ion battery, okay, those processes going to be happen. It's a movement of lithium. Either you are going to charge the battery or you are going to discharge the battery. Okay, what are here? See guys. Few information the lithium-ion battery already discussed with you in the last day. Directly I'm going to next topic. Intercalation, de-intercalation. I already told you what about the meaning of them. Okay. Okay, come here. This is the picture of lithium-ion battery, and same picture you people have. Okay, and few information in the beginning I want to tell you. Okay.
Okay, few information I want to tell you here. Just like when a movie are coming na, in the beginning director try to introduce the characters. Okay, this is a hero, this is a heroine, this is the villain, this is the father, this is a mother. Okay, in that the story is going to complete. So this is the reason in the case of lithium ion battery, first you see characters, and then on the basis of character I will simplify the concept how lithium ion battery work. See, in this entire picture, okay, one side you can see have a presence of graphites, one side is the graphites, and second side you will see have a presence of metal oxides. Sometimes lithium is going here, sometimes lithium is coming here. Okay, so sometimes lithium is coming here, sometimes lithium is going there. So ultimately in this entire battery, there is a movement of lithium ion happen from this to this side and this to this side. And because of movement of lithium ion, electron flow. Okay, movement of electron happen that you have seen in the case of fuel cell. And against the direction of movement of electron, current flow. Actually, certain conditions are there, and this condition try to understand. What about the condition? Actually, in fully charged battery, lithium is towards the anode. Actually, Shika, don't worry, I'll discuss with you about the gravity battery also. Okay, don't worry, don't worry. I know very well because many of the people are mentioning this okay, gravity battery in current updates wala part. So I know very well, sometimes students ask me about the gravity battery, so I'll discuss with you gravity battery, don't worry what is it. Okay, today my intention is to lithium ion battery, then sodium ion battery, and then gravity battery, and after it the energy portion over, and then I'll go to the next chapter, space technology. Okay, so don't worry. So listen, first I just want to tell you, it's anode, it's a cathode. Okay, it's anode and it's a cathode. Okay everyone, and now what are going to happen guys? In here you will see the electrolytes. Okay, here you will get as a electrolytes, and here I'll tell you have a what, that is a separators. It is the separators. It is the separators. And electrolytes are those through the help of it only lithium ion pass, but not electrons. Okay, in that way, in that way these electrolytes are used. Okay, in this way electrolytes are used. Generally, what happen if your battery is full? Okay, just like at your home, you people have. Just I made my battery full at my home. I'm now in this classroom. My battery is going to discharge slowly and gradually because my phone is on. Okay, so how this phone battery is on and how they are working as a giving a power? So very simple guys. It's a load I'm going to connect. Suppose it's a bulb. It's a bulb. At just I connect the load guys. Okay, in the fully charged battery, lithium is actually towards the anode. Well, lithium is this side, anode is there. It's a lithium graphite. Okay, suppose this is the graphite. Suppose this is graphite. 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 Okay, and this is a lithium. So lithium is here with graphites. It's a lithium graphites. Red color is a graphite and blue color, try to understand, it's a lithium. Okay, when entire graphite have a lithium, it's called lithium graphite. So now the battery is fully charged. Then the fully charged battery lithium is actually located towards the graphite, and graphite formula is what? LiC6. Graphite means carbon content, so LiC6. It's a way to define about the graphites. Graphite is entirely made up by carbon. Okay, generally what happened in this case of electrolysis process, lithium is going to break because of electrolytes, and this lithium will break into Li plus and electron minus. If I ask you, do you know about what about the atomic number of lithium? So you people know very well, atomic number of lithium is 3. So how electron distribution? First orbit 2, second orbit 1. What about atomic number of sodium? It's 11. So 2, 8 and 1. So here octet is going to complete 2, here octet is going to complete 8. So 1 electron outside of orbit in lithium and 1 electron outside of the orbit in sodium. And that is the reason lithium and sodium want to remove their own electron as soon as possible and want to be stable. If you know chemistry, so you can understand very well, because octet number.
because octet number is required. And you all people know very well what I am telling you. In the first orbit, the octet is going to compete with 2 number of electron. In second orbit and third orbit onward, that 8 number of electron is required to make them stable. And that is the reason, guys, if you know chemistry, so you can understand very well, octet is going to compete with the 2 or 8 number of electrons. Again, first orbit 2 and rest of the orbit, 8 number of electron is required to complete the orbit, and when they complete the orbit, that atom or element will be stable. Okay, that will be stable. Okay, everyone. So it's a lithium and sodium that you can see here, guys. Okay, it's a lithium and sodium. Now listen. So you tell me, guys, what is easy? To carry 7 electron, you have to remove 1 electron. Of course, to remove 1 electron is easy, and that's why lithium always want to remove electron to make them stable. Same thing, sodium also have 1 electron to remove it and make them stable. And this is the reason lithium is that from where the easily electron is going to move. And same thing in the case of sodium and battery, I'll tell you, outside have a 1 electron, they also want to release the electron easily. Okay, they want to release the electron easily. So I think you understood very well why lithium and sodium are the best in this case of, in the case of battery. Okay, everyone. Fine. What will come there, guys? Very simple. As just you people connect the load, guys, those lithium are available here. Okay, this lithium break into Li plus electron due to presence of electrolytes, and finally Li plus and electron is here. Li plus and electron is here. Okay, lithium is going to move from this to this side because electrolytes are only allow the lithium movement and stop the movement of electrons. So those lithium was here, guys, they are going to lose because the lithium is coming this side, this side, this side. This lithium is coming and going to attach with the metal oxide, and the number of lithium is going to decrease here, number of lithium is going to increase here. This side metal oxide is available like cobalt oxide and all, and lithium will combine and form the lithium cobalt oxide. And when all the lithium start to come here in the form of Li plus, electron movement is not there. So here number of electron is going to increase, and here all the lithiums are coming, and ultimately they are forming lithium metal oxide. They are forming lithium metal oxide. It's a reaction. So when more number of electron this side, less number of electron this side, so finally electrons start to flow from this to this side, and you people know very well, against the movement of electron have a flow of current and the bulb will on. Okay, slowly the lithium is going to lose and lithium is going to accumulate here. Your battery is going to discharge. This is called as an intercalation process. This time my mobile phone have an intercalation process. This tablet have an intercalation process. But what happened when I charge this? What happened when I charge this? When I charge this, guys, so all the lithium, those are here, guys, it is start to move from here to here, this side, and it becomes as a metal oxide only, and lithium further going to come there, and again the battery is going to full. This is the entire process in the case of lithium and battery. Movement of lithium here, movement of lithium ion here. Okay, so movement of lithium is here, movement of lithium is here. It's called lithium ion battery. So I think you people know very well why it is called as a lithium ion battery, because every process happens with the help of lithium, movement of lithium. It is a lithium ion battery. Okay, it is a lithium ion battery. Now come next. Okay, it's done. Where the lithium ion battery is used. Okay, so there is some type of lithium ion battery you can see in this picture. Okay, and here I'll advise to everyone, kindly remember this and this. Cell phone, laptop and cameras, they are the main electronic waste, and maximum in India. It's a battery is lithium cobalt, and in the vehicle and all, electric vehicle and all, yeah, grid storage, etc. Those battery you people are using, they have a lithium cobalt, aluminum oxide, and lithium titanate. These are the lithium titanates and all. Okay, so it's overall all type of lithium batteries. Even there is few limitation with the lithium batteries. What about the limitation, guys? See, lithium battery, you should use the battery but not totally discharge. Actually, I want to tell you guys, the battery power should be 30% to 90%. It's better. Completely lithium should not come this side, and completely lithium should not come this side. In that case, the life of battery is going to be reduced. So ultimately, the power of battery 30% to 90%. In between, you should have to keep in your mobile phones.
If you want your battery should be a more life, तो the power of battery should be 30% to 90%. अगर fully lithium will come this side, okay, या fully lithium is going to discharge, मतलब fully battery is either discharge या it is 100% discharge. In that case, the battery have a not in the better conditions, and the battery life is going to decrease, decrease, and decrease. This is a property in the case of lithium. Okay, if movement of lithium start to decrease, it means your battery is going to deteriorate. Okay, and see one thing more, guys. Low temperature is good, but very low temperature is not good in the case of lithium and battery, because those graphite and all you people use, it will freeze at very low temperature, at freezing temperature. Okay, it will freeze in the case of freezing temperature. Okay, so this is the overall about the lithium-ion battery. Now we'll go towards another battery that is called as a sodium-ion battery. Okay, in the case of sodium-ion battery, the work is as similar to lithium-ion. You should remember, guys. Okay, the work is of, but actually some more advantage and disadvantage of lithium-ion battery I'll tell you, guys. Just come on the advantage and disadvantage. Disadvantage like lithium-ion battery generator heats. तो बैटरी थोड़ी गर्म होती है. Not going to generate a heat at like a normal type of battery, but हाँ ये भी गर्म होती है. इसका weight जो होता है कम होता है. इसका weight less होता है, less weight. High power density. High power density. मतलब ज़्यादा पावर ये डेंस करके रख सकता है, बैटरी ज़्यादा लंबी चलेगी. इसकी करीब करीब जो लाइफ होती है 5000 साइकिल्स मोर होती है, मतलब इससे ज्यादा आप रिचार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मिनिमम 5000 घंटे, तो 5000 बार से ज्यादा आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन. और 365 दिन अगर आप उसको चार्ज कर रहे होते हो तो 365 से 5000 को डिवाइड कर दो, तो आराम से आप समझ गए 4-5 साल आराम से बैटरी चलती है. देयर इज नो प्रॉब्लम. वही जो नॉर्मल बैटरी है उसका नाम है लेड एसिड बैटरी. लेड एसिड बैटरी, और लेड एसिड बैटरी वगैरह ज्यादा नहीं है, इनका कम से कम 400-500 साइकिल ही होता है, तो 400 to 500 साइकिल करीब करीब. ओके, लो मेंटेनेंस है इसका, लो मेंटेनेंस है. दे हैव अ लो मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है टू कीप देम, लो मेंटेनेंस. ओके, इसका डिस्चार्ज रेट भी कम होता है, सेल्फ डिस्चार्ज. अगर यू जस्ट कीप योर मोबाइल फोन समवेयर, बैटरी तो ये नहीं उसका धीरे धीरे अपने आप बैटरी खत्म नहीं है ना. Low discharge rate. Its discharge rate is low, guys. You should remember it. So it has a low discharge rate. Okay, it has a low discharge rate. So it has a low discharge rate. This is the point. Okay. One more statement I want to tell you. No memory effect. One more feature. No memory effect. Now the question is, what is the meaning of no memory effect? मेमोरी इफेक्ट का मतलब होता है, मान लो एक साथ आप मोबाइल फोन पे कई काम कर रहे हो. जैसे घर के अंदर एक वाईफाई को देयर आर सो मेनी पीपल आर कनेक्टिंग. प्रांजल सर, कैथोड इज ग्रेफाइट बट एनोड इज अ लिथियम मेटल ऑक्साइड, प्लीज क्लैरिफाई. देखो प्रांजल, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दिक्कत क्या है, ठीक है. केमिकल फॉर्मूला नॉट इज इन द एग्जाम. आप जो नोट्स पढ़े हो वो एक्चुअल में क्या है, वो किसी डिस्चार्ज बैटरी को पढ़ रहे हो, और मैं जो कंडीशन पढ़ा रहा हूँ वो किसी चार्ज बैटरी को पढ़ा रहा हूँ. ऐसे समझो जो मैं कह रहा हूँ. अंडरस्टूड? आप जो बोल रहे हो, अब असल में मैं आपको बताता हूँ कि कल यही थोड़ा सा मेरे साथ भी थोड़ा यही डाउट था कैथोड एनोड को लेकर. मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ. आपने जो क्वेश्चन पूछा आपके साथ वही डाउट है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो बैटरी देख रहे हो ना वो डिस्चार्ज बैटरी देख रहे हो, और जो मैं बैटरी बढ़ा रहा हूँ ना वो चार्ज बैटरी से बढ़ा रहा हूँ. इसलिए आपको कैथोड ग्रेफाइट की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि जब सारे आयंस उधर चले जाएंगे तो ग्रेफाइट की तरफ क्या हो जाएगा, कैथोड चला जाएगा. वो कब होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और जब बैटरी चार्ज होगी तो फिर वो सारा का सारा एनोड की तरफ आ जाएगा. कौन ग्रेफाइट्स. मतलब ये एनोड और ये कैथोड हो जाएगा. वेरी सिंपल. अगर प्लस इधर आ जाए तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आ जाए तो ये पूरा माइनस हो जाएगा. वही बात तो मैं कह रहा हूँ. जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस था. ओके, ये बताओ प्रांजल समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका कंफ्यूजन क्या है? यही तो कल मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ था, इसी में तो मैं भी रुका था, इसलिए मैंने रुक जाओ, मैं कल देख के बताऊंगा. सेम थिंग यू आर आस्किंग. ओके,
ओके मैं चार्जिंग बैटरी से शुरू कर रहा हूँ, आप डिस्चार्जिंग बैटरी से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला एक कंसेप्ट बना लो, यू विल नेवर कंफ्यूज। प्रांजल आपका जवाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ओके बाकी बच्चों आप छोड़ दो, आपका जो चल रहा है यही चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नथिंग इज बीइंग हियर। और शिखा आपका मैं बताता हूँ बच्चों को, ग्रेविटी बैटरी बताता हूँ। प्रांजल आई एम वेटिंग योर आंसर। ओके आपका रिस्पॉन्स चाहिए, तो इट्स एडवांटेजेस। सेकेंड साइड इफ यू को डिसएडवांटेजेस है ना, डिसएडवांटेजेस। तो सेकेंड साइड इफ यू को डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज अ डिसएडवांटेजेस? पहला तो इसका प्राइस ज्यादा, हाई प्राइस, तो वन इट हैज अ हाई प्राइस, महंगा है। और दूसरा दे जनरेट हीट्स, टेंडेंसी टू जनरेट हीट, ये गर्म भी होता है, पर हाँ फिर मैं बता रहा हूँ उतना नहीं होता जितना ट्रेडिशनल होता है, जो लेड वाला वगैरह बता रहा था। टेंडेंसी टू हीट, a tendency to heat, it generates tendency to generate heat, it has a tendency to generate, ये गर्म होता है, यही बोलना था, its tendency to generate heat। तो these are the some points that you must be know, है ना, ये आपको थोड़ा सा जानना था। बाकी लिथियम रिजर्व्स वगैरह पे मैंने कल बात कर ली थी। ओके नाउ कम इनटू द डिस्कशन ऑफ सोडियम आयन बैटरी। ओके नाउ कम इनटू द डिस्कशन ऑफ सोडियम आयन बैटरी। अंडरस्टूड, ठीक है बेटा, ठीक है, इधर देखो, सेम इशू यही था कल हमारे साथ भी। ओके इसे लेकर रुक जाओ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर बताता हूँ। वैसे कल मैं पढ़ा था तो गलत नहीं था, सब कुछ सही तो था, लेकिन एक बार मैंने कहा रुक जाओ, है ना, इधर आओ। सोडियम आयन बैटरी, गिव अ हेडिंग गाइस, सोडियम आयन बैटरी। So next one is a sodium ion battery. Now question is, what is a sodium ion battery? Actually recently there was a news. Okay, recently there was a news, a company name is called AR4 Tech, एक company है ना, they have some deal है ना, इनका कुछ collaboration हुआ है, एक कंपनी है सिंगापुर की, that name is called as a Sodium Energy of Singapore, they have a deal with this company Sodium Energy of Singapore, और इनका यही हुआ है कि पार्टनरशिप में दे आर गोइंग टू डेवलप अ सोडियम आयन बैटरी, ये सोडियम आयन बैटरी बना रहे हैं और बड़े लेवल पे दे विल यूज इट, और इसको दे विल यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, ये इस तरह की बैटरी को मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, एंड फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स। So here in this case they were ready to develop the sodium ion battery. Little bit I'll discuss with you what about the AR4 Tech company, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। Actually it's a motor vehicle manufacturing company, it is a motor vehicle manufacturing company, it is a motor vehicle manufacturing company. Who is this? AR4 is a motor vehicle manufacturing company, कोयम्बटूर में है ये, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, it is in Tamil Nadu, so it is in कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ओके यहां पर है ये। ओके पर्पस क्या है, देखो, दिस कंपनी स्टार्टअप फ्रॉम 2021, काफी पुरानी नहीं है, नई कंपनी है ये, स्टार्टअप इज फ्रॉम 2021। ओके जानते हो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो गाड़ियां होती है ना, आईसी वाली गाड़ियां, उनको बैटरी वाली व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देती है कंपनी। इनके जो इंजीनियर्स होते हैं ना, दे हैव दिस काइंड ऑफ मतलब दे आर सो मच एक्सपर्ट्स इन दैट सेक्टर, इनके पास दे हैव अ इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, दे हैव इंजीनियर्स, है ना, या ये कह लो उनके पास टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो आईसी वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल गाड़ियां हम लोग यूज करते हैं, उसको दे कैन इजिली कन्वर्ट इनटू बैटरी व्हीकल्स, तो आईसी व्हीकल्स को दे कैन कन्वर्ट इनटू बैटरी व्हीकल्स। ओके और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बैटरी है ना, सोडियम आयन बैटरी वगैरह, इसकी लाइफ करीब करीब 10 साल होती है, द लाइफ स्पैन इज एटलीस्ट 10 years, तो ठीक है ना, 10 years।
लिथियम की फिर भी 5 साल 6 साल 7 साल उसकी भी चलती है, सोडियम पे चलता है, ऐसा नहीं है। Okay, if you go into the sodium ion battery, okay, it's a feature of AR4 tech. ये तो मैंने गलती से आपको वो बता दिया, life of a sodium ion battery. Okay, write down about the composition. अरे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, जानते हो जो सेपरेटर होता है ना बीच में जो लगा होता है, कभी कभी ना वो जल जाता है, खराब हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो एनोड वाला साइड और कैथोड वाला साइड होता है ना, दोनों मिक्सअप हो जाता है और ऐसे कैसे बैटरी ब्लास्ट हो जाती है गाड़ियों की। तो जो गाड़ियों की बैटरी ब्लास्ट होती है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, जो कोई सेपरेटर वपरेटर अगर वहां जल जाए, खत्म हो जाए, तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि सीधा का सीधा पूरा का पूरा ग्राफाइट और मेटल ऑक्साइड की मिक्सिंग होने लगती है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो होगा, हीट तेजी से निकलेगा और इन सब केसेस में ब्लास्ट हो जाता है। तो सेपरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर गाइस। Okay, so separator is very very important here in this case. You should know this. Okay, now come into the composition of sodium ion battery. Composition of sodium ion battery. If you go into the composition of sodium ion battery, so what about the composition of sodium ion battery? Same thing guys, 4 components as it is, you people know very well. किसी भी बैटरी में चाहे it's any of them, कैथोड होता है, एनोड होता है, सेपरेटर होता है, and one more is called electrolytes होते हैं. So they have cathode, they have anode, they have separator, and they have electrolytes. They have cathode, they have anode, they have separator, and they have electrolytes. ये 4 होते हैं, यही सेपरेटर जो मैं बता रहा था, इनके से जो आग वाग लगती है. Okay, what is the difference of the lithium ion battery and sodium ion? कुछ नहीं, बस एक ही चीज ध्यान रखना, लिख लो चाहो तो. In these batteries, sodium ions, right? In these batteries, sodium ions replace lithium ions in the cathode. And sodium salt replace lithium salt in the electrolytes. So overall the lithium and is going to change, so that is the point you should have to write it. Now write about operating principle. Now write up, because I have not shared you any kind of PDFs, so here I'll dictate some information. Write down operating principle, your working mechanism, right? 2-3 line you write it. Operating principle, right? During charging, एक काम करता हूँ मैं ना, लिथियम आयन बैटरी खोल देता हूँ और उसी को समझ के देखना मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना? जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना, इसी को समझ के लिखना, हवाबाजी नहीं. मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता कि आप हवाबाजी में पढ़े, ठीक है? अब ये देखो, ये आपका पिक्चर है और आप यहाँ समझ रहे हैं इसमें है क्या. ये देखो, ये पिक्चर है और इस पिक्चर को दिमाग में रखना. ड्यूरिंग चार्जिंग पीछे क्या देखा था, देखो, ड्यूरिंग चार्जिंग sodium atoms in the cathode, during charging sodium atoms in the cathode release electron. During charging sodium atoms in the cathode, ये क्या था? During charging sodium atom in the cathode release electron
to the external circuit. Release electron to the external circuit. मतलब when you charge this battery, अब तो लिथियम की जगह यहाँ पर क्या है, सोडियम है, सोडियम है. तो होता क्या, ये सोडियम जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया ना, ओके, वो इधर से इधर एक्सटर्नल सर्किट की तरफ फिर इलेक्ट्रॉन उल्टा चलने लगता है. राइट, अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन उल्टा चलने लगता है. ठीक है. सो राइट, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सटर्नल सर्किट, transforming into ions, IONS, ions that migrate through, right, that migrate through the electrolytes, that migrate through the electrolytes to the anode. Okay, first off, then again, right, here they combine with electrons, here they combine with electrons, here they combine with electrons from the external circuit. External circuit मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, from the external circuit, while interacting with the anode material. Okay, interacting with anode material. I just want, I'm telling you, when you are giving a charge, guys, so those sodium is there, and it's a sodium ion start to move from here to here, and electron start to move from here to here, and this sodium and this electron, they fuse together, and here those material is there, sodium combined, sodium plus and electron minus, they become as a sodium element, and they combine with the salt. Okay, this is the point when you people are going to charge them. Okay, right, here they combine with electrons from the external circuit while interacting with anode material. I think you understood anode material, na? When you are giving a charging. Next point, this process reverse when battery is used. मतलब this side to this side, opposite process. Yeah, discharge. This process reverse when battery is used, bracket, during discharge, in bracket, during discharge to generate electricity. Definitely you people may ask me one question, sir, what about the benefit of this sodium ion batteries, right? Benefits, right? Benefits, right? Benefits. What about the benefit of sodium ion batteries, right? Readily available raw materials. Readily available raw materials. In comparison to lithium, guys, sodium is easily available, readily available. Okay, so readily available raw materials. Okay, in the case of lithium, you know, इंडिया में भले ही लिथियम रिजर्व मिल गया सबसे बड़ा, लेकिन इंडिया का अपना सबसे बड़ा, दुनिया का नहीं. अभी भी there is a concern, there is a question like how to explore them, क्योंकि उसका आसान नहीं है, जहाँ पे जिन जगहों पे वो है उसको वहां से निकाल पाना. Okay, so this is the reason still India has dip petrol lithium for other one, but sodium तो बहुत ही common है. नमक everywhere it is available. So this is the reason I'm telling you the first benefit. This sodium is what it is, readily available raw material, everywhere available, wide availabilities are there. Second one is safety. Second one, safety. Okay, one reason, not flammable. इसमें आग नहीं लगती, not flammable. Okay, and no chances of short circuits, right? Not flammable. ये safety के केस में बता रहा हूँ, not flammable, and no short circuits. Next one, low cost. Third benefit, it is a low cost. कहते हैं ना UPSC 1, 2, 3 low cost, सस्ता है. तो सोडियम बैटरीज इनका जो रॉ मटेरियल है इजीली अवेलेबल है, तो सस्ता है. एंड द फोर्थ, राइट डाउन लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस. And fourth part you write down, that is a low temperature resistance. Low temperature resistance. Okay, right, they can work. Yeah, they have also good performance. They have also good performance even at low temperature.
They have also good performance even at low temperature. Lithium is better to use for the moderate type of temperatures. बहुत कम टेम्परेचर वगैरह में लिथियम इज नॉट वर्किंग. और यहाँ तक कि अगर यू पीपल आर गोइंग टू कीप द लिथियम आयन बैटरी इन द रेफ्रिजरेटर ना, फ्रीज में रख दो, फ्रीजर में, तो उसका पूरा इलेक्ट्रोड जम जाता है और खराब हो जाता है. लो टेम्परेचर इज ओके बट नॉट वेरी लो टेम्परेचर इज ओके. Okay, now do one thing. One side write sodium ion battery and second side you write lithium ion battery and see the comparison. So now what is a lithium ion battery, sodium ion battery, and second is a lithium ion battery, and see comparison. Another side is a lithium ion battery. So one side is a sodium ion battery and second side is a lithium ion battery. Okay, right at the point, and here you will get like sodium is better than the lithium in every cases at least. In every cases at least. Okay, the one part, sodium is most abundantly in the nature. In nature. So sodium is more abundantly in the nature, the first point. Next one, it is the more environmental friendly. It is more environmental friendly. Sodium ion batteries are more environmental friendly. Actually, in the case of sodium ion battery, they use aluminum. Sodium ion battery use aluminum, and it is cheaper. It is cheaper. But lithium ion battery actually use copper. It is costly. मतलब ये बैटरी वैसे भी महंगी पड़ने वाली है, lithium ion. Higher operating temperature range. It has higher operating temperature range. It has a higher operating temperature range. It not have a high heat. बहुत ज़्यादा heat पर ये काम करेगा lithium ion battery. They are fastly charging ability. They fastly charge. The rest of it you can make as a vice versa feature, and have a higher life skill and more lives and more life, है ना, या more life cycle, मतलब अधिक जीवन तक ये चलता है, तो फास्टली चार्ज होता है. तो अब आई थिंक सोडियम और लिथियम में ये पीपल कैन डू कंपैरिजन, और बिल्कुल भी आप भूलने वाले नहीं हो. ये चीज़ें ध्यान रखना. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और मुझे ऐसा लगता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आना भी चाहिए अबाउट द सोडियम आयन बैटरी. ओके, अबाउट सोडियम आयन बैटरी. ये बताओ ये चीज़ें क्लियर हैं या नहीं. पहले बताओ ये चीज़ें क्लियर हैं या नहीं. गिव मी रिप्लाई. सो लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी डन. पहले बताओ ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं. और अगर लिथियम आयन बैटरी यू अंडरस्टूड, तो मुझे लगता है कि ये सोडियम आयन बैटरी इज अ डिफिकल्ट फॉर यू. आप आसानी से समझ सकते हैं. वैसे भी अपने स्टैटिक पार्ट ऑफ डिस्कशन में, ओके, स्टैटिक पोर्शन में मैं वैसे भी लिथियम आयन पढ़ाता हूँ.
Okay. Now coming to discussion of one more topic that is called as a gravity battery. Gravity battery के केस में शाश्वत, अगर सोडियम इज बेटर है इसीलिए तो आने वाला भी रुको, ये कंपनी आप शुरू कर रही है ना नए ऑप्शंस, तभी तो कहता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, है ना, चीजें और बेटर आने वाली हैं. ओके, नाउ कम ग्रेविटी बैटरी. कुछ पिक्चर्स मैं दिखाऊंगा इन द केस ऑफ ग्रेविटी बैटरी, आपको समझ में आ जाएगा. ग्रेविटी बैटरी बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मैं आपको भी समझाऊंगा, डोंट वरी, यू विल एंजॉय दिस टॉपिक आल्सो. पहले तो आई वांट टू टेल यू व्हाट अबाउट अ रिसेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटी बैटरी. विनय, श्रेया, स्लेयर सब ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए. ओके, असल में एनटीपीसी, आई थिंक यू नो वेरी वेल, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशंस, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है. एक कंपनी है उसके साथ ईवी करके है ना, एनर्जी वॉल्ट करके उसके साथ एक डील हुआ है. गॉट इट. तो पहले वही लिखो, एनटीपीसी हैड साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. राइट. पहले फैक्ट बताता हूँ फिर उसे कंसिडर चलता हूँ. एनटीपीसी had signed a memorandum of understanding for a long-term strategic partnership for the deployment of So NTPT had signed a memorandum of understanding for a long-term strategic partnership for the deployment of energy vault I will discuss with you what is the meaning of energy vault. बताता हूँ क्या मतलब है. Energy vaults EVS energy storage. Okay, energy storage technology, EVS energy storage technology and software solutions. EVS energy storage technology and software solutions पहले आपको बताता हूँ एनर्जी वॉल्ट होता क्या है. रुक जाओ, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा. जो आप लोग पहली बार सुन रहे हो क्या पता है सब चीजें क्या होती है. ओके, अब देखो एनर्जी वॉल्ट होता क्या. थोड़ा सा एनर्जी वॉल्ट के बारे में बात करेंगे. पहले बोला ना, पहले कोई भी मूवी देखनी है पहले कैरेक्टर बनाओ. कैरेक्टर पता नहीं मूवी की स्टोरी समझ रहे हैं, तो पहले मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ. ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, और यही सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, और वैसे मैं टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैं समझा लूंगा, डोंट वरी. चुपचाप जैसे बता रहा हूँ सुनो. एनर्जी वॉल्ट होता क्या है. एनर्जी वॉल्ट कंसेप्ट लिखो. एनर्जी वॉल्ट कंसेप्ट is dead, simple and consist of blocks 35 ton a piece of concrete
and 6 lifting arms okay. Next point, right? In this continuation, when wind is available, and power is cheap, when the wind is available and power is cheap, the lifting arms stack the blocks into a tower. अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने कभी सुना नहीं, लग रहा है बहुत बड़ा तोप पड़ा है, कुछ नहीं, फालतू चीज है ना, पहले ही बता दें फालतू चीज है, बहुत फालतू चीज है, मतलब ऐसा ही नहीं बोला है फालतू चीज है, फिर आप कहोगे सर ये सब ला क्यों रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है ना, पर घबराओ नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी आपने लिखा है, ठीक है, पहले ले आता हूँ और जरा समझाता हूँ, आप आसानी से चीजों को समझ जाओगे, टेंशन मत लो, मेरे को लोकल तरीके से समझाने आता है, आप बिल्कुल टेक्निकल मत समझो। आई नो वेरी वेल जो लिखा आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, और नहीं आना चाहिए, मैंने समझाया नहीं अभी, पहले मैं तो सामान इकट्ठा कर रहा था, कैरेक्टर्स आई वाज गिविंग यू, कैरेक्टर पहले समझ जाओ, कैरेक्टर बता रहा था, अभी सुनो, अभी अच्छी बात समझो, मैं तुम लोग को एक बंदा है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, ओके, क्या किया जानते हो, सुनो, अच्छा आप लोग ये जानते हो बच्चों, गियर वगैरह जो गियर होते हैं, गियर बॉक्स वगैरह, जैसे एक बार पैडल दिया तो व्हील इज गोइंग टू मूव 10 टाइम्स बाइसिकल में, और एक गियर लगा दिया तो व्हील इज गोइंग टू मूव 100 टाइम्स, ये तो समझते हो, ऐसा कैसे होता है बताऊं, मैं बताता हूं, मान लो ये एक बड़ा पहिया है, ये एक बड़ा पहिया है, समझ ना, बड़ा पहिया, बिग साइज ऑफ व्हील, इट्स a small size of wheel, समझना समझना समझना, इट्स a big size of wheel, इट्स a small size of wheel, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, और बिग साइज ऑफ व्हील और स्मॉल साइज ऑफ व्हील को ना एक दूसरे के साथ जोड़ दिया एक पट्टे से, आटा वट्टा पिसाने गए हो तुम लोग, नहीं गए होगे भाई, अमीर घर से आते हो, इसको इससे जोड़ दिया, अच्छा एक बात बताओ, अगर दिस वन इज गो रोटेट 1 टाइम, तब तक ये कम से कम 100 बार रोटेट कर जाता है कि नहीं कर जाता है, अब ये बताओ, अगर समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, ये एक बड़ा वाला व्हील है, ये एक छोटा वाला व्हील है, ओके, इफ बड़ा वाला व्हील इज गोइंग टू मूव 1 टाइम, तो उससे जो बैंड लगा हुआ छोटे वाले व्हील से, अगर ये एक बार, ये इतना घूमा तब तक एक बार घूम चुका है, इतना थोड़ा और घुमा एक बार और घूम चुका है, इतना घुमा तब तक एक बार और घूम चुका है, इतना घुमा तब तक एक बार और घूम चुका है, और जब तक इट इज गोइंग टू कंप्लीट वन रोटेशन, तब तक पता चलता 100 या 1000 बार घूम चुका है। एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट होता है कहाँ, गियर बॉक्स में, यही होता है कॉन्सेप्ट कहाँ, गियर बॉक्स में, यही होता है गियर बॉक्स का कॉन्सेप्ट, समझ ना, मैं अभी एक तुम लोगों को बता रहा हूँ, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मान लो ना ये मेरे घर की एक छत है, गॉट इट, इट्स अ रूफ ऑफ माय हाउस, इट्स अ रूफ ऑफ माय हाउस, ये मेरे घर की छत है भाई, है ना, ये अब घर वर छोड़ो, ऐसे है जो भी है, घर वर छोड़ो, है ना, घर की छत है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे, है ना,
वो 20 लीटर का देखा है, वो पानी वाला जो गैलन आता है ना, उस पानी वाले गैलन को 20 लीटर का जो है ना, उसको यहाँ पे लगा दिया, ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, समझना प्रभु, बहुत मजेदार चीज है ना। आप समझो समझो, 20 लीटर का लगा दिया, और ये 20 लीटर का जो आ गया, समझ नहीं रहा, ये 20 लीटर, अच्छा ये 100 बार घूम रहा है ना, समझो ये टरबाइन एक तरह का हो गया, टरबाइन हो गया। अरे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? टरबाइन टरबाइन टरबाइन, यू रिमेंबर? अब जो दोस पीपल आर लिस्टिंग माय क्लासेस फ्रॉम द फर्स्ट डे, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नहीं बाकी के बस की नहीं है मेरी क्लास, आप साइंस टेक पढ़ रहे हैं, बाबा हमारी की कहानी थोड़ी ना। ओके, अब इसको इससे जोड़, इससे लगा दिया, और पता है इसको किससे जोड़ दिया, इसका जो है ना वायर, इसको लगा के इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, बड़े वाले से, बड़े वाले व्हील से इसको जोड़ दिया, और बड़े वाले व्हील से छोटे वाले व्हील को ऐसे जोड़ दिया। अच्छा यू टेल मी, अगर 20 लीटर पानी है और इससे भरा हुआ है, मतलब इट्स अ हैवी गुड वेट ऐसे कह लो, जैसे इट इज गोइंग टू फॉल डाउन, अच्छा बताओ व्हाई इट इज गोइंग टू फॉल डाउन? अरे सर क्या मजाक करते हो, ग्रेविटी, बोलो भाई, ग्रेविटी। जैसे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज गोइंग टू फॉल डाउन, ये तेजी से घूमेगा भाई, जैसे ही घूमेगा, और जितना तेजी से ये घूमेगा बच्चा, उसका कई गुना ज्यादा तेजी से ये घूमेगा। समझो ये टरबाइन है, हो गया मैकेनिकल एनर्जी। यहीं पे तुम लगा लो क्या सर, हम जानते हैं, अब आगे मत बोलो सर, क्या भाई क्या जानते हो, डायनामो बना लो इलेक्ट्रिसिटी। अरे बहुत सही, तुम लोग समझ गए। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, यू अंडरस्टूड और नॉट? इसी को हम बताए। अच्छा एक बात और बोलो, यहां पर जो वाटर इज गोइंग टू होल्ड इट, यहां ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके पास एनर्जी है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है, जितना ऊपर चढ़ाओगे उसके पास उतनी एनर्जी रहेगी, क्योंकि उतना ही नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटी उसको खींच रहा होगा, इट्स हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे इसको छोड़ते हो तेजी से नीचे आता है, जैसे तेजी से नीचे आता है, ये घूमता है, ये मान लो 3 बार घूमता है, ये मान लो 300 बार घूम जाता है। अब बताओ इसको ऊपर उठाकर यहां रखते हो तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं है? यार तुम लोग ना बकवास लोग हो, हम तुम लोग को नहीं पढ़ा सकते, सही बता रहे हैं। तुम लोग को चाहिए ऐसा टीचर जो आवे बस टाइम पास करे और निकल ले, हो गया इसलिए। अब तुम बोले ग्रेविटी बैटरी पढ़ा दो, अब बता रहे तो जवाब नहीं। लिफ्ट कैसे करा? हाँ लिफ्ट कैसे करा, लिफ्ट करने के लिए हम अभी लिफ्ट बाद में करा देंगे, टेंशन मत दो। पहले बताओ ये पानी यहां से चढ़ा, ये गिरा, ये सारा सिस्टम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पीयूष का, टेंशन मत लो पीयूष, बता दूंगा मैं, लिफ्ट में बाद में करा दूंगा, रुक जाओ। Okay, so NTPC have a deal with this energy vaults EVS energy storage technology। ये कंपनी है भाई, ये कंपनी है, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी का एक एनर्जी वॉल्ट करके एक सिस्टम है। व्हाट इज एनर्जी वॉल्ट सिस्टम? एनर्जी वॉल्ट सिस्टम, एनर्जी वॉल्ट सिस्टम में ये लोग क्या कर रहे हैं, डेड सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स, सीमेंट विमेंट के ब्लॉक्स बना लो। ओके, बड़े हैवी हैवी सारे ईंट होती है, वैसे ईंट का कम मास होता है, कम वेट, एग्जैक्टली यू पीपल यूज अ सीमेंट बेस्ड मटेरियल एंड हैव अ हैवी मास, वेरी गुड, बना लो। और उसको एक हाइट तक पहुंचा दो, हाइट तक पहुंचा दो। कितने ब्लॉक्स बना लिया? 35 टन का एक एक पीस है, और ऊपर बहुत सारे ब्लॉक्स को ले जाके ऊपर पहुंचा दिया। ओके, ब्लॉक्स जैसे यहां पे देखो, समझो एक ब्लॉक है ये, समझो अभी, समझो अभी। और उसपे क्या 6 लिफ्टिंग आर्म्स लगा दिए, है ना, ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है, और जो चीजें ऊपर जा रही हैं फिर ऊपर एक हाइट पे आके इकट्ठा हो जा रही हैं एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सर ये ऊपर उठा कैसे रहे? अरे भैया जो विंड एनर्जी है ना, वहां के एनर्जी के सोर्सेज से लेकर इसको ऊपर पुल कर लो। तो सर ये तो ऐसी एनर्जी हुई जहां एनर्जी लगाकर एनर्जी बनाई जा रही है। हाँ, यहाँ एनर्जी लगा के एनर्जी बनाई जा रही है, इट इज राइट, बट दोस एनर्जी यू आर गोइंग टू यूज इट टू कीप इट अपसाइड, दैट एनर्जी इज वेरी वेरी लेस, बट व्हेन इट इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड दोस एनर्जी इज गोइंग टू जनरेट, इट इज वेरी वेरी हाई। यानी लेस इनपुट ऑफ एनर्जी से मोर आउटपुट ऑफ एनर्जी यू आर गेटिंग इट, यही तो हो रहा है। रुको अभी सब समझा ले जाऊंगा। और वो लेस पावर ऑफ एनर्जी कहां से ला रहे हो? विंड टरबाइन के पास लगा दो, तो विंड टरबाइन हवा लेस एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी को उठा दो, उसके बाद उससे गिरा दो, और जो एनर्जी आएगी दैट इज मेनी टाइम्स ऑफ एनर्जी। तो व्हेन विंड इज अवेलेबल एंड पावर इज चीप, द लिफ्टिंग आर्म स्टैक द ब्लॉक इनटू द टावर। जब विंड अवेलेबल होगा और जब पावर सस्ता होगा, उस समय उसको उसी पावर से उठा के ऊपर कर लो। अब सर व्हेन द पावर इज चीप, वेरी सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ,
अरे बच्चा टेंशन ना लो, हम समझा ले जाएंगे, बस तुम लोग हमको खुश रखो, रिप्लाई दो। आई नेवर वॉन्ट टू बी अ टीचर टू कम एंड डू द टाइम पास ओनली, मतलब टू कंप्लीट द सिलेबस ओनली। माई प्रायोरिटी नेवर बी टू कंप्लीट द सिलेबस। और ये चीज तो आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहे हैं? अच्छी बात बताओ, थ्रू आउट द डे मान लो 24 आवर्स है, ओके 24 आवर्स में है ना, और ये पावर कंजम्पशन की पीक है, ये पावर कंजम्पशन है, ये पावर कंजम्पशन है, ये 24 आवर्स का ग्राफ है। आप सबको पता है सुबह के टाइम पावर का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है, दोपहर के टाइम पावर कंजम्पशन सबसे कम होता है, और फिर इवनिंग रात तक आते थे सबसे ज्यादा, सब एसी धड़ा धड़ा, मतलब कुछ भी कह लो, ऐसे मान लो कुछ ऐसा 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 टाइम हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा बता दे रहा हूं, ठीक है। इट्स अ पीक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट्स अ पीक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट्स अ लेस पीक। सर समझ गए आप कहना क्या? जब लेस पीक ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, उस समय एनर्जी क्या है? कम है, उस एनर्जी से उसको ऊपर उठा लो, और यही मैं कह रहा हूं। और लेस पीक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो एनर्जी है, जब इसका लेस रिक्वायर्ड, उस समय जो एनर्जी आपके पास बच रही है, उस एनर्जी से आप चीजों को ऊपर उठा लो, और जब इन दैट वे यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट, जब ऊपर उठा लोगे, और जब एनर्जी का पीक होगा, उस समय यू हैव टू नीड अ मैक्सिमम एनर्जी, उस समय इस चीज को, इस ब्लॉक्स को यू जस्ट फॉल डाउन एंड देन हैव अ मैसिव एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल, आप उससे जना लो, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो लेस इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मोर आउटपुट ऑफ एनर्जी, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जब एनर्जी का पीक डिमांड कम है, उस समय एनर्जी जो है उसको, जो आपके पास सरप्लस बच रही है, उस एनर्जी से क्या करो, इन ऑल द स्टॉक्स को यू जस्ट गो अप टू कीप टू सम हाइट एंड देन फॉल डाउन। जब ये टाइम होगा तब उस समय गिरा देंगे, और जब भी कोई स्टॉक को यू आर गोइंग टू कीप इट अपसाइड, तो अपसाइड जाकर वो एक एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे उसको छोड़ोगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन मैसिव स्पीड। यही है पूरा व्हाट ग्रेविटी बैटरी का कॉन्सेप्ट। Another one guys, it is very difficult to make a battery more and more powerful, उसका कास्ट बहुत ज्यादा होगा। सोचो ना, आपके घर में जो बैटरी आ रही है 20-20 हजार रुपए की आ रही है, और बहुत ज्यादा स्टोरेशन वाली बैटरी अगर यू वांट टू जनरेट इट ना, इट इज वेरी कॉस्टली, आपके बस का नहीं है टू परचेज इट। कई कई लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की बैटरी, नोबडी विल ट्राई टू इट। तो यहां पर क्या करो, ये ब्लॉक्स बना लो, और ब्लॉक्स के फॉर्म में ब्लॉक्स को यू जस्ट कीप इट एट सम हाइट, और उस हाइट पे ले जाके रख लो। जब वो ब्लॉक्स गिरेंगे, यहां पर बैटरी की जरूरत ही कहां आ रही है, उसको उस हाइट पे रख लो, और वहां पे पड़ा होगा। जब यू वांट इलेक्ट्रिसिटी, उसको गिरा दो, जब पीक आवर इज नॉट देयर, उसको उठा लो, जब पीक आवर इज देयर, पीक इलेक्ट्रिसिटी, उसको गिरा दो। ये पूरा कंसेप्ट है इन द केस ऑफ ग्रेविटी बैटरी। सब लोग 5 स्टार से नीचे लिखेंगे नहीं, हम समझा रहे हैं, फालतू बात नहीं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, देयर आर सो मेनी एंड मेनी कॉन्सेप्ट देयर गाइस। अब सुनो, अब दिस ग्रेविटी बैटरी ना, वी पीपल कैन डेवलप इन डिफरेंट वेज। आप उसको ना एक पिलर की हाइट पे ले जाके इकट्ठा कर सकते हो, ओके। एंड द अनदर वन, यू पीपल कैन आल्सो मेक अ ग्रेविटी बैटरी, ओके। कारण वेरी क्लियर सर, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी बना रहे हैं सर, है ना, बस वेरी क्लियर, बहुत सही, एवरी 100% राइट, 100% राइट। किसी ने 5 स्टार लिखा नहीं है सर, एकदम समझ में आ गया है ना, बकवास लोग, नहीं बकवास लोग नहीं, बोरिंग स्टूडेंट्स, इरिटेटिंग स्टूडेंट्स। और तुमको ऐसा ही टीचर भी चाहिए जैसे तुम लोग हो, इसी तरह वाला, है ना, पूरी एनर्जी के साथ। नहीं चाहिए तुमको, नहीं चाहिए। ये मैं फिजिकल क्लास में तो मैं जबरदस्ती उसमें बुलवा लेता हूँ, यहाँ तो आई कैन नॉट सी योर फेस, पकड़ लूं मैं तुम्हारा मुंह, सही बता रहा हूँ, ओके। अच्छा, ये तो दैट एक बना लो, बिल्डिंग बना लो, उस पे इस तरह की चीजें रख लो और वहां से गिरा दो, ये हो गया एक कंसेप्ट। और दूसरा, यू नो वेरी वेल गाइस, कोल ब्लॉक्स, कोयले की खाने, उनका गड्ढा करके कोयला निकाले, उनको छोड़ दिया जाता है। देखो इतने सारे गड्ढे हैं, इन गड्ढों में हम नहीं उस तरह की चीजों को पढ़कर नीचे गिरा सकते हैं, और उसको ले जाकर टरबाइन से किसी धागे से बांध के जोड़ सकते हैं, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दिस हैवी मटेरियल विल गो डाउन साइड। समझ में आई बात? और जब इससे मोर पावर जनरेशन हैपन, ओके। और जब पीक डिमांड इज नॉट देयर, तब उस एनर्जी से उसको उठा लेना, जब पीक डिमांड इज देयर, इसको गिरा देना। गिरेगा तो ज्यादा तेजी से गिरेगा, और जितना ज्यादा गड्ढा होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी होगी, उतना ज्यादा स्पीड होगी, उतना ज्यादा पावर जनरेशन। और आप चाहो तो यू कैन डू वन मोर थिंग,
ये कोई ऐसी चीज गिरा लो जिसका मास हो और दे डू द फ्लोटिंग इन द वाटर बॉडीज, ठीक है ना, तो गिरेगा बहुत तेजी से। और यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम हो कि नीचे से पानी हो, धीरे धीरे पानी चीजों को ऊपर उठा देगा और फिर ये चीजें ऊपर आ जाएंगी बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के भी। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोलिसिटी कहते हैं उसको, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोलिसिटी। तो ऐसे भी ऊपर उठ सकता है। अब भैया देखो, मैं तुमको 50 तरीके से समझा सकता हूँ, बहुत बहुत तरह के रिसर्च चल रहा है, बट व्हाट इज द ग्रेविटी बैटरी, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Write one line. A gravity battery is a type of energy storage. A gravity battery is a type of energy storage device. A gravity battery is a type of energy storage device that uses the power of gravity A gravity battery is a type of energy storage device that uses the power of gravity to store and generate electricity Full stop. It works by raising or lowering. It works by raising, RAISING. It works by raising or lowering a heavy object. It works by raising or lowering a heavy object like a block of concrete. Like a block of concrete to create potential energy. सुनो. It works by raising or lowering a heavy object like a block of concrete to create potential energy. When it's going to up to height, it's a potential energy, potential energy, which is then converted into electricity. You know very well, which is then converted into electricity. Okay, now write about the gravity battery versus lithium-ion battery. Come, gravity battery versus lithium-ion battery. So gravity battery versus lithium-ion battery, right? One, they have more durability. So this battery have a more life. Next point, right? Gravity battery is cheaper on the basis of durability. Okay, so once you are going to install the this battery, so ultimately 12, 14 साल, 15 साल, 20 साल have no problem. So cost effective. It is cleaner and more sustainable. It is cleaner and more sustainable. Finish. And you know, this is developed by EVX company. Na?
यूएस कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस की कंपनी है, और ये बना रही है ये ग्रेविटी वाला बैटरी वगैरह। और यू पीपल कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग्स, या तो आप इन चीज़ों को कोई कुएं के अंदर यूज कर सकते हो इनसाइड द वेल, और इसके थ्रू आप कोई बिल्डिंग पर एक हाइट पर यू पीपल कैन कैरी कंक्रीट्स वगैरह हैवी हैवी वहां से गिरा सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। और आप चाहो तो इससे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो, एंड देन विल गो टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, है ना। मैं दिखाता हूँ। ओके, क्या ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये देखो, बेटर थ्रू द हेल्प ऑफ, ये देखो ये पूरा सिस्टम है दोस्त। सी ये रुक जाओ, मैं देखता, हाँ ये देखो, ये ज्यादा अच्छा एनर्जी वॉल्ट। ये देखो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बगल में विंड टरबाइन है और वहीं बगल में आपने ये बना दिया। और ये छोटे छोटे ना, छोटे 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 है ना जो चीजें, स्टॉक्स वगैरह जो चीजें है ना, ये हैं जिनको ऊपर तक पहुंचाया गया। और फिर ये देखो 1 2 3 4 ये ऊपर से गिराने वाली चीजें, इन बांध कर इनसे गिराया जा रहा है नीचे 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 नीचे, ठीक है ना। और जब ये नीचे आ रहे हैं इनसे मैसिव एनर्जी जनरेट हो रही है। अब इनको उठाने के लिए विंड एनर्जी वगैरह अगल बगल है, तो कहीं पावर ओवर है तो उससे थोड़ा सा उठा लिया जाएगा। दिस इज अ प्रोसेस, ओके, यहाँ पे जो किया जा रहा है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो एनर्जी वर्ल्ड कंपनी है, दोस्त दे आर डूइंग। और एक मैं आपको और दिखा सकता हूँ, यू कैन सी द सेम थिंग इन द, है ना, ग्रेविटी बैटरी इनसाइड द माइंस। मैं दिखा रहा, इनसाइड द माइंस वाला भी केस हो सकता है, ग्रेविटी बैटरी इनसाइड माइंस। ये देखो माइंस वाइंस के अंदर ये कुछ माइंस ही आ गया, ग्रेविटी बैटरी नहीं है ना। मैं सोचा शायद कुछ, हाँ ये देखो ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बढ़िया पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं आज से कुछ बताऊं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर आ रहा था कुछ यही वाला, ये एक्चुअल में वही पिक्चर है जो मैं आपको बता रहा था। ये ऐसा ही ये है ना, ये एक जगह, ये एक जगह, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पैरेलली दिखा रहे हैं, देखो देखो देखो, है ना। ये 2 एग्जाम्पल पैरेलली दिखा रहे हैं। एक तो एग्जाम्पल इज व्हाट, शायद नहीं नहीं नहीं, ये देखो क्या पता नहीं यार, है ना। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या है, माइंस इन द मोरवेन सिलेशियन रीजन ऑफ सीकिया, ये कोई जगह है, ये माइंस है नीचे, नीचे माइंस है। और ये देखो वो चीज गिराई जा रही है और इसको ले जाके आगे तुम लोग किसी टरबाइन से यू जस्ट कनेक्ट देम, तो टरबाइन से घूमने लगेगा और फिर उसको थोड़ी एनर्जी के साथ उसको ऊपर कर देना। तो दैट इज अ सिस्टम, दोज आर वर्किंग हियर। तो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ कम नेक्स्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत हो गया भाई, एनर्जी वाज अ लेंथी टॉपिक, तो आई हैव टेकन हियर मैक्सिमम टाइम। Okay, now come into the discussion of space technology. So now come into discussion of space technology. What is the space technology? See here guys. Okay, what about the space technology? See here. Some basic terms, those I discussed with all of you in the beginning. The one is satellite, second is shuttle, third one is a spacecraft. Next one is a launch vehicle, a rocket, and missiles. So whenever I start the space technology, so firstly I introduce these terms, and these terms will be very helpful to understand about the entire big chapter. Okay, entire big chapter. So this is satellite, shuttle, spacecraft, launch vehicle, rocket, and missiles. What is a spacecraft? Every object those we are sending in the space, all are commonly called as a spacecraft. So every objects that we send in space is called as a spacecraft. तो जो चीजें स्पेस में भेजी जाती हैं
तो नॉर्मल भाषा में everything are called as a spacecraft. Like a satellite is a spacecraft, like shuttle is a spacecraft. We are sending both them in the space. तो जो चीज ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजी जाती हैं उन सबके लिए वी आर यूजिंग अ जनरल टर्म एज अ स्पेसक्राफ्ट. Space, what is a space? Space is what, guys? Okay, above the carbon line, entire area is called as a space. If you are going to across the carbon line, where is the carbon line? 100 kilometer from Earth. 100 kilometer from Earth. This is what? 100 kilometer from Earth. This is a carbon line. And if you are in the space, space means you people are going beyond the carbon line. You people are going beyond carbon line. So if you people are going beyond carbon line, it means you are in the space. Okay, मतलब अगर अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं, मतलब above the carbon line जा रहे हैं, तो remember you are in the space. So I don't think so anyone have problem in this understanding कि आप स्पेस में मतलब कहाँ हैं. अगर स्पेस में मतलब आप कहाँ हैं, you people understood. Okay, now listen. Okay, now the question is what about satellites and what about shuttles? See. Okay, now the question is what about satellites and what about shuttle? So satellite and what about shuttle? So one line I can tell you, satellite is what? It is a kind of spacecraft. Satellite is what? It is a kind of spacecraft. Satellite always defined in the respect of orbit. And orbit means what? Orbit means gravity. Gravity means attraction. So whenever you are doing the study of satellites, you should have to do study on the basis of orbits, या gravity, या attraction. Okay, there are two nature of orbit, guys. The one where you people launch the satellite, inner orbit, and second is called as the outer orbit. Inner orbit where you are putting the satellites, it's that area where up to that distance earth gravity या earth attraction present. Where up to that area earth attraction या earth gravity present. And this is from the earth's surface up to 36,000 kilometer distance is the inner orbit where earth attraction या earth gravity present. Beyond 36,000 kilometer distance, you are not in the earth orbit, you are in the outer orbit. We are putting the satellite in both two places. Inner orbit of earth, when you want to put any satellite, that will work for the earth. Outer orbit, if you want to do study of Mangal, yeah, moon. In that case, you are putting the satellites in that area. So what is the inner orbit and what about the outer orbit? I don't think so anyone have problem. If you are putting any object in the inner orbit, so it will work for you. Okay, everyone. And Chandrayaan, Mangalyaan type of mission are in outer orbit. Satellites are what? Never reusable. If once you launch the satellites, satellite never come back. And this is the reason human being never go through satellites. So your Chandrayaan, Mangalyaan is also a satellite that send in outer orbit. And your INSAT, GSAT, etc. is also your satellite that you launch in the inner orbit. Because here your purpose is what? Okay, here your purpose is what? That is okay. Here your purpose is what? That does studies and all. Okay. What about the satellites? One more thing, guys. Never usable. That is the reason satellite never come back. Okay.
shuttle using, if you want to deliver something in the space and you want to carry them safely, so shuttle will use. It means shuttle is reusable. It means shuttle is reusable. Astronauts are cosmonauts. Astronauts, cosmonauts, they are going through shuttle. Astronauts, cosmonauts are going through shuttle. So I can tell you guys, Gaganyaan will be what? Gaganyaan is a what? That is a kind of shuttle. If you want to develop a space station, space station is a huge size of objects. The small part of the space station you have to carry through the help of shuttle. Now question is, what is the launch vehicles, rocket and missiles? Rocket is a kind of motor and engines, in a layman term, that testing you people are doing and then install into the launch vehicle and missiles. And through the help of launch vehicle, you carry a spacecraft, matlab satellite and shuttle launch by the help of launch vehicles. And missile is used to carry a warheads. Missile is used to carry warheads. And missile kind of discussion will come in defense technology. Orbits are defined where we are launching the satellites on the basis of distance and on the basis of positions. Distance based orbits, LEO, MEO, GEO and HEO. So LEO, MEO, GEO and HEO. LEO, scholars are low Earth orbit. MEO, medium Earth orbit. GEO, geostationary Earth. HEO, high Earth orbit. Position based, polar, inclined or traditional, and equatorial. Okay, it's a position based orbit, it's a distance based orbit. Position based, distance based, 50 to 2000 kilometer distance, 5000 to 20,000 kilometer distance, approx 36,000 kilometer distance, more than 36,000 kilometer distance. This is inner orbit. Up to gravity present, that is called inner orbit. And after 36,000 kilometer, you are in the outer orbit. Up to 36,000 kilometer distance is the inner orbit, and beyond 36,000 kilometer distance, what that is the outer orbit.
What about the polar inclined and transitional equatorial? Very simple. Polar position of the satellites. Here the satellite, suppose this is the Earth, guys, globe. Satellite is moving from the pole in these directions. Equatorial satellite, this is the equator. Plane of equator, satellite is moving in this direction. Inclined at transitional, satellite is moving in between wala angle. In between wala angle. This is the polar, this is equatorial, and this is inclined at transitional, inclined at transitional. So in that way, there are three different types of satellites. Okay. Just like a Masoom have some question, sir. Green energy open access rules 2020-22 and compressed biogas blending CBD, है ना? Please put light on it. So do one thing, है ना? Do one thing. What about the topic you people want? Last day you people share with me. Last day का मतलब मतलब जिस दिन सिलेबस खत्म हो रहा है, मतलब ये जान लो, आई थिंक 8th इज द लास्ट क्लास, है ना? तो आप सब मुझे 7 को शेयर करना, ठीक है? अब जितना बचेगा मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आपकी इंटरेस्ट है तो मैं बता दूंगा, ठीक है? उस दिन आपका पूरा होगा 8th को, ओके? जितने भी टॉपिक्स होंगे मुझे उसी दिन देना, 7 को, ओके? और वो अब 8 को कवर करूंगा, क्योंकि इस हिसाब से तो कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। अब देखो मैं स्पेस पे आ चुका हूँ और ये मुझे 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है? तो 7th आप कलेक्ट करते जाओ, यू पीपल गिव मी 6th को और 7 को आपका टाइम है, आप मुझे लास्ट में पूरी लिस्ट बना के उसमें बोलूंगा, मुझे दे देना, मैं मोबाइल से इसकी फोटो ले लूंगा, जितने टॉपिक्स होंगे सब मैंने, उसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं होगा, तो कलेक्ट करते जाओ 6 और 7। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आई विल डिसाइड इट इज रिलेवेंट या बकवास, वो मैं डिसाइड करूंगा। आपका टाइम है 6th और 7th, मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, 6th और 7th। तो 8th को दैट विल बी द लास्ट क्लास ना, हो सकता है फिर मैं कुछ ना पढ़ाऊं, आपके सारे के सारे जो क्वेरीज होंगे, सर ये टॉपिक बता दो, ये टॉपिक बता दो, दैट आई विल कंसीडर ऑन द 8th, ओके? ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया बच्चे का, मासूम उस दिन पूछना बेटा, ठीक है? अभी क्योंकि अब देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो कोई भी, और आप समझ रहे हो क्यों, ओके? मैंने बोला अब 3rd डे आ गया है और हमारे पास 5 दिन और बचते हैं, अंडरस्टूड? तो 5 दिन, अभी इतने सारे टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है? 5 दिन क्यों बचते हैं, है ना? 8 तारीख तक है ना, तो 6-7 तक है ना, 9 days आई एम टेकिंग योर क्लासेस, तो उसमें से 6 नहीं हाँ 6 या 7 को, है ना, 6 या 7 अप्रैल तक आप मुझे सारे क्वेश्चन दे देना, 8th इज द लास्ट क्लास, वो उसी दिन आपको डिस्कशन करूंगा, पर लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में देना ताकि एक साथ हो, सबकी फोटो खींच लूं, कहीं कुछ अगर मैंने भी ना देखा हो तो आई विल चेक एंड देन अपडेट यू, डोंट वरी। अब जैसे ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल मुझे भी देखना पड़ेगा, कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग मेरे को पता है, ठीक है? तो वही मैंने कहा एक आध 2 चीजें हैं, तो मैं एक बार देख लूंगा, समथिंग इज देयर, आई थिंक 80% तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 20% फिर भी पड़ेगी, तो एक दिन आई विल डू द एक्सरसाइज आल्सो एंड डिस्कस एवरीवन, इससे फायदा मेरा भी है आपका भी है, एंड वी विल नॉट डिस्टर्ब एनीवन, है ना? ओके। कामा लाइन में ग्रेविटी 0 होती है? नहीं भाई, ग्रेविटी 36,000 के बाद होती है, ग्रेविटी कम जरूर हो जाती है। कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट्स का ही दूसरा नाम होता है पीयूष, अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स भी कॉस्मोनॉट्स भी बोलते हैं, और भारत में तो एक नया टर्म यूज किया है, व्योमनॉट्स कहते हैं, लेकिन याद रखो ज्यादा पॉपुलर एस्ट्रोनॉट्स ही है, रशियन थोड़ा कॉस्मोनॉट शब्द का यूज करते हैं। पोजीशन वाइज मैं बता रहा था, जैसे मान लो ये अर्थ है, अगर सैटेलाइट्स है, पोलर पे है तो पोल टू पोल घूम रहा है, इक्वेटोरियल है तो इक्वेटर के सामने ऐसे घूम रहा है, इंक्लाइन ट्रांजिशन है तो ऐसे घूम या ऐसे घूम रहा है, इट्स मूविंग लाइक दिस, है ना, इन दिस डायरेक्शंस, ओके, इट इज मूविंग लाइक दिस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। See one thing more. Actually, polar position satellite on this distance, inclined position satellites are here, and equatorial position satellites are here. It means if you want to put any satellites at equatorial position,
ओके, अब जैसे लाइक सपोज यू वांट टू पुट अ सैटेलाइट टू पोलर पोजीशन, तो सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर से 2000 इसके बीच में कहीं रखो. ओके, तो हियर इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटर के ठीक सीधे में सामने 36,000 पर ऐसे रखो, ऐसे घूमेगा. ओके, सो दिस इज हियर. और उसके बीच वाला यहाँ पर या यहाँ पर, तो 5,000 20,000 के बीच में एनीवेयर यू पुट इट, हियर लाइक दिस, है ना, या हियर लाइक दिस. In this way you can put the satellites. Okay, it's a position and distance based relations. Okay, fine. बात करेंगे आज, है ना. 30-40 minutes I'll take to discuss the orbit, जिसको मैं कम से कम 1.5-2 घंटे बढ़ाता हूँ. तो थोड़ा सा I'll discuss with you. Okay. और आई थिंक आज की डेट है जो 2nd है. हाँ, तो अभी है हमारे पास, ठीक है, टाइम है. Question is why satellite not fall down to the earth surface. और यहीं से you will get the concept of polar synchronous और geostationary orbit. Why satellite not fall down? Why satellite not fall down to the earth surface? To the earth surface. So why satellite not fall down to the earth surface? Okay, now come here. Why satellite not fall down to the earth surface? Here I just want to show you some of the chemistry wala topic. Suppose it's a nucleus. Nucleus have a proton and neutron, and this is a positive charge. There's a first orbit. They have a 2 electron. Electrons are negative charge. There's a second orbit. They have a 8 number of electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They have a negative charge. There's a third orbit. Maximum 18 number of electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electron. Negative charge. Everywhere nucleus attract electron, nucleus attract electron, nucleus attract electron, but still electron here not fall down on the nucleus. Why? Same concept I am going to connect with you in the case of space technology. Suppose it's a position of satellite, B position of satellite, C position of satellite. Here the satellites are what? At a distance of 50 km. Here satellites are at a distance of 5,000 km. Here satellites are at a distance of 36,000 km. It's a LEO, it's a MEO, it's a GEO. जैसे है वैसे बनाओ, फिर बात करते हैं. जैसे लिखा है ऐसे बनाओ. सैटेलाइट ए पे है, बी पे है, सी पे है, क्यों नहीं गिर जाता? सबको पता है 36,000 किलोमीटर तक ग्रेविटी होती है. और सही बात है, 36,000 किलोमीटर तक ग्रेविटी है तो वो सैटेलाइट क्यों नहीं गिर जाता? गिरना चाहिए. यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये कॉन्सेप्ट वैसे भी यूपीएससी में पूछा गया है एज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक. ठीक है, तो वो भी देखते हैं इसमें क्या स्टैटिक है, बताता हूँ. इसके लिए जरा पिक्चर देखो जो मैं बना रहा हूँ, और जरा इसको समझो. ओके, वाई सैटेलाइट एट पॉइंट ए, एट बी एंड सी. Suppose it is me. Okay. Suppose it is me. And I'm a height of 50 किलोमीटर, है ना. ये मैं पृथ्वी की सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट पे खड़ा हूँ. वही एक्सपेरिमेंट जो मैं क्लास में करता हूँ. काफी लोगों ने स्टैटिक पढ़ा है तो समझ गए मैं क्या बढ़ाने जा रहा हूँ. मैं क्या करता हूँ, एक बॉल ले लेता हूँ और बॉल को फेंकता हूँ. And those ball I'm going to throw, this ball I throw with different speed. First time I throw a ball with 3 kilometer per second. तो बॉल ऐसे जाती है, 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 फिर गिर जाती है. With 3 kilometer per second speed, only certain period of time ball is straight and then fall down. पर मुझे तो बॉल को और स्ट्रेट रखनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड शुड इंक्रीज. बढ़ा लेते हैं, 5 कर देते हैं. When the speed is going to increase 5 km per second, तो बॉल थोड़ी और दूर सीधी जाएगी, सीधी जा रही है, 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 fall down. It's a 5 km per second. Okay, but I want to keep the ball straight ना, तो मेरे को स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी. Suppose I'm going to send a ball with the speed of 7.9 km per second.
the ball is going straight. Now the ball is not going to fall down. Its speed is a 7.9 km per second. Its speed is what? 7.9 km per second. So if I send a ball with different speed, okay, so the condition of ball you understood very well, and this is what? This is a certain orbital speed. अगर इस ऑर्बिटल स्पीड पे लाके हम किसी बॉल को फेंकें तो बॉल कभी नीचे नहीं गिरती ना अपनी जगह छोड़ के बाहर जाती है. बॉल इज देयर, सो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड इज रिक्वायर्ड. और किसी ऑर्बिटल पर सर्कुलर पाथ पे जो बॉल आप रखते हो, कोई भी चीज रखते हो, कहीं पर स्पीड बढ़ रही होती है, कहीं पर स्पीड बढ़ रही होती है, कहीं स्पीड कम हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं चेंजिंग ऑफ स्पीड चल रहा होता है. एंड चेंजिंग ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी एक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेसेसरी acceleration. Okay, due to certain orbital speed, a necessary acceleration is maintained. Due to certain orbital speed, a necessary acceleration is maintained. And due to this reason, the ball is not going to fall down on the Earth's surface. और सुनो, स्पेस साइंटिस्ट को पता है कितनी डिस्टेंस पर किसी सैटेलाइट को रखने पर सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ पे नहीं गिरेगा. They know it very well. अब देखो 50 किलोमीटर की हाइट है, बॉल क्यों नहीं गिरी, है ना? तो रीजन, क्योंकि यहाँ पर अगर सैटेलाइट्स को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रख दी जाए तो सैटेलाइट नेवर फॉल डाउन. जैसे यहाँ पे देखो, ओके. और ऐसे ही अगर आप दूर जाते हो, अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पर द स्पीड इज 7.9 किलोमीटर पर सेकंड. वन मोर क्वेश्चन इज हियर गाइस, व्हेन यू आर गोइंग फार फ्रॉम द अर्थ ना, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है. सर मैक्सिमम वैल्यू अर्थ की कहाँ, ग्रेविटी कहाँ होती है? अर्थ के करीब. और जब सबसे दूर जाते हो ग्रेविटी कम हो जाती है. और आपने अभी देखा था अप टू 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस है ग्रेविटी, अर्थ का अट्रैक्शन है. और 36 के बाद अर्थ की ग्रेविटी खत्म, यू आर इन द वैक्यूम, अर्थ के अट्रैक्शन में नहीं हो, अर्थ के इफेक्ट में नहीं हो. ओके, एंड आई हैव अ स्टेटमेंट गाइस, यहाँ पे देखो स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी सबसे ज्यादा, अगर तेजी से नहीं घूमेगा इट विल फॉल डाउन. यहाँ पे जो स्पीड होती है ना वो थोड़ी कम होती है. ओके, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी कम है तो कम स्पीड से भी इट विल मेंटेन द अनुपात. पता है यहाँ कितना आता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पे 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की स्पीड आती है. इतना तो आई थिंक यू कैन गेस वेरी इजीली. ओके, और एक बात और बताता हूँ, पता है यहाँ पर सैटेलाइट्स को घूमने में कम समय लगेगा, स्पीड ज्यादा है, सर्कमफरेंस इज लेस. यहाँ सैटेलाइट विल टेक मोर टाइम, स्पीड कम है और सर्कमफरेंस ज्यादा है. पता है यहाँ कितना टाइम लगता है? यहाँ पर सैटेलाइट इज टेकिंग व्हाट? यहाँ पर सैटेलाइट इज टेकिंग अराउंड 88 मिनट्स. यहाँ पे सैटेलाइट इज टेकिंग 88 मिनट्स. और यहाँ पता है सैटेलाइट इज टेकिंग हाउ मच टाइम? 24 आवर्स. 88 मिनट्स हियर एंड 24 आवर्स हियर. Okay, one side satellite is taking how much time? 88 minutes, and second side satellite is taking how much time? 24 hours. So one side 88 minutes and second side is the 24 hours. Okay, इसको पूरा बनाओ पिक्चर पहले फटाफट, फिर बताता हूँ. यहाँ पे अब क्वेश्चन ऑर्बिट्स पे जाएंगे. मैं सोचता हूँ कि जब चाय ही पीनी है तो चाय क्यों पी लो, तो छाछ वाछ टाइप का ले लो. वही देखा थोड़ा सा गिर गया था, आप लोग भी हंस रहे होगे रवि सर ऐसे, क्योंकि चाय ना, हम टीचर्स, मैंने एक चीज देखी, पीते 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 एसिडिटी, कैल्शियम कंटेंट इज गोइंग टू डिक्रीज, मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. तो हड्डियों में कमजोरी. तो मैंने डॉक्टर से पूछा व्हाट इज दिस, बोला भैया चाय वाय बहुत पीते हो क्या? मैंने कहा हाँ. बोला इसीलिए तुम्हारी शरीर का कैल्शियम कम हो गया. अजीब हालत है. तो मैंने चाय वाय छोड़ा, तो थोड़ा उसकी जगह थोड़ा सा छाछ वाट टाइप का ले लेता हूँ, और गर्मी में दैट इज गुड ऑल्सो. तो मैं देख रहा था गिर गया है ना, ज्यादा पानी नहीं लगाने तो दाग वाग भी लग जाते हैं. देखो ये चाय भी गिरी है, देखो ये छाछ भी गिरा है ना. मेरे को बाद में लगा बताओ बच्चे क्या हंस रहे होंगे, सर भी मतलब, है ना. हाँ तो क्या है, अगर आप लोग की तरह मैं भी बच्चा बन जाऊँ तो क्या दिक्कत है. आप लोग के साथ इसीलिए तो मैं हमेशा यंग रहता हूँ, रहूंगा भी, बिकॉज माई एनर्जी इज ऑलवेज इन द सराउंडिंग ऑफ यूथ्स. आप लोग जाते बूढ़े हो जाओगे जॉब में, योर सीनियर इज द ओल्ड पर्सन, वेरी इरिटेटिंग, खसूट टाइप. आप खसूट टाइप से हो जाओगे. अभी देखो कितने प्यारे हो. फाइन, हाँ ये हो गया. अब नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, in different positions have different functions of the satellites. Now we'll go toward the discussion. अब दो ऑर्बिट ही पढ़ाऊंगा, एक जिसको कहते हैं पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और दूसरा जिसको कहते हैं जियोस्टेशिया या जियोसिंक्रोनस वाला ऑर्बिट, है ना. तो कम हियर वन साइड, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ओके, वन साइड इज द लिस्ट ऑफ ऑर्बिट. यहाँ पे आई एम गिविंग यू एवरीथिंग.
लेकिन पढ़ाऊंगा 2 ही दिन. और यहाँ पे is the list of satellites. Okay, so one side is what? List of orbit, and second side is what? List of satellites. Orbits में there are so many orbit guys. So one is polar orbit. One is a polar orbit. Second is the polar sun synchronous orbit. Polar sun synchronous orbit. Next one is a GPS orbit. Geostationary Earth orbit. Geostationary Earth orbit. Geosynchronous orbit. Geosynchronous transfer orbit, that is GEO. This is GTO. Okay. Satellites. Experimental satellite. University satellite. Remote sensing satellite. Remote sensing satellite. Earth observation satellite. And INSAT oblique GSAT. So it's a overall about the one side the list of orbit, second side is a list of satellites. Actually, you know, these satellites are not required for examinations. For you people, these satellites are only required. Remote sensing satellite, generally we are putting here. Earth observation satellite also we are putting here. But in these two, polar sun synchronous orbit, yeah, sun synchronous orbit or sun synchronous polar orbit is the best orbit. INSAT and GSAT, generally, not only generally, we are putting here. So INSAT and GSAT, generally we are putting here, Earth observation here, remote sensing here. Okay, in both two cases में these है ना orbit, but इनमें से भी best orbit remote sensing and Earth observation के लिए polar sun synchronous. छाछ से नींद आती है, चाय से उड़ती है. तुम चाय पियो, है ना, तुम चाय पियो. चाय जब तक नेसेसरी नहीं होता तब तक मैं नहीं पीता. ओके, ठीक है, सुबह शाम थोड़ी आदत खराब हो गई, बिना पिए चलते नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना कम से कम हो. क्या अच्छी चीज, अच्छे शौक डालो. ओके, सो इट्स हियर, यू कैन सी वेरी वेल. ओके, पहले आपको लिए चलता हूँ पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की तरफ. देखो, व्हाट इज अ पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट? What is polar sun synchronous orbit? I am going to keep our satellites 98.6 degree, okay, and 798 kilometer distance. At this position, you know, it is looking like that every moment of time, it is looking like that every moment of time satellite follow path of sun. Satellite follow path of sun. It is looking like that every moment of time satellite follow path of sun, है ना? And this is the best orbit for remote sensing satellite and Earth observation satellite. Yeah, it is one of the example where we have to put a polar sun synchronous satellites. Actually, पता है क्या होता है?
मान लो ये अर्थ है, ओके, और ये मान लो सैटेलाइट्स है और ये सन है। अगर कोई सैटेलाइट्स अर्थ का पिक्चर लेता है ना, तो जब सन के ठीक सामने रहता है तो पिक्चर इमेजेस अच्छी तरह से आती है। ऐसे समझो, जैसे मान लो दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज अ हाई राइज बिल्डिंग, दिस इज अ लो राइज बिल्डिंग। ओके, मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये मेरा हाथ जो एक सैटेलाइट है, और ये जो बड़ा वाला कैप है ये मान लो क्या है, इट्स अ सन है। तो दोनों एक दूसरे के सामने। कुछ देर के बाद आपको पता है ना, सन इधर हो जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट ऐसे ही चलेगा लेकिन सन इधर दिखेगा। सन ऐसा इसलिए दिखेगा क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमको लगता है सन उधर जा रहा है। वो अलग बात है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, बट लुक लाइक दैट सन इज गोइंग टू मूव। ओके, तो आई एम टेलिंग यू, हम यहाँ हैं, ओके, सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है, आगे पीछे है ना, आगे पीछे, और सैटेलाइट इज हियर। थोड़ी देर के बाद सैटेलाइट आगे चला जाएगा, तो जब सैटेलाइट सन आगे चला जाएगा और सैटेलाइट फिर यहाँ आएगा, तो जब सैटेलाइट इज कमिंग हियर एंड सन इज टुगेदर, दोनों साथ में हैं, तब तो सैटेलाइट विल टेक अ मैपिंग और सैटेलाइट बताएगा इस एरिया तक बिल्डिंग है, इस एरिया तक बिल्डिंग है। लेकिन थोड़ी देर के बाद व्हेन द सन इज गोइंग हियर एंड सैटेलाइट स्टिल कमिंग हियर, तो इस सन के इधर जाने से अब लगेगा कि बिल्डिंग का एक शैडो आ रहा है इस साइड, तो यानी ये वाला एरिया में बिल्डिंग है, ये वाला एरिया में बिल्डिंग है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सन और वहां होगा, सैटेलाइट फिर पीछे से घूम के आएगा, तो अब लगेगा कि और ज्यादा शैडो आ रहा है इस तरीके से, है ना, क्योंकि सन और इंक्लाइन में। दोपहर में देखो ना, सन की लाइट सीधी पड़ती है, थोड़ी देर बाद सन उधर चला जाता है तो शैडो इधर आता है। वही बात मैं कह रहा हूँ। अगर एक बार बताओ, सन भी उधर जा रहा है और सन भी उधर जा रहा है, उसी तरह सैटेलाइट भी अगर ऐसे चली जाए तो कोई भी बिल्डिंग का इमेज ले रहे होगे, जैसे ऐसे मान लो, एक्चुअल में ऑर्बिट ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, दिस इज द सन, दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज द इंटायर अर्थ, दिस इज द इंटायर अर्थ। ये अर्थ है, कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया इधर आए, अमेरिका बैक साइड, यूरोप इधर आ जाए, है ना, इधर जापान आ जाए, सारी कंट्रीज अर्थ पे हो, कहीं भी जाए, सैटेलाइट और सन दोनों ऐसे ऐसे घूमते हैं। फिर सैटेलाइट एंड सन टुगेदर। ओके, जैसे से सन इज गोइंग टू शिफ्ट ना, सैटेलाइट भी उसके सामने आ जाता है। तो अगर दिस एरिया ऑफ पिक्चर यू आर गोइंग टू टेक विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, सन एंड सैटेलाइट टुगेदर, पिक्चर प्रॉपर आएगा, कोई शैडो नहीं है। दिस एरिया का पिक्चर ले रहा, फिर नेक्स्ट टाइम द सैटेलाइट एंड सन इज अगेन टुगेदर, अगेन सन एंड सैटेलाइट इज टुगेदर, क्योंकि 98.6 है, 90 डिग्री नहीं है, यानी 90 होता तो यहीं आके यहीं पे मिल जाता। ओके, 98.6 होने से थोड़ा सा वो 8.6 आगे बढ़ जा रहे हैं, 98.6 में फिर 8.6 आगे बढ़ जा रहा है, क्योंकि 90 से 8.6 आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सन इज गोइंग टू शिफ्ट, and satellite also follow the path of sun, ऐसा कुछ। Okay, so this is the statement I mentioned there। अब किसी भी कंट्री का अगर फोटो इमेजेस लोगे, there will be no shadow and this is the best satellite for the remote sensing and the earth observation। और इसी सैटेलाइट्स को हम लोग यूज करते हैं कहाँ, we are using for earth observation और remote sensing के लिए best satellite, and I proved why it is, and I proved how it is। Okay, so finally I prove it, why it is and how it is। Okay, अब you may ask me, sir, only 98.6 में polar sun synchronous happen? नहीं, बहुत सारे पे होता है, लेकिन it is one of the example to simplify the concept of polar sun synchronous orbit, and I'm very sure this kind of question will come। Okay, तो रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे अच्छा, अगर मान लो कोई सैटेलाइट इज टेकिंग 2 hours टू कंप्लीट 1 revolution, तो 1 घंटे वो सन के सामने, 1 घंटे इट इज द सन के पीछे, तो दिस इज आल्सो द रीजन गाइस, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज अ dawn and dusk orbit। Okay, and similarly many other angles with many other, but generally the polar sun synchronous are coming in the range of 700 to 800 kilometers from the earth's surface, and 700 to 800 is what, Leo polar positions। 700 to 800 kilometer is what, Leo, you know, Leo 50 to 2000, Leo में कितना देखा था, 50 to 2000, ये देखो लियो में क्या देखा था, 52,000, तो 700 to 800 यही आने वाला ना, तो लियो ऑर्बिट तो हुआ पोलर पोजीशन पे। तो पोलर और पोलर सिंक्रोनस से मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज इट। ओके, एंड डॉन एंड डस्ट व्हाई वी आर कॉलिंग, भाई एक मान लो अगर आई एम गोइंग टू कीप यू इन द सैटेलाइट्स, जाओ सैटेलाइट पे बैठ जाओ, और सन इधर है, सैटेलाइट है ना, तो 1 घंटे के लिए आपको अगर सन के सामने रहोगे तो दिन दिखेगा, 1 घंटे के लिए आपको रात दिखेगी, फिर 1 घंटे दिन आएगा, फिर 1 घंटे रात आएगी, फिर 1 घंटे दिन आएगा, तो ऐसा लगेगा आफ्टर एवरी 1 hours द मॉर्निंग इज गोइंग टू हैपन एंड नाइट इज गोइंग टू बी हैपन। तो अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, डॉन एंड डस्क, दिस इज द रीजन दिस ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डॉन एंड डस्क ऑर्बिट, भूलना नहीं। ये सब कमिंग ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के, और वैसे भी करंट अफेयर्स वालों के सब पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आप लोग मत पढ़ो, ये सब फालतू काम कर रहे हो। वो जब आएगा ना, स्पेस खत्म हो जाएगा, लास्ट में देखना कोई 1-2 करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, 1-2 घंटे से एनर्जी में पढ़ा है, वही आगे पढ़ लेना बस।
वैसे भी बाकी लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, तुम क्यों करोगे ये सब पढ़ना, फालतू क्यों पढ़ रहे हो, मैं तो यही बोलूंगा। So it's overall about the polar sun synchronous orbit. Now we go toward the discussion of geostationary orbit. See, geostationary orbit. So geostationary Earth orbit. Actually, this is the best orbit. Okay. अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ पोलर सन सिंक्रोनस वगैरह का, इससे आपकी ना मैपिंग वगैरह बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर सैटेलाइट इज नॉट ऑलवेज फिक्स फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन, तो इसका काम ना मैपिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा होगा। अर्थ के रिसोर्सेज की स्टडी करनी है ना, अर्थ के रिसोर्सेज की स्टडी करनी है, या थोड़ी देर के बाद किसी और कंट्री पे जा रहे स्पाई कर सकते हो, है ना। आप रिसोर्सेज की स्टडी करने के बाद डिजास्टर वगैरह की मॉनिटरिंग कर सकते हो, डिजास्टर मॉनिटरिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग यू कैन डू, डिजास्टर मॉनिटरिंग कर सकते हो। यहाँ तक कि पोल एरिया को देख सकते हो, पोलर एरियाज को यू कैन सी, आइस वाइस क्या है किस हिसाब से, दैट यू कैन चेक। सन के साथ रहेगा तो सैटेलाइट हमेशा कैसे लाइट रहेगी भाई, सन ऐसे है, अर्थ ऐसे है, और सैटेलाइट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो 1 घंटा सन के सामने, 1 घंटा सन के पीछे। पीयूष बताओ जरा लॉजिक तो। सन के साथ चल रहा सैटेलाइट, इसलिए डस एंड डस बोले, नहीं डॉन एंड डस उसे साथ ना बोले, 1 घंटा सामने 1 घंटा पीछे, इसलिए डॉन एंड डस बोले। साथ साथ की वजह से उसका कोई लेना देना नहीं, आगे पीछे होने की वजह से उसका है। There must be many polars on single satellite in the world. How do countries decide their path? अरे भैया वही मैं बोल रहा हूँ निकिता, 700 से 800 के बीच में ना बहुत सारे इंक्लिनेशन एंगल बन जाएंगे, एक ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने तो एक एग्जांपल लेके चीजों को समझाया, बट आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली वन इज द पाथ। ऐसे थोड़ी ना एक ही जगह पे दुनिया के सारे सैटेलाइट रखे जाएंगे, बहुत सारी जगह, तो उस बीच में 700 से 800 के आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस और हो सकता है सैटेलाइट, यू कैन पुट इट, बट हाँ उनका इंक्लिनेशन एंगल थोड़ा अलग होगा। जो एक सैटेलाइट है ना स्पेसक्राफ्ट निशार मिशन में जो भेजने वाले हैं, है ना, वो 98 पॉइंट, वो भी 98.2 के आसपास भेजा जा रहा है, 98.6 पे नहीं भेज रहे एंगल्स पे। तो सन के साथ, तो ये मैंने आपको समझा दिया, जितने भी क्वेरीज यहाँ पे आए हैं सारे क्वेरीज के आंसर मैंने दे दिए। ओके, सारे क्वेरीज के आंसर मैंने यहाँ दे दिए, ध्यान रखना। व्हाट इज अ जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट? देखो एक चीज है, दिस काइंड ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट्स इज नॉट फंक्शनल फॉर 24/7, है ना। ये सैटेलाइट्स आप कभी भी 24/7 काम नहीं करोगे, लेकिन हाँ दिस सैटेलाइट इज वेरी क्लोज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो अर्थ की फोटो मैपिंग ये सब चीजें हो जाएंगी। पोलर एरियाज की आइस वाइस के बारे में देख लोगे, वहां के वेदर को देख लोगे, हमारे अर्थ के वेदर को देख लोगे, वेदर फोरकास्टिंग कर लोगे, क्योंकि सैटेलाइट्स आर वेरी क्लोज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है कितनी 700-800, ठीक है ना। पर हाँ यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर आप कोई टेली कम्युनिकेशन टाइप की एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट्स ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। ओके, अब इसीलिए आप यहाँ पर पर्टिकुलर 24/7 वाला काम नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब है इट विल बी नॉट यूजफुल फॉर टेली कम्युनिकेशन पर्पसेस। टेली कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यू शुड हैव टू नीड अ सैटेलाइट दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 24/7। निकिता, यस सर, बट हाउ डू कंट्री डिसाइड सो देयर नो ओवरलैप, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म फॉर दैट? ऐसा है, दुनिया के जितने सैटेलाइट्स है ना, हर कंट्री एक दूसरे को डेटा शेयर करती है, और जितने भी ऑर्बिट्स है ना उसमें सैटेलाइट्स रखे हुए हैं। उस हिसाब से बहुत सारे ऑर्बिट ऐसे हैं जिसमें सैटेलाइट नहीं रखे हुए हैं, तो कमिंग फ्यूचर में रखेंगे। और स्पेस इज नॉट वेरी स्मॉल, स्पेस बहुत बड़ा है ना। 100 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर तक बहुत जगह तुम सैटेलाइट रख सकते हो, लाखों करोड़ों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक क्लास के अंदर मैं करोड़ों चेयर लगा दूं, तो यहाँ करोड़ों बच्चे कहीं भी ढंग से बैठ सकते हैं ना। और कोई किसी से क्यों नहीं बैठता, क्लास के अंदर 300 बच्चे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सीट पे बैठा है। ऐसे ही अगर यू आर गोइंग टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, तो कोई अपनी जगह पे नहीं बैठता। ओके, और जिसको जहां जरूरत है उस हिसाब से। आप अर्थ को इतना बड़ा मत समझो, अर्थ बहुत बड़ा है, और इसका ऑर्बिट अलग अलग किलोमीटर, सोचो कितना बड़ा बड़ा सर्कमफरेंस होगा। बहुत तो सैटेलाइट रख सकते हो, मिलियन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फॉर द कमिंग फ्यूचर the number is going to increase, वो एक डेवरीज जरूर बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं केसलर सिंड्रोम, केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू स्पेस डेवरीजेस, है ना। ये स्पेस डेवरीज को हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। तो केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू स्पेस डेवरीजेस गाइस, है ना। ये केसलर सिंड्रोम इट इज रिलेटेड टू स्पेस डेवरीजेस। ये अंतरिक्ष के कचड़े हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स कभी भी लौटा के नहीं लाए जाते, मैंने अभी बोला था। तो धीरे धीरे अंतरिक्ष में जमा होने वाले क्या है, कचड़े, इन्हीं को केसलर सिंड्रोम के नाम से बोला जाता है।
तो हो सकता है यूपीएससी आज क्वेश्चन केसलर सिंड्रोम रिसेंटली न्यूज में। अरे रिसेंटली क्या, ये ऑलवेज जानना चाहिए आपको, रिसेंटली क्या होता है, 20 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। केसलर सिंड्रोम स्पेस डेब्रीज के लिए टर्म बोला जाता है, स्पेस जंग को बोलते हैं, either you call them स्पेस डेब्रीज या स्पेस जंग को केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। कहीं ऐसा ना हो सिंड्रोम सुन के कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ डिजीज, जो कि बायोलॉजी में भी सिंड्रोम्स आते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि हो सकता है वो आप में एक ऑप्शन लिखे कलेक्शन ऑफ डिजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, खतरनाक डिजीज, कोई बचेगा नहीं ऐसा डिजीज, मतलब कैसी खुराफात थोड़ा बहुत। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फोकस इट। केसलर सिंड्रोम मींस व्हाट? ओके, केसलर सिंड्रोम मींस व्हाट? इट्स हियर। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। देखो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में क्या है, अब इतना जरूर क्लियर है बच्चों कि दिस काइंड ऑफ ऑर्बिट से आप कभी नेविगेशन नहीं कर सकते। नेविगेशन रास्ता वास्ता भी नहीं देख सकते आप, थोड़े समय के लिए तो रास्ता देख पाओगे जब तक सैटेलाइट आपकी कंट्री के सामने है। बाकी 24/7 सैटेलाइट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू ना, कभी अमेरिका के सामने, कभी ऑस्ट्रेलिया के सामने, तभी तो यू आर डूइंग द स्पाई आल्सो। अब आप बोलोगे सर अगर आई एम डूइंग द स्पाई तो अदर कंट्री हमारा अपोज नहीं करेगा, कैसे करेगा? अदर कंट्री का सैटेलाइट भी तो आपके कंट्री के सामने कभी कभी जा रहा होगा, क्योंकि ऑर्बिट ही ऐसा है ना। दिस ऑर्बिट इज लाइक दैट, आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू हैव नॉट एनी अदर ऑप्शंस। क्लियर? यहां पर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, यहां ऑप्शंस ही नहीं है, कर क्या सकते हो आप? यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आप कुछ नहीं कर सकते यहां पे। ओके, अब नाउ कम व्हाट इज द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अगर यू वांट टू यूज अ मोबाइल use any kind of things for 24/7, agar you want to connect with the satellite, so this is the orbit and here you should have to put the satellites, and this is what geostationary earth orbit. Okay, in the case of geostationary orbit you should have to keep the satellite here, satellite lie plane of equator, satellite lie plane of equator, इक्वेटर के ठीक सामने हमें रखना होता है सैटेलाइट्स को। कहां? at a distance of 36,000 किलोमीटर, at a distance of 36,000 किलोमीटर। और यहाँ पे सैटेलाइट्स का जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स, रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स है ना 24 आवर्स। और व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट्स? तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कंडीशंस हैं किसी सैटेलाइट्स को जियोस्टेशनरी बनाने के लिए। मतलब सैटेलाइट्स को हमेशा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में, जैसे मान लो दिस इज द अर्थ, इक्वेटर के ठीक सीक में 36,000 किलोमीटर पे वी आर पुटिंग देयर। ओके, और सैटेलाइट 36,000 पे कितनी स्पीड से घूमती है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और कितने समय में सैटेलाइट इज गोइंग टू कंप्लीट? 24 आवर्स। ठीक है ना। और अर्थ अपने एक्सिस पे कितने देर में घूम जाता है? 24 आवर्स। तो अर्थ पे उसी जगह के लिए और सैटेलाइट दोनों एक दूसरे के हमेशा सामने सामने रहते हैं ना। तो रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बोथ आर सेम। और अर्थ पे खड़े बंदे को हमेशा सैटेलाइट सामने सामने दिखता है, क्योंकि ये ऐसा ऑर्बिट है जहां रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशनरी ऑफ सैटेलाइट बोथ आर सेम। 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे घूम जाता है और 24 घंटे में सैटेलाइट चारों तरफ घूम जाता है अर्थ के। तो दोनों एक दूसरे के सामने सामने ही दिखेंगे ना, इसीलिए अर्थ पे खड़े बंदे को सैटेलाइट ऑलवेज लुक लाइक स्टेशनरी, इसलिए इस ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी कहते हैं। और यहाँ पे एक सिंगल सैटेलाइट जिस कंट्री के लिए आपने लगाया है वो हमेशा उसके सामने होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस 24/7। यही होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन, यही होता है आपका नेविगेशन रास्ता देखने के लिए। नहीं तो 30 मिनट के बाद गाड़ी ना चले। यहाँ पे 24/7 यू कैन सी द लोकेशंस। Okay, right. First of all, you people have mentioned this statement. It lies plane of the equator and at a distance of 36,000 kilometer approx. Revolutionary time period of satellite 24 hours. Speed of satellites 3.1 kilometer per second. ठीक है ना? अब now, right? At this position, right? Conclusion. At this position, rotation of Earth. Bracket में लिखो 24 hours. At this position, rotation of Earth in bracket 24 hours. At this position, rotation of Earth, bracket में लिखो 24 hours. And revolutionary time period of satellite. Comma, both are 24 hours. Both are 24 hours. Both are 24 hours. So satellite always look like stationary
So satellite always look like stationary. In the respect of particular location on Earth. So satellite always look like stationary in the respect of particular location on Earth. Here a single satellite work for 24/7. Here a single satellite work for 24/7. ओके पीयूष जरा दिमाग लगाओ, क्या जियो स्टेशन में डॉन एंड डस्क होगा? देखो ये अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूमता है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसे घूमता है, ठीक है, ये सन है, सन ऐसे घूमते हुए दिखता है। तो कभी किसी सैटेलाइट्स और सन से तालमेल बैठाने के लिए पोलर सन सिंक्रोनस ही ठीक होगा, ठीक है। सो डस्क एंड डॉन बता दिया, वो हो ही नहीं सकता इक्वेटर पे। अब बाकी बच्चों बताओ, क्या इक्वेटर से कभी डॉन डस्क हो सकता है? वो तो पोल टू पोल ही होगा ना, क्योंकि सन तो ऐसे घूम रहा है ना, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो जो सन के सामने सामने अगर सैटेलाइट भी घूम रहा है तो बार बार सैटेलाइट ऐसे ऐसे आ रहा है ना आगे पीछे। जियो स्टेशन में क्या है, जियो स्टेशन में सैटेलाइट और लोकेशन जो हमेशा सामने सामने है ना, ठीक है ना, उसमें सन का क्या लेना देना? सन तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, सॉरी अरे वो सैटेलाइट है क्या, सैटेलाइट तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ओके। पोलर में यहाँ पे इक्वेटोरियल में सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि इक्वेटोरियल सैटेलाइट तो लाइव प्लेन ऑफ इक्वेटर ऐसे घूम रहा है ना। इक्वेटोरियल सैटेलाइट को तुम पोल टू पोल घूम समझ रहे हो क्या? अभी मैंने बोला था इक्वेटोरियल इक्वेटर के सामने सामने ऐसे घूमता है, ओके। तो ये थोड़ा सा ऑर्बिट वाला पार्ट था, आई हैव कंप्लीटेड इट। अब नाउ आई विल गो टुवर्ड द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सीधी बात, इट इज द बेस्ट सैटेलाइट फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इन्हीं ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को रखते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। बोला ना, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, जो यहाँ काम नहीं हो सकता यहाँ पे होगा, क्योंकि वी हैव अ नीड ऑफ अ सैटेलाइट दैट विल फंक्शनल फॉर 24/7। We have a need of satellite that will be functional for 24/7. Okay, so here a single satellite work for 24/7. Now we'll go toward the discussion of types of satellites. First of all, we start with experimental satellite. So first we will start with the experimental satellite. And here in the case of experimental satellite, the one that is the most important is in 19th April 1975. Aryabhatta was launched 19th April 1975. Okay, it is India's first. And Aryabhatta was launched with the help of Intercosmos. Intercosmos is the Russian launch vehicle. It's a Russia launch vehicle. It means in that time, Russia even helped us to launch our first satellites, and the name of first satellite was Aryabhatta. Okay, and the name of first satellite was Aryabhatta. So it's a beginning in India, guys. So kindly remember it. But because it is a first one, so it is required. Neither this is not the question of UPSC. After experimental satellite, the another one is a university satellite.
Okay, after experimental, the next satellite is a university satellites. Actually, at the university level, many satellite launch. University level means university scholar, PhD students, research scientists. They also develop various satellites like SRM sat, like NU sat. Okay, these kind of name of satellites. Okay, but they are the part of university satellite like SRM University, Chennai, Annamalai University. These research scholars have installed the satellites. Okay, these research scholars install the satellites, and this is the reason the university names are mentioned with the satellite SRM sat and NU sat type. This kind of name used here. Okay, these kind of name used here. Okay, everyone. But again, I'm telling you, these two are not required. Little bit you remember. This is the first one, Aryabhatta, you remember. Now come toward the discussion of remote sensing satellites. Third one is the remote sensing satellites. So third one is the remote sensing satellite. See, remote sensing satellite are also called as a polar satellite. This satellite is also called as a polar satellite because we are putting the remote sensing satellite into the polar position and polar sun synchronous orbit position. So it is also called as a remote sensing satellite, also called as a polar sun synchronous satellites, because we are putting into the polar orbit. So these satellites are very close from the Earth's surface. Okay, and whenever they are going to pass from the Earth, okay, any India, any other country, so they will take their own picture and images. Okay, and any of the satellite, they are working with the help of their own payloads. Payload means instrument. Payload means those instrument, with the help of it they will work. So what are the payload in the case of remote sensing satellite? The answer is LISS camera, WFS camera, and panchromatic camera. So these are the certain cameras: LISS camera, WFS camera, panchromatic camera. And with the help of these payloads, the remote sensing satellites are working. Okay, even they work. Okay, wherever you will put it. The name of cameras are not required for examination, but the function of remote sensing are required, as it is a part of UPSC question 2015, as it is a part of UPSC question 2019. Static questions UPSC asked. Among them, what about the function of remote sensing satellite? Yeah, among them, what about the feature of Indian remote sensing satellite data? Okay, the main purpose of remote sensing, you know very well. These satellites are for certain period of time in front of your country, but they are very close. That's why you can do the mapping. If you can do mapping, guys, so many of the works so you can find out here, like a disaster management. The one is what? Disaster management. And the main importance is what? Disaster management. Of disaster management, the many of the example you can guess very easily, guys. No need of to give you the example like drought, flood. You know very well. Drought, flood, attack of locust, storm, tsunami. Well, I think you can understand very well. Tsunami, earthquake. What about the areas got impact because of earthquake? Okay, so these kind of studies or analysis become very easy and possible here in this case. So drought, flood, attack of locust, storm, tsunami, earthquake, etc. These all are possible here in this case. So through the help of mapping, it is possible. One side. Second side, what about the another function of because of mapping? So just see here, guys. Just see here. What about the another function here? You people can do spy also certain areas. You can do study of forest areas. You can check about the afforestation, reforestation, deforestation. Okay, these kind of feature you can check it. Reforestation, deforestation. Okay, deforestation. You can do a study of all of them. So afforestation, reforestation, deforestations. So these all studies are possible here.
Okay, these all studies are possible here. Say forestation, reforestation, deforestation. Apart of it, people can do study of urban planning. You can do urban planning also. If somewhere the building and monuments they occupied a road, the road is very narrow, illegal constructions. Ultimately, a proper urban areas you can plan there. Even in government planning, government also take the remote sensing data. On that basis, government do the analysis how much the development happen in the particular area. Road constructions, road. How much the areas India have a road and all. You can check through the help of satellites. These satellites are very close from the Earth's surface, so you can do weather forecasting. So you can do weather forecasting. So you can do weather forecasting. So here you people can do weather forecasting. Okay. So here you people can do weather forecasting, study of weathers, weather phenomena and all you people can do there, guys. Study of polar areas you can do, guys. So polar areas, what about the conditions, ice areas, thick sheet of ice. Okay, you people can do study here, guys. Even you can do the study of oceans, coastal areas, ocean and coastal areas. You can do the study of biodiversity. Even you people can do study of biodiversity in a particular areas. So even you people can do study of biodiversity in a particular area. So here you people can do the study of biodiversity in the particular area. It's here. Okay, it is here in the case of biodiversity. Even a part of this, guys, you people can do somewhere mining activities are going on. So that studies are also become possible with the help of resources. Earth resources, you can do study of them. Study of earth resources. Earth resources like minerals. Even water table study also possible up to certain depth of the soil. Water table, dam. Okay, you people can do there, guys. Even atmospheric condition you can check. Atmospheric condition you can check, like humidity, pressure, even pollution in the particular area. You know that condition is also easy to access through the help of satellites. So I think you understood, like there are so many dynamic feature of remote sensing satellites. Okay, and it is a question, but you people know very well it's not functional for that areas where the 24/7 kind of work is required. Like telecommunication, mate, is not functional. Okay, like in the case of not only telecommunication, like in the case of okay, navigation system, it will not work because telecommunication navigation is required for 24/7. DTH, it will not work. It is for a certain period of time only. Okay, and see one thing more. Here all the features are UPSC questions. Okay, you people can check about the vegetation, productivity, even chlorophyll content also inside a leaf. The productivity and chlorophyll content. Okay, it was an option in UPSC examinations. Productivity, even chlorophyll content tak you people can check. Chlorophyll content in the leaf. So that kind of studies also become possible. Okay, in the beginning, name of remote sensing satellite were like. So in the beginning, name of remote sensing satellite was like IRS. So name of remote sensing satellite was IRS in the beginning, like IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D, IRS-1E, IRS-1P. In the beginning, the name of remote sensing satellite was like this. Okay, this is the reason you call remote sensing, you can call as an Indian remote sensing. Both are same. So in the beginning, name of remote sensing satellite was IRS. IRS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1P. And later on, the name has been started like Cartosat, OceanSat, ResourceSat, ReSat. You know, these kind of name used.
So nowadays the series of the remote sensing satellite is like this: Cartosat 2A launch, Cartosat 2B launch. In that way the name of satellites are there. Okay, so Cartosat, OceanSat, ResourceSat, ReSat. These all are the name of satellites. Okay, name of satellites. It's overall about the remote sensing. Kindly remember it. Now come next one, that is our Earth observation satellites. In short, it is called as a EOS, ES01, ES02. This kind of name you will get on ISRO websites. List of Earth observation satellites. Actually, the feature of Earth observation satellites are very similar to. It's very similar to the remote sensing satellites, but it is very advanced. But Earth observation satellite is so advanced. In this aspect, they are very advanced. I'll tell you guys. Actually, at micro level, या minute level, या fractional level of changes. If any kind of fractional level of changes are going to happen on the Earth's surface, in this case they can do the better analysis. They do also mapping, guys, but minute level of changes, if any kind of thing is going to be happen on the Earth's surface, they can detect them very easily. So any kind of fractional level of changes is going to happen on the Earth's surface, so they can do its studies very easily. This is the point here, guys. Okay, what here you people can do through the fractional level studies? Rate of melting of ice, rate of melting of ice, rate of dryness of lake, rate of dryness of lake, movement of plates, movement of plates. Agar movement of plate study you can do, so definitely you people can detect about the appearance of earthquake. So yeah, definitely you people can do exercise of appearance of earthquake. So appearance of earthquake is possible here. So movement of plates are earthquake. So rate of melting of ice, dryness of lakes, okay, movement of plates, earthquake, this kind of features are possible. See, with which rate the ice is going to melt. Okay, with which rate the ice is going to melt, yeah, whatever the features, dryness of lake, yeah, movement of plates, earthquakes. Okay, remote sensing cannot detect at minute level, but Earth observation satellite can do, because Earth observation satellite is working with the help of microwave signals. Yeah, microwave sensors. And microwave is a directional wave. And microwave is a directional wave. So it is easy to do all analysis. So it is easy to do all analysis. Okay, microwave signals in the case of Earth observation satellites. Okay, actually there is one of the news is very, very popular, and the news is called as a NISHAR. So directly I'm coming into the discussion of NISHAR project. So directly I'm coming into the discussion of NISHAR project. Its a full name is a NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Synthetic Aperture Radar. It is a very advanced type of remote Earth observation satellites. It is very advanced Earth observation satellites. Okay, and a deal happened between the US and India. NASA is, I think you know very well, US space organization. ISRO is an Indian space organization. So US and NASA, US and India, they are jointly working on this project. This project was finalized in 2014. Okay, when Modi ji was in US, and in 2015,
a joint steering group setup. A joint steering group setup in 2015. So in 2015, a joint steering group setup. So in 2015, a joint steering group setup to do work for these purposes. And one of the NASA based laboratory, that is a JPL. JPL is called Jet Propulsion Laboratory. Jet Propulsion Laboratory. It is working for this work. Okay, earlier the target was by January 2020-21, then January 2022, then January 2023. Okay, January 2024 over. But let us see 2024. There's a possibility this will India make successful. On the satellite will launch to the polar sun synchronous orbit position, yeah, sun synchronous polar orbit position, or sun synchronous orbit positions. Any kind of name UPSC can use, and all means have a same, guys. So you don't be reserved with the polar sun synchronous orbit only. Sun synchronous polar orbit, yeah, sun synchronous orbit. Every name right here. Okay, every name right here in this case. Okay, and in this case have a some work like NASA is doing something. NASA is going to develop about the L band synthetic aperture radar. Here in the case of NASA is doing a GPS system. Okay, data integrations. Well, these kind of function from the NASA side they are doing, but ISRO is doing the maximum work here in this case. ISRO is developing the S band synthetic aperture radar. It is one of the very important instruments. L band and S band have some frequency, on that basis they are working. So S band synthetic aperture radar. Even here in that case, the India will use the own launch vehicle GSLV, spacecraft bus. Spacecraft bus will use there. Okay, on orbit operations. On orbit operations, we will install the satellite certainly into the orbits. Okay, so these all the features that India will do. So a lot of work, even the launch vehicle, Indian launch vehicle will use for this project. In that way, they are trying to do the studies and all. Let us see. Okay, NISHAR project is the important topic for your examinations because it is always important. Now see, from 2015 onwards, 14-15 onward, NISHAR is important. Question paper in UPSC not asked from last 10 years. पर मुझे पता है आप लोग इसको करंट अफेयर्स बोलोगे, जबकि ये चीज़ 2014 से ही आ गई थी. फ्रॉम द मोदी जी विजिट, ओके, इन दैट टाइम जो विजिट हुआ तो उसी समय से चीज़ें आ गई थी. Okay, now come. It's a Earth observation satellite. Now come the next one, that is called INSAT or GSAT. याद रखना ये थोड़ा आने वाला टॉपिक है. निशार. Next one is a INSAT oblique GSAT. INSAT oblique GSAT. What is the full form of INSAT? Indian satellites. SAT you know very well, satellites. IN represent as a Indian satellites. G here is a geostationary satellite. Earlier people used the name as a Indian, now we are using the name as a geostationary. So Indian satellites and geostationary satellites. Okay, Indian satellite and geostationary satellites. Okay everyone, now come here. So INSAT is a Indian satellites and GSAT is a geostationary satellites. Okay everyone. So INSAT is an Indian satellite and GSAT is what? Geostationary satellites. Okay, actually this INSAT or GSAT series satellites is also called as a multi-purpose satellite.
This is also called as a multi-purpose satellites. This is also called as a multi-purpose satellites. Okay, so this is also called as a multi-purpose satellites. Many of the purposes being possible here. Actually, here a single satellite work for 24/7. You all people know very well, because the rotation of Earth and the revolution of satellites both are 24 hours. So, a single satellite work for the particular location for 24/7. Okay, for 24/7. What kind of work here, guys, in this case of INSAT and GSAT series of satellites? Listen now. Okay, what kind of work is here, guys, in this case? In the case of multi-purpose satellite, actually, telecommunication is the best one. Telecommunication is the best one. Okay, telecommunication is the best one. And not only telecommunication, even a part of this, guys, search and rescue operations. Okay, खोज एवं बचाव, search and rescue operations, DTS type of services, business networking, broadcasting, regional GPS system of India. Okay, those are working with the help of INSAT GSAT, regional GPS of India, like Gagan and IRNSS, These all are also working with the help of INSAT and GSAT series of satellites. Again, I repeat, earlier the name was INSAT, nowadays the name is GSAT. Okay, in that way, guys, have many applications. Okay, many applications. For navigation purpose, you can use them. It's here. Okay, even I just want to tell you, many departments and ministries, they are updating their own websites data. They are updating their own website data with the help of INSAT GSAT series satellite informations, like Department of Telecommunication, Department of Space, like Doordarshan, All India Radio, Indian Meteorological Department, IMD. तो सर वेदर फोरकास्टिंग, यस, वेदर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है. तो दैट इज द रीजन IMD एटसेट्रा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये सारे नाम याद रखना, किसी जमाने में ये क्वेश्चंस मेंस में आया करते थे. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सब के सब जो डेटा अपडेट करते हैं ना, these data are coming with the help of these satellites. Okay, so these data are coming from the satellites. Okay, so these data are coming from these satellites. So kindly remember it. Okay, so it's over here, guys. And the first INSAT series satellite, I'll tell you, it was a INSAT 1B. It's an Indian history. INSAT 1B, launched in 1983. So India's beginning in the geostationary orbit was 1983 onwards. INSAT 1B, 1983. So first one was a INSAT 1B, 1983. So it's overall here in this case. Okay, I'll remember it. So INSAT 1B, 1983. It was overall about the satellites. Now you come into the discussion of launch vehicle concepts. Now come into the discussion of a concept of launch vehicles. Launch vehicle, you all guys know very well. It is instruments, vehicle that is used to carry a satellite, say spacecraft, successfully into the space. And launch vehicle is the important topic for your examinations. You should remember it. Okay. Within any launch vehicle, guys, why launch vehicle is important, I think you can understand very well.
As you people are the satellites and we all the faculties, those are taking your classes are your launch vehicles. With the help of launch vehicle, the satellite will reach proper to the successfully into the orbits. Okay. Launch vehicle have overall two components. The one has the own weight of launch vehicle. Another side is what? Propellant weight. And another side is what? That is a propellant weight. So within a launch vehicle, 50% is the own weight and another 50% is the propellant weight, because weight matter here in this case. Within the own weight of launch vehicle, lot of things are there, guys, like accelerometer. Accelerometer was UPSC question 2023. Gyroscope. There's a question paper of 2023 Prelims paper. Syllabus system, etc. Accelerometer is responsible for acceleration or sudden changes of the path launch vehicles. Gyroscope provide a direction to the launch vehicles. Syllabus system is the total programming. Syllabus system is a total entire program. On that basis, the launch vehicle do their own work in different heights. So syllabus system is a total program. So syllabus system is total program. Okay, by computer program, in that way try to understand. Propellant is the sum of fuel plus oxidizer. Fuel plus oxidizer. And within the launch vehicle, guys, 50% weight is the own weight, these parts weight, and 50% weight in the launch vehicle is a propellant weight. So 50% weight is the own weight, and the 50% is what? That is a propellant weight. Propellant is a mixture of fuel and oxidizer. Okay, propellant is a mixture of fuel plus oxidizer. Okay, fuel plus oxidizer. Fuel that is going to burn, and oxidizer is oxygen compound which are necessary for the burning of fuel. Here I'll use a concept like oxygen. Without oxygen, the fuel never catch fire. School level of discussion, you people know. Okay, but whenever you go upside, guys, oxygen not available. If oxygen not available, how fuel burn? Fuel not burn. That is the reason you must have to carry a fuel with oxidizer. Okay, upside oxygen is not available, and that is the reason oxygen compound with fuel we people carry, and this is called as a propellants. Don't tell fuel here in the case of launch vehicle. And same thing in the case of missiles also. The correct term is what? Correct term is the propellants. Okay, correct term is the propellant. The propellant is the sum of fuel and oxidizer. Fine. And one most interesting information I'll tell you guys. Fuels are around 15% and oxidizer are 85%. So this much of huge oxidizer we are using in the case of propellants. So this much of the huge oxidizer we are using here in this case. So this one of the huge oxidizer we are using here in this case. Kindly remember. Okay. These launch vehicles have a different types of fuels and oxidizer, I'll tell you. And again, I'm telling you guys, that's like a propellant we are using in the launch vehicle. Similar propellant, similar type of propellant people are using in the missiles also. Because missile also carry up more and more distance and more height, where oxygen not available. Okay, fine. And the fuel should be 50%. But the more and more amount why fuel is there. Reason here distance is too much high. And in between have no chances of refueling. Yeah, distance is too much high. In between have no chances of refueling, and that is the reason you must have to carry the huge amount of fuels. अब मुझे बताओ ऊपर कोई पेट्रोल पंप है? नहीं है. तो ऊपर कोई तेल भरा पाओगे? नहीं है. तो नीचे तो हमें मजबूरी है लेके जाना पड़ेगा. नहीं तो बीच में मंगल तक कैसे पहुंच पाओगे? बीच में खत्म हो जाएगा ना तेल. ऐसे समझो. So that is the reason the amount of propellant is very high, and it's a weight and it's a tension also. First इतना ज़्यादा बाहर ले जाना है तो टेंशन भी तो है उसके लिए. बट ऑप्शन नहीं है इसलिए ले जाना पड़ता है. ओके, बट डू नॉट हैव ऑप्शन तो आपको करना ही पड़ेगा. ओके, इट्स अ लॉन्च व्हीकल. जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल वी विल टॉक. क्वेश्चन आए हुए आपके पेपर में है ना. जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स. सो फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल that is called as a SLV, satellite launch vehicle. This is satellite
launch vehicle. Next one is the second generation launch vehicle. This is called as a ASLV. ASLV is what? That is the ASLV is a augmented satellite launch vehicle. Is an augmented satellite launch vehicle. Satellite launch vehicle. Okay. Third generation launch vehicle is what? That is the PSLV. It is called as a polar satellite launch vehicle. Polar satellite launch vehicle. Fourth generation launch vehicle is called GSLV. Geostationary satellite launch vehicle. Geostationary satellite launch vehicle. And fifth generation launch vehicle is a GSLV MK3. And GSLV MK3 is also called as a LVM3. इसको हम LVM3 भी कहते हैं. Okay, तो 5 हो गए आपके that you can see on the screen जो आपको दिख रहा होगा, है ना. एक तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल. So you will understood very well. So first generation, second generation, third generation, fourth generation, and 5 generations. SLV is what? It's a 4-stage launch vehicle. SLV is what? It's a 4-stage launch vehicle. Each and every stage have a solid nature of propellants. ASLV is the 5 stage of launch vehicle. Each and every stage have a solid nature of propellant. As I'm writing, please note down. 4-stage launch vehicle. First stage solid, second liquid, third solid, fourth liquid. 3-stage launch vehicle GSLV. First solid, second liquid, and third is cryogenic stage. और GSLV MK3 में no need to tell anything. ओके वो आप समझ सकते हैं क्यों मैं कह रहा हूँ. ओके क्योंकि GSLV में जो कंडीशन है वही GSLV MK3 में भी कंडीशन. ओके सो दोस कंडीशन GSLV द सेम कंडीशन इन द केस ऑफ GSLV MK3 में भी. ये जो S लिखा है ना ये सॉलिड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट का नाम लिखा हुआ है. जो L लिखा है ना इट इज अ लिक्विड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट. L का मतलब होता है लिक्विड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट, वही लिखा हुआ है. सो S इज द सॉलिड नेचर एंड L इज द लिक्विड नेचर. यही है मतलब S एंड L का. That is mentioned here. Okay, that is mentioned here. Okay, now come. One more statement I want to tell you. Actually, which solid and which liquid nature of fuel we are using here. Okay, remember guys, these all are synthetic propellants. These all are synthetic propellants. And the name of synthetic propellants, solid nature of propellant is the HTPB. लिक्विड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट इज द UDMH और जो ऑक्सीडाइजर होता है उसका नाम है N2O4. HTPB इज अ हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. UDMH is called as a unsymmetrical dimethyl hydrazine. Unsymmetrical dimethyl hydrazine. And N2O4 is what? It is a nitrogen tetroxide. It's what? It's a nitrogen tetroxide. Okay, note down all name.
I was talking to you regarding all the stages. याद रखना questions आए हैं stages पे. Okay, धीरे धीरे you will understand about the stages and all. Sir, what about a small satellite launch vehicle? बता देंगे, रुक जाओ. उसको मैं थोड़ा currents में discuss करता हूँ. SSLV, BSLV है ना, वो उसमें बता दूंगा. रुक जाओ. Okay, कृष्णा और पीयूष. हाँ, पीयूष का एक क्वेश्चन है, एल बैंड एस बैंड क्या होता है. देखो, एल बैंड एस बैंड एक तरह के एक डिवाइस होते हैं, उनको हम ट्रांसपॉन्डर्स कहते हैं. और इन ट्रांसपॉन्डर्स को हम लगाते हैं उस निसार वाले जो सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर. ठीक है, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. पता है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको आईसीटी पढ़ाऊंगा. और आईसीटी में पढ़ाऊंगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपॉन्डर इंस्टॉल इनटू द सैटेलाइट्स to work on different frequency for different level of मतलब different level of work perform on different frequency. वहाँ ज़्यादा क्लियर है. अभी के लिए इतना रखो कि किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी मदद से सैटेलाइट विल डू सम फंक्शंस. ठीक है पीयूष और कृष्णा. वेट, एसएसएलवी हम पढ़ने वाले. ओके, अभी यहाँ नहीं, यहाँ पे हम इतने ही पढ़ने वाले जो सामने लिखा है. एनजीएलवी और एसएसएलवी भी पढ़ाता हूँ और उसको मैं मिसलेनियस में पढ़ाता हूँ. मतलब मिसलेनियस मतलब इसी में जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तब पढ़ाऊंगा. ओके, तो बताता हूँ मैं. एक्चुअली व्हाट अबाउट द यूज ऑफ दीज स्टेजेस. एक बार बता दूं, शायद आप में से कुछ लोग पहली बार क्लास सुन रहे होंगे, बाकी मैक्सिमम पीपल तो दे आर रिवाइजिंग द नोट्स. मैंने बोला था कि एक्चुअल में जो लॉन्च व्हीकल होता है उसका ना 50% वेट होता है. उसको कम करने की एक स्ट्रैटेजी होती है. दिस इज अ स्टेज, दीज आर द स्टेजेस. व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर टेकिंग अ कंटेनर, है ना. द कंटेनर हैव अ 4 बॉक्सेस, मतलब 4 कंटेनर समझ जाओ. और कंटेनर्स में जो होता है ना वो फ्यूल भरा होता है. ओके, गैरोस्कोप कुछ नहीं होता, डायरेक्शन देने के लिए होता है. एरोप्लेन में भी यूज किया था. सीलिप सिस्टम कुछ नहीं होता, एक तरह का प्रोग्रामिंग होता है कैसे लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेके अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेगा. विनय, ठीक है, यही है तुम्हारा आंसर. ओके, सो वी आर पुटिंग द फ्यूल इनटू द बॉक्सेस. इन बॉक्सेस को हम स्टेजेस बोलते हैं. पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट बर्न, देन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट बर्न, देन थर्ड स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट बर्न, देन फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट बर्न. और साथ ही साथ जो बॉक्स होता है ना जिसके अंदर भी पीपल आर यूजिंग द प्रोपेलेंट्स, वो धीरे धीरे वहां से हम अलग करते जाते हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट बर्न, तो वो जल जाता है, तब तक फिर उसका बॉक्स हम वहां से अलग हो जाता है, तब तक उसका वेट जो था लॉन्च व्हीकल का वो कम हो जाता है. तो सर इट मीन्स आफ्टर सर्टेन हाइट्स, ओके, वी पीपल हैव अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल. एग्जैक्टली, फर्स्ट स्टेज खत्म, उसका सेकंड स्टेज का प्रोपेलेंट जलता है, फिर एक हाइट तक और लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट ले जाता है, फिर वो भी हट जाता है और ऊपर फ्रिक्शन से फिर जल के खत्म हो जाता है. इस तरीके से करते धीरे धीरे लॉन्च व्हीकल का वेट रिड्यूस करते जाते हैं. फ्रॉम द बिगनिंग इट वाज नॉट इजी टू रिड्यूस इट, क्योंकि अगर इतना वेट नहीं होगा तो हम ऊपर नहीं ले जा पाएंगे. बट ऊपर धीरे धीरे वी पीपल आर रिड्यूसिंग द वेट ऑफ लॉन्च व्हीकल. जैसे ही उसके प्रोपेलेंट्स खत्म होते जाते हैं, वेट उसका कम करते जाते हैं. सो एंटायर सिस्टम दोस वर्क देयर. Okay, so it's the entire system those work there. So I think you understood very well. इसी तरह धीरे धीरे करके we will put the satellites into the particular orbit with the help of launch vehicle. It's a concept, you remember it. So I think the stages means you people very clear. थोड़ा सा now we'll go into the feature of launch vehicles. Okay, don't think so कि this kind of fuel nature will come in UPSC examination. अभी तक UPSC ने कभी भी STBB UDMH इन सब प्रोपेलेंट्स के नाम नहीं लिखे हैं, याद रखना.
Cryogenic engine I'll discuss in the last. There is something specific here in this case. Okay, the capacity of SLV is what, that it can carry around 40 kg of satellite into the LEO orbit. It can carry 40 kg of satellite into LEO orbit. So it can carry 40 kg of satellite into LEO orbit. Okay, and the first satellite was launch vehicle SLV-3, launched in 1980. Okay, and with the help of SLV-3, Rohini satellite was launched successful. So Rohini satellites was launched successful. It's a beginning of SLV for India, and this project was led by Satish Dhawan Sahab, and under Satish Dhawan Sahab, Kalam Sahab was working. Okay, matlab worked in that time, I'm telling you. But this project was led by Satish Dhawan Sahab. I did not tell you guys before SLV, okay, one of the sounding rocket was launched. Okay, before SLV, the first sounding rockets of India, I could not discuss with you. I should tell you, first sounding rocket of India. The first sounding rocket of India, okay, was launched from Thumba Rocket Launching Center. From Thumba Rocket Launching Center. ये हमारे देश की शुरुआत है, लॉन्चिंग सेंटर. इसी को आगे चल के हम लोगों ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नाम कर दिया था, तिरुवनंतपुरम, केरला. भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट्स. और ये आप से आई थिंक काफी लोग जानते हैं. व्हेन आई टेक द क्लास है ना, तो मैं ये चीज जरूर खोल देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ. जब भी कोई मिशन भेजा जाता है तो ये बोला जाता है कि है ना, हम लोगों ने अपनी जर्नी जो है, ठीक है, तो ये होता है 21 नवंबर 1963, ठीक है. तो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट्स in a grand ceremony held at the Vikram Sarabhai Space Center. Today ISRO commemorated the 60th anniversary, है ना. ये 23 का न्यूज़ है, 28 नवंबर, ठीक है. 60th anniversary of its maiden foray into space with the launch of a Nike Apache sounding rockets from the Thumba Equatorial Rocket Launching Station on November 21. उसका नाम था Nike Apache. Nike का जूता आता है ना, ऐसे ही ध्यान रखना. तो that is the beginning of India यहाँ पर. ओके, और उसके पूरे हुए आपको खुद दिख रहा होगा कितने साल हो गए. तो 50 साल पूरे हो गए. ओके, सॉरी 60 साल पूरे हो गए. तो इस चीज को फिर ग्रैंड सेरेमनी की तरह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया. तो दैट इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर. इन द ग्रैंड सेरेमनी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, वहीं से भेजा गया था. और इसका ओल्ड नेम जो था वो थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर था. Sir, why you please explain why in the initial phase of launching the satellite more mass of propellant is required? Not only more mass of propellant required, ये भी बता दूं, solid nature of propellant is used. एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखो, क्योंकि अपथ्रस्ट जो होता है शुरुआत के समय में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है. ओके, शुरुआत में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है पहले फेज में. और पहले फेज में अगर मोर मास ऑफ प्रोपेलेंट अगर बर्न हो जाएगा तो आपको शुरुआत में ज्यादा वेट कम हो जाएगा, तो ऊपर चलना और आसान हो जाएगा. वंशिका आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, तो उस बच्चे के लिए आंसर था, स्टेटमेंट था. आई थिंक वंशिका यू अंडरस्टूड, रिप्लाई करना. और ये भी बता दूं, हमेशा पहला स्टेज सॉलिड ही होता है. थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, फिलहाल अब बाद में देखेंगे, अभी दिखाऊंगा. एवरीवेयर द फर्स्ट स्टेज वाज सॉलिड. तो ये द नेम ऑफ द साउंडिंग रॉकेट्स. और इसकी फोटोग्राफ्स भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना. इसकी फोटोग्राफ्स भी बड़ा वायरल होता है कि रिक्शे पर और किस पे हम लोग कुछ वो ले जा रहे हैं ना. तो वो भी मैं क्लास में थोड़ा खोल देता हूँ ताकि नई जनरेशन को थोड़ा पता रहे. देखो, साइकिल से सामान ले जा रहे हैं ना, इस तरह की चीज है. ये देखो, ये वाली फोटो है, बैलगाड़ी, साइकिल्स, है ना. ये हमने, हमारा देश जो इसरो है वो यहाँ से शुरू करता है अपना काम. आज तो बड़ा अच्छा लगता होगा ये चीज जानकर कि मतलब इसरो ने कहाँ से शुरुआत की, ठीक है ना. तो यू शुड नेवर फॉरगेट ऑफ द लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिया. हमारे पास कुछ ना होने के बाद भी हमने कैसे चीजों को सक्सेसफुल बनाया विथ इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस. क्योंकि हो सकता है आज से 200-400 साल के बाद लोग आए और बोले आपको कि देश में सतीश धवन साहब, कलाम साहब कभी पैदा ही नहीं हुए, ठीक है. आइए, इट्स अ पॉइंट हियर. सो ये याद रखना. तो दैट वाज द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो भेजा गया. दैट वाज इन नवंबर 1963.
ओके इट वाज नवंबर 1963. ठीक है, वो 21 नवंबर या कितना नंबर था, द डे इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, वो पहला साउंडिंग रॉकेट है. साउंडिंग का मतलब कभी भी याद रखना होता है, उसका मतलब होता है टेस्टिंग रॉकेट्स. और this is totally retired now it is not in use. और of course you can understand very well 40 किलो में और नियर बाई कौन ले जा, क्या जरूरत है इसकी. एंड दैट इज द रीजन इट इज रिटायर्ड, टोटली रिटायर्ड. आज इसका कोई भी ना डेवलपमेंट हो रहा ना कोई यूज है. आफ्टर SLV we'll go toward a discussion of KSLV. Its weight carrying capacity is 150 kilogram and will launch into the LEO orbit. ओके लेकिन इसको भी हटा दो क्योंकि इट इज ऑल्सो नॉट इन यूज्ड. तो एक्चुअल में जो है वो SLV है, PSLV है, GSLV है, और GSLV में GSLV आपके 3 है. Okay, so do one thing. One side you come PSLV and second side you come GSLV. See guys. So one side you come into the PSLV, that is a Polar Satellite Launch Vehicle. This is Polar Satellite Launch Vehicle. And other side is what? That is a GSLV. Okay, and the side is what? That is a GSLV. Its full form is a Geostationary Satellite Launch Vehicle. This is Geostationary Satellite Launch Vehicle. So one is the Polar Satellite Launch Vehicle and second one is a Geostationary Satellite Launch Vehicle. So these are the two types of launch vehicle. Polar Satellite Launch Vehicle and Geostationary Satellite Launch Vehicle. Now question is, what is the PSLV? Actually the purpose of PSLV was to carry polar satellite, है ना. पर्पस यही था PSLV का कि पोलर सैटेलाइट्स को, है ना, पोलर सैटेलाइट्स को. पोलर सैटेलाइट कौन सा होता है? रिमोट सेंसिंग टाइप वाला, है ना. पोलर सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग टाइप ऑफ सैटेलाइट्स को यू शुड हैव टू सेंड इनटू द पोलर ऑर्बिट, है ना. अब पोलर ऑर्बिट इज व्हाट? दैट इज अ लियो ऑर्बिट, जिसकी डिस्टेंस लगभग 50 से 2000 के आसपास होती है. ओके, सो इसके लिए स्पेशली जो है वो PSLV डेवलप किया गया था. एंड द पर्पस ऑफ GSLV वाज कि हम जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, GSAT को, उसको लेकर जाएं GEO और GTO में. ये सारी डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर के आसपास की होती है. मतलब ज्यादा दूरी तक ले जाने के लिए पर्पस था वी शुड हैव टू बी अ लॉन्च व्हीकल, और वो था GSLV. इसी वजह से इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के नाम से जानते हैं. अब आई थिंक नो वन हैव प्रॉब्लम जब भी आपके पेपर में इस तरह की चीजें आती हैं. ओके, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपके सामने है. ओके, अब देखो इसमें कुछ चीजें और हैं इन द केस ऑफ PSLV, जरा मैं बताता हूँ, जरा समझो. ओके, with time what happened in the case of PSLV guys? Okay, PSLV used to carry a Chandrayaan-1 and I just want to tell you guys, Chandrayaan-1 बाद में, पहले वो बता दूं, PSLV की मदद से ही हम लोगों ने एक सैटेलाइट है, I'll tell you like IRNSS. IRNSS I'll discuss with you guys. It is one of the regional GPS of India. उसके जो 7 के 7 सैटेलाइट्स में, टोटल 7 सैटेलाइट भेजे गए हैं और सारे के सारे सैटेलाइट जो हैं वो GEO और GTO में भेजे गए, है ना. ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भी लॉन्च विद द हेल्प ऑफ
PSLV. Okay, these all satellite launched with the help of PSLV. Okay, these all satellite launched with the help of PSLV. One part. Okay, INSS, UNGTO. And another point I want to tell you guys in the case of PSLV. Okay, in this case, even though Chandrayaan 1 was launched, Chandrayaan 1 was also launched with the help of PSLV C11. और आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 1 तो हमने 36,000 से भी दूर भेजा है. ओके, उसको हमने 36,000 किलोमीटर से भी दूर भेजा. यू शुड रिमेंबर इट. ओके, सो वी सेंड इट बियॉन्ड 36,000 किलोमीटर, उससे भी दूर भेजा है. ओके एवरीवन, फाइन. Even after Chandrayaan 1, so Chandrayaan 1 you launch with the help of PSLV C11. Mangalyaan 1, okay, Chandrayaan 1 के बाद है ना, it is launched with the help of PSLV C25. देखो चंद्रयान 1 तो करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है, 3,84,400 के आसपास बताते हैं मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से लगभग. और मंगलयान तो लगभग उसका भी 100 गुना ज्यादा दूर है, लगभग 400 लाख किलोमीटर. तो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, द PSLV यूज्ड टू कैरी. इतना तो छोड़ो, अब तो सोचो कहाँ PSLV लेके जा रहा है. इट्स अ मंगलयान मिशन. ओके, इट्स अ मंगलयान मिशन. ओके, PSLV यूज्ड टू कैरी मंगलयान मिशन. और अभी एक और सुना होगा, PSLV की मदद से ही अभी एक मिशन भेजा गया, दैट वाज आदित्य L1. वैसे काफी लोगों ने सुना होगा, करंट में अपडेट्स भी होगा, यहाँ पे अपडेट्स भी है. आदित्य L1 जो भेजा गया, इट वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ PSLV. PSLV क्या है, C57 आई थिंक है ना. PSLV C57 यूज्ड टू कैरी आदित्य L1. एंड द आदित्य को भेजा गया लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दैट. बताऊंगा L1, L2, L3, L4. देयर आर सो मेनी कंसेप्ट आई विल डिस्कस विद यू. वेट. ओके, so it's overall about the PSLV that you can see here very easily, guys. Okay, now come into the GSLV. GSLV have a different variants and you should have to know about the GSLV variant. So GSLV have different variants and the name of variants are like GSLV MK1, GSLV MK1. इसमें दो हैं, 1A and 1B. GSLV MK2, GSLV MK2. अगला दैट इज कॉल्ड एज GSLV MK3. और सुनो, GSLV MK3 को हम लोगों ने 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल बोला है. आई थिंक यू विल नॉट कंफ्यूज. देखो, GSLV MK3 को वी कॉल देम एज अ 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल. दोज आई एम डिस्कसिंग हियर आल्सो. यहीं पे बता देता हूँ 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, क्योंकि ये हो गया 3rd जनरेशन, ये हो गया 4th जनरेशन. इसका ये वाला पार्ट जो हो गया, दिस इज द 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल. तो डोंट बी कंफ्यूज हियर. Okay, so don't be confused here. GSLV MK3. Okay, what about the feature of GSLV MK1, MK2, MK3? बताता हूँ. सुनो, ये जो MK1 है ना, it's 1500 किलोग्राम of mass it can carry to the GTO orbit. GTO का मतलब होता है 36,000 के साथ थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है 5,000, 6,000. जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर का मतलब है थोड़ा 5,000, 6,000, मतलब 36,000 के आसपास या उससे दूर, है ना, ऐसे समझो. पर उससे कम उतना जा सकता है. ए डिस्टेंस ऑफ 1900 किलोग्राम इट कैन कैरी टू द GTO ऑर्बिट. ओके, पर सुनो, अब GSLV MK1 पूरी तरह से बंद हो चुका है, उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है. सो नाउ GSLV इज नॉट इन यूज. वहीं दूसरी तरफ व्हेन यू गो इनटू द स्टडी ऑफ GSLV MK2, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है. एक तो 2500 किलोग्राम का अगर मास ऑफ सैटेलाइट है तो यू कैन लॉन्च इन टू द GTO ऑर्बिट. लेकिन अगर वेट ज्यादा हो गया, लगभग 5000 किलोग्राम तक का है, तो आप उसको लियो तक भेज सकते हैं. मतलब 2500 के ऊपर है और लगभग 500 तक, 5000 तक, तब उसको लियो पास में भेजना पड़ेगा. अब 5000 के ऊपर तो ये नहीं ले जा पाएगा लियो भी. ठीक है. MK3 में व्हाट इज द कैपेसिटी, 4000 किलोग्राम सैटेलाइट्स इट कैन कैरी इन GTO ऑर्बिट. और वहीं पर 8 टन टू 10 टन अगर देखोगे, है ना, it can carry into the LEO position. So 8 ton to 10 ton in the LEO position. Okay, 8 ton to 10 ton मतलब वही 4000 किलोग्राम से ज्यादा हो गया
तब आप नीचे ले जाओगे, और 10,000 के ज्यादा वेट हो गया तब आप नीचे भी नहीं ले जा पाओगे। नीचे भी ले जाने की कैपेसिटी मतलब लियो मतलब 2000 तक इतनी है। ओके, अल्टीमेटली व्हाट यू पीपल अंडरस्टूड हियर, सारी कहानी जो है ना ये सब कुछ मास को लेके, यही क्लियर कर दूं, सारी जो कहानी है ना ओके, सारी कहानी जो है एक्चुअल में ये वेट को लेकर है। वेट को क्या लेके, मैं एक बात बताता हूँ। एक्चुअल में पीएसएलवी और जीएसएलवी में कुछ कैपेसिटी है जो इसरो की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, समझो। इसरो ने लिखा है अगर 1425 किलोग्राम तक का मास है ना, किसी भी सैटेलाइट्स का जो लेकर हम जा रहे हैं, ओके 1425 तक, तब वी पीपल कैन लॉन्च देम टू जीटीओ या बियॉन्ड जीटीओ। लेकिन अगर 1425 से ज्यादा है तब हम जीटीओ पे नहीं ले जा पाएंगे, ये उनका कहना है, ठीक है। और 1750 किलोग्राम तक अगर मास हो गया तो आप इसको लियो तक ले जा पाएंगे, उसके ऊपर का मास तो आप लियो तक भी नहीं ले जा पाएंगे, ये इसरो का कहना है। When you people will go on ISRO website and do the study of PSLV, so it's a maximum limit of PSLV is defined there. Up to 1425 kilogram of mass we can carry to the GTO and beyond GTO, और 1750 किलोग्राम है तो लियो तक ले जा सकते हैं। और पता है यहाँ देखो 1500 किलोग्राम को जीटीओ तक ले जा रहे हो, दिस इज नॉट द लिमिट ऑफ द, दिस इज नॉट द लिमिट ऑफ पीएसएलवी। इट मींस ऑल इंटायर फीचर इज ऑन द बेसिस ऑफ मास और वेट ऑफ सैटेलाइट्स, यही आपको ध्यान रखना है। सो ऑल इंटायर फीचर इज व्हाट, मास और वेट ऑफ सैटेलाइट्स, ऐसे ध्यान रखना है। यहाँ 1500 किलोग्राम में कुछ नहीं है, बताता हूँ कैसे। जानते हो जो आईएनएसएस के आपने 7 सैटेलाइट भेजे हैं, सबका मास 1100 से लेके लगभग इट इज इंटायरली हाउ मच 1300 किलोग्राम, और यहाँ देखो 15 से शुरू हो रहा है। चंद्रयान 1 जो लेकर गए थे उसका मास था 1380 किलोग्राम, मंगलयान 1 जो गया था उसका मास लगभग 1350 किलोग्राम, और आदित्य का भी करीब करीब मेरे ख्याल से, आदित्य का कितना था 1400 1500 के आसपास है, लेट मी चेक, है ना, ये करीब करीब उसके आसपास है जो चला गया। आदित्य तलवन का मास जरा देखना दो, थोड़ा सा 1425 से ज्यादा है, मैंने चेक किया था, तो 15,000 किलो के आसपास है। तो हियर इज द 1500 किलोग्राम। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि 1425 ज्यादा, यहाँ पर एक केस है जो एक्सेप्शन देखने को मिला है ना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है देखने को मिला कि लेकिन 1500 के ऊपर फिर भी नहीं है। ओके, अभी मैं बोलूंगा बस इसरो ने लिखा है 1425, बट यहाँ पे 1500 किलोग्राम इंडिया मेड इट सक्सेसफुल, यहाँ पर 1500 किलोग्राम इंडिया मेड इट सक्सेसफुल। ओके, हाँ चेंज करता है ना, इंडिया मेड इट सक्सेसफुल, यहाँ पर 1500 किलोग्राम इंडिया मेड इट सक्सेसफुल। ओके, सो 1500 किलोग्राम इंडिया मेड इट सक्सेसफुल। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आदित्य तलवन के केस में जा रहा है, यही मैं बोलूंगा, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे आपको थोड़ा 1425 से ज्यादा मिलेगा। ये तो सारे लॉजिक समझ में आएगी नहीं। और कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे अभी इंडिया हैव अ प्लान फॉर शुक्रयान, समझो जरा, समझो, समझना ज्यादा जरूरी बच्चा, ठीक है। अभी आपको पेपर ऊपर दिखाता हूँ ना, हवा नहीं लगता तुम लोग, पेपर में पूछा है पीएसएलवी जीएसएलवी का डिफरेंस 2018 में, और आप करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हो। ओके, और दोज पीपल वर वरी अबाउट द करंट अफेयर्स, घबराओ नहीं यार, वो भी करा रहा हूँ, चलने दो अभी थोड़ा स्टार्टिंग, करंट समझने के लिए बड़ा बैकग्राउंड तो बनाने दो, और बैकग्राउंड से इतने सारे क्वेश्चन कैसे छोड़ दूं, सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता यूपीएससी पूछ रहा है, जियो शशि सैटेलाइट यूपीएससी पूछ रहा है, पोलर सिंक्रोनस आगे यूपीएससी पूछेगा, कौन पढ़ाएगा तुमको, करंट वाला मैगजीन पढ़ाएगा 100 पन्ने में, क्या बात कर रहे हो। ओके, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड क्लास। ओके, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड क्लास, इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था और कल मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ था, अब तो कोई नहीं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके एवरीवन, अच्छा यू कम, सो हाँ यू कम हियर गाइस। एक्चुअली इन द केस ऑफ शुक्रयान मिशन, सुना होगा वीनस मिशन, इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट। शुक्रयान मिशन का ऐसा माना जा रहा है इसका जो मास होगा लगभग 2500 किलोग्राम के आसपास होगा, इसका मतलब ये इससे भेजा जाएगा, मतलब नहीं है, ऑफिशियली भी लिखा गया है, भेजा जाएगा। ओके, और सुनो,
GSLV MK2 के इस वाले वेरिएंट से भेज। अब वैसे भी गेस कर सकते हो, अगर वेट कम है तो दूरी ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो दूरी कम होगी, और इससे ज्यादा वेट है तो कम दूरी भी नहीं ले जाएगा। इट्स कम वेट, कम दूरी तक ले जाने का मैक्सिमम वेट ये है, ज्यादा दूरी तक ले जाने का मैक्सिमम वेट ये है। इतना आप कंसेप्ट समझ सकते हो। ओके, इन द केस ऑफ GSLV MK3 में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जरा समझना। आई एम जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द साइज। ओके, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया भाई, जैसे मैंने कहा देखो, जो चंद्रयान 2 है ना, चंद्रयान 2 का जो मास था वो था बच्चा 3877 kg, है ना। इसको ले आया गया है इसकी मदद से। जो चंद्रयान 3 था ना, इधर देखो, है ना, चंद्रयान 3 जो था उसका मास था लगभग 4000 kg, है ना। उसको ले जाया गया है इसकी वजह से। अब देखो, आपको खुद समझ में आ रहा है। और अभी जो आपका गगनयान का प्लानिंग चल रहा है, गगनयान विल हैव अ टोटल मास ऑफ 7 to 8 टन्स। और गगनयान को हम लोग ना यहाँ ये वाले से ले जाएंगे, उसको हम लियो में ले जा रहे हैं 500 किलोमीटर के आसपास। और गगनयान के बाद एक और है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेस स्टेशन, जो भारत का अपना बनने की बात हो रही है, स्पेस स्टेशन। उसका मास कह रहे हैं लगभग 20 टन होगा। हाँ, तो 4-5 पार्ट में 4-5 टन कर करके ये ले जाएंगे, किससे? GSLV MK3 के वेरिएंट से। ओके, ओके, सो दिस वन यू पीपल रिमेंबर। पहले बताओ, ये समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? चलिए बताओ। आई एम अवेटिंग मैसेज फ्रॉम एवरीवन। यहाँ तो मुझे जवाब चाहिए सबका। ओके, और यूपीएससी का जरा 2018 का क्वेश्चन किसी के पास हो, जरा एक मिनट भेजो तो। जरा उन बच्चों को दिखाना है जो लोग साइंस एंड टेक को करंट अफेयर्स बांध के इस कोर्स को ज्वाइन किए और मुझे सुन रहे हैं। यहाँ बनाओ, लिखो, जैसा लिखा है समझो, अब मुझे रिप्लाई करो। और एक लोग मुझे जरा उसकी फोटो भेजो, तो उस फोटो को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2018 का है। काफी लोगों के पास मेरी 7th एडिशन वाली बुक है, मैकग्राइल वाली, उसकी फोटो जरा भेजना तो उस क्वेश्चन को देखो। I think this is the chapter number 7. I'm waiting for question paper. And I think this concept is very clear, है ना। और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा जो है, ओके, व्हाट इज इट, सी, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हो बच्चा, ये देखो, है ना, ये पूरा, ये हो गया क्या? दिस इज द 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल, GSLV MK3। एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ GSLV MK3? इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज LVM3, और यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल। ये देखो, यही है 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, जरा मैं बस दिखाऊंगा। ओके, लाइक 2018 में ही पूछा गया, विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग। अब आपको ये पता है PSLV जनरली सैटेलाइट को कहाँ भेजता है? तो PSLV जनरली सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट में भेजता है, पोलर पोजीशन में। अब पोलर पोजीशन में जो सैटेलाइट होते हैं वो, है ना, अर्थ के काफी करीब होते हैं, तो पिक्चर इमेजेस लेते हैं तो आसानी से अर्थ के रिसोर्स की स्टडी कर सकते हैं। जबकि GSLV या डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन, GSLV मेनली तो बनाया गया 36,000 पर सैटेलाइट को रखने के लिए। GSLV पुट द सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, यही तो बोला था, जनरली तो यही बनाया गया GSLV को, इसको यहाँ रखने के लिए।
और ये मेनली कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। हाँ, ओनली कम्युनिकेशन के लिए होता तो गलत हो जाता, क्योंकि इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग बहुत कुछ और भी कर सकता है जीएसएलवी, ठीक है। और पीएसएलवी जो है वो यूजफुल है अर्थ रिसोर्स के लिए, सही है, अर्थ रिसोर्स के लिए यूजफुल है। तो पहला स्टेटमेंट है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर आपको ये पता हो कि पीएसएलवी से कौन सा सैटेलाइट जाता है, फिर आपको पता हो कौन सा सैटेलाइट जो होता है वो किस ऑर्बिट में जनरली भेजा जाता है, तब तो आप पीएसएलवी से काम निकाल पाएंगे। सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है, करंट अफेयर्स वालों के तो बस का नहीं है क्वेश्चन, टांगे की चोट पे कह रहा हूँ, उनका छोड़ो, टीचरों के बस का नहीं है जी, ठीक है। तो उनको भी तो नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, the first statement is right. GSLV launched satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky. क्या बात कर रहे हैं सर? PSLV जिस सैटेलाइट को लेकर जाता है पोलर पे होता है, वो हमेशा 24/7 फिक्स कैसे होता है? नहीं होता है, वो तो सर जियो स्टेशनरी वाला जियो सैटेलाइट होता है ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया, है ना। GSLV MK2 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। GSLV जो है MK1 हो या MK2 हो या MK3 हो, ये 2 स्टेज है, टेल मी, या 4 स्टेज है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यू विल गेट इट। GSLV जो MK2 है वगैरह है, MK का सारा जो है इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। सो MK जो सारा का सारा इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, ओके। इट इज इंटायरली 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल जो आपके सामने है, हो गया। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, देख लो। स्टैटिक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पूछा जाता है, तुम लोग इसको आता है ही नहीं कुछ। हाँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा क्रायोजेनिक इंजन पे बात कर लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। क्रायोजेनिक पे बात करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। बेटर यू गिव राइट अबाउट जीएसएलवी, उसमें थोड़ा लिखो, क्योंकि क्रायोजेनिक इटसेल्फ इज अ गुड क्वेश्चन इन योर पेपर, ओके, फॉर योर पेपर, राइट। जीएसएलवी लिखो, जीएसएलवी, जीएसएलवी, first 2 stages of GSLV, right? First 2 stages of GSLV are similar to PSLV. First 2 stages of GSLV are similar to PSLV. Because same nature of propellant use. So first 2 stages of GSLV are similar to PSLV because same nature of propellant used. Those propellant you people have seen the solid and liquid in the case of PSLV. Same propellant you will found here in this case. Okay, but third stage is totally different. That is cryogenic stage. But third stage is totally different. That is cryogenic stage. But third stage is totally different. That is cryogenic stage. Cryogenic stage. Now, right. Cryogenic is a low temperature based technology, right? Cryogenic is a low temperature based technology. Cryogenic is a low temperature based technology. Okay. Cryogenic is a low temperature based technology. Okay. Within a cryogenic propellant, liquid hydrogen used as a fuel at minus 253 degrees Celsius temperature, and liquid oxygen used as an oxidizer at minus 183 degrees Celsius temperature.
So liquid hydrogen used as a fuel at minus 253 degrees Celsius temperature, and liquid oxygen used as an oxidizer at minus 183 degree Celsius temperature. And I just want to tell you guys, gaseous nature of fuel have some difficulty. They are difficult to carry from one place to another place due to maximum chance of frictions. So what you people are doing here, gaseous nature of fuel, you are going to compress them at very low temperature and the gas become as a liquid. And this is a very advanced feature of cryogenic engine. This is very advanced feature of cryogenic engine. And I want to tell you guys, the cryogenic engine made the GSLV as a quality launch vehicle, and that is the reason the GSLV can carry huge amount of weight of the satellites very easily. Okay, without cryogenic engine it was not possible. And the cryogenic engine, okay, in the beginning those India found it from the Russia, but from January 2014, I think it is, with the help of GSLV D5, India launched successfully GSAT 14 satellites. Okay, in this January 2014, the GSLV D5 launch. Here first time successfully indigenous cryogenic engine used. So first successful indigenous cryogenic engine used January 2014, okay, in GSLV D5. और इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ध्यान रखना. आप यहाँ देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट GSLV D5, जहाँ सबसे पहले भारत ने अपना वो बनाया है. अरे ये देखो 5 जनवरी, ये क्या है, ये एक मिनट बचा है ना, ये देखो यही न्यूज है जो मैं कह रहा था. GSLV D5 लॉन्च द प्लेसेस इंडिया इन लाइट लीक. क्यों? क्योंकि इंडिजिनस क्रायोजेनिक, अरे भाई क्योंकि इंडिजिनस कहाँ गया भाई, साइन विद डिफरेंट, कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू, हाँ, क्योंकि कहाँ गया, ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक ने पुट 90 किलोग्राम कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन द ऑर्बिट. ओके, GSLV D5 लॉन्च प्लेसेस इंडिया इन लाइट लीक. अब ये अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइक ये जो जनवरी 2014 मैंने बोला ना, ये हमारा पहला सक्सेसफुल इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन है. पहले क्या होता था, क्रायोजेनिक इंजन ना हमें रशिया से मिलता था, हम लोगों ने अपना ही बना लिया. तो ये तो एक अच्छा अचीवमेंट है, बट स्टिल इंडिया इज लैकिंग इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. इससे फायदा ये हुआ कि अब इंडिया आसानी से 2 टन से ज्यादा मास का जो सैटेलाइट है वो लगा सकता है, जैसे कि यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना पहले करते थे. और आई टोल्ड यू यहाँ पे टेम्परेचर जो -253 डिग्री सेल्सियस पे हम लिक्विड हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं और -183 पे हम लिक्विड ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं. ये तो मैंने आपको बोल ही दिया है. ओके, एंड लो टेम्परेचर पे यू पीपल नो वेरी वेल, गैस होता है वो लिक्विड हो जाता है, और कम टेम्परेचर करोगे तो लिक्विड जो होगा वो सॉलिड हो जाता है. तो इतना कॉन्सेप्ट तो आई थिंक एवरीबडी नो इट वेरी वेल. अगर दिस कॉन्सेप्ट एवरीबडी नो वेरी वेल, तो इसमें तो ज्यादा बताना ही नहीं है, आप सब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा था. ओके फाइन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लाइक फर्स्ट टाइम द इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन यूज्ड, देखो लिखा भी है. ओके, इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन यूज्ड. वैसे तो फिलहाल ये सेकंड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया था, तो पहला सक्सेसफुल तो यही माना जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो था वो क्या हो गया था, हार्ड बेकिंग फेल्योर हो गया था. ओके, और आपको बताऊं इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए इंडिया रिक्वेस्ट टू अमेरिका, और अमेरिका ने मना कर दिया था. और जब रशिया ने तुम्हें दिया, उसी रशिया की मदद से हम लोगों ने अपना पहला GSLV भेजा था. आपको बता दूं GSLV D1, और ये हमने भेजा था 2008, जिसकी वजह से हमने GSAT 1 सैटेलाइट भेजा था. ये हमारे देश का पहला GSLV है जो इंडिया ने यूज किया था 2001 में, लेकिन यहाँ पर रशियन क्रायोजेनिक इंजन लगा था. ये चाहो तो लिख लो, द फर्स्ट GSLV ऑफ इंडिया GSLV D1, जहां पर रशियन क्रायोजेनिक इंजन के साथ. इट मींस इन द बिगनिंग दोस ऑल द GSLV है ना इंडिया यूज्ड, है ना. हियर ऑल द एंटायर क्रायोजेनिक इंजन इंडिया गॉट. यहाँ हर जगह क्रायोजेनिक इंजन हमें रशिया से ही मिला है.
Okay, so everywhere we got this here. Okay, we got this here. अच्छा, एक चीज और यहीं पे देखो याद आ रहा था, दिमाग से क्या उतर रहा है, उतर गया तो उतर गया, बड़ा अच्छा एक पॉइंट था। हाँ, इंस्टीट्यूशन नेम, वेयर इंडिया इज डेवलपिंग ओन GSLV, हम लोग अपना GSLV का, सॉरी, वेयर इंडिया इज डेवलपिंग, वो क्या नाम है, क्रायोजेनिक इंजन हम कहाँ बनाते हैं, तो वो सेंटर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया इज डेवलपिंग क्रायोजेनिक इंजन एट LPSC सेंटर, है ना, LPSC, यहाँ देखो LPSC, इसका पूरा नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। सी, इट्स अ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, तो इट्स अ सेंटर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, है ना, जहाँ पे इंडिया इज डेवलपिंग ये क्या नाम है, क्रायोजेनिक इंजन, है ना, यही वो जगह लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जहाँ पे इंडिया अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाता है। इसके दो कैंपस है, एक आपका पड़ता है दैट इज तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, और दूसरा आपका पड़ता है दैट इज इन बेंगलुरु, ठीक है। LPSC हेडक्वार्टर्स एंड डिजाइन ऑफिसेस वालियामाला, तिरुवनंतपुरम, एंड स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिविटीज जो है बेंगलुरु कर्नाटका। कुछ इसका काम जो होता है वो महेंद्रगिरी में भी होता है, ठीक है, बट ये थोड़ा ध्यान रखना है, LPSC के सेंटर्स यहाँ है वालियामाला, है ना, तिरुवनंतपुरम, और स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिविटीज एट LPSC बेंगलुरु कर्नाटका। और देखो लिखा है यही हमारा है जहाँ पर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स वगैरह बनाते हैं, दैट वी पीपल यूज इन आवर लॉन्च व्हीकल। ये इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे पर मैं क्रायोजेनिक इंजन पे क्वेश्चन लेकर इसको कनेक्ट कर सकता है। सो बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर is a good question. Now you come into the discussion of jet engine technology. That is also most important topic for your examinations. So come into the discussion of jet engine technology. Okay, and your main heading is the jet engine technology, but your sub heading is a conventional plane, मतलब commercial plane, right? Conventional plane or commercial plane. Conventional plane or commercial plane. Okay, so conventional plane or commercial plane, just a minute guys, एक मिनट है ना। Okay, now come. So conventional plane or commercial plane versus jet plane versus jet engine, yeah, jet plane. Okay, versus jet plane. Actually, on the basis of many sources, I'll tell you, conventional planes are generally going to the 11, 12, 13 kilometer heights, and jet plane is going beyond that. Here the height is accordingly, I can tell you, they are in the stratosphere. They're in the stratosphere. The normal plane is in the stratosphere, and jet plane is still, it is in the stratosphere. But in these both two comparison, jet plane have a more and more height, है ना? So they are upside and they are lower side. Okay, so both are in the actually these areas. Okay, both are in these areas. So conventional plane and jet planes. Second point I'll tell you guys, conventional planes are moving in those areas where horizontal winds, horizontals and verticals, both type of winds are there. Okay, so they have a horizontal and vertical, both type of winds are there. Here mostly horizontal, here mostly horizontal winds available. Here mostly horizontal winds are moving, and this is the reason this area have a less turbulence. This area have a less turbulence. Even this is the question in your paper. If very simple guys, plane is moving like this and the wind is also blowing like this, so turbulent part is not there. Okay, but if a plane is moving like this and the wind is moving like this, up and down, vertical, so more chances of turbulence. Here vertical winds are also more common here,
So that is the reason this area have a more turbulence. So this area have more turbulence. So one side is a less turbulence and second side is what, that is a more turbulence, kindly remember. After it you come to the next point, and a more turbulence, less turbulence. Next point, conventional planes are moving that area where oxygen is available. Jet plane is also moving that area where oxygen is available. So both two side oxygen available, you should remember. So oxygen is available both side. Okay, oxygen is available both side, you should remember it. Why I'm telling you oxygen? The reason is one side UPSC asks the questions from the comparison from the jet plane to rocket engines. Rocket, you know very well guys, it is going more and more height because rocket kind of things we are using into the launch vehicles, and launch vehicle carry the satellite more heights. Yeah, missiles also. Okay, and they have a need of oxidizers, but the jet plane is moving up to those side where oxygen is available. So this is the reason when UPSC asks the questions, so rocket always carry extra oxidizer because they are going more and more height, rocket or launch vehicle kind of things, but the jet plane is going up to that height where oxygen available, and they are going up to that area where oxygen available and where oxygen not available. So not available means they have must to be carry what, oxidizer. So this is the one of the UPSC question. Okay, those UPSC as in your paper. So I think you just note down guys, just note down. Come into the different types of jet engine technology. Here I'm expecting a question of scramjet for your examination. Okay. It's an entire picture and here you can understand very well. Okay, jet engine technology. There are three types of engine, jet engine you can see on the screen. The one is a turbojet, second is a ramjet, and third one is a scramjet. According to objective only, you see here guys. This is a turbojet. This is turbojet. It's a ramjet. And this last is the scramjet. Okay, this last is what, it is a scramjet. So turbojet, ramjet and scramjet. Turbojet, ramjet and scramjet. What are all these? Listen guys, here in this case. Okay, these all the engines, they are working. Okay, but in different heights. Okay, around 20-25 kilometers, 30-35, 40 kilometers, 40-45, 55 kilometers. So the height is going to increase. Okay, so around 20-25 kilometers, 40-30, 35 kilometers, 40-45, even up to 50 kilometers or 55 kilometers.
So that's a different height of different types of jet engine. Okay, those we are using in the fighter planes, even we are also using in the case of missiles. So jet engine used in every cases guys, fighter planes, missiles, everywhere we are using the jet engine. Okay, now listen here. Okay, what about the working principle of jet engine technology? It is mentioned there. The one process is called compression phase, second is called as a combustion phase, and third is called here as a expansion phase. Okay, the one is what? That is a compression phase, second is a combustion phase, and third is a expansion phase. So this is the working principle of jet engine technology. The one is the compression phase, second is the combustion phase, and third is what? That is the expansion phase. Okay, third one is the expansion phase. Okay, compression phase, combustion phase, and expansion phase. What are here in this case? Listen guys. Okay, what are here in this case? Listen. Actually, it's a turbine. It's a turbine. Okay. First of all, you tell me, do you know about the Mach number? Because without the Mach number, it's not possible to discuss this. So let me discuss about the Mach number first. Mach number you read in physics book. Okay. And how to define the Mach number, guys? At 0 degrees Celsius temperature, 0 degrees Celsius temperature, speed of sound in air is equal to 332 meter per second. At 0 degrees Celsius temperature, speed of sound in air is equal to 332 meter per second. And this 332 meter per second is called as a 1 Mach number. This value is called as what? This is called as a 1 Mach number. Actually, this parameter is used to define the speed of fighter plane or missiles or jet engine, everyone. If the speed is the less than 1 Mach, it is called as a subsonic speed. The one speed is called as a subsonic speed. Second speed is called as a supersonic speed. Infra is not required, a supersonic speed. And third one is called as a hypersonic speed. Up next time, I'll not discuss all these terms, subsonic, supersonic, and hypersonic. Okay, tomorrow I'll try to complete your space technology. Okay, so tomorrow I will try to complete your space technology. Okay, because tomorrow I'll get the 4S, so it's my target to complete it. Let us see. I'll try. So it's overall you can see here right now, subsonic, supersonic, and hypersonic. Subsonic are what, guys? If the speed is less than 1 Mach, it's a subsonic. If speed is more than 1 Mach and go up to 5 Mach, then this is the case of supersonic, and 5 Mach plus, this is the case of hypersonic, and 5 Mach plus, this is the case of hypersonic. Okay, this is the case of hypersonic. Actually, I just want to tell you the speed of these different kind of jet engine even will do changes. Speed will change on the basis of different kind of jet engine, and the speed is even defined here in the case of jet engine and the reference of subsonic, supersonic, and hypersonic. Okay, so that is the reason you must be know about subsonic, supersonic, and hypersonic first here, guys. Okay, fine. So I think you people very comfortable with all the basic terms. Okay. Now listen, and again I am telling you guys, next time I will not discuss about every speeds and Mach numbers and all. Okay, every speeds are Mach number and all. Okay, now come. What about the working mechanism? Now come. Working mechanism mentioned there. First phase is the compression phase. Second phase is the combustion phase. And third phase is what? This is the expansion phase. So three phases are there. The one phase is the compression phase. Second is the combustion phase, and third is called as the expansion phase. Actually, see, in the first phase, what are going to happen? See, this turbine is going to rotate, and the air is going to push inside. Okay, push inside. And when the air is coming, push inside. This is the narrower in shape.
In the beginning, the air whenever it's coming, it is going to compressed, and this phase is called as a compression. In every cases, guys, either it's a turbojet, it's a ramjet, or a scramjet, first phase in every cases, the air is going to compress, it is narrower and that density is more, it's called compression phase. After it, the second phase everywhere, guys, it's what? It's a combustion. When there is a burning happen inside, guys, after burning, everything is going to expand. So here it is going to move forcibly backside. Agar forcibly air is going to backside, this speed, the forcibly backside is the subsonic speed in this engine. And according to Newton's third law, you people know very well, action reaction. The school time of the book you read it, swimming, rockets, everywhere, Newton's third law. So if action is a subsonic speed, so what about the reaction of this engine? Subsonic speed. And that is the reason this engine move with the subsonic speed. Subsonic speed means less than 1 Mach. So if I ask you guys, what about the speed turbojet engine maintain? The answer is subsonic speed. So what about the speed turbojet engine maintain? The answer is subsonic speed. Now this plane is going to be more and more height. It's a kind of a ramjet generally people are using in fighter planes. Okay, it will be used in the fighter planes. Okay, it will be used in the fighter planes. And see, one thing more I'll tell you, as you are going up, the density is going to increase. Okay, the density is going to decrease, but oxygen available up to every height because scramjet is up to stratospheres. Okay, fine. Now the plane is going to up more and more up. The height is going to increase as different kilometer you already have seen here, and this engine is going to off and this engine is going to on. Okay, this engine is going to on again. This engine already has maintained subsonic speed. When this engine off and this engine on, now with the subsonic speed, air is start to enter inside. So ultimately here again further it is a narrower in shape. The air is coming, it is going to compressed. The first phase is the compression phase. After it, the second phase is what? That is a burning phase. When the burning phase happen, guys, the air that is coming inside, it is going to move forcibly backside. This is called as a expansion phase. And the more than the speed of subsonic, the air is going to backside, and this speed is called as a supersonic speed. This speed is called as a supersonic speed. With supersonic speed, the action is going to be happen. So what about its reaction? Its reaction will also be with the supersonic speed, and here the speed will go reach around 3 to 6 Mach. It will be reach around 3 to 6 Mach. Now this engine is going to modify into this one, and further the plane is going to be more and more height. The engine is going to modify. Okay, modification of engine from see this shape and this shape, and now here the speed already maintained supersonic. With supersonic speed, now the wind is going to come here. Supersonic speed. It is a compression phase. Next, that is a burning phase, and then expansion phase. And when the expansion happen here, guys, when the expansion happen here, okay, expansion happen here, what will come there, guys? In this case, so more than the supersonic, the air is going to move. Everybody know very well, when the thing is going to burn, it is going to expand. So air is coming, supersonic speed, going to burn, supersonic speed. When the air forcibly go backside, definitely the entry of air has a more speed to the output of the energy, and speed. So here this is called as a hypersonic, and when this is going with the hypersonic speed, it is here what? Hypersonic speed. And this is the reason, guys, there is a news, this scramjet engine can maintain 25 Mach, even plus than 24 Mach. Okay, plus than 24 Mach. Okay, plus than 24 Mach here in this case of engine. Okay, and see one thing more, guys, the scramjet engine is just a modification of ramjet engine. With the help of nomenclature, you can understand very easily, guys. Okay, with the help of nomenclature, you can understand very easily. How? See, scramjet mein already ramjet name is mentioned there. Only 2 alphabet extra added there, S and C. S is what? That is a supersonic. S is what? That is a supersonic. C is what? That is a combustion. This is combustion. And ramjet is what? That is a ramjet. The full form is a what? Supersonic combustion ramjet. In this way, you people remember it. So here I'll advise to everyone, kindly take a picture and don't try to make a picture. Okay, it will take more and more time.
टेक अ पिक्चर. Yeah. बोल दो यार, रिप्लाई कर दो. टुडे आई विल सी योर क्वेश्चन आल्सो, है ना. जो क्वेश्चन आपके पास है आज वो क्वेश्चन भी देखना है. So there is a small confusion with respect to jet engine. Please clarify. Can more than one type of engine be used in the plane? क्या नहीं हो सकता बच्चा, तुमको क्या लगता है? हमारा तेजस जो है वो फाइटर प्लेन, उसमें सिंगल इंजन है. पर सुखोई में देखो ट्विन इंजन है. आप देखो ना, ये मैं हटा रहा हूँ. ओके, क्या ही नहीं हो सकता है. इवन बच्चा तुम ना ऐसा मत करो, है ना. दो इंजन हमको चाहिए, तुम लो या ना लो, हमको तो चाहिए भाई. सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हमको चाहिए, इसलिए चाहिए बच्चा, सबको चाहिए. क्या हो गया भाई? हेलो, हाँ ठीक है, सबको चाहिए. हम दिखाते तुमको, रुक जाओ, है ना. जो तुम लोग एरोप्लेन में चलते हैं ना, उसमें भी दो इंजन होता है. एक कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो दूसरे के दम पे उतर आओगे वंशिका. ठीक है बच्चा, भगवान ना करे. एक इंजन है ना. हाँ वो अलग बात है कि कुछ फाइटर प्लेन्स में पीपल आर यूजिंग सिंगल इंजन. और अभी तुमको फाइटर प्लेन अभी दिखाता हूँ. SU-30 देखो, ट्विन इंजन दिखेगा, दो इंजन है उसमें, देख लो. हमारे नॉर्मल एरोप्लेन में दो इंजन होता है बच्चा. ये देखो SU-30 ट्विन इंजन, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है. देखो SU-30 फाइटर प्लेन ट्विन इंजन. हाँ हमारे तेजस में भले ही सिंगल इंजन है, मैं उसमें बता देता हूँ. डिपेंड करता है आपको जैसा चाहिए, है ना. तेजस ट्विन इंजन नहीं है, मैंने डाल दिया, वो नहीं देगा. तेजस ट्विन इंजन नहीं देगा. तेजस सिंगल इंजन है. देखो मैंने अभी बोला था, जो हरा तेजस वो सिंगल इंजन. ठीक है. तो सर देयर इज अ स्मॉल कंफ्यूजन रिस्पेक्ट टू जेट इंजन, मैंने बता दिया. कैन मोर देन द वन टाइप ऑफ इंजन बी यूज इन द प्लेन, हो गया. कोमल मैं बताता हूँ टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9. रुको मैं भी आ रहा हूँ. और स्मॉल कंफ्यूजन, ठीक है. कैन मोर देन वन टाइप ऑफ इंजन बी यूज इन द प्लेन. काइंडली हाउ डज द मॉडिफिकेशन मीन दैट द सेम इंजन विल स्टार्ट वर्किंग लाइक स्क्रैमजेट? क्यों नहीं. आप देखो एक चीज जरा ध्यान दो. सी 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 जैसे अभी आपने बोला है ना. एक मिनट रुको, है ना, रुक जा, है ना. मैं थोड़ा देखता हूँ कुछ अच्छा मिल गया. रैमजेट टू स्क्रैमजेट ट्रांजिशन. देखो रैमजेट टू स्क्रैमजेट ट्रांजिशन आपके सामने दिखा रहा हूँ. कुछ अच्छा मिला तो मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट. मैंने पिक्चर खोल रखा है क्या? नहीं, ऑल खोला है. ये देखो, बहुत ज्यादा यहाँ क्लियर तो नहीं लिख रहा, पर यहाँ देखो थोड़ा सा, यू मे अंडरस्टैंड. साइंस डायरेक्ट एक जनरल है ना, उसी का पेपर है. स्क्रैमजेट टू रैमजेट ट्रांजिशन इन अ डुअल मोड कंबस्टर, है ना. The ramjet to scramjet transition is a dual mode combustor, is a well known process that typically occur as a vehicle accelerates and is categorized. इसमें जाओगे, फिलहाल ये काफी एडवांस हो गया. आपके सामने मिल रहा है, इट्स अ ट्रांजिशन, है ना. ये देखो इट्स अ ट्रांजिशन, दिखाता हूँ.
The first successful transition from turbojet scramjet to ramjet transition in the dual mode. A dual mode is scramjet combustor featuring a fin guided hydrogen injector and the cavity. उतना नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही technical लिखा हुआ है. It will have a combustor is a well-known process that typically occurs as a vehicle accelerates and is characterized by the dissolution of pre-combustion shock train. Reverse scramjet to the ramjet transition, however, can also occur in the dual mode system. The scramjet to ramjet mode transition can lead to a stable thermally choked combustor operation for isolator. और सुना एक बात बताऊं, ये ना रिवर्सेबल होता है, क्योंकि जैसे you are going to be upside ना, वैसे आपको धीरे धीरे नीचे भी आना होता है. तो इट्स अ रिवर्सेबल प्रोसेस, ये भी मैं बता दूं. ओके, ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना. ओके, दिस इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस. Okay, so it is a reversible process. Now I am just going to open your question paper, है ना? Everybody open your question paper. Okay, I hope your first test is done. Okay, and I just going to open the question and everybody start to discuss with me. Okay, I have my question paper and in my hand. You will also open an explanation. You people also got it. So I don't think so anyone have problem. In which of the following state in India's largest battery energy storage system commissions? So that you know it is in छत्तीसगढ़. और मैंने सारी कहानी बता दी थी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है. वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोगों से कह रही है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे मैं उसको खरीद लूंगा. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो यू विल गेट इन द केस ऑफ लिथियम आयन बैटरी, ये भी मैंने पढ़ाया था. ओके, दे आर लाइट वेट, तो दैट यू नो वेरी वेल. हाई एनर्जी डेंसिटी, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम जनरेट सेव करता है, ठीक है. दो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, है ना. अब अपने आप से फोन रखो तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, बहुत तेजी से नहीं डिस्चार्ज होता, मतलब बैटरी ज्यादा बची रहती है. नो मेमोरी इफेक्ट, आई टोल्ड यू, एक साथ मोर देन वन एप्लीकेशन अगर यू एक्सेस, स्टिल द पावर ऑफ कंजम्पशन इज सेम, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज फास्ट. नो ओवरहीट, है ना, नहीं, ये थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट है, ये थोड़ा गर्म होता है, ठीक है. बट इन कंपेरिजन टू लेड एसिड बैटरी ये थोड़ा कम गर्म होता है, थोड़ा ध्यान रखना. ये गर्म होता है बट इन कंपेरिजन टू लेस एसिड बैटरी ये थोड़ा कम गर्म होता है. दिस इज द डिफरेंस हियर. ओके, मतलब हीट होता है बट है ना, आप समझ रहे ना, है ना, ये ओवर हीट होता है, लेकिन इन कंपेरिजन टू जो नॉर्मल बैटरी गर्म होती है उस लेवल पे ये गर्म नहीं होता है, ठीक है. मैंने कल बोला भी था और ये ऑल द पॉइंट्स मैंने कल डिस्कस किया भी था, ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम बैटरीज आर burgeoning field in the energy storage research, aiming to supplant conventional lithium-ion battery by leveraging sodium ions for electrochemical energy storage and retrieval. Okay, तो मुझे नहीं लगता इनमें किसी को कोई जानने की जरूरत है. This statement is right. जबकि sodium batteries imply sodium as a viable alternative to lithium, capitalizing on its greater abundance, enhance cost effectiveness and reduce environmental impact. ये मैंने आपको बोला था. This is the benefit of sodium battery. ये मैंने आपको कराया भी था. तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट. ओके, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट्री भी है, उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है. इट्स गुड. ओके, तो यहाँ पे बोथ टू स्टेटमेंट आर करेक्ट. ग्रेटर अबंडेंस है और सोडियम बैटरीज आर बार्गेनिंग फील्ड इन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है. रिसर्च एमिंग टू सप्लांट कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी बाय लेवरेजिंग सोडियम आयंस फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी शॉर्टेज एंड रिट्राइवल, ठीक है. और वैसे भी द बैटरीज हैव अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. ओके, सो और वैसे भी मैंने आपको एक बार बता दूं तो जो लिथियम होते हैं और जो सोडियम होते हैं उसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है. और ये भी मैंने बोला था कि लिथियम और सोडियम को, है ना, एक साथ भी जोड़कर ये लोग पूछ सकते हैं, है ना. यूपीएससी कैन आस्क यू. अगला क्वेश्चन आपके पेपर में है, दैट इज शुगर बीट. शुगर बीट, है ना, स्वीट सॉर्गम, कॉर्न और व्हीट, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम
हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी यूज एज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताऊं तो आप यहाँ पे अगर देखो, ओके, तो शुगर बीट, स्वीट sorghum, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल कॉर्न, कसावा, डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, है ना, ये सारे के सारे जो हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे व्हीट लिखा हुआ है तो व्हीट वगैरह में भी ना एज एज इट इज यूज नहीं करते हैं हम, दैट यू मस्ट बी क्लियर। ठीक है, वैसे आपको बताऊं तो ओनली डैमेज व्हीट कैन बी यूज, नॉट नॉर्मल वन, ये इसमें लिखा हुआ है। और बात भी सही है, क्योंकि हम वही चीजों को यूज करेंगे जो सस्ता हो और या तो फिर जो खराब हो जाए। दैट इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, और शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमिकल वैल्यू हम देखेंगे, तो गेहूं है भाई, खाने की चीज है, गेहूं से वो बनाना इज नॉट गुड। ओके, और गेहूं का हैव अ लॉट ऑफ इवन, मतलब ठीक है खाने के लिए हो गया, तो उसको नहीं सड़ रहा है कोई या कुछ तरह की चीजें, जैसे कभी कभी नहीं हो जाता हमारे गोदामों में चीजें सड़ रही होती, तो उस केसेस में अब यू पीपल कैन यूटिलाइज योर सीरियल ग्रेन्स, एंड आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उससे फिर एथेनॉल वगैरह बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं, तो इन दैट केसेस यू पीपल विल यूटिलाइज देम। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं एक ऑप्शन यू पीपल हैव कि अब चीजें आप बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ पर अब चीजों को यूज कर लेंगे। ओके एवरीवन। Okay, next question with reference to wind energy, है ना, consider the following statements. The Ministry of External Affairs has notified the rules for leasing the seabed for offshore wind power projects. The center can lease the offshore area beyond the exclusive economic zone for offshore wind energy projects. And third, India has set a target of installing 100 gigawatt offshore wind projects by 2030. देखो मैंने कल बोला था टोटल विंड बेस्ड पावर जनरेशन जो करना है दैट इज अ 140 गीगावाट, आई थिंक यू रिमेंबर, बाय 2030, और उसमें से लगभग 30 गीगावाट जो होना है वो ऑफशोर से होना है। एंड आई थिंक यू पीपल रिमेंबर वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफशोर, जो लैंड से जो एयर जाता है किधर की तरफ, यू नो, ऑफशोर और ऑनशोर, यू पीपल नो इट आर नॉट, जरा बताओ तो, बताया यहाँ बताया थे, कहाँ बताया था, याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसे कुछ बोला था आपको कि नहीं बोला था। जैसे मान लो दिस इज, है ना, जैसे मान लो दिस इज व्हाट, दिस इज द कोस्टल एरिया आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ, ठीक है। विंड के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक जो ओशन से ग्राउंड की तरफ आ रहा हो, लैंड की तरफ, और एक जो लैंड से ओशन की तरफ जा रहा हो, ठीक है ना। जो लैंड से ओशन की तरफ जा रहा है इसको हम कहते हैं ऑफशोर, और जो ओशन से जो विंड लैंड की तरफ जा रही है इसको हम कहते हैं ऑनशोर। तो यू शुड नो इट गाइस, है ना। और ये ऑफ शोर जो लैंड से जो ओशन की तरफ आ रहा है, इस हवा से जो पावर जनरेशन होता है इसको हम कहते हैं ऑफ शोर। तो वही कह रहा है कि ऑफ शोर से 100 गीगावाट नहीं, टोटल मिला के 140 गीगावाट, उनमें से 30 गीगावाट हमारा ऑफ शोर है। ओके, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज नोटिस, नो सर बता दीजिए, बता दिया बच्चा, बता दिया ना, बता दिया, मुझे लग रहा था शायद यहाँ नहीं कहीं और डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बता दूं, जैसे कि इंडिया से द थर्ड वाला तो टोटली गलत हो गया, और वैसे भी थर्ड वैसे भी आप टिक कर सकते थे, अगर यू डोंट हैव आइडिया अबाउट द ऑफ शोर वगैरह तो भी दिमाग में आएगा यार 100 गीगावाट। चलो अब फिलहाल कंफर्म हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज नोटिफाइड अ रूल फॉर लीजिंग द सीबेड फॉर ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जो जो ओशन वोशन के पास वाला एरिया है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है ना, पर उसका लीज दिया जाता है 5 साल के लिए, है ना, उसका लीज दिया जाता है। पहले तो कुछ 3-4 साल के लिए होता है, बाद में उसको बढ़ा भी दिया जाता है कुछ एक्सटर्नल केसेस में, कुल मिला के 5 साल के लिए होता है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें आंसर भी लिखा हुआ है। द सेंटर कैन लीज द ऑफशोर एरिया बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी टारगेट, ये भी आप समझ सकते हैं। यू पीपल नो वेरी वेल, जो कोस्टल एरियाज वगैरह में कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो व्हाई यू विल डिस्टर्ब देम, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, व्हाई यू विल डिस्टर्ब देम, तो वो चीजें आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी अगल बगल आप विंड पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, हाँ ठीक है ना। इसमें व्हाई एनीबॉडी विल डू द रेस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगा दे तो आप इसको गेस कर सकते थे। तो मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, दैट इज राइट।
Sixth question, I think you can understand very well. Microbial fuel cell are devices that use the bacteria as catalyst to oxidize organic and inorganic matter and generate current. That is right, 100% no. Organic inorganic दोनों use कर सकते हैं. You're right. Microbial fuel cell can be used. तो ये क्या कह रहा है? Microbial fuel cell are devices that use the bacteria as a catalyst to oxidize organic and inorganic matter and generate current. Okay, so this is right. Microbial fuel cell can be used to treat the waste water generated from industry. हाँ, waste water कोई भी organic waste हो, why only waste water? So it will be helpful to them. Okay, अगला क्वेश्चन है, दैट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन रिफर्स टू द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग थर्मल एनर्जी. ठीक है ना, यूजिंग थर्मल एनर्जी. देखो ऐसा है, ग्रीन हाइड्रोजन को जो हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ऑफ वाटर से यूजिंग थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी से नहीं होता, ग्रीन एनर्जी बनती है, ग्रीन हाइड्रोजन बनता है रिन्यूएबल एनर्जी से, है ना, ये सबको पता होगा. कल ही मैंने बोला था इन द प्रीवियस लेक्चर. The government has set to target for domestic production of green hydrogen to 100 million ton. क्या बात है, अभी हम लोग 50 मिलियन टन, जबकि हम लोग कितना कह रहे थे, ये जो है वो कितना है, ग्रीन हाइड्रोजन से 5 मिलियन टन बाय 2030 को अचीव करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगला देखो, अगला स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया. इजी फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे. द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सिग्निफिकेंटली लोअर देन हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय हाइड्रोकार्बन. नहीं, कॉस्ट प्रोडक्शन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंटली हायर है. ठीक है ना, सिग्निफिकेंटली ये क्या है, इट इज अ हायर. ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के थ्रू ही जान जाओ कि ऐसा होता है. कोल गैसिफिकेशन कन्वर्ट्स कोल इनटू सिन गैस. ठीक है, चलेगा. सिन गैस कैन बी यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर. ठीक है, चलेगा. ओके, द गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू गैसिफाई 500 मेगाटन ऑफ कोल बाय टू. नहीं, 100 मेगाटन है, 500 नहीं. आप देखो प्रीवियस डिस्कशन में मैंने बोला था. अब नाउ एक बच्चे ने बोला सर 9th वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो. क्या बच्चा 9th वाला? हाँ, किसने बोला? कोमल ने. सुनो बच्चा, आ गया तुम्हारा क्वेश्चन. हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स डू नॉट नीड टू बी रिचार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोजन फ्यूल सेल डू नॉट रिचार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आप थोड़ा ध्यान बताओ. आप मुझे एक बात बताओ, जब आई डिस्कस विथ अबाउट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी, तो मैंने एक बात बोला था कि बैटरी इज गोइंग टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, पर फ्यूल सेल के साथ कोई रिचार्ज और चार्ज नहीं होता. जितना हाइड्रोजन भरा होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी फ्यूल सेल में, उतनी देर तक आपका फ्यूल सेल काम करेगा. और हाइड्रोजन हैव अ मैसिव एंड मैसिव एनर्जी. एक बार भर दोगे तो बहुत लंबा चलेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, ये मैंने बताया था. इसका सीधा मतलब है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल डू नॉट नीड टू रिचार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी. नहीं, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाइड्रोजन जब तक है तब तक एनर्जी निकलती रहेगी. और हाइड्रोजन के पास इतनी एनर्जी है कि देखो क्रायोजेनिक इंजन से तुम बिना ऊपर तेल भराए ही चंद्रयान 3 भेज रहे हो. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आज के डिस्कशन से भी और प्रीवियस डिस्कशन से भी, जो मैंने आपको बैटरी और हाइड्रोजन बताया था. Second statement, battery powered electric vehicles are more environmental friendly than hydrogen fuel cell electric vehicle. बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैटरी के अंदर बच्चा अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे मेटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आसानी से रिसाइकिल नहीं होते हैं. इसीलिए आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक जो वो है कौन सा ERS या ESRP क्या बोलते हैं उसको, ESR क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो स्क्रवेज जो करते हैं, ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को फिर ले लेती हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों को फिर वो यूज करके अगली बैटरी बनाती हैं. इसको क्या बोलते हैं? ERP कहते हैं. क्या कहते हैं? ये UPSC आज द क्वेश्चन. इन्वायरमेंट की किताब एक बार जरूर पढ़ना अगर तुम्हारे पास टाइम होगा. बहुत बढ़िया किताब लिखी हुई, मैग्रा-हिल वाली बुक है आप लोगों को जो यहाँ मिली है, मैग्रा-हिल का 3rd एडिशन वाला बुक. ओके, इन्वायरमेंट का. ठीक है, साइंस है, पढ़ना जरूर, उसमें मैंने आपको लिखा है. ठीक है, इसीलिए आपको देखो मोबाइल फोन और चीजें कंपनियां लौटा लेती हैं, क्योंकि इनमें से, और आपको अच्छा पैसा भी देती हैं. 3,000 2,000 रुपए आपको नई बैटरी पे छोड़ देती है, पुरानी बैटरी का रिटर्न पे. और मोबाइल पे देखो 30,000 रुपए 20,000 रुपए छूट जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज पॉलिसी है, क्या इसको बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा. EPR, एग्जैक्टली, EPR इज राइट. और EPR पे ऑलरेडी UPSC आज क्वेश्चन, EPR ऑलरेडी UPSC आज क्वेश्चन. ठीक है ना, तो बच्चा तुम बताओ, तुमको समझ आया बेटा? कोमल, ठीक है, कोमल, योर आंसर इज डन. ओके, तो यहाँ पे ठीक है, पहला स्टेटमेंट राइट है और दूसरा पूरी तरह से गलत है. ठीक है, अंडर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, नहीं तो क्यों EPR लाने की बात करते हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह के लिए. नेक्स्ट द टर्म साइट. साइट मैंने कल बोल दिया था, ये हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर लाया गया. यू पीपल नो वेरी वेल. तो आइस का कोई लेना देना नहीं है. सर्वेलेंस सिस्टम एयर से स्कॉलरशिप इंटेंशन नहीं है, ये क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है. हाइड्रोजन फ्यूल को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए, वो कल बताया था मैंने, कुछ नार्वे के साथ क्या क्या हो रहा था. इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है. लगभग इसमें 20,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है. ये है पूरा का पूरा इसमें. ओके, थैंक यू एवरीवन.